run on networks with immutable data. The data generated by them cannot be changed or altered in any way. This way, all information is kept secure. Cost effectiveness. Smart contracts make transactions more cost effective. This is done with the removal of intermediaries from the process. By doing so, it makes the transaction faster and also removes the cost associated with it. The biggest benefit of smart contract is the automation that it offers. In simple terms, it means that there is no interruption and no third party can make changes in the agreement and the decision. This automation can go a long way as it helps organizations to automate certain aspects of their business. Smart contracts are interruption-free. This means once they start execution, they cannot be interrupted. It is trustless. The entire system is trustless. This means that there is no need to trust the parties to carry out a transaction. A transaction or a trade does not require trust as its integral part. As smart contracts run on a decentralized network, this means that the entire network is trustless. Its fast performance. The autonomous smart contracts executes way faster compared to the old-fashioned traditional approach. As all the parameters are already defined within the smart contracts, it only needs to match them before it starts executing. It is accurate and error-free. The only issue is that they need to be coded correctly so that they execute error-free. For example, if you're filing your taxes, you can make errors while doing so. However, if you use a smart contract to do so, you will have an error-free approach. Well, that was all about smart contracts and its benefits. Now we know why smart contracts are used in all walks of our lives. Smart contracts are nothing but a smart way to live the new digital life. Keep watching your favorite series, Tip of the Cryptoberg. I'm Vinita Chatterjee, signing off. Keep watching your favorite channel, Crypto TV. फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पैम, कुछ ऐसे ही शब्दों में फंस गई है एनएफटी की दुनिया, जिन्होंने अब एनएफटीज की जेन्युइनिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले एक साल में जैसे जैसे एनएफटी का ट्रेंड तेजी पकड़ रहा था, एनएफटीज बड़ी बड़ी ह्यूज कलेक्शंस कर रही थी। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि एनएफटीज एक लंबी रेस के घोड़े जैसी हैं, जो ना रुकेंगी और ना हारेंगी। लेकिन अब अचानक एनएफटीज पर कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस अब कड़ा रुख अपना रही है। दरअसल एनएफटी की सबसे बड़ी मार्केटप्लेस ओपनसी पर उनके इंटरनल कलेक्शन स्टोर फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यूजर्स को जितनी चाहे उतनी एनएफटीज मिंट करने की कन्वीनियंस थी, लेकिन इस सुविधा का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ओपनसी और उनके कई बायर्स एंड सेलर्स को। हुआ कुछ ऐसा कि इस सर्विस का गलत फायदा उठाते हुए बहुत से लोगों ने फेक एनएफटी कलेक्शंस लॉन्च की। जी हाँ, ओपनसी ने खुद ये खुलासा किया कि फ्री मिंटिंग एनएफटी टूल्स के तहत लॉन्च की गई एनएफटीज में से 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शंस और स्पैम है। ओपनसी ही नहीं, और भी कई एनएफटी मार्केटप्लेसेस हैं जो इस स्कैम की चपेट में आ गई हैं और कई परेशानियों से जूझ रही हैं। जैसे कि डेविएंट आर्ट ने पिछले कुछ महीनों में 80,000 फ्रॉड अलर्ट्स जारी किए हैं। इतना ही नहीं, एक और प्लेटफॉर्म लुक्सरेयर पर वॉश ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि वॉश ट्रेडिंग क्या होती है। तो कभी कभी एक ही ग्रुप के लोग आपस में एनएफटी को बाय एंड सेल करके इलीगल तरीके से उस एनएफटी की ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यू दोनों को बढ़ाते हैं। चलिए आपको एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। आप बीपल को तो जानते ही हैं, जिनकी एनएफटी एवरी डे इज द फर्स्ट 5000 डेज ने
$69 मिलियन की अब तक की हाईएस्ट एनएफटी कलेक्शन की थी। उस आर्ट के बायर मेटाकोवन एक्चुअली बीपल के बिजनेस पार्टनर हैं। कुछ समझे? और ये वॉच ट्रेडिंग बड़े लेवल पर हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 2017 में 4.7 मिलियन एनएफटीज 6.1 मिलियन टाइम्स ट्रेड हुई है। और तो और टोटल ट्रेडर्स में से महज 10% ट्रेडर्स ने 90% एनएफटी ट्रांजैक्शंस की हैं। और यही ग्रुप 97% एनएफटीज को कम से कम एक बार ट्रेड जरूर करते हैं। तो यानी इन एनएफटीज की वैल्यू और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक ग्रुप साथ मिलकर सांठगांठ कर रहा है। एनएफटी की दुनिया में किस कदर धोखाधड़ी जारी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कई बार मल्टी मिलियन डॉलर वर्थ रग पुल भी होते हैं, जहां अनोनिमस फाउंडर्स इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर छू मंतर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इवॉल्व्ड एप्स एनएफटी प्रोजेक्ट, द बिग डैडी एप क्लब और ब्लॉकवर्स के साथ। अजब गजब गड़बड़ियों से भरी पड़ी है एनएफटी की दुनिया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिस करता है ओनरशिप ऑफ कलर। इतना ही नहीं, हर बार जब आपका खरीदा हुआ कलर कोई और यूज करेगा तो आपको रॉयल्टीज मिलेंगी, ये तक वादा किया जाता है यहाँ। और अब तो एनएफटी फ्रॉड्स कोर्ट तक घसीटे जा रहे हैं। एक कनेडियन कंपनी ने सोथबीज और आर्टिस्ट केविन मैककॉय पर 1.5 मिलियन डॉलर्स का केस ठोका है। मई 2014 में मिंट किए गए क्वांटम नाम के आर्ट को दुनिया की पहली एनएफटी के तौर पर जाना जाता है। जून 2021 में सोथबी की ऑक्शन नेटिवली डिजिटल में ये आर्ट 1.47 मिलियन डॉलर्स में बिका। कनेडियन कंपनी फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर जिसने ये केस दायर किया है, उसकी माने तो वही क्वांटम के असल हकदार हैं, क्योंकि इस एनएफटी के लॉन्च के 7 साल बाद जब मैककॉय की ओनरशिप खत्म हो गई थी, तब उन्होंने इसके राइट्स सिक्योर कर लिए थे। एक्चुअली ये सारी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि क्वांटम ओरिजिनली बिटकॉइन के कोड पर मॉडल्ड नेमकॉइन नाम के ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पर मिंट की गई थी। नेमकॉइन पर ओनरशिप को हर 250 डेज के बाद रिन्यू करना जरूरी है, वरना कोई भी इसे क्लेम कर सकता है। और मैककॉय 2014 में क्वांटम को मिंट करके 2015 में उसे रिन्यू करना भूल गए। जब 6 साल तक ये एनएफटी रिन्यू नहीं की गई तो 6 अप्रैल 2021 को एक्सियोस ने एक आर्टिकल इशू किया जिसकी हेडलाइन थी Exclusive, the first ever NFT from 2014 is on sale for $7 million plus. उसके 2 हफ्ते बाद फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर ने @earlynft नाम के ट्विटर हैंडल से इस NFT को रजिस्टर कर लिया। NFTs के साथ जुड़े इस फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में क्या क्रिप्टो मिंटर के सीईओ और को फाउंडर रघुराज शेखर का कहना है और इन स्कैम से कैसे बचा जाए, आइए सुनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है, सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे, जस्ट वो एक जेपेग इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे मिंट करके बेच दिया। ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है। दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि काफी सारे एनएफटीज के नाम पे कि आप एनएफटी का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको और आप इस पे अपना अपना सीड फ्रेज डाल दे, प्राइवेट कीज दे दें और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग। तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं। तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही हैं। बट जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने एनएफटी बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हुआ किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं। बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे हैं। सो अब लोग देखने लगे हैं कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं। लेट्स से काफी फेमस एनएफटी कलेक्शन है बोर्ड एप याच क्लब, तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं।
बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि वेरीफाइड अकाउंट्स हैं या नहीं। यानी इन टोटल एनएफटी की दुनिया फिलहाल कटघरे में खड़ी है। जब तक यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी नहीं किए जाएंगे तब तक इसमें हाथ ना ही डालें तो अच्छा है, वरना हाथ जल भी सकते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Hello and welcome to Crypto TV. This is Manoj Dhara. While 2020 will be remembered as a time of COVID-induced economic pain, it was also a year when people started thinking much more creatively about the marriage between technology and the economic value. The emergence of the vast markets for non-fungible tokens, that is NFTs, unique-based blockchain digital assets, is a transformative move for how we understand the digital transactions and store of value. In order to understand NFTs in detail, we have a very robust panel for you. So let me introduce to the guests. So first guest for today's panel is a person who doesn't need any introduction. Our first guest for today is someone who leads the blockchain practice for Asia Pacific region for the BSE listed cloud specialty companies SecureK Cloud Technology Limited. He is an alumni of India's Premium Education Institute, IIT Madras and IIM Bangalore with over 30 years of industry experience. He is Mr. Srinivasan Mahankali. Sir, welcome to the show and welcome to Crypto TV. Second guest on the list is an alumni of MIT Solon's Partnership Program, Asia School of Business. He is an experienced technology strategy professional with 14 years of expertise across US and APAC regions. Currently, he is a partner as Master Mentor Advisor, a premium blockchain consulting firm in India focusing on the enterprise blockchain. Let me introduce you to Varun Singhi. Varun, welcome to the show. Hello. Thank you. Third guest is Mr. Samrat Kishore. Samrat is a technology strategy consultant turned entrepreneur and investor. He carries rich consulting experience from having worked with KPMG, Deloitte, and Accenture Strategy in the past and serving clients in over 20 countries. Samrat, welcome to Crypto TV. Hi Manoj, thank you so much for having me. And our fourth guest is Prasanna Lohar, Chief Innovation Officer at DCB Bank and founder of Indian Blockchain Forum. Sir, welcome to the show. Yeah, thank you, Manoj. Always pleasure to be here at Crypto TV. Welcome you all. All of our friends are here. So let's see how we can really keep it. Sure. So let's get started. So today's discussion is about NFTs, that is non-fungible tokens. We'll begin with Srini sir. What is NFT and non-fungible tokens according to you, if you can just begin with? Yeah, thank you. I think you already said, I think in a few words, what is NFT. So NFT is, unique piece of digital asset that is stored on blockchain, and a blockchain-based system. And it could be, there are different types of NFTs called, there are different types of tokens actually. I mean, I would say NFT is one type of a token. We have fungible tokens, we have semi-fungible tokens, we have non-fungible tokens. Non-fungible tokens are something which are very unique and which cannot be traded one against other unless they are denominated by another median value unit. They're having different properties which differentiate them in terms of their uniqueness, this rarity, their ability. And they're also owned by somebody, whoever has created it or whoever has bought it. So that way, I would say, that's what would define NFT. Parameters that define NFT, which are captured in the metadata. I think we can discuss all these things as we go along. So my question is to Varun. What's your opening remarks on non-fungible token? Well, I think, as Srini sir rightly mentioned, they have just got traction. If you look at last 2020 until now, you can see an astronomical growth in NFT space itself, right? And while NFT started in 2017, we see traction of lately.
I think because people started realizing the value of it, right? Predominantly, NFTs right now are only in digital market and, music, artwork. But I think the real value will come when you see the enterprise usage of NFTs, right? Because Sure. we have been talking for past few years about creating NFTs. I think the real value will start when we start using NFTs in varieties of use cases, right? So that will set the tone, and that's the future I look at, how NFTs, combined with DeFi and other, protocols we have. Because NFTs in isolation, as Srini sir mentioned, is just a digital unique asset, which gives you provenance on, blockchain, right? It's a piece of code which gives you unique ownership. But with that thing, if you look at, the potential is limitless, right? So Alright. that sets the tone for this conversation today. Samrat, what's your opening remark on this? Sure, Manoj. So I think, the other panelists have covered it really well, but I would want to just add to that yes, I think its real value is derived out of the economic innovation which comes along with the code. So I think the real wrapper around, why it became so valuable all of a sudden is the interest it has garnered in the past 1.5 years from celebrities as well as average people like us alike. Although we didn't know that the technology existed, there were limited use cases of such technology in the past. But now with this new race of owning something on the internet in the digital world, that has led to a never-ending economic value and demand in the NFTs. So yeah, I'm really bullish on this space, and I look forward and I congratulate to all of you, for being participants in the economy. Thank you so much, Samrat. And what's your take on this, Prasanna? NFTs, that's, everyone is talking about it. That's the thing of 2021. What's your first take on it? I think NFT is a start of something big, right? In a simple terms, non-fungible tokens, what we call it as, right? The way we have seen the lot of transformation that happened in the overall last 100+ years. We typically call it as an industry revolutions, right? Part of industry revolution 4.0, wherein we are seeing a lot of adoption of many more business model operation on internet. So internet is something like which is everywhere, right? So on top of internet, there are various use cases. Sure. And when you talk about blockchain, Sure. NFT comes and it gives a kind of a comfort or kind of a next level of adoption where your digital assets can be really tokenized, can be traded out there. So it's a start of something big new. So which is a non-tradable asset. So we'll discuss a lot around this. Sure, that is the start for something new. My next question is to Srini sir. The best economic innovation of 2020, according to you, is NFT. And is there a utility value, meaning the value in real world to NFTs? How will the segment evolve going forward? Over to you, Srini sir. Yeah. So I think NFT is not really the economic, greatest innovation of 20. NFTs have been there for almost 4 years now. We all know about, CryptoKitties. The first thing we learned in the blockchain was CryptoKitties and ERC-721 token on Ethereum, which represented, unique character, right? Which was minted on the blockchain and then traded and caused a crash of the Ethereum network, etc., because of the large demand that went around with it and the craze that happened. And later on, now we have the phenomena has grown so much because of the number of facilitating factors. Sure. Like number of protocols that have come up. For example, it is Ethereum, then you have Wax, then you have Flow, then you have Tezos, when you have Binance Smart Chain. All these people are offering much easier and faster way of developing, minting NFTs and owning digital assets. And then now Polkadot is offering interoperability, speed of execution. Any Tom, Dick, and Harry can simply, with just by scanning a QR code, can own an NFT through this engine framework. So that way, it has now become people have started understanding and started using it more. And then you have people like great guys like Amitabh Bachchan, who have started talking about NFT. Fantastic. If Amitabh Bachchan talks about it, it goes to the entire world, nook and corner. And he's spoken and definitely has minted money as well. Using it in many more ways. Yeah, so people started using it in many more ways. So that is how it is becoming more and more popular. So the innovation is coming in, the way it is being used, how it is being used, and how it is being valued, Sure. and how it is being marketed.
and and that way I would say. Yeah. So over to Varun, the best economic innovation of 2021 according to you? So again, NFTs as such, I think they were already existing, Right. I would say that, the economic value generated by it, I think that's the game changer, right? As Srini sir mentioned rightly, and even Samrat, I think, touched upon it, that, how do you wrap it around with, utility providing benefits, right? So if you look at it, NFT today, is getting traction because I think if I look at it in a way, the ecosystem is developing, right? The ecosystem, because NFT in isolation might not do the trick, right? Because you need a supporting ecosystem. And today, if you look at it, Ethereum is taking the major, chunk of NFT related stuff happening. Without any doubt. They have a lot of mature protocols, but I see a lot of infrastructure tooling and protocols coming up, which are actually now trying to establish themselves in in NFT space. So as I said, once we see a maturity in all these protocols coming in, we will see a lot of enterprise NFT use cases coming in, and I think that will actually address some of the real pressing problems we have in today's world, right? So that's my take on it, right? So once we see the maturity coming in, and we try to address the real problems we have in today's world. So that's a word which is coming from Varun Singhi. Samrat, what's your take on that? How will the segment evolve going forward? Very quickly before we move to the third segment. Sure. I think, so Manoj, very interesting aspect that you've asked me to touch upon. So evolution is purely driven by adoption. That's what I see. It's demand driving supply and supply driving demand. So at times, what I see happening with NFTs is, two things primarily. One, on one side, it is giving rise to new business models like, artists getting paid or funded by fans and sports teams being funded by fans. I recently saw a survey. Our sports team had to take a decision, and they actually opened that decision up to their fans, and the fans started they started voting on that particular decision. The ones who were owning their NFTs could actually vote on that decision. So there were things like these. There are new models of engagement and revenue making which are opening up. On the other side, the cost of distribution has sort of gone down because of NFT. So imagine, now you can actually create music at home in your home studio and still have a fan base and release it to your close group. And you can be an author, you can be actually there are new breed of digital artists coming up who just create art in the metaverse. Perfect. And they start selling that art via NFTs. We'll discuss in detail more about the metaverse in details. So they don't need to go to an art gallery to sell things. They don't need to go to anybody to sell things. They can start selling online directly. So cost of distribution gone down big time. Fantastic piece of word that is coming from Samrat. What's your view, Prasanna? Can you take us through the rising popularity and adoption? Because this is as a universe is working towards it. What's your opinion on that? Yeah, so I think I agree with the Samrat, Srini and Varun. So before going into that next question, so why it is getting more popularized? So I think when you talk about digital assets, and gone were those days, we were only gungo about physical assets. The new generation and the type of the way we are interacting with a lot of digital ways, digital asset is taking a lot of traction. Say example, Mona Lisa painting, right? It's a single painting, but can you not have some copies of Mona Lisa painting? And I can say, exactly, I own that painting, right? So as a digital, and similarly you talk about Yuvraj Singh's 6 sixes, right? It's a moment. I no one can forget that. Yeah, those days I have seen that some of the people, crazy people were buying those cassette CDs of India-Pakistan match, right? So imagine this is a new universe wherein we are taking ownership of those digital medias. And what Samrat said, digital artist. So with the blockchain coming into picture, it's a security which brings, right? So you cannot really say that this particular content which we have created on digital economy is owned by me or owned by somebody. So blockchain gives that security. There is huge potential around this. There is huge popularity. Visa, Budweiser, likewise, there are many Fortune 500 companies are investing into that. On a sports side, NBA's, right? NBA Top Shot is one of those marketplace. The recent example of Staples Stadium. I will not be surprised in India for cricket, similar thing will happen. I think it's a huge game here onwards. That's a big statement, Prasanna. Yeah. I mean, cricket is something which everyone would love to see that. So can you take us through the rising popularity and adoption of NFT? If you can just, you have given many examples, if you can just elaborate more on that for our viewers, because this is the show which we are bringing for our viewers to simplify NFTs and we are making them understand the importance and relevance of NFTs. You have already highlighted that people can make money. How to make money? This is what our main objective is in NFTs rather.
Yeah, so NFT, I mean, there's been exponential growth in funding as well as trading of NFTs. Sure. I think NFT volumes have crossed, I think, almost $20 billion a month. And they are saying it will be about a $15 trillion by 2025. That's the value of the NFT markets, right? So it's going to be exponential growth. And how do you make money? You know, as Samrat has rightly put in, anybody now can become a creator and create something unique and could put it up in a marketplace. All right, Varun, if you can just quickly add to what what's the rising popularity and adoption, so that we can understand the importance and relevance of that. Yeah, sure. I would actually touch back on Samrat's point. I think Samrat made a beautiful point on the co-creation part, right? So when your fans, right, they're not passively consuming content, but they're actually in the process of creating content, right? So Super. that gives them empowerment, right? So they can actually now have more interest and engagement, customer engagement model, right? So that's what I call it, right? So how it helps basically to create the collaborative ownership and drive the content, right? So likewise, if I look at it today, right, you have examples like platforms like LinkedIn, right? I think I believe that in future you might see a LinkedIn of NFTs, right? Where you have your NFTs, where all your work history is documented, right? And employers might ask for you, right? Absolutely. Because today, if you look at it, many people fudge their profiles or their resumes, and there's no proper mechanism to track it, right? So if I may say, LinkedIn of NFTs might be one of the use cases. Finally, again, and a section which I'm bullish on is financialization of NFTs, right? If you look at today, NFTs are not divisible, right? If you talk about NFT fractionalization, like say I can split the dividends, I can split the revenues, you will see an exponential growth of NFTs as financial assets. I think that is where the meat lies. When we talk about financial assets, Really? if I marrying NFTs. Perfect. So very interesting thing, the concept in itself is very interesting. LinkedIn NFTs, Prasanna, you also spoke about cricket. What's your view, Samrat, on this? What are you bringing in? If I were to talk about what I did in the past, I sold 5 NFTs in the beginning of this year. I raised some money because India was badly hit with COVID, and I wanted to donate something, so I did things out of my own pocket, as well as I thought, lovely, super. Why not I just go to OpenSea? I had a coin collection. As a kid, I used to collect coins. So I published 20 of those coins. So 5 got picked up. I had started off with $1,000, for the bid. People started bidding and they went up to 4.5. And then it got sold. So I was happy, when I really saw that money coming in. I did not sell anything in millions. So I was not as happy as people have. That day will definitely come, Samrat. Yeah, I think great. So that was in the past, and currently I'm advising a startup which is creating something which Varun just spoke about, which is partial ownership of NFT royalties. So they are catering to the everlasting demand of artists. Artists are at times they lose credit, at times they are not able to collaborate with other artists because they don't know how to split royalties. Perfect. So I'm advising these Super. startups to create one software where they could just artists could just come and collaborate and split Fantastic. royalties. Even if the artists are gone, their families will keep getting it. All right, so Samrat spoke about royalties, and my next question to you, Prasanna, is, we are talking about this space and it is actually growing day by day. Yes. So why are some NFTs so expensive? Samrat also spoke about, he was unable to sell his NFT in millions, but why are this, $500, $1,000 हम समझ सकते हैं, लेकिन ये तो millions में जा रहा है. Yeah, I think you need to understand power of digital assets here, right? Exactly. Or the whole gamified around digital assets. Say example, I was talking about Mona Lisa painting, right? This is unique. Or you Right. talk about Taj Mahal, or you talk Right. about those moments. Typically, I call those moments as a NFT moments. All right. Say example, Crypto TV. The first video of a Crypto TV. Imagine, right, the traction, and imagine the value of that first video of Crypto TV. Ownership of that after 10 years. Fantastic. Say example, Jack Dorsey, which is a Twitter's ex-CEO, right? He has almost so many millions, right, for a first Twitter tweet. So I think that's the traction, right? People here today are a lot of gung-ho about those digital moments, right? Yuvraj Singh 6 sixes, you talk about my own, right? So I'll not be surprised there will be a marketplace of NFTs where it's called as a human NFTs, right? Human talent NFTs. It will be open for all the human beings. Everybody can be an influencer or artist, and they can
claim their ownership with a blockchain technology in the backend. So I think why popularity is coming, young breed is a more gung ho about digital assets, and they want to really show this is my own, right? So if somebody wants to really claim that particular moment, which is a Mona Lisa's painting or something like Yuvraj Singh 6-6, so that's a wow moment for them. So that is how I'll not be surprised this market will go very high. It was indeed a wonderful panel discussion about non-fungible tokens. Hope to see you soon. Thank you so much, everyone. हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अनसुने, अनकहे, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई डिवाइस या मशीन भी नहीं है। अब नाम में टेक्नोलॉजी है तो जरूर ये कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ही होगा, है ना? सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब एक डिजिटल लेजर है। चाहे गांव का छोटा सा बनिया हो या कोई बड़ा बिलियनेयर, हाउसवाइफ हो या कोई बड़ी हीरोइन, हर कोई अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट हिसाब किताब के लिए जरूर एक लेजर रखता है। पुराने बॉलीवुड फिल्म में आपने जरूर देखा होगा, डकैत बना हीरो काला टीका लगाकर लाला के पास अपनी माँ के गिरवी रखे हुए कंगन छुड़ाने आता है, तो वो लाला के पास सबका लेखा जोखा लिखने वाली जो लाल किताब होती है उसी को खाता बाही यानी कि लेजर कहा जाता है। इसी लेजर को डिजिटली एक मॉडर्न अवतार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम में और जानवर में अगर कोई फर्क है तो वो ये है कि हम लेजर मेंटेन करते हैं, वो नहीं। चाहे व्यापार हो या व्यवहार, बिना रिकॉर्ड के कुछ काम नहीं होता। दो लोगों ने एक दूसरे को पैसे दिए हो, जमीन बेची हो या फिर 7 जन्म की सबसे बड़ी दुश्मनी का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शादी हो, इस सब को वेरीफाई करने हम इंडिपेंडेंट और विश्वसनीय थर्ड पार्टी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस का स्टैंप और सिग्नेचर लगाने वाले के पास जाते हैं ना। लेकिन फिर भी कई बार फ्रॉड होता है। लैंड के डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर सालों कोर्ट में केस चलते रहते हैं। करप्शन, फ्रॉड और स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। कंप्यूटर और इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल है जहां कोई किसी को कभी धोखा ना दे पाए। मतलब लेजर के मामले में कलयुग के धोखाधड़ी वाले टाइम में सतयुग वाली ऑनेस्टी कैसे मिलेगी? इसी पहेली का हल सबसे पहले मिस्टर डेविड शॉम ने 1982 में ढूंढ निकाला। उन्होंने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने वाली एक सिस्टम बनाई। उसके बाद 1992 में स्टुअर्ट हेबर और स्कॉट स्टोरनेटा ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि हर ट्रांजैक्शन पर टाइम और डेट का थप्पा लग जाए, ताकि कोई तिकड़मबाज चाहकर भी रिकॉर्ड्स में अपनी धोखाधड़ी की कलाकारी ना दिखा सके। बाद में इन्हीं दोनों ने डेविड बेयर के साथ मिलकर 1992 में मर्कल ट्री का यूज करके टैम्पर प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की सिस्टम बनाई। उसके बाद हैल फिनी ने 2004 में रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क RPOW की सिस्टम बनाई। कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर टाइम के साथ साथ नए नए लोग इसमें जुड़ते गए, जैसे निक ज़ोबोनी का बिटगोल्ड और वे डाल की बी मनी। पर बोले तो ये सारे सिस्टम्स के पास डबल स्पेंडिंग के प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अब डबल स्पेंडिंग बोले तो डिजिटल कॉइन्स की कॉपी 24/7 बनती ही रहती है और उसको जितनी बार यूज करना चाहो उतनी बार कर सकते हैं। अब ज्यादा सोचिए मत, आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाते हैं।
रिजर्व बैंक की जगह हर कोई अगर घर घर में 500 और 2000 के नोट छापने लग जाए तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिजिटली स्पीकिंग, इन अ वे ये कुछ इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइनली 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नाम का एक 9 पन्नों का डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने चॉम से जालसाजी से सुरक्षित करने वाला सिस्टम, स्टोरनेटा हेबर से टाइम स्टैंपिंग वाला सिस्टम, स्टोरनेटा हेबर बेयर का मर्कल ट्री वाला सिस्टम और फिनेकी आरपीओ वाले सिस्टम को मिलाकर एक ऐसा धांसू और टनाटन सिस्टम बनाया जिससे दुनिया भर में लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानने लगे। बेसिकली जब हम लोग मिक्स वेज की सब्जी बनाते हैं तो दुनिया भर की सब्जी उसमें डालकर चट्टाकेदार डिश बनाते हैं ना, वैसे ही नाकामोटो ने भी सारी पुरानी सिस्टम्स को मिलाकर अपना तड़का डालकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना डाला और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने बोला चिंगा लाला। अब आप पूछेंगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही मायने में कैसे काम आती है? बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा हैक प्रूफ, फ्रॉड प्रूफ और सिक्योर सिस्टम है जिसमें ना तिकड़मबाजी चलती है ना कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट। अब किसको चाहिए कबाब में हड्डी? ब्लॉकचेन ने बोला निकालो इसे। जिस काम को पहले राजा महाराजा और उसके बाद सरकारी कर्मचारी ठप्पा लगाकर करते थे, वही काम आज क्रिप्टोग्राफी नाम के टेक्नोलॉजी से फटाफट हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सब के रिकॉर्ड रखने का खर्चा इतना बढ़ गया था कि मत पूछो। ऊपर से वो रिकॉर्ड टैम्पर प्रूफ भी नहीं था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये कॉस्ट बहुत ही कम हो गया क्योंकि इसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड खुद ही रख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खासियत यही है कि कोई भी माई का लाल कितना भी चाहे इसको हैक या टैम्परिंग नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इतना ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ एक्सेस है कि भैया आजकल हर कोई एफिशिएंट तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको शुरू में ही क्लियर करना चाहती हूँ कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन इस टेक्नोलॉजी से बना हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ब्लॉकचेन अगर पेड़ है तो बिटकॉइन उसका पहला फल है। दोस्तों आपको जानकर झटका लगेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बर्थ सर्टिफिकेट में उसके पापा के नाम के आगे सातोशी नाकामोटो नहीं बल्कि स्कॉट स्टोरनेटा का नाम लिखा जाता है। जैसे इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो टेक्नो रेवोल्यूशन आया था, उससे भी बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन की वजह से आने वाला है। तो जैसे प्लेन में बैठने पर कहते हैं ना, कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तेज गति से हम सब की लाइफ बदलने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ब्लॉकचेन की ABCD? ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल क्रिप्टो टीवी और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता। आज के लिए आपको कहना चाहती हूँ टाटा बाय बाय सायोनारा, क्योंकि मैं तो चली ब्लॉकचेन की प्लेन में उड़ान भरने। आप चल रहे हो क्या? चलना है तो आ जाइए मेरे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। કેમ છો? મસ્ત મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી AKA પારો. દેવા. જેમ ગોલ્ડ પછી ચાંદીનું નામ આવે તેમ ડિજિટલ ગોલ્ડ એટલે બિટકોઇન પછી ડિજિટલ સિલ્વર એટલે ઇથિરિયમનું નામ આવે. આજે આપણે ઇથિરિયમ શું છે, કોણ બનાવ્યું, શોર્ટ ટાઈમમાં આટલું ફેમસ કેમ થયું, આ બધું આજે એઝ ઓલવેઝ ફન વેમાં લર્ન કરશું. इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर,
इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर. 1991 ફિલ્મ સોદાગરમાં બોલિવૂડના બે શેર ધ લેજેન્ડ્સ રાજકુમાર અને દિલીપ કુમારે લાસ્ટ ટાઈમ સ્ક્રીન શેર કરી હતી. બોલિવૂડની જેમ ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં પણ બે શેર રાજ કરે છે. ઇમલી કા બૂટા બેરી કા પેડ. આ લિરિક્સથી સમજીએ તો ઇમલી એટલે ઇથિરિયમ અને બેરી એટલે બિટકોઇન. આજે આપણે ઇથિરિયમ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ઇથિરિયમ એટલે શું? ઇથિરિયમ વર્લ્ડની સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ક્રિપ્ટોકરન્સી છે, જેને ઈથર, ETH ઓર ઇથિરિયમ પણ કહેવાય છે. શું તમને ખબર છે 2015માં લોન્ચ થવાથી આજ દિવસ સુધીમાં ઇથિરિયમની પ્રાઇસ એપ્રોક્સિમેટલી 36,000% વધી છે. સ્ટોક માર્કેટમાં આપણે સ્ટોક 20 થી 30% વધે તો આપણે ફોર્મમાં આવી જઈએ. જસ્ટ ઇમેજિન 36,000% નું રિટર્ન એટલે કેટલું થાય બોસ? મગજ ફરી ગયું ને? મારો પણ. એમ થાય છે કે હમણાં જે ઇથિરિયમમાં ઇન્વેસ્ટ કરી લઈએ, હે ના? રૂકો જરા, વેટ કરો. પહેલા ઇથિરિયમને પૂરી રીતે સમજી લો. ઇથિરિયમ ફક્ત એક ક્રિપ્ટોકરન્સી નથી. ના 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 રે ના રે ના રે ના 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 રે ના રે ના. इथेरियम ना रहोगे ते ऐसे करोगे, ब्लॉकचेन के सारे मजे कैसे करोगे. इथेरियम है इथेरियम है. ઇથિરિયમ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ એપ્લિકેશન માટેનું ગ્લોબલ ઓપન સોર્સ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ છે. કઈ ટપ્પો ન પડ્યું? ડોન્ટ વરી, હું સિમ્પ્લિફાય કરું છું. સિમ્પલી પુટ, હિસાબ કિતાબની શેર ડિજિટલ લેજર એટલે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી. આ લેજરમાં ઈચ ન્યૂ ડેટા બ્લોકના ફોર્મમાં એડ થતો જાય છે. આવા બ્લોક્સથી બનતા ડેટા ચેનને બ્લોકચેન કહેવાય છે. ઇથિરિયમ વન ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ પ્રોગ્રામેબલ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ છે. સિંઘમમાં અજય દેવગન કહે છે ના, જિસમે હૈ દમ વો હૈ ફક્ત બાજીરાવ સિંઘમ. ઇથિરિયમ પ્લેટફોર્મમાં પણ બહુ જ દમ છે. આ ફક્ત ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ સ્ટોર કરવાની ડિજિટલ લેજર નથી. ઇથિરિયમનું વિઝન એક ન્યૂ ઇન્ટરનેટ ક્રિએટ કરવાનું છે, જ્યાં કોઈ ટેક જાયન્ટ કે ગવર્મેન્ટ એજન્સીને દાદાગીરી નહીં ચાલે. તમારા પ્રાઇવેટ ડેટાને સલમાનના બિગ બોસની જેમ કોઈ જોઈ ન શકે. આટલું જ નહીં, ઇથિરિયમ પર ગેમિંગ, એન્ટરટેનમેન્ટ, બ્રાઉઝિંગ, ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફાઇનાન્સ અને બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એપ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, જેને ડી એપ્સ કહેવામાં આવે છે. ઇથિરિયમ યુઝર્સ ડી એપ યુઝ કરવા માટે ફીસ ભરે છે. આ ફીસને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં ગેસ કહેવામાં આવે છે. શું તમને ખબર છે વર્લ્ડના 93% ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફાઇનાન્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઇથિરિયમ પર કરવામાં આવે છે. શોર્ટ ટાઈમમાં ઇથિરિયમને ફેમસ થવાનું કારણ છે સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ એટલે થર્ડ પાર્ટી વગેર કમ્પ્યુટર કોડથી થતો બે પાર્ટી વચ્ચેનું અગ્રીમેન્ટ. મિયા બીવી રાજી તો ક્યાં કરેગા કાઝી. ઇથિરિયમ બ્લોકચેન પર સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સનો સૌથી મોટો ફાયદો, અહીંયા ક્રિપ્ટોગ્રાફીના કારણે ફ્રોડના જરા પણ ચાન્સ નથી. પ્લસ તમારે વચ્ચે કોઈ થર્ડ પાર્ટી ના રાખવી પડે. ઊંધિયાથી લઈને અંડર વોટર સબમરીન સુધી તમારા કંઈ પણ સેફટી ટ્રેડ કરવું હોય તો સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ હે ના. શું તમને ખબર છે ઇથિરિયમના ક્રિએટર વર્લ્ડના વન ઓફ ધ યંગેસ્ટ ક્રિપ્ટો બિલિયનર છે. અત્યારે એમની એજ ઓનલી 27 યર્સ છે. તેમનું નામ છે વિતાલિક બુટરીન. આ રશિયામાં પેદા થયા અને કેનેડામાં મોટા થયા. એમની એક વાત પર તો તમને સલામ કરવાનું મન થશે. 2021માં વિતાલિક ભાઈએ ઇન્ડિયન કોવિડ રિલીફ ફંડને લાખો નહીં, કરોડો નહીં, ખરબો રૂપિયા ડોનેટ કર્યા હતા. $1.14 બિલિયન ટુ બી એક્ઝેક્ટ. સલામ છે બોસ. જેમ સુપરસ્ટાર એન્ડ આર થલાઈવા રજનીકાંતની રોબોટ ફિલ્મ પછી અક્ષય કુમાર સાથે રોબોટ 2.0 ફિલ્મ આવી, તેમ ઇથિરિયમ 2.0 પણ બહુ જલ્દી લોન્ચ થવાનું છે. ઇથિરિયમ 2.0 નું બીજું નામ છે સેરેનિટી. કોઈ પણ બ્લોકચેનને 3 ફેક્ટર્સ પર ઇવેલ્યુએટ કરવામાં આવે છે: સ્કેલિંગ, સિક્યોરિટી એન્ડ ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન. સ્કેલિંગ એટલે
પર સેકન્ડ કેટલા મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવે છે. સિક્યોરિટી એટલે આ હેકિંગ અને ફ્રોડથી કેટલું સિક્યોર છે, અને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એટલે કે આને કોઈ એક કંપની, ગવર્મેન્ટ કે વ્યક્તિ ઓન નથી કરતું. ઇથેરિયમમાં કરન્ટલી સ્કેલિંગનો ઇશ્યુ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વિઝા પર સેકન્ડ 1700 ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરે છે. વિઝાની સ્કેલિંગ થઈ 1700 TPS, જ્યારે ઇથેરિયમ કરન્ટલી ઓનલી 15 TPS એટલે કે 15 ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર સેકન્ડ હેન્ડલ કરે છે. ફિકર નોટ, 2022માં જે ઇથેરિયમ 2.0 આવે છે ના, તે પર સેકન્ડ 15,000 ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરશે. બાબા રે, ક્યાં 15 TPS થી 15,000 TPS પર પહોંચી ગયા? ગજબ છે ના બોસ. એક વાત તો નક્કી છે, 2022માં ઇથેરિયમ પ્લેટફોર્મ તો ફૂલ સ્પીડમાં ભાગવાનું છે અને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં કંઈ એક તૂફાની કરવાનું છે. બસ આજે અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. ક્રિપ્ટો વર્લ્ડથી અપ ટુ ડેટ રાખવાની પ્રોમિસ સાથે હું પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો તમારી રજા લઉં છું. ફરી મળશું ક્રિપ્ટો વર્લ્ડના એક્સાઇટિંગ ફેક્ટ્સ સાથે. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. એન્ડ કીપ વોચિંગ ક્રિપ્ટો TV. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma and today we are going to talk about consensus algorithm. Consensus is key to the decentralized participation in the distributed ledger environment. The participants should arrive at a consensus about what is good and should be included and what is bad should be excluded. It is important for the entire community to function in an orderly fashion and realize the purpose of the collaboration. Without consensus, there will be chaos. Chaos would be detrimental to the sustainability of the system. In the blockchain ecosystem, a consensus algorithm is a defined programmed procedure. It is a set of rules which defines how the peer participants of the peer-to-peer network conduct themselves in the environment. These rules will help the participant decide on which of the transactions are to be accepted to be included in the immutable digital ledger and which ones are not to be. Why is a consensus algorithm needed? The peers in the network will never know each other. The problem, therefore, is how to establish trust among the participants without disclosing their identities. In order to achieve that, the activities allowed to one needs to be restricted and strictly defined. So once you know that the other participant can't really misbehave, you can participate in the network with trust and together can achieve reliability. This will help a larger participation and will in turn lend security to the entire process. The consensus algorithm has 5 objectives in the DLT environment. First of those objectives is that it wants to achieve unified agreement among participants. In centralized systems, trusting the central authority is mandatory. Here, the participants need to trust the system, and they need to do this without having to establish trust among each other. Only then this environment can achieve unified agreement. Secondly, the network participants should be motivated to achieve common alignment of all their economic incentives. This is a must to develop a self-regulating system which can be entrusted. Thirdly, the system should not allow anyone to cheat. It must prevent double spending. Fourthly, the system is supposed to be fault tolerant. So much so that if a section of the network fails to perform at any point of time, the rest of the network should be able to continue business seamlessly and keep providing consistent and reliable results. Last but not the least,
The consensus algorithm must be designed in a way that ensures equality among all participants so that no one can take any unfair advantage from the system. Safety first. The algorithm are capable of generating valid results and does not entertain false attempts. It should be participatory, without any discrimination towards any participant, and should allow and incentivize participation. Egalitarian. It must treat every participant as an equal member of the whole community. A faulty consensus algorithm will split the decision of the community and may even result in the duplication of the records, creating conflicting transaction history and failing to perform as a single source of truth. This results from failure of the community to arrive at a consensus. Subsequently, this will make some nodes or participants confused about the right course of action and result in malfunction. A section of the community could get conflicted and will increase the latency in internodal communication, dispute resolution, increasing the application latency and reducing the network efficiency. In other terms, it will make the objectives of the blockchain project fail. Consensus algorithms are commonly termed as proof of something. The most popular one is the first one used by Bitcoin blockchain, proof of work. Others are proof of stake, proof of authority, proof of history, proof of activity, proof of identity, proof of burn, proof of elapsed time, proof of importance, and many such. Some are also known differently as delegated proof of stake, least proof of stake. Some have uncommon names like Byzantine fault tolerance, direct acrylic graph, Tendermint, Ouroboros, and some even call themselves Grandpa. Grandpa may sound funny, but it's actually an acronym for ghost-based recursive ancestor deriving prefix agreement. Thank you. We will keep coming back with more interesting stories. I'm Ruchi Sharma. Have a great day. રઈસમાં શાહરુખ ખાનનો ડાયલોગ છે ને, અંબીજાન કહેતી હતી કે કોઈ ધંધો નાનો નથી હોતો અને ધંધાથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી હોતો. મને લાગે છે અમુક લોકોએ આ ડાયલોગ દિલ ઉપર લઈ લીધું છે અને ક્રેઝી આઈડિયાઝ વાલી એનએફટીનો ધંધો ચાલુ કરી દીધું છે. હેલો, કેમ છો? મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો દેવા. અને આજે આપણે વિચિત્ર, અદ્ભુત, ઉટપટાંગ અને એબ્સોલ્યુટલી વિયર્ડ અને ક્રેઝી NFTs એટલે કે એવા નોન ફંજીબલ ટોકન્સ વિશે વાત કરશું જેને સાંભળવાથી તમે હસી હસીને લોટપોટ પણ થઈ જશો અને એકવાર જરૂર વિચારશો કે બોસ, આવી ક્રેઝી NFT જો માર્કેટમાં વેચાઈ જતી હોય તો હું પણ આવી એક NFT ક્રિએટ કેમ ના કરું. સો મારી ટોપ 3 ક્રેઝી NFT લિસ્ટમાં નંબર 1 છે ડિજિટલ ટોયલેટ પેપર રોલ NFT. યસ, તમે બરાબર સાંભળ્યું. ટોયલેટ પેપર રોલની NFT માર્કેટમાં આવી ગઈ છે. એ જે ટોયલેટ પેપર જેના માટે ડ્યુરિંગ લોકડાઉન ફોરેનની લેડીઝ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાં WWFની ફાઇટર્સની જેમ ઝઘડી પડી હતી. એનીવેઝ, તમે આજ દિવસ સુધીમાં કેટલું કોસ્ટલી ટોયલેટ પેપર લીધું હશે? 100, 200, 500, રાઈટ? પણ હું તમને એમ કહું કે
આવા લોકો પણ છે દુનિયામાં જેને $4100 એક ટોયલેટ પેપર રોલની NFT ખરીદી છે. તો મગજ ફરી ગયો ને? ફરી જ જાય યાર. કોઈ 3,15,000 રૂપિયાની ટોયલેટ પેપર રોલની NFT માં નાખતા હોય? આટલી કિંમતમાં તો સોનાના ટોયલેટ પેપર પણ બની જાય, રાઈટ? એનીવેઝ, આવી વિચિત્ર NFT યુએસએની એક ટોયલેટ પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની ચાર્મીને માર્ચ 2021માં બનાવી છે. આ ટોયલેટ પેપર રોલ NFTની ખાસ વાત એ છે કે એની ઉપર ફ્લાવર્સ એટલે કે ફૂલ બનાવવામાં આવ્યા છે. NFT એટલે કે ડિજિટલ વસ્તુ. તેમાં શું ખુશ્બુ અને શું અહેસાસ, બધું ઇમેજિન આપણે જ કરવાનું ને. ઉપરથી 3,15,000 દેવાના. આવી ડીલમાં આપણે ગુજરાતીઓ ક્યારે ના પડે. પણ છે અમુક બુરિયા જેને આવી NFT ખરીદી છે. પણ આની પાછળ એક નોબલ રીઝન પણ છે. ચાર્મિન કંપની ઈચ NFTની સેલમાંથી ફક્ત 0.1% પ્રોફિટ જ પોતાની પાસ રાખે છે અને બાકી 99.99% ઓફ પ્રોફિટ ડાયરેક્ટ રિલીફ નામની હ્યુમેનિટેરિયન ચેરિટી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ડોનેટ કરી દે છે. એન્ડ રિઝલ્ટ તો સારું છે, પણ બોસ ચેરિટી કરવાનો આ જરા અતરંગી રસ્તો છે, નહીં? તો આ કંઈ નથી. નેક્સ્ટ વિયર્ડ NFT નો ક્રિએટર તો કંઈ અલગ જ લેવલનો છે. આ NFT નું નામ છે સ્લોમ્સ, કાર ડેટોનેટેડ લેમ્બોર્ગિની હરિકેન NFT. આ NFT વિશે સાંભળીને તો કાર સ્ટન્ટ્સના માસ્ટર એવા ઇન્ડિયન ફિલ્મ ડાયરેક્ટર મિસ્ટર રોહિત શેટ્ટીને પણ પસીનો આવી જશે. સ્લોમ્સ નામની એક NFT આર્ટિસ્ટે ક્રિપ્ટો કલ્ચરમાં ગ્રીડ એટલે કે લાલચના અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેસ્ટ કરવા અતરંગી NFT બનાવવાનો ખુરાફાતી આઈડિયા અપનાવ્યો. તેમને $2 થી $3 લાખ એટલે કે અંદાજે 1.5 થી $2.25 કરોડ રૂપિયાની લેમ્બોર્ગિની હરિકેન કારને સેકન્ડ હેન્ડ મેં ખરીદી. પછી 100 લોકોની મદદથી તે કારને એક્સપ્લોસિવ્સ એટલે કે બારૂદ ગોલા સાથે ફિટ કરી અને અમેરિકાના એક અનડિસ્ક્લોઝ ડેઝર્ટ લોકેશનમાં 2 ફેબ્રુઆરી 2022ના દિવસે બ્લાસ્ટ કરી અને તેનું એક વિડીયો બનાવ્યો. એક્ઝેક્ટલી ક્રેઝી, રાઈટ? આ બ્લાસ્ટનો ધુવાડો એ પણ કરોડોનો હશે. તમને થશે કે આને લાખના 12,000 કર્યા, પણ નહીં. આ આર્ટિસ્ટનો આઈડિયા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ એટલે કે બ્લાસ્ટ થયેલા ભંગારમાંથી કરોડો રૂપિયા કમાવાનો છે. સ્લોમ્સ આ બ્લાસ્ટ થયેલા લેમ્બોર્ગિનીના 999 એટલે કે 999 પીસીસની NFTને તેના બ્લાસ્ટ કરેલા વિડીયો સાથે સેલ કરીને ઓવર $1 મિલિયન એટલે કે 7,65 લાખ રૂપિયા કમાશે. થયો ને અતરંગી પણ ફાયદાનો સોદો? તમે ક્યાંક આ જોઈને પોતાની નવી કાર બ્લાઝ નહીં કરતા. આવો એક્સેપ્શન દુનિયામાં એક જ થાય. આપણે કરવા જશું ને તો કાર અને પૈસા બોથ વેસ્ટ અને પોલીસ ઉપાડીને લઈ જાય એ અલગ પ્રોબ્લેમ. સો નેવર ટ્રાય ધીસ એટ હોમ ઓર એનીવેર એલ્સ, ઓકે? થર્ડ ક્રેઝી અને વિયર્ડ NFT નું નામ છે સેલ યોર સોલ NFT. Yes, that's why I called it weird. રિસેન્ટલી 21 વર્ષના સ્ટીજન વાનશેક નામના ડચ સ્ટુડન્ટને NFT નો ક્રેઝ એટલો ચડ્યો કે એ ભાઈ પોલિગોન ઉપર પોતાની સોલ એટલે કે આત્માની NFT મિન્ટ કરી નાખી અને વર્લ્ડના બિગેસ્ટ NFT માર્કેટ પ્લેસ OpenSea ઉપર પોતાના સોલની NFT લિસ્ટ પણ કરી દીધી. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એક બાયરે આ ભાઈની સોલને €300 એટલે કે અંદાજન 25,000 રૂપિયામાં ખરીદી પણ લીધી છે. ડચ સ્ટુડન્ટની સોલે વર્લ્ડની ફર્સ્ટ હ્યુમન સોલ છે જેને એઝ અ NFT સેલ કરવામાં આવી છે.
એટલે જ તો એક રિસેન્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં મિસ્ટર સ્ટીજન વાનશેકે કહ્યું કે હવે તેની સોલની માર્કેટ વેલ્યુ ક્લોઝ ટુ $3.5 મિલિયન એટલે કે 27 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. હવે આ ભાઈને પોતાની સોલની આવી ક્રેઝી વેલ્યુએશન ઉપર કઈ રીતે આવ્યું એ જવાબ કોઈને પાસે નથી. એનીવેઝ, આ NFT સાથે ડચ સ્ટુડન્ટે સેલ ઓફ સોલ એગ્રીમેન્ટ પણ અટેચ કર્યો છે, જેમાં ઓનર આ સોલને કઈ રીતે યુઝ કરી શકે, રીસેલ કરી શકે અથવા તો કોઈ ડેટીને સેક્રિફાઈસ એટલે કે બલિ પણ ચઢાવી શકે કે નહીં, આવી બધી ડિટેલ્સ તેમાં લખી છે. જો તમારે સેલ ઓફ સોલ્ડ એગ્રીમેન્ટની ડિટેલ વાંચવી હોય તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. કરો તમે તમારા ટાઈમ પાસ. વેલ, આજના વિયર્ડ અને ક્રેઝી એનએફટીના એપિસોડને અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. પણ એક વાત તો શ્યોર છે બોસ, સક્સેસનો પેડો ખાવા માટે દુનિયા માટે થોડું એડું બનવું પડે તો એમાં કોઈ વાંધો નહીં. એલોન મસ્કને બધા ક્રેઝી જ કહેતા હતા જ્યારે તેને ઇલેક્ટ્રિક કાર અને રીયુઝેબલ રોકેટના કોન્સેપ્ટ્સને દુનિયા સામે પહેલીવાર મૂક્યા હતા. આજે એ વર્લ્ડનો રિચેસ્ટ મેન છે. સો સ્ટે હંગ્રી એન્ડ સ્ટે લિટલ ક્રેઝી ફોર સક્સેસ. અને આ મંત્ર સાથે હું તમારી ક્રિપ્ટો હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો તમારી રજા લઉં છું. આવી વિયર્ડ, એક્સાઇટિંગ અને ક્રેઝી સ્ટોરી સાથે આપણે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. મસ્ત રહો અને જોતા રહો ક્રિપ્ટો ટીવી. क्रिप्टो की किटी पार्टी में you're most welcome. And now you must be wondering कि यशी हम सब तो यहाँ हैं पर लेडीज कहाँ हैं? अरे पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ और क्रिप्टो क्वीन से जो कि आपकी हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो इन अ बेटर वे, राइट? इंट्रोड्यूसिंग कैथरीना फरेरा. इन्होंने 2017 में ब्लॉकचेन लेडीज नाम की इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्थापित किया था, जिसका लक्ष्य दुनिया भर की क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व लेडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट में लाना और सपोर्ट करना है. दिस क्रिप्टो क्वीन वेयर्स मेनी हैट्स, बाय द वे. ये ब्लॉकचेन बिजनेस कंसल्टेंट हैं, एक्सपीरियंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, डिजिटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, टेक स्टार्टअप में मेंटोर हैं. इतना ही नहीं, एक राइटर और एक कीनोट स्पीकर भी है. लड़की एक है, रूप अनेक है, और ये सब कुछ इन्होंने घर के चूल्हे चौके के साथ में ही अचीव किया है. सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे कहे कि आप लोग घर में क्या काम करती हो तो फट से कैथरीना फरेरा का नाम उनको बता देना और एग्जाम्पल दे देना. हाँ, कोई डाउट मत रखना. ब्लॉकचेन लेडीज के थ्रू ये क्रिप्टो एंड टेक सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को एनकरेज करती हैं. इसके अलावा कैथरीना फरेरा ने न्यूरेलिया नाम का ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, विच इज मोस्टली रन बाय वुमनिया. गेट इट? चलिए, क्रिप्टो स्पेस में एंट्री करने की इंस्पिरेशन तो मिल गई, ब्लॉकचेन लेडीज से दूसरी क्रिप्टो वुमेन भी मिल गई, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या लगता है? रोकड़ा, पैसा, कैश, नकद, ये कहाँ से लाओगे? तो फिकर नॉट, इस कैश फ्लो की समस्या का हल मैंने ढूंढ निकाला है. नेक्स्ट क्रिप्टो क्वीन जो है वो हमारे देश की है, भले ही विदेश में रहती हूँ. इनका नाम है मानसी वोरा. वैसे ये जो क्रिप्टो क्वीन है ना, वो कॉमोरेबी कलेक्टिव नाम के डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की को-फाउंडर है, जिसे मई 2021 में एस्टैब्लिश किया गया था. ये वर्ल्ड का पहला इन्वेस्टमेंट डाओ है जिसका कंप्लीट फोकस फीमेल और नॉन बाइनरी क्रिप्टो फाउंडर्स को फंड करना है. डाओ मींस कंप्यूटर कोड्स के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता एक ऐसा संगठन है जिसे कोई एक बंदा या फिर बंदी नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी रन करती है. मतलब जौनपुर से लेकर के सिंगापुर तक, इंडियन हो या फिर फॉरेनर,
दुनिया की किसी भी कुड़ी को अगर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की स्पेस में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में तहलका मचाने के लिए फंड्स चाहिए तो उन्हें कोमोरेबी कलेक्टिव को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये वुमनिया का इनिशिएटिव बाय द वुमनिया एंड फॉर द वुमनिया है। इतना ही नहीं, यूएस की इस देसी छोरी ने विमेन इन ब्लॉकचेन नाम का एक एनजीओ भी स्टार्ट किया है, जहां औरतें एक दूसरे को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में एजुकेट करते हुए इंस्पायर, कोलैबोरेट और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज भी करती हैं। बेसिकली मेल पॉपुलेटेड क्रिप्टो स्पेस की डिसीजन मेकिंग में वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ने की जबरदस्त पहल की है मानसी वोरा ने। ये थी अकॉर्डिंग टू मी 2021 की टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस की लिस्ट। वैसे तो आज के ग्लोबल माहौल में दुनिया में किसी भी देश की लेडी की जीत पूरी विमेन कम्युनिटी की जीत होती है। बट बिफोर एवरीथिंग, आई एम एन इंडियन टू द कोर यार। तो अंदर से यही मन करता है कि अगली बार जब मैं आपके लिए ये सेगमेंट को प्रेजेंट करूं तो अपनी मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए, है ना? और इंडियन कुड़ीज जो हैं वो धूम मचाते हुए नजर आनी चाहिए। ओलंपिक्स तो हर 4 साल में होते हैं, राइट? और जब भी कोई इंडियन गोल्ड मेडल जीत करके आता है तो कैसे कलेजे को ठंड पड़ जाती है ना? 2021 की ये स्पेशल लिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। 2022 की वुमनियास जो हैं वो अभी मेरा इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए वॉच आउट दिस स्पेस फॉर मोर। दिस इज मी यशस्वी आचार्य साइनिंग ऑफ। Thank you for watching Crypto TV and do not forget to like, subscribe and hit the bell icon if you really want to know what's going on in the world of crypto. Ta-da! वेलकम। मैं हूं रुचि शर्मा, जो आपको क्रिप्टो की दुनिया के कई टॉपिक्स को डिटेल में समझाती है, लेकिन सिंप्लीफाइड तरीके से। तो लास्ट सेगमेंट में हमने जाना कि क्रिप्टो एसेट्स क्या हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं और उनके फायदे क्या हैं। तो चलिए क्रिप्टो की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि क्रिप्टो एसेट मार्केट में मेन एक्टर्स कौन होते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टर्स। क्रिप्टो एसेट की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर है इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जो अलग अलग तरह के क्रिप्टो एसेट में पैसा लगाते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो ओनर्स इंडिया में हैं, यानी कि 10.07 करोड़, और इन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की एवरेज एज है 24 साल। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्रिप्टो एसेट की मार्केट में जो दूसरे मेन एक्टर्स हैं वो हैं ब्रोकर और एडवाइजर। स्टॉक मार्केट की तरह यहाँ भी ब्रोकर्स और एडवाइजर्स ट्रेडर्स को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं। पॉइंट नंबर 3, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एक्सचेंजेस। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और एक्सचेंजेस पर होती है मैक्सिमम डीलिंग ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। वर्ल्ड की टॉप 5 एक्सचेंजेस है बाइनेंस, कॉइनबेस एक्सचेंज, FTX, क्रैकन और क्यूकॉइन, और इंडिया में वजीर एक्स, कॉइन स्विच कुबेर एटसेट्रा टॉप एक्सचेंजेस में गिनी जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, वॉलेट प्रोवाइडर्स। आप तो जानते ही हैं क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में स्टोर की जाती है, हॉट वॉलेट या कोल्ड वॉलेट। ग्लोबली बहुत सारे वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि कॉइनबेस वॉलेट बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रम बेस्ट फॉर बिटकॉइन, माइसीलियम बेस्ट फॉर मोबाइल, लेजर नैनो एक्स बेस्ट ऑफलाइन क्रिप्टो वॉलेट और एक्सोडस बेस्ट फॉर डेस्कटॉप। पॉइंट नंबर 5, पेमेंट एंड मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्रिप्टो एसेट की बहुत सारी ट्रांजैक्शन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड के थ्रू भी होती हैं। इनफैक्ट मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडर का भी अच्छा खासा रोल है क्रिप्टो एसेट डीलिंग में, जैसे कि कॉइनबेस, शॉपिफाई और वूकॉमर्स के साथ इंटीग्रेट करता है बिटपे, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी पेमेंट गेटवे है, और इस पर बहुत सारे वर्सेटाइल पेमेंट ऑप्शंस भी हैं। इसी तरह कॉइनगेट कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ इंटीग्रेट करता है। पॉइंट नंबर 6, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। क्रिप्टो एसेट मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की भी अहम भूमिका होती है। हायर लिक्विडिटी का मतलब है प्राइसेस स्टेबल रहेंगे और ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे।
जितनी भी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वही खुद सबसे बड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। स्पेशली बिटकॉइन के लिए OKEX, Kraken, Bitfinex एक्सेट्रा कुछ बड़े नामों में से एक है। पॉइंट नंबर 7, माइनर्स और वैलिडेटर्स। क्रिप्टो एसेट मार्केट में होने वाली सभी ट्रांजैक्शंस को माइनर्स या वैलिडेटर्स अप्रूव करते हैं। माइनर्स प्रूफ ऑफ वर्क फॉलो करते हैं और वैलिडेटर्स प्रूफ ऑफ स्टेक को। हो सकता है अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि क्रिप्टो एसेट की ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होता है इसमें। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देते हैं। क्रिप्टो एसेट की ट्रांजैक्शंस में 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूजर्स। वो लोग या लीगल एंटिटीज होती हैं जो क्रिप्टो एसेट के जरिए पीयर टू पीयर पेमेंट्स करते हैं या फिर गुड्स एंड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स की परचेज या सेल करते हैं। पॉइंट नंबर 2, माइनर्स। ब्लॉकचेन पर होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू वैलिडेट करते हैं माइनर्स। इसके लिए माइनर्स कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल होता है। इस काम के बदले माइनर्स को अक्सर डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एसेट में कॉम्पनसेट भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, क्रिप्टो एसेट एक्सचेंजेस। क्रिप्टो एसेट एक्सचेंजेस के जरिए यूजर्स अपने क्रिप्टो एसेट को फिएट करेंसी के बदले या फिर दूसरे क्रिप्टो एसेट के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं। इस सर्विस के लिए क्रिप्टो एसेट एक्सचेंजेस फी चार्ज करती हैं। ये एक्सचेंजेस किसी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ अफिलिएटेड हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं या फिर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटफिनिक्स और क्रैकन। पॉइंट नंबर 4, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। क्रिप्टो एसेट एक्सचेंजेस के अलावा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करते हैं, जो ऐसी मार्केट प्लेसेस की तरह काम करते हैं जो अलग अलग यूजर्स को कनेक्ट करते हैं। एक्सचेंजेस की तरह ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो एसेट को परचेज या सेल नहीं करते, सिर्फ उनसे जुड़ी ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, वॉलेट प्रोवाइडर्स। वॉलेट प्रोवाइडर्स यूजर्स को ऐसे वॉलेट्स प्रोवाइड करते हैं जो क्रिप्टो एसेट की होल्डिंग, स्टोरेज और ट्रांसफर में हेल्प करें। ये वॉलेट्स यूजर की प्राइवेट कीज होल्ड करते हैं और यूजर्स को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर मौजूद पब्लिक की के जरिए क्रिप्टो एसेट में ट्रांजैक्ट करने में मदद करते हैं। वॉलेट प्रोवाइडर्स यूजर्स की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऐसे मेंटेन करते हैं जिससे वो रीडेबल हो ताकि ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी बनी रहे। वॉलेट प्रोवाइडर्स भी 2 तरह के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वॉलेट प्रोवाइडर्स। वॉलेट्स को स्टोर करने के भी 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन यानी हॉट वॉलेट या ऑफलाइन मतलब कोल्ड स्टोरेज। कभी कभी एक्सचेंजेस यूजर्स की क्रिप्टोग्राफिक की को सेफगार्ड करके कस्टोडियन वॉलेट प्रोवाइडर का फायदा भी पहुंचाते हैं। क्रिप्टो एसेट की इस क्लास में फिलहाल इतना ही। होप क्रिप्टो एसेट को लेकर आपके मन में सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। I will be back with yet another topic. This is me, Ruchi, signing off. Keep watching Crypto TV. फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पैम, कुछ ऐसे ही शब्दों में फंस गई है एनएफटी की दुनिया, जिन्होंने अब एनएफटीज की जेन्युइनिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले 1 साल में जैसे जैसे एनएफटी का ट्रेंड तेजी पकड़ रहा था, एनएफटीज बड़ी बड़ी ह्यूज कलेक्शंस कर रही थी। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि एनएफटीज एक लंबी रेस के घोड़े जैसी हैं, जो ना रुकेंगी और ना हारेंगी। लेकिन अब अचानक एनएफटीज पर कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस अब कड़ा रुख अपना रही है। दरअसल एनएफटी की सबसे बड़ी मार्केटप्लेस ओपनसी पर उनके इंटरनल कलेक्शन स्टोर फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यूजर्स को जितनी चाहे उतनी एनएफटीज मिंट करने की कन्वीनियंस थी। लेकिन इस सुविधा का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ओपनसी और उनके कई बायर्स एंड सेलर्स को।
हुआ कुछ ऐसा कि इस सर्विस का गलत फायदा उठाते हुए बहुत से लोगों ने फेक एनएफटी कलेक्शंस लॉन्च की। जी हाँ, ओपनसी ने खुद ये खुलासा किया कि फ्री मिंटिंग एनएफटी टूल्स के तहत लॉन्च की गई एनएफटीज में से 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शंस और स्पैम है। ओपनसी ही नहीं, और भी कई एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं जो इस स्कैम की चपेट में आ गई हैं और कई परेशानियों से जूझ रही हैं। जैसे कि डेविएंट आर्ट ने पिछले कुछ महीनों में 80,000 फ्रॉड अलर्ट्स जारी किए हैं। इतना ही नहीं, एक और प्लेटफॉर्म लुक्सरेयर पर वॉश ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि वॉश ट्रेडिंग क्या होती है। तो कभी-कभी एक ही ग्रुप के लोग आपस में एनएफटी को बाय एंड सेल करके इलीगल तरीके से उस एनएफटी की ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यू दोनों को बढ़ाते हैं। चलिए आपको एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। आप बीपल को तो जानते ही हैं, जिनकी एनएफटी एवरी डे इज द फर्स्ट 5000 डेज ने $69 मिलियन की अब तक की हाईएस्ट एनएफटी कलेक्शन की थी। उस आर्ट के बायर मेटाकोवन एक्चुअली बीपल के बिजनेस पार्टनर हैं। कुछ समझे? और ये वॉश ट्रेडिंग बड़े लेवल पर हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 2017 में 4.7 मिलियन एनएफटीज 6.1 मिलियन टाइम्स ट्रेड हुई है। और तो और टोटल ट्रेडर्स में से महज 10% ट्रेडर्स ने 90% एनएफटी ट्रांजैक्शंस की हैं और यही ग्रुप 97% एनएफटीज को कम से कम एक बार ट्रेड जरूर करते हैं। तो यानी इन एनएफटीज की वैल्यू और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक ग्रुप साथ मिलकर सांठगांठ कर रहा है। एनएफटी की दुनिया में किस कदर धोखाधड़ी जारी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कई बार $multi-million वर्थ रग पुल भी होते हैं, जहां अनोनिमस फाउंडर्स इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर छूमंतर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इवॉल्व्ड एप्स एनएफटी प्रोजेक्ट, द बिग डैडी एप क्लब और ब्लॉकवर्स के साथ। अजब गजब गड़बड़ियों से भरी पड़ी है एनएफटी की दुनिया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिस करता है ओनरशिप ऑफ कलर। इतना ही नहीं, हर बार जब आपका खरीदा हुआ कलर कोई और यूज करेगा तो आपको रॉयल्टीज मिलेंगी, ये तक वादा किया जाता है यहाँ। और अब तो एनएफटी फ्रॉड्स कोर्ट तक घसीटे जा रहे हैं। एक कनेडियन कंपनी ने सोथबीज और आर्टिस्ट केविन मैककॉय पर $1.5 मिलियन का केस ठोका है। मई 2014 में मिंट किए गए क्वांटम नाम के आर्ट को दुनिया की पहली एनएफटी के तौर पर जाना जाता है। जून 2021 में सोथबी की ऑक्शन नेटिवली डिजिटल में ये आर्ट $1.47 मिलियन में बिका। कनेडियन कंपनी फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर जिसने ये केस दायर किया है, उसकी माने तो वही क्वांटम के असल हकदार हैं, क्योंकि इस एनएफटी के लॉन्च के 7 साल बाद जब मैककॉय की ओनरशिप खत्म हो गई थी, तब उन्होंने इसके राइट्स सिक्योर कर लिए थे। एक्चुअली ये सारी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि क्वांटम ओरिजिनली बिटकॉइन के कोड पर मॉडल्ड नेमकॉइन नाम के ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पर मिंट की गई थी। नेमकॉइन पर ओनरशिप को हर 250 डेज के बाद रिन्यू करना जरूरी है, वरना कोई भी इसे क्लेम कर सकता है। और मैककॉय 2014 में क्वांटम को मिंट करके 2015 में उसे रिन्यू करना भूल गए। जब 6 साल तक ये एनएफटी रिन्यू नहीं की गई तो 6 अप्रैल 2021 को एक्सियोस ने एक आर्टिकल इशू किया जिसकी हेडलाइन थी Exclusive, the first ever NFT from 2014 is on sale for $7 million plus. उसके 2 हफ्ते बाद फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर ने @earlynft नाम के ट्विटर हैंडल से इस NFT को रजिस्टर कर लिया। NFTs के साथ जुड़े इस फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में क्या क्रिप्टो मिंटर के CEO और को-फाउंडर रघुराज शेखर का कहना है और इन स्कैम से कैसे बचा जाए, आइए सुनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है, सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे, जस्ट वो एक जेपेग इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे मिंट करके बेच दिया। ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है। दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि काफी सारे NFTs के नाम पे कि आप NFT का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको और आप इस पे अपना सीड फ्रेज डाल दे, प्राइवेट कीज दे दे और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग। तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं। तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही हैं। बट
जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने एनएफटी बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। अब मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हुआ किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं, बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे हैं। सो अब लोग देखने लगे हैं कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं। लेट्स से काफी फेमस एनएफटी कलेक्शन है बोर्ड एप याच क्लब, तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं। बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि वेरीफाइड अकाउंट्स है या नहीं। यानी इन टोटल एनएफटी की दुनिया फिलहाल कटघरे में खड़ी है। जब तक यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी नहीं किए जाएंगे तब तक इसमें हाथ ना ही डालें तो अच्छा है, वरना हाथ जल भी सकते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Hello and welcome to Crypto TV. This is Manoj Dhara. Bitcoin has fallen below $22,000 mark and is down by over 65% from the peak hit in November 2021. Crypto derivatives are diverging from their underlying assets, and a large crypto lender, Celsius, has stopped customer withdrawals, which triggered the panic button in the markets. The largest altcoin, Ethereum, is underperforming, similar to the downturn in 2018. Market participants believe that the potential difference in the current downturn is it is largely institutional crypto participation selling, as opposed to 2018 when the retail participation trading activity was much higher. To discuss all the reasons behind the fall in the markets, we have invited a special guest, Mr. Rohas Nagpal from HiFi Blockchain. Sir, welcome on Crypto TV. Thank you for inviting me. So as we are talking, cryptocurrency markets are in a big concern. So markets are falling on the back of USD liquidity being taken out of the markets as we speak, and at a time when expectations of the higher Fed interest rates are negatively impacting crypto prices. So what's your opinion on this, sir? As we are all aware that the broader fall in the market has led to Bitcoin falling by around, as we see from, in 2018, Bitcoin fell around 84% peak to through, and Bitcoin has fallen 66% from its peak in November 2021. So how can you explain this entire situation for our viewers, sir? Sure. So I don't believe that external events such as the interest rates and all have much of an impact on crypto. I think crypto is quite a very different world that we talk about. Now, I think this fall which is happening right now is actually overdue. ये काफी time से expected था, because the prices were becoming unrealistic. I will give you a simple example. Suppose in the stock market, the share price of Colgate shoots up. Will that make the toothpaste more expensive? No. Toothpaste का दाम change नहीं होगा. Right. But crypto में ऐसा नहीं होता है. Ethereum, which is the most important platform, every time you do a transaction, you have to pay ETH. If the value of ETH goes up, automatically transactions become expensive and people stop using Ethereum for transactions and they move to other platforms. So in crypto, there is a direct relationship between the usability of the product and the price of the native token. But that is not the case in conventional world like toothpaste, for example. So because since last year, Ethereum prices were constantly going up, naturally a lot of people were moving to other platforms. And at some point of time, correction had to come in and markets had to become reasonable. So a lot of the projects which are otherwise not having good use cases, they are all going to fail and they will never come back again. And we will probably now see better projects with more realistic use cases coming back.
Sir, as we are talking about broader fall in the cryptocurrency market, there are a lot of external factors. What is, according to you, is the pain point in this market, and a lot of retail investors are also losing money? Sure. So we can divide the crypto investors into three categories. So one I would say would be the institution. The second could be the retail investors, individuals like you and me. And third would be the actual projects that are really using the blockchain, and thereby they need to keep buying tokens to pay for transaction fee. So someone like a Bitcoin miner would also come into category 3. So we can say those are the actual blockchain and crypto users. And purely investors, we are talking about retail versus institutional. Now, when interest rates change and when various things happen at the global level, like say COVID lockdowns in China, the Russia-Ukraine war, that immediately impacts the institutional investors in a big way. And how they invest and what assets they hold completely starts to change. And definitely that also has a very negative bearish impact on crypto when such institutions are exiting the market. Right. The retail investors, unfortunately, they get stuck in the middle. Because while they are not impacted much by these international events, but they don't have much control over the market. They are very small and fragmented. And that is why they end up paying the price for the bearish movements. So you mentioned about this third segment as we're talking about Bitcoin miners. There are a lot of newspaper reports and they have mentioned that Bitcoin miners are selling their Bitcoin because of the cost pressure. What is your opinion on that, sir? Sure. So what happens is when we look at a proof of that has actually blockchain, triggered a broader fall in the cryptocurrency market as well. Sure. So what happens is when you look at proof of work blockchains like Bitcoin, the miner has to spend a lot of money for computational power, electricity, heating, cooling, so many things they have to spend on. So their natural incentive is that the moment you are given a block reward or transaction fee, you have to sell part of it because you have to pay your bills. So a proof of work blockchain always creates selling pressure. Proof of stake blockchain on the other hand is reverse. It creates a buying pressure because you hold the crypto, only then can you stake and make more out. But the biggest blockchains in the world, which is Bitcoin and Ethereum, both run on proof of work. And because of that, that selling pressure is always there. And when the prices are falling, the miner is now forced to sell more and more of his past holding also because he has to continue doing his expenditures. So definitely that creates a lot of selling pressure also. Sir, you spoke about institutional investors, you spoke about retail investors, and you also highlighted about how Bitcoin miners are suffering losses, and hence they are selling their Bitcoin to just cover up their losses as well. So there is one more category that has been impacted as we speak, is the largest centralized crypto lender, which is called Celsius. It has paused customer withdrawals due to the lack of crypto and fiat liquidity, which is actually, sir, has triggered users' withdrawals on other platforms and exchanges. So what is the reason behind it? And actually this news of Celsius is triggered by when the market started falling. So how can you explain this entire episode for our viewers, sir? Sure. So see, Celsius has about 1.7 million users and they have about $12 billion of assets under management, and they are basically like a bank, but bank for the crypto world. And they have made more than $8 billion in loans because they were promising 18% per annum return, which is an extremely high return, right? So a lot of people felt that, okay, this is very good. I can borrow cheaply and then lend the money through platforms like Celsius and get 18% return. Now imagine if you are able to borrow at 3 and 4% and lend at 18%, you will make a huge profit. But these are very unrealistic and they can work for a very short run. But other than that, it defies the laws of economics. If it is actually possible for you to borrow at 2 and 3% and lend at 18 safely, then everybody will only do that. Everyone will leave their jobs and only start doing this lending. But the moment more and more people put that money, you cannot get those returns. And that is exactly what Celsius is now facing. So, but what happens is if you want to compare this to the NPAs of regular banks, in a regular bank, you are lending in the fiat currency. Now the value of the rupee in India doesn't keep going up and down, right? But crypto banks are not lending in fiat, they are lending in crypto itself. And the value of the crypto fluctuates wildly. So you cannot afford to keep giving that 18% rate of return anymore. And that's the reason now one by one so many platforms are beginning to crash because it is not sustainable. Their economics doesn't make sense.
So sustainable business model is something which you are highlighting as of now. Actually, this is the cause, why there was a big sell-off in Bitcoin yesterday. Sir, there are a lot of reasons as we speak. There are a lot of reasons and questions which investors are worried about. One is, of course, as we go back a bit, there was an episode of Terra Luna which happened last month, and that was a trigger, and that was a point when the entire thing happened. Roughly around $1.5 billion worth of Bitcoin were sold. Roughly around 88,000 Bitcoins were sold by the Terra Luna to protect their stable coin. So वहाँ से market से recover हो नहीं पाया है. So how can you explain this situation if you go back a bit, and what are the takeaways from this episode, sir? See, I have always been a critic of algorithmic stablecoins. They have never made any sense to me, and I have always said that algorithmic stablecoins in time will all fail. And as we can see, that is happening in reality. One by one, they're shutting. A stable coin has to be backed by a stable asset. Right. Right. And stable assets are usually the ones which nature has restricted. Right. Crypto, you can create like ETH, unlimited ETH can be created. But you cannot create unlimited gold. But tomorrow, if a huge new gold mine is found, or some asteroid comes close to Earth and we are able to go and mine gold from it, only then will the supply of gold increase huge amounts. But that's likely to be a rarer event. But in crypto, you can create as many projects as you want. There are close to 20,000 projects. They can create as many tokens as they want. So a Shiba Inu can create trillions of tokens. Nobody can stop them. Which is why we have to remember that these are two very different concepts. So when you say stable coin, it has to be backed by a stable external asset. Whereas an algorithmic stable coin is not backed by anything. Or worse, it is backed by a crypto itself. And a crypto can never be considered stable. So definitely, we saw a lot of problems happening with the US dollar. Even the US dollar stable coins have been facing pressure. Right, like few months ago in India, when there was a news that crypto is going to be banned, suddenly we saw that against the rupee, USDT crashed, but not against the dollar. And that created a huge opportunity for people to, take an arbitrage situation. So where we are seeing weakness even in a dollar-backed stablecoin, definitely algorithmic stablecoins had to fail. Sir, one more algorithmic stablecoin is under concern. Yes, unfortunately offhand I'm not able to recall the name, but yes, all algorithmic stablecoins, in my personal opinion, will fail over time. All right, sir. As we speak, you mentioned about government action which was taken. So governments around the world are getting harsher towards crypto. So how do you sense this news as an impact on investors? And is there an opportunity for retail investors, or there were broader concerns as far as the companies who are operating in the particular country and they are moving away to other countries, maybe which are more tax friendly. So what is your opinion as far as the government stance is concerned, sir? Sure. So when we look at the Indian perspective, so we have a 30% tax which has come in. Now, I don't think 30% is a very high tax, because many of the investors anyway come under the 30% tax slab. But yes, where I do understand there is a problem we are facing is that you are not allowed to offset losses. But then that is the case in case of any speculative asset, whether it is horse racing or lotteries, the same kind of a law applies. But what happens is, like I remember in March end, I was telling everybody on social media that it is time to exit everything if you are an Indian, because the tax begins from 1st April. So before 31st March, liquidate all your cryptos, then think very carefully and re-enter the market. And if you have followed that advice, you may have benefited, and this current bear market would not have impacted you. Because see, we need to be in line with the thinking of the government of our country. We are not here all trying to become smugglers or criminals and say we will not listen to the government and we will start doing transactions in other countries. No, that is not the right approach. As long as the government of your country is against something, it is not a good idea for you as a citizen to invest in it. So I would say a lot of Indians are actually saved because of the tax. Many of them had sold out, so they may not have faced the brunt of this current crash. But we can see across the world, governments are getting harsh on crypto, and the reasons are very simple. No government can allow a private currency to start taking over, because that is going to be disastrous for the common person. Secondly, we saw a lot of these ads being put up by exchanges saying 100 rupees mein Bitcoin le lo. Exactly. Now, let us think about it very rationally. Do we actually want
non-savvy common man to actually start putting all his saving into Bitcoin? No, that is very, very dangerous. So naturally, the government was then forced to come out with more measures so that the common man does not fall for this. Crypto is a very sophisticated financial instrument, and you need to be very savvy and educated to actually learn how to deal with it. And even the most savvy whales make mistakes. So I think it is all coming together. Many countries are now trying to regulate crypto, and we should give it 3 to 5 years before the global legislations and all fall into proper place, and then maybe crypto becomes a better investment avenue. So many countries are trying to regulate cryptos. That's what you are saying, sir. But there has been one more concern point as far as the market is concerned. So several exploits and scams in 2022. For example, Ronin exploit, which happened of $615 million odd, Beanstalk protocol flash loan episode, which triggered a 185 million hack. So these exploits and scam, sir, bleed investors and severely impacts market sentiment. That is also a cause of concern, sir. What is your view on this? Sure, definitely it is. So crypto is supposed to be all about technology. So people in fact say we are not investing in a financial thing, we are investing in technology. Now obviously technology is the most important thing in crypto, but when that technology breaks or regularly gets hacked, naturally it creates the fear in people that the technology is not as strong as we thought. And a lot of these attacks are actually happening on bridges. So bridges basically connect different blockchains to each other. Like if you take the normal real world example, if I'm in India, we use rupees. But when I go to the US, I have to use US dollar. Right. So I have to go to a bank or a third party, exchange my rupees for dollars, and I can spend in that country. So when we look at the blockchain world and we want to move from one blockchain to another, they each support only their native tokens. Right, sir. So Ethereum would support ETH and Ethereum tokens. Solana would support SOL and its own native tokens. So to interchange them, we need this blockchain bridge, which is a new technology. And because it's new, definitely there are problems and vulnerabilities, and they are constantly getting hacked because a hacker can make huge amounts of money when he breaks a bridge. And that creates fear in the minds of people that the technology is not strong enough. So definitely it has a huge impact. So all right, sir, as we are discussing about the top reasons why the market is under broader concern, just let me give you a recap. We discussed with Rohas Nagpal about the macro factors which are impacting the cryptocurrency market, right from inflation, right from the US interest rate scenario which is building up, and a broader sell-off by the institutional investors. And we are now discussing about the internal factors which are impacting the market, such as Rohas has highlighted about the scams, and we are discussing about internal factor. Let us discuss one more internal factor with Rohas. Is in 2018, Ethereum has fallen roughly around 92% as we speak, and it has fallen roughly around 73% from its peak. So if we go back to what the entire Ethereum episode is as of now, the merge is something which is getting delayed day by day, or by month, or maybe by years. So what is your opinion, Rohas, as far as the Ethereum universe is concerned? Because there are a lot of concern in the markets. Yesterday, there was a news that roughly around 1.5 billion worth of staked Ethereum were sold, that actually triggered a broader fall in the market. So what is your view as far as the Ethereum universe is concerned? Sure. So whatever I talk about, I always think as a developer or as a blockchain architect. So when I look at the Ethereum blockchain, while it is the best blockchain out there without any doubt, it has become very expensive to use. It is just like, imagine if tomorrow the price of petrol becomes 1,000 rupees a liter. It will impact the entire economy. Right. So as ETH goes up and Ethereum becomes costly to use, the entire decentralized finance ecosystem becomes unsustainable. Now, for a long time, Ethereum has been trying to upgrade its technology so that it can make transactions cheaper and faster. And one of the most important things in that is to move from proof of work to proof of stake. And this has already happened in a parallel chain called the Beacon chain. And this is the Ethereum mainnet. They are supposed to merge. And that is the meaning of, that's why we keep using the word the merge. But the merge is constantly getting delayed. So people are now beginning to become disillusioned with it and thinking maybe it will not really come soon. And maybe the whole ecosystem is going to fall apart. This was the reason why the Ethereum staked Ethereum was sold, sir? Yes, to enable proof of stake. But proof of stake is not a reality yet. We are still waiting. Right now it is happening on the Beacon chain, but not on the main production blockchain. The test process has begun.
Yes, the test process began quite some time ago, but unfortunately, we are not able to get a concrete date on when the real thing will happen, and it's constantly getting pushed, which obviously means there are some serious technological difficulties. And another thing we have to remember is that proof of work has been very secure so far, but proof of stake is not tested enough in the world. So it is possible that once Ethereum moves to proof of stake, new technological challenges may arise and the whole Ethereum ecosystem could collapse. The technology could actually break. So that is actually a bigger concern as we speak. Sir, there is one more topic which I wanted to discuss with you is the layer 2 solutions which are attached to this Ethereum ecosystem. So as you rightly said that Ethereum is trying to solve its high gas fees problem and the power issues as well. So layer 2 solution, what will be the way forward? Will they survive? Will they exist? You know, when Ethereum एक दिन तो सर वो कंप्लीट करेगा अपना मर्ज, तो उसके बाद में उनका क्या आउटलुक है सर लेयर 2 सॉल्यूशंस का, आप बताएं सर. Very good point. See, I believe fundamentally the concept of layer 2 is not logical. I mean, the blockchain should be strong enough to do things on layer 1. The moment we start doing this patchwork of putting band-aid on top of the blockchain, we are heading in the wrong direction. See, I believe ideally Polygon should be just a pure independent blockchain of its own. Perfect. It should not be a sidechain of Ethereum. Ethereum itself should grow properly that the L1 is able to do all the things that it is required to do. So fundamentally, I'm not convinced with the whole concept of L2. But if Ethereum's merge does not happen even this year, I think then it is better to move on to, like I personally, since last year I moved on to the Binance Smart Chain. All right. Sir, as you're talking about Binance Smart Chain, there are broader concerns as far as the BNB coin is concerned. So there is one case which is going on as far as the Binance ecosystem is concerned, which is actually not going well with the investors. Although the market is down, but there is a broader concern. But we are discussing about the internal factors that are impacting the market. So as far what is your view as far as the BNB coin is concerned and its way forward? Sure. So now when we look at the Binance ecosystem, actually they are doing many things. In fact, many people don't know that Binance is also one of the largest Bitcoin miners. They also run a lot of the top sites like CoinMarketCap and other informational databases. They also run the Trust Wallet. They have their own centralized and decentralized exchange, and they have 2 blockchains, and now they're planning a 3rd one. So Binance has many things put together. I am talking only about the smart blockchain of this. That needs BNB as its native token to pay for transactions, but that's a very low cost. So there we are not facing any problem, and I'm very happy to say that the Binance Smart Chain transactions go fast. I have not really seen much downtime. BNB prices on the other hand is an altogether different story, but it doesn't really impact the smart blockchain much because the transaction fee is anyway very low. So no matter whether BNB is at $600 or $200, it doesn't make much of a difference to me when it comes to transaction fees. Sir, as we are talking about the internal factors, what are the concerns in the markets? Solana has been under a broader concern because of its outages and the frequency at which it is happening. So, what is your view on Solana? Sure. So I used to be a very big fan of Solana, and I have spoken very positively about it many times. But then off late, I have begun to see far too many technological problems. See, blockchains are supposed to be decentralized. But when an entire blockchain can go down for 18 hours, what does it prove to us? That it is very centralized. Because if there are thousands of nodes running and normal people like me are running nodes, why should the entire blockchain go down? So because of the technological problems, I would say I'm staying away from Solana as of right now. Secondly, we have to also realize something. What are the use cases which startups are building? Are there actually so many use cases in the world that we need newer and newer blockchains? Every new blockchain says, I am faster. I can do, say, 20,000 transactions a second, 100,000 transactions a second. My question is always, do we need that speed? Exactly. Are we actually even doing so much business on the blockchain that we need this speed? And I think the answer is no. Even at a 7 to 10 TPS of Ethereum, I think it can handle most transactions. Or a Binance Smart Chain with 3 and 4 second block times can handle it. Do we really need so many new blockchains?
So as we are talking about what are the internal factors that are causing the fall in cryptocurrency market, sir, the hype around NFT seems to be dying out. What is your opinion? Since the beginning of 2022, we have seen broader volumes come down. What is your opinion on this sector and the way forward? Sure. So NFTs are of many types. We have the digital image NFTs, which are the most popular today, but they make no sense to me. I mean, like, I will give you a very simple example. How many people actually pay and buy physical art and put it at home? Very few. Now imagine how many people actually will be paying for digital art. What is the point? What do I get out of it? You know, those are not questions no one is answering. Right, sir. Now, many people say that you can take your digital art NFTs into your metaverse. So I'll give you an example. Behind me, there is a wallpaper. It is a physical wallpaper. I had to pay somebody. I bought it. They came and pasted it on the wall. Now, tomorrow, when I build a home in the metaverse, maybe I will pay for the digital version of this as an NFT and then take it into my home in the metaverse. Oh, when is that going to happen? The metaverse is yet very, very far away from mass adoption. I started using metaverse in 2003 when Second Life was created. Today, we are in 2021. 18 years later, I still don't see the metaverse getting mass adoption. So when is the world going to reach a place where we will buy digital art and take it into our metaverse homes? I think those are very far-fetched. So that is the reason I believe today's NFT version will not really last. So one last question before we let you go, sir. What is your advice for our viewers who are watching this interaction? Markets are steering towards, as we speak, Bitcoin is steering towards 2017 high, which it made of $19,500. So what will be your advice? को क्या करने चाहिए इन्वेस्टर्स ये टाइम पर जब भी मार्केट इतना ज्यादा ब्रॉडर कंसर्न्स में है, उनका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए सर? अगर आपने मेरी बात सुनी होती और 31 मार्च के पहले बेच दिया होता, then I'm presuming right now you're not facing losses. सर अभी जिन्होंने नहीं बेचा है वो अभी क्या करें? Unfortunately, उनके बारे में I'm not able to give any advice. But those who did sell, now is a time to kind of slowly start moving back, but don't start with the big projects. Right. Identify pre-listed projects, means they are not yet listed on the crypto exchanges. They are in the initial stages, but those use cases are solid. There should be very nice use cases, and you will be able to get pre-listed tokens at a very cheap price today. Fantastic. And the best way to find them is to go to the airdrop sites. And whichever new projects are giving airdrops, which is free cryptos, first of all, sign up and take the free ones. Then whichever projects you find really strong, start taking a little bit of those. But stay away from the main projects for now, because we don't know how much more it is going to crash. It is next to impossible to predict the bottom. Nobody knows when the bottom has come. So I would say wait for some time. But start with pre-listed, which you can get for free in airdrops. I would recommend that as the next step. No one can predict where the market can take a U-turn. That's the word coming in from Rohas Nagpal. Thank you so much, sir, for joining on Crypto TV and educating our viewers. You gave a fantastic macro view as far as why there is a broader concern in the cryptocurrency market. What are the external factors? And you also spoke really well about the internal factors. Thank you so much, sir, for being a part of this interaction. Thank you. Bye-bye. So that's all there is in today's interaction with Rohas Nagpal. Keep watching Crypto TV for more such interesting interactions. Thank you so much. मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. क्रिप्टो ॲसेट नेमकं काय आहे? आपण जर पाहिलात तर सर्वांचे वेगवेगळे छंद असतात, तर काही लोकांना वेगवेगळे गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट असतो. पण एक अशी वस्तू आहे जी आपल्या सर्वांना आपल्या बोटांवर नाचवत असते आणि ज्यामध्ये सर्वांचा एकसारखा इंटरेस्ट आहे, आणि तो आहे फक्त पैसा आणि पैसाच. म्हणून म्हणतात ना बाप बडा ना भैया, सबसे बडा रुपया. एनिवेज, आपण हे नोटीस केलंच असेल की हल्ली अगदी प्रत्येक ठिकाणी फक्त क्रिप्टोकरन्सीची चर्चा आहे. अगदी प्रत्येकाला त्याविषयी जाणून घ्यायचं आहे, त्यामध्ये इन्व्हेस्ट सुद्धा करायचं आहे. परंतु कोणीही दिलेल्या सल्ल्यानुसार क्रिप्टोमध्ये इन्व्हेस्ट न करता
तुम्ही स्वतः अगोदर क्रिप्टोविषयी अगदी बारकाईने अभ्यास करा आणि त्यानंतरच नीट विचार करून क्रिप्टोमध्ये इन्व्हेस्ट करा. त्यासाठीच आम्ही कोणत्या ना कोणत्या विषयावर तुमचे नॉलेज वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्यासाठीच आज आम्ही क्रिप्टो ॲसेट या विषयाबद्दल आपल्याला डिटेल्समध्ये माहिती देणार आहोत. चला तर मग स्टार्ट करूया. तुम्हाला माहित आहे का की क्रिप्टो ॲसेट म्हणजे नेमकं काय? नाही? नो प्रॉब्लेम. मागील 5 वर्षांमध्ये इंडियन क्रिप्टो ॲसेट इंडस्ट्रीने आश्चर्यजनक प्रगती केली आहे. इंडियामध्ये सध्या 15 मिलियन क्रिप्टो ॲसेट होल्डर्स आहेत आणि त्यांच्या ॲसेट होल्डिंगमध्ये अंदाजे 6.6 मिलियन रुपीज आहेत. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की या काही वर्षांमध्ये भारतात आता 2 क्रिप्टो युनिकॉर्न्स आहेत. अहो, ते युनिकॉर्न्स नाही, म्हणजे क्रिप्टोच्या जायंट कंपनीज जे व्हेंचर कॅपिटलिस्टच्या नुसार $1 बिलियन पेक्षा जास्तची व्हॅल्यू ठेवते. एवढंच नाही तर भारतामध्ये 350 क्रिप्टो स्टार्टअप सुद्धा आहेत, ज्याचा सरळ अर्थ असा आहे की क्रिप्टो ग्लोबलीच नाही तर भारतात सुद्धा धूम करतो आहे. ग्रेट ना? तर आपण बोलत होतो क्रिप्टो ॲसेट विषयी. क्रिप्टो ॲसेटला जर आपल्या साध्या सोप्या भाषेत समजवायचं असेल तर क्रिप्टो ॲसेट ते डिजिटल ॲसेट असतात जे ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीच्या किंवा क्रिप्टोग्राफीचा वापर करतात. क्रिप्टो ॲसेटला अजून चांगल्या पद्धतीनं जाणून घ्यायचं असेल तर आपल्याला क्रिप्टो ॲसेटचे वेगवेगळे टाइप्स जाणून घ्यावे लागतील. तर क्रिप्टो ॲसेटचे 6 टाइप्स आहेत. पहिले म्हणजे स्टेबल कॉइन, दुसरे CBDC, तिसरे प्रायव्हसी कॉइन्स, चौथे म्हणजे गव्हर्नन्स टोकन्स, पाचवे युटिलिटी टोकन्स आणि सहावे म्हणजेच नॉन फंजिबल टोकन्स. स्टेबल कॉइन अशी डिजिटल करन्सी असते जे फिएट करन्सी जसे की डॉलर इत्यादी किंवा कोणत्याही अंडरलाईंग ॲसेट सारखी जसे की गोल्ड वगैरे याप्रमाणे असते. फॉर एक्झाम्पल, एक एक्स डिजिटल करन्सी आहे आणि डॉलर्सने समर्थित आहे. म्हणजे जसजसे डॉलरची व्हॅल्यू वाढणार तसतसे या एक्स स्टेबल कॉइनची व्हॅल्यू सुद्धा वाढणार किंवा कमी होणार. CBDC म्हणजेच सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी. ज्याप्रमाणे याच्या नावातच त्याचा अर्थ लपला आहे, ही सेंट्रल बँकची डिजिटल करन्सी आहे. CBDC हे कोणत्याही देशाच्या ऑफिशियल करन्सीचा डिजिटल टोकन असतो. नॉन फंजिबल टोकन्स. नॉन फंजिबल टोकन्स हे कोणत्याही प्रकाराचे युनिक आर्ट असू शकतात. उदाहरणार्थ, कोणत्याही फोटोज, पेंटिंग्स, ऑडिओ, कोणते ॲनिमेशन, गेम एक्सेट्रा ज्याला बाय किंवा सेल करता येऊ शकते. परंतु येथे ट्रान्झॅक्शन हे कोणत्या ना कोणत्या तरी क्रिप्टो करन्सीमध्ये होते. आतापर्यंत आपल्याला समजलं असेल की क्रिप्टो ॲसेट नेमकं काय आहे. आता याचे फायदे काय आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत. क्रिप्टो ॲसेट हे डबल स्पेंडिंगच्या प्रॉब्लेम्सला सॉल्व्ह करतं. असे प्रॉब्लेम्स नेहमी अनएन्क्रिप्टेड डिजिटल ॲसेट म्हणजेच डिजिटल मनी पासून क्रिएट होत असतात. कारण डिजिटल मनी सोबत फॉल्स ट्रान्झॅक्शन्स आणि रेकॉर्ड्स बनवणं अगदी सोपं आहे, कारण हे इझिली रेप्लिकेबल आहे आणि ह्याची हिस्ट्री ऑफ ओरिजिनला ट्रॅक करणं हे खूप कठीण आहे. तर दुसरीकडे क्रिप्टो ॲसेटचे सर्व ट्रान्झॅक्शनचे रेकॉर्ड्स हे ब्लॉकचेनवर अपडेट आणि व्हेरीफाय होत असतात. कारण ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्युटेड लेजर आहे, म्हणून या डिजिटल ॲसेटला अगदी प्रत्येक जण ट्रॅक करू शकतात. मला विश्वास आहे की क्रिप्टो ॲसेटला घेऊन आपले सारे डाऊट्स क्लिअर झाले असतील. आपल्या नेक्स्ट सेगमेंटमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये कोण कोण ॲक्टर्स आहेत आणि क्रिप्टो ॲसेट ट्रान्झॅक्शनमध्ये पार्टिसिपेट कोण कोण आहेत. तुर्तास मी वैभवी सावंत इथेच थांबते. पाहत रहा क्रिप्टो TV.
any big promises, but we will do everything to make this work. Through all our disagreements and conflict, we hope to grow our understanding of each other and ourselves. These are the vows taken by Mr. and Mrs. Narasipuram on 15th of November 2021. Now you would be wondering what is so special about these vows that I'm standing here and talking about it. Well, then let me tell you that these are not just the vows taken during the Fairas in Hindu marriage ceremony or in any church. These are the vows actually taken on blockchain. Hello and welcome to our show of fun facts. I'm your host Parvati Nirvan, aka Paro, with me having no Deva in life, but I'm glad that this couple has found each other. And not just that, they have also immortalized their marriage on blockchain. Yes, you heard it right. And I have with me this cute couple who took the vows. Let's meet and greet them. Hello, Mr. Anil. Hello, Shruti. Welcome to our show and our channel, Crypto TV. Hi, Parvati. Hi, Parvati. How are you? How are you doing? Good. How are you? So, I'm pretty excited, and let me just fire my first question. Who got the idea? Like, how did this whole journey of taking your marriage to a new platform that is on blockchain technology happened? Well, it was all Anil. It was his idea. It was his brainchild, and it was his passion. I'll ask him to convey more about it. Yes, I've been in the crypto space for a while, so I kind of been interested in the technology and how it can be used. And we got married in November last year. So as part of that, I thought that we could do something different, and I heard about this couple that did a blockchain wedding in the US. So I thought, why not give that a try? And it was especially appropriate given that given the times that we live in with the pandemic, we try to keep our wedding small and limit the number of people as much as possible. And given the situation we're in, it just seemed appropriate to also do it in the blockchain. So that's how it came about. Did you guys face any difficulty like while executing the vows on blockchain? Like you share your journey, like how this whole thing happened. Like if anyone is looking forward to do something like you guys did, they will get a fair idea. And I'm sure you guys have inspired a lot of people. Sure. I would say just to describe what we did and how we went about it a little bit. We, like I said, we didn't want the big Indian wedding, and we didn't want to have a lot of people show up and avoid large crowds for obvious reasons. So we did a registered marriage, which is not that uncommon in India. So we went to the registrar's office and we signed the sort of offline ledger. And then, we came back home and we just got on a Google Meet. We invited some family and friends. We had a digital priest who helped officiate that Google Meet and the ceremony. And we had prepared these some things ahead of time, like setting up the wallets and setting up minting the NFT and all. So as part of the ceremony, we just went through the process of me transferring the NFT which we made ahead of time to my wife's wallet. And as part of that transaction, we embedded some vows, we embedded some language in the contract itself that we were getting married. And we tried to make it a fun ceremony with a digital priest sort of saying a few things about marriage and love, and we said our vows to each other. So we tried to combine the best of both worlds, and yeah, that's kind of how we went about it.
Yes, lovely, lovely. Actually, this gives me another perspective to your marriage. Like people who are having some difficulty, like in this world, to get married, they can just go on blockchain and register and get married there. So any which ways, they are married somewhere in this world. Right, So right. yeah, actually, it's like a different perspective to how you can go about your marriage. And you guys have put that on Ethereum blockchain, if I'm not wrong. Can you just tell us about that? Yeah, so we used OpenSea to mint the NFT. And so, yeah, we use the default platform NFT, which is Ethereum. Yeah. OpenSea uses both Ethereum and Polygon, and because you are from this technological background, so I would like to ask, like, why did you choose Ethereum blockchain for the vows, and did you go Ethereum for NFT marketplace or Polygon? Which one? We used Ethereum. It was just no specific reason. It was just it was a default choice. Yeah, that it was just easier, I guess. Yeah, I think gas fees are a little higher in Ethereum, but for something special like this, I wasn't really worried about Gas fee. fees too Yeah, much. at least for this one. Yes, of course. You wouldn't be worried about the gas fees in this case. What's your next step? Like, what are you guys planning? Like, this question is specifically to Shruti. I want to hear this answer from you. Like, are you like guys planning now something like in metaverse, like having a child in metaverse, like being that creative? Yeah, that would be fun, like having some digital avatar and kind of do things that we probably can't like in real life, like have a really big mansion or something in metaverse. Right, right, right. And probably do interiors the way I want to do it and not like fight about it. I know, I know. Choose your own color, pick your own stuff to decorate it and stuff. Yeah, not a bad idea. And the kid also there. What do you say? Yeah, somewhere playing it. And maybe have like a nice infinity swimming pool or something. Yeah, yeah. Just elaborate me, like hypothetically, what would it look like if you would? So, yeah, probably like a really beautiful big mansion, something like what Kim and Kanye used to have. Correct. And like a big pool with a nice, cute library somewhere. And he has his own office space with his computers and all the gears. Right. And probably some mining machine somewhere. Anything else you would like to speak before we close? I mean, anything you would want to go about? It's just that one thing that this whole blockchain wedding and using blockchain to get married, as technically amazing as it sounds, for me it was more like having this personalized way of declaring the love for each other. And it made it more special that he made that effort to create the image that we used for our NFT. And it's a great memory more than anything. And no matter what the gas fees, it's still worth it. Yes, 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 yes. It is kind of very cute, and that's why I was very curious to talk to you both of the guys, like what it would be like. And you've actually given a lot of people new relationship goals, in case if you're not aware about it, No, I saw some comments on Instagram where like people were tagging their boyfriends on our like news clipping, and the guys were like, "Ab ye bhi seekhna padega." Yes, of course. There's always new things to do and to impress. Right. Yeah, and I would say like what makes it special is that one thing is that it was like the way blockchain works, it was just between the two of us, right? It was, we could do it in the way we wanted. There was no one in the middle involved. So, that was meaningful, and it's on the Ethereum blockchain, right? So now it's a permanent immutable record of, of our immutable, exactly, and public record of our
of our relationship and of our union. So I think that's special. And high amount of security and safety and trust, like what blockchain offers. I'm sure this marriage is going to offer the same. Right. And no one can change that. No one can change that, yes. That's the most beautiful part. Because that will involve the consensus of how many, like thousands of people? Exactly. Right. Yes, so we Yeah. cannot change it, yeah. Yeah. Absolutely amazing, absolutely amazing. Well, this was a lovely chat, very interesting and something very new. I must say you guys have created a new landmark in terms of what couples can do more together. It was a lovely time to have you on our channel. Thank you very much for taking your time for our viewers. I wish you well and a great future together. Thanks once again. That's all from my side. This was a fun chit-chat interview on blockchain. I'll bring you more entertaining and interesting facts on what's happening in the blockchain space. Till then, stay tuned and keep watching Crypto TV. जैसे गोल्ड के बाद सिल्वर की चमक और खनक सबसे फेमस है, वैसे ही क्रिप्टो के वर्ल्ड में डिजिटल बिटकॉइन के बाद डिजिटल सिल्वर यानी कि इथीरियम सबसे फेमस है। आज मैं आपको तनिक करके इथीरियम का एक ऐसा टॉनिक दूंगी कि अगर आपको कोई नींद में भी उठा करके पूछेगा ना कि भाई इथीरियम क्या है, तो आपको उसकी पूरी कुंडली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होगी। हे गाइस, मेरा नाम है यशी, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और आज के इस एपिसोड में हम फन वे में जानेंगे कि आखिर इथीरियम क्या है, इथीरियम की डिजिटल इमली आखिर खट्टी है या मीठी, और थोड़े से समय में ही इथीरियम का पौधा पेड़ कैसे बन गया, जानना है, राइट? अच्छा, 1991 की फेमस मूवी सौदागर में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स थे दिलीप कुमार साहब और राजकुमार, और वो थे जंगल के दो शेर, राइट? वैसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में भी दो शेरों का राज चलता है। बिटकॉइन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, आज हम इथीरियम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इथीरियम आखिर है क्या? इथीरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जिसे ईथर या फिर इथीरियम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन मिस यूनिवर्स है तो इथीरियम मिस वर्ल्ड है, यानी कि दोनों चीजें अपनी जगह जगह इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या आप जानते हैं 2015 में लॉन्च होने से लेकर अब तक इथीरियम की प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 36,000% का उछाल आया है। अगर स्टॉक मार्केट में हमारा पोर्टफोलियो 20 से 30% बढ़ जाता है तो हमारे पांव जमीन पर रहते ही नहीं है, राइट? एंड नाउ जस्ट इमेजिन 36,000% का रिटर्न कितना होता है बॉस। यार मैं जरा काउंट करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग घूमा, मन में लड्डू फूटा। अब आप लोग भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ कि इथीरियम में जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए। रुको जरा, वेट करो, पहले इथीरियम को पूरी तरह समझ तो लो। इथीरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी समझने की भूल ना करना लल्ला। इथीरियम तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का एक ग्लोबल ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, राइट? So basically, Ethereum is one of its kind programmable blockchain platform. In fact, Microsoft के executive York Rolls ने ये तक कहा है कि 2023 तक Ethereum network decentralized apps का हब बनने वाला है। वो कौन सा डायलॉग था सिंघम का, जिसमें कहते हैं अजय देवगन, जिसमें है दम वो है फक्त बाजीराव सिंघम। अभी सही बोला ना? खैर, मूविंग ऑन टू इथीरियम प्लेटफॉर्म में भी बहुत दम है बॉस। ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की डिजिटल लेजर नहीं है। इथीरियम का विजन है एक न्यू इंटरनेट स्पेस को क्रिएट करना, जहां किसी भी टेक जायंट कंपनी या गवर्नमेंट की एजेंसीज बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एक ऐसा इंटरनेट जहां आपका प्राइवेट डेटा, इधर आओ 100% प्राइवेट रहेगा, और ये डेटा
किसी भी मोनोपोली में भी शामिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, इथेरियम पर गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ब्राउजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी क्रिएट किए जाएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी एप्स भी कहेंगे। इथेरियम यूजर्स डी ऐप यूज करने के लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। इस फीस को क्रिप्टो वर्ल्ड में गैस भी कहा जाता है। 1 सेकेंड, गैस कहा जाता है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के 93% डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस इथेरियम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं? कितने सारे फन फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको। हाँ, वैसे शॉर्ट टाइम में इथेरियम के फेमस होने का मेन रीजन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी बला का नाम है? वेल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बिना थर्ड पार्टी के सिर्फ कंप्यूटर कोड से होने वाले दो पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट है। वो क्या कहते थे? अरे मियाँ बीबी है राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, मूविंग ऑन टू इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी की वजह से फ्रॉड का तनिक भी चांस नहीं है, इतू सा भी चांस नहीं है। वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीमेंट सेफ भी हो गए हैं और सस्ते भी हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का खर्चा जो बच गया है। तो अब जलेबी से लेकर के जेट इंजन तक की ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये सब कुछ सेफली आप कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। मूविंग ऑन टू एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको सुन करके आपको थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इथेरियम के क्रिएटर वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनेयर हैं? अभी वो सिर्फ 27 इयर्स के हैं। हाँ, और उनका नाम है वितालिक बुत्रिन। मैं जॉब छोड़ के जा रही। वितालिक बुत्रिन रशिया में पैदा हुए हैं और कनाडा में बड़े हुए हैं। वैसे उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिसको सुनते ही आपको उनको प्यार से सल्यूट करने का मन जरूर करेगा। 2021 में मिस्टर वितालिक बुत्रिन ने इंडियन क्रिप्टो कोविड रिलीफ में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों रुपए डोनेट किए थे। एंड टू बी प्रिसाइज, $1.14 बिलियन। मिस्टर वितालिक बुत्रिन इंडिया की ओर से थैंक यू वेरी वेरी मच। जैसे सुपरस्टार आर वेरी ओन थलाइवा रजनीकांत साहब ने रोबोट के बाद अक्षय कुमार के साथ में रोबोट 2.0 फिल्म बनाई थी, वैसे ही इथेरियम 2.0 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इथेरियम 2.0 का दूसरा नाम है सेरेनिटी। किसी भी ब्लॉकचेन को 3 फैक्टर्स पर इवैल्यूएट किया जाता है। अभी बताती हूँ आपको किस किस पर। स्केलिंग, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग यानी कि पर सेकंड में कितने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी मींस कि ये प्लेटफॉर्म कितना हैकिंग और फ्रॉड प्रूफ है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इस प्लेटफॉर्म को कोई एक कंपनी, गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल नहीं ओन करता है। इथेरियम में करंटली स्केलिंग का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है। एक बार फिर से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है, यानी वीजा की स्केलिंग हुई 1700 TPS, whereas इथेरियम करंटली सिर्फ 15 TPS यानी कि 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ही हैंडल करती है। आई नो द नंबर इज क्वाइट लो, पर फिकर नॉट, 2022 में जो इथेरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है वो पर सेकंड 15,000 ट्रांजैक्शंस हैंडल करेगा। ओह माय गॉड, यानी कि कहां 15 TPS और कहां 15,000 TPS। मतलब इथेरियम 2.0 स्केलिंग में सबको धो डालेगा। इट मींस 2022 में इथेरियम प्लेटफॉर्म तो फुल स्पीड से भागने वाला है और क्रिप्टो वर्ल्ड में तूफान लेकर आने वाला है। ऐसे ही फन फैक्ट्स और जानने हैं, राइट? डू नॉट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। दिस इज मी यशस्वी साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। हाय गाईज, क्रिप्टो टी व्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. सोलानाचे सर्वात खास फीचर्स विषयी म्हटलं तर ती आहे त्याची ट्रान्झॅक्शन स्पीड आणि कमीत कमी असणारी ट्रान्झॅक्शन फीज.
मला माहित आहे की आपल्याला वाटत असेल की मी फक्त सहजच सांगते आहे. चला तर मग सुरू करूया सोलाना आणि इथिरियमची कंपॅरेटिव्ह स्टडी आणि सोबत जाणून घेऊया काही गोष्टी. फर्स्ट, जेथे सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स 700हून अधिक आहेत तेथे इथिरियम व्हॅलिडेटर्स 11,000हून अधिक आहेत. त्यामुळे हा पॉइंट इथिरियमला केला. सेकंड, लिटिल सी म्हणजेच युजर रिस्पॉन्स मध्ये सोलानाची एफिशियन्सी 0.4 सेकंड्स आहे. तिथे इथिरियम युजर रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनिट्स आहे. म्हणजे हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 3, एका बाजूला सोलाना आपल्या युजर्सला 50,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंड अलाव करतात, तर दुसऱ्या बाजूला इथिरियमचे युजर्स एका सेकंडमध्ये फक्त 15 ट्रान्झॅक्शन करू शकतात. म्हणजे पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 4, आता सर्वात इंटरेस्टिंग पॉइंट जेथे सोलानाची पर ट्रान्झॅक्शन फी फक्त $0.0015 आहे, त्यात इथिरियम आपल्या युजर्सला पर ट्रान्झॅक्शन $15 चार्ज करतात. मग पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 5, सोलानावर आतापर्यंत एकूण 15 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत, पण इथिरियमवर आतापर्यंत फक्त 1.07 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत. हा पॉइंट सुद्धा गेला सोलानाला. यावरून स्पष्टपणे सिद्ध होतं की सोलाना हा विनर आहे. सोलानाचे स्पीड विषयी याचे फाउंडर अॅनाटॉली यानकोवेन्को यांनी 17 नोव्हेंबर 2017ला व्हाईट पेपरमध्ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री नावाच्या एका टेक्निकला डिस्क्राईब केलं आहे की तुम्हाला तुमचे सोलाना टोकन डेलिगेट करावे लागतील किंवा टोकन एका व्हॅलिडेटरसह लॉक करून ठेवावे लागतील, ज्यावर तुम्हाला रिटर्न देखील मिळेल. या टेक्निकनुसार अननोन कॉम्प्युटर जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करत नाहीत त्यांच्यामधील वेळेला ट्रॅक केलं जातं. खरं तर अॅनाटॉलीने बऱ्याच वेळापासून बिना क्लॉकवाली ब्लॉकचेन सिस्टीम्स जसे की बिटकॉइन आणि इथिरियमला स्टडी केलंय. नॉर्मली ही सिस्टीम्स लार्ज स्केल वर वर्ल्ड वाईड पर सेकंड 15 पेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन नाही करू शकत. जेव्हा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टीम ज्याप्रमाणे विजाला 65,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंडची रिक्वायरमेंट असते, आपल्याला या स्टडीमुळे अॅनाटॉलीला एक गोष्ट समजली की क्लॉक शिवाय ही सिस्टीम्स ग्लोबल पेमेंट सिस्टीम किंवा ग्लोबल सुपर कॉम्प्युटर नाही बनू शकत. जेव्हा अॅनाटॉलीने असे कॉम्प्युटर्स जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करू शकत नाहीत त्यांना एका म्युच्युअल टाइम सोबत अग्री करण्याचा जो प्लॅटफॉर्म होता त्याला अखेरीस सॉल्व करून टाकले. त्यांना माहीत होतं की त्यांची 40 वर्षाची डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम रिसर्चला ब्लॉकचेन या दुनियेमध्ये इंट्रोड्यूस करण्याची आता वेळ आली आहे. त्यामुळे परिणामी याचे क्लस्टर फक्त 10 पटीने, 100 पटीने किंवा 1000 पटीने नसून तब्बल 10,000 पटीने वाढले आहे. सोलाना प्रोटोकॉलमध्ये POH म्हणजे प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक मेन कॉम्पोनंट आहे. POH बल्क ऑफ ट्रान्झॅक्शनची एक प्रोसेसिंग करतात. सक्सेसफुल ऑपरेशन सोबत त्यांना प्रोसेस करताना पास झालेल्या वेळेला सुद्धा रेकॉर्ड करतात आणि याप्रमाणे या ब्लॉकचेनला ट्रस्टलेस नेचर एन्शोर करतात. सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स पूर्ण नेटवर्कमध्ये आपली ओव्हरऑल होल्डिंगनुसार निवडले जातात. म्हणून ज्यांच्याकडे जेवढी जास्त होल्डिंग तेवढेच त्याचे व्हॅलिडेटर बनण्याचे चान्सेस असतात. याप्रमाणे ही स्ट्रॅटजी एन्शोर करत असते की जी लोक नेटवर्क होल्ड्समध्ये पूर्णपणे वेस्टेड आहे त्यांना ही पोझिशन मिळेल. जेव्हा कोणी व्हॅलिडेटर कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनला अप्रूव्ह करून ब्लॉकचेनमध्ये ॲड करतात तेव्हा त्याला यासाठी रिवॉर्ड मिळत असतात. आणि जी लोक व्हॅलिडेटर नाही आहेत ती लोक पण कुणा दुसऱ्या व्हॅलिडेटरला आपल्या होल्डिंग्सला डेलिगेट करून अगदी इझिली प्रॉफिट कमवू शकते. POH प्रोसेसला मॉनिटर करण्यासाठी प्रूफ ऑफ स्टेक म्हणजेच POS कॉन्सेन्ससला यूज केलं जातं. सोलानाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पाहत रहा क्रिप्टो TV विथ युअर फेवरेट होस्ट वैभवी सावंत.
Hello and welcome to Crypto TV. This is Manoj Dhara. In 2022, Solana had 12 serious outages, driving the price of its native coin sold down more than 78% this year. June 1st week, the latest outage shut down the network for 4 hours and 10 minutes, which means a peak potential of 975 million transactions did not occur during that blackout. The prices of Solana native SOL has dropped roughly around 14% since the mainnet outage on June 1st week, which is roughly around $38 as of now. So to discuss this entire episode in detail, we have invited Vivek Sim from Crypto University. Vivek, welcome to the show. Thanks. So Vivek, what happened on June? Since we are discussing about Solana and its way forward, going ahead for our investors. So what happened on June 1st week? The recent Solana outage, if you can just explain this for our viewers. Okay. So there is something called durable nonce transaction. All right. So what happens in this is that you can reuse the same nonce again and again. But in case of outage, there was a small bug in this feature of Solana. Because of that bug, this entire Solana network went down. All right. None of the transactions could happen for 4.5 hours, almost 4 hours, 10 minutes. So basically, this happened because of this, there is a bug in durable nonce transaction. So अब आपने जैसे बताया कि एक ड्यूरेबल नॉन्स ट्रांजैक्शन की वजह से ये आउटेज हुआ था और ये दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग विवेक. Actually, there has been lot of outages in Solana network. This is the 8th outage. ये 8वीं बार हो चुका है. इसके पहले जितने भी outage हुए थे, there were some small bugs in Solana network. As you see, Solana is still in development phase. Still is getting improved day by day. So developers have to do a lot of more hard work is required, to make it perfect. And Solana made decentralization. There is an issue with the decentralization as well. So we will discuss this decentralization issue in details. But what steps have Solana taken to resolve this issue? If you can just highlight that. So basically, Solana has removed this feature, durable nonce transaction for now. They have disabled this feature. From now onwards, it's disabled. So they have told this feature will be enabled back once they have fixed the bug. So as of now, they are still fixing the bug, and they will re-enable the feature once the bug is fixed. All right. So since we are talking about this Solana and its way forward, so how centralized is the Solana network? If you can just highlight this, because they have claimed that this is a decentralized network, and its way forward. What do you think, according to you, can be the tipping point as far as investors are concerned? So basically, to determine any network is centralized or decentralized, there is something called Nakamoto coefficient. So Nakamoto coefficient score gives you a proper, value whether you are centralized or decentralized. In case of Solana is? The more score, the better decentralized the network. All right. So for Solana, the score is 19. It's much higher compared to, other networks like Bitcoin is 5, Ethereum is 3. So the score is quite high. And this actually, Nakamoto score determines how much decentralized the network is. So if you could just explain this for our viewers, Vivek, Nakamoto, the parameter which you have highlighted is actually very interesting, and आप हमारे viewers को थोड़ा सा इसको simplify करके बता सकते हैं, because you told that this is to measure any network is centralized or decentralized. In this case, it's a decentralized network. So how do you explain this for our viewers? थोड़ा simplify करके बताइए. So Nakamoto coefficient जो है, actually this is based on a formula of Gini coefficient. So Gini coefficient is a subset of Nakamoto's coefficient. So Gini coefficient में क्या होता है? Suppose you are having 10 nodes. So your score will be 10. So it's very simple formula. Number of nodes के base पे the formula calculation is considered. So we consider Gini coefficient as one subset. There are multiple subsets like this. And finally, a Nakamoto coefficient score is arrived after all these calculations. All right, since we are talking about this coefficient and it is pointing more towards decentralized, we will discuss this in details. So my next question is, Vivek, how are nodes operating on the Solana? Since you have highlighted the Gini factor as well. So how does nodes operate on Solana? If you can just simplify this for our viewers. Okay. So basically, to set up a node, you need to have a validator. We call it validator in terms of Solana network. And there is a configuration requirement for that. You need a 12-core CPU, 128 GB of RAM, which is very high configuration if you look at this configuration. So this is like it costs you thousands of dollars. That's why if you see number of nodes in Solana network is very less. It's just 1,776 nodes as of now.
So since we are talking about Solana and its way forward, this is an initiative which Crypto TV is taking to explain for our viewers that what should be your investment strategy. As since this is not an investment advice, this will help you. This research will help you to understand this network or Solana better. So trades per second is something which Solana has been claiming, which is roughly around 65,000 odd. There are articles which says that Solana's trades per second is nearly over 60,000. Some say that it's 25,000. So ये actual picture क्या है विवेक? ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा आप explain करें. So basically, if you look at the websites of Solana, it says it is possible to conduct 7,10,000 transactions per second. But if you look at the Solana ecosystem, 7,000. 7,10,000. All right. transactions per second. So if you look at this, why they are claiming such a high speed? What they say is that that the speed of Solana will keep on increasing as the nodes keep on increasing. So that is the future projection of speed. But if you look at the current speed on the website, if you check it, it's just 1,270 transactions per second. Fantastic. So that is the current transaction speed. So this is actually a big negative as far as the network is concerned. आप claim कुछ और कर रहे हैं और आप deliver कुछ और कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि आप 5G बेच रहे हैं, लेकिन आप speed दे रहे हैं 1G का. That is a future projection. That वो जो projection किया गया है वो future की mining के base पे किया हुआ है. All right. Current nodes, current mining के हिसाब से is just 1,260, which is not a big figure actually. If you ask me why people are participating in Solana network, it's because mostly about cost. I mean, people are participating due to cost, not due to speed actually. So since we are talking about, आपने जैसे इस एपिसोड की शुरुआत में आपने कहा कि यहाँ पर they have actually claimed that they are a decentralized network, but it is pointing towards a centralized network since there are roughly around 50% position of the entire project is with the promoters. तो ये थोड़ा सा आप उसको simplify कीजिए कि what is the claim and what is the actual status as of now? Okay, so if you look at Ethereum, like they have 80% of tokens of Ethereum is public. Right. Public is owning 80% of tokens. But if you look at Solana, 48%, according to Masai report, 48% of the tokens are still with the Solana Foundation. It's called insider token in our crypto language. Right. So basically, Solana owns this 50% of tokens, which is almost half of the complete supply. And if you look at the complete staking supply, 77% of Solana tokens are already staked, which means most of these inside tokens are staked and they are used for mining the Solana tokens. Sure. तो ये हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि जो विवेक ने अभी एक फैक्टर एक्सप्लेन किया है. सो यूजुअली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर जितना ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव माना जाता है कि चलो ठीक है, कंपनी बहुत ही स्टेबल है, यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन दैट. बट इन दिस क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स जितना कम होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में होता है वो ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है बिकॉज उतना ज़्यादा आपका कम्युनिटी बड़ा होता है. विवेक, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? See, basically, the less decentralized system it is, then less value it will have. The more decentralized it is, the more value it will have. Because if you have more communities, it is spread across different nations, different countries. So it is more decentralized, it is more powerful. Why Bitcoin is so powerful? Because Bitcoin is decentralized, it's across multiple countries. So that's why Bitcoin is most powerful. So in crypto industry, in crypto industry, in Web3 industry, what matters is that how many communities you have, how big is the community, and how decentralized your system is. So that is very important. So how does this insider thing indicates, its centralized nature? Okay. So basically, since people are holding 48% of tokens, and if you see the basic criteria for mining Solana tokens, is that you should have, you should stake some tokens. And if people are owning, Solana Foundation is owning most of the tokens, the probability is that they will be mining most of the tokens. So they must be owning most of the validator nodes. If you see, they must be run by Solana system only. All right. So that is the probability. Because running a validator node requires a lot of SOL tokens, and SOL tokens is owned by Solana insiders. तो ये इतना बड़ा जो concern है and cryptocurrency market is also is not really performing well. तो Solana का performance भी काफी अच्छा नहीं है. We can understand that the entire cryptocurrency market is down. But what's the way forward for investors? Research material जो हम provide करते हैं उनके लिए, what are the top 3 points? What are the top 3 takeaways from this outage? So basically, the main takeaway is that Solana is still developing. They still have to fix a lot of bugs which they are encountering every outage. And if you look at other networks, they are much more decentralized. If you look at Cardano has doubled the number of nodes that Solana has.
So they have double number of nodes actually. And if you look at Ethereum 2.0, which we are expecting, going to break the market. I mean, this is going to almost outlaw all this, systems which we have right now, layer 2 solutions. Once we have Ethereum 2.0, we are having a lot of expectations because, that will be all proof of stake. So even Solana, if you see, is not proof of stake, it's proof of history. Exactly. So since we are talking about proof of history, and we have seen recently newspaper reports have suggested that the NFT volumes on Solana network has surpassed that of Ethereum. Since we are talking about a robust network and Solana is a layer 2 solution, what is the reason there is an upsurge in the NFT volumes? Because Ethereum का network भी बहुत ही widely adopted है as far as NFTs are concerned. See, if you look at the main reason is that, the cost. The cost on Solana network is very less compared to Ethereum. Suppose मैं वही ट्रांजेक्शन इथेरियम में करता हूँ तो इट विल कॉस्ट $200. इफ आई डू द सेम ट्रांजेक्शन इन सोलाना इट विल कॉस्ट $0.0025. सो डिफरेंस इज ह्यूज. People are going towards Solana. Why? They are saving cost in terms of selling and buying NFTs. So Vivek, since you have highlighted that the merge which is Ethereum 2.0, अगर वो इफेक्ट होता है तो वहाँ पर लेकर लेयर 2 सॉल्यूशंस जो प्रोवाइडर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा और उनका रेलेवेंस भी खतरे में है. Say for example, you're talking about Solana, or for that matter, Polygon, or for that matter, Cardano, or any other layer 2 solution provider. So if you look at the layer 2 solutions, why they still exist? They exist because there is a problem with layer 1. All right. Because there is a problem with Ethereum. Once all these problems are solved, once Ethereum becomes a proper network, with low gas fee or high transaction speed, so in that case, why would I need some other network? Why would I go as a developer, as a programmer? Why would I go to some other network if I have Ethereum? Because every programmer, the first choice is Ethereum network because it all started with Ethereum. So most of the programmers, developer community, they are comfortable with Ethereum right now. So let's see what luck this Ethereum 2.0 brings for the entire crypto universe. So there has been many outages in Solana, like an outage that lasted for more than 17 hours in September 2021, just to take you back. So where attackers flooded the network with roughly around 4 lakh transactions per second, which the Solana network couldn't handle. The Solana is still in early development stages, and we will have to wait and watch how the Solana network evolves with time, like Bitcoin has improved for DDoS attacks. Alright, thank you so much Vivek for being part of this interaction. आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर आउटेज कितने सारे आउटेजेस हुए हैं और उसका रीजंस क्या है और हमने हमारे व्यूअर्स को ये भी बताया कि यहाँ पे लेकर कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट बेट्स. Thank you so much for being part of this interaction. Keep watching Crypto TV for more such interesting analysis. This is Manoj Dhara signing off. Thank you. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. શું તમે જાણો છો કે બિટકોઇન સૌથી પહેલું ક્રિપ્ટોકરન્સી છે? ઓફકોર્સ, આટલું તો તમને ખબર હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે એક બ્રિટિશ એન્જિનિયર $280 મિલિયન કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સી ફેંકી દીધી હતી? હાય ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ રહ્યા છો ક્રિપ્ટો ટીવી અને હું લાવી છું ક્રિપ્ટોની ગલીથી શોધીને ક્રિપ્ટોની અમુક એવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો જેના વિષયમાં તમને જાણ પણ નહીં હોય અને જાણ પણ હશે તો પણ પૂરી એવી જાણકારી નહીં હોય. અને આ શોધ કરતી વખતે એવી ઘણી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો સામે આવી છે કે તમે પણ કહેશો, વાહ હોવેલ ભાઈ, તમે તો કમાલ કરી નાખ્યું. દોસ્તો,
આ સાચી વાત છે કે જેમ્સ હોવેલ ન્યૂપોર્ટ વેલ્સ સ્થિત બ્રિટિશ ઇન્જિનિયર 2013માં તેની ઓફિસની સફાઈ કરતી વખતે આકસ્મિક રીતે $280 મિલિયન કરતાં વધુ મૂલ્યના 7,500 બિટકોઇન સાથેની હાર્ડ ડ્રાઈવ ફેંકી દીધી હતી. લો, ગઈ ભેંસ પાણીમાં. અને આ ક્રિપ્ટો માઇનર દાવો કર્યો હતો કે તેને પાસે 2 સરખી હાર્ડ ડ્રાઈવ હતી અને તેને તેના બિટકોઇનને એક્સેસ કરવા માટે જરૂરી ક્રિપ્ટોગ્રાફિક પ્રાઇવેટ કી ફેંકી દીધી હતી. બોલો, કોઈ આટલું પણ લાપરવાહ હોઈ શકે? હવે આનું શું કરવું? તે ફરી એકવાર સ્થાનિક અધિકારીઓને લેન્ડફિલ સાઇટમાં ઉપકરણ શોધવા દેવા માટે સમજાવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. વિચારવું પડશે. તેને વિશ્વાસ છે કે આટલા વર્ષો પછી પણ બિટકોઇનને પુનઃપ્રાપ્તિ કરી શકશે. હવે આનું શું કહેવું? કોન્ફિડન્સ કે ઓવર કોન્ફિડન્સ? અત્યાર સુધી ન્યૂપોર્ટ સિટી કાઉન્સિલે તેને લેન્ડફિલ સાઇટ શોધવા દેવાની ઇનકાર કર્યો છે, જે જેમ્સ માને છે કે તેની હાર્ડ ડ્રાઈવ ત્યાં છે. તે કહે છે ડ્રાઈવની અંદરના પ્લેટર હજુ પણ એકબંધ હોવાની શક્યતા છે, એટલે એમના ડેટા પુનઃપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ડ્રાઈવને ફરીથી બનાવી શકે છે અથવા પ્લેટરમાંથી સીધો ડેટા વાંચી શકે છે. ભાઈ, હોવેલ્સની ઓપ્ટિમિઝમની તો હદ થઈ ગઈ. ન્યૂપોર્ટ સિટી કાઉન્સિલ મિસ્ટર હોવેલ્સની વારંવારની વિનંતીઓને નકારી કાઢી છે કે તેને કચરાના ઢગલામાંથી જોવા દો, જેમે તેના 8 વર્ષ પહેલા ફેંકેલી હાર્ડ ડ્રાઈવ હોઈ શકે છે. તો આપણા હોવેલભાઈ પાસે આનો પણ જવાબ છે. 35 વર્ષીય જેમ શહેરને 25% બિટકોઇન આશરે $70.8 મિલિયન ની કિંમતના દાન કરવાની ઓફર પણ કરી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ ફાયદો થયો નથી. આ તો કમાલની ઓફર છે. મજા આવી ગઈ. ભાઈ, માનવું પડે હોવેલ્સભાઈને. શું મગજ દોડાવ્યું. પણ કાઉન્સિલના પ્રવક્તાઓ જણાવ્યું હતું કે કાઉન્સિલે મિસ્ટર હોવેલ્સને અસંખ્ય પ્રસંગોએ કહેવું છે કે અમારા લાઇસેન્સિંગ પરમિટ હેઠળ ખોદકામ શક્ય નથી અને ખોદકામમાંથી આસપાસના વિસ્તાર પર પર્યાવરણને ભારે અસર થશે. લેન્ડફિલના ખોદવાની, કચરાને સંગ્રહિત કરવાની અને ટ્રીટ કરવાનો ખર્ચ લાખો પાઉન્ડ્સમાં થઈ શકે છે. તો તે શોધવાની અથવા તે હજી પણ ડ્રાઈવની ચાલુ પરિસ્થિતિમાં હોવાની કઈ ગેરંટી નથી. મિસ્ટર હોવેલ્સ હજુ પણ કાઉન્સિલને મનાવવા માટે છેલ્લા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તે કહે છે કે તેને એક હેજ ફંડ મળ્યું છે જે ખોદકામ માટે ફંડ્સ આપવા તૈયાર છે. તેથી કાઉન્સિલને તેના માટે ચૂકવણી કરવી પડશે નહીં. તેને કહેવું, હું નિર્ણય લેનારાઓ સાથે બેસીને તેમની સમક્ષ અમે જે કરવા માંગીએ છીએ તેના માટે એક એક્શન પ્લાન રજૂ કરવાની તક ઈચ્છુક છું. મને આશા છે કે તમે તે કરી શકશો. હવે આવી મીટિંગમાં શું થાય એની તો તમે જાણ હશે જ. કાઉન્સિલ હવે શું નિર્ણય લેશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે, પણ એ કહેવું જરૂરી છે કે સાહેબ, ઉમ્મીદ પર તો દુનિયા કાયમ છે. કમસે કમ હોવેલભાઈની તો. ફરી લઈને આવીશ મસાલેદાર ક્રિપ્ટો ફેક્ટ્સ. ત્યાં સુધી જોતા રહો ક્રિપ્ટો ટીવી, દુનિયાનું પહેલું એક્સક્લુસિવ ક્રિપ્ટો ચેનલ. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma and today we are going to talk about consensus algorithm. Consensus is key to the decentralized participation in the distributed ledger environment. The participants should arrive at a consensus about what is good and should be included and what is bad should be excluded. It is important for the entire community to function in an orderly fashion and realize the purpose of the collaboration. Without consensus, there will be chaos. Chaos would be detrimental to the sustainability of the system. In the blockchain ecosystem, a consensus algorithm is a defined programmed procedure. It is a set of rules which defines how the peer participants of the peer-to-peer network conduct themselves in the environment. These rules will help the participant decide on which of the transactions are to be accepted to be included in the immutable digital ledger
and which ones are not to be. Why is a consensus algorithm needed? The peers in the network will never know each other. The problem, therefore, is how to establish trust among the participants without disclosing their identities. In order to achieve that, the activities allowed to one needs to be restricted and strictly defined. So once you know that the other participant can't really misbehave, you can participate in the network with trust and together can achieve reliability. This will help a larger participation and will in turn lend security to the entire process. The consensus algorithm has 5 objectives in the DLT environment. First of those objectives is that it wants to achieve unified agreement among participants. In centralized systems, trusting the central authority is mandatory. Here, the participants need to trust the system, and they need to do this without having to establish trust among each other. Only then this environment can achieve unified agreement. Secondly, the network participants should be motivated to achieve common alignment of all the economic incentives. This is a must to develop a self-regulating system which can be entrusted. Thirdly, the system should not allow anyone to cheat. It must prevent double spending. Fourthly, the system is supposed to be fault tolerant. So much so that if a section of the network fails to perform at any point of time, the rest of the network should be able to continue business seamlessly and keep providing consistent and reliable results. Last but not the least, the consensus algorithm must be designed in a way that ensures equality among all participants so that no one can take any unfair advantage from the system. Safety first. The algorithm are capable of generating valid results and does not entertain false attempts. It should be participatory, without any discrimination towards any participant, and should allow and incentivize participation. Egalitarian. It must treat every participant as an equal member of the whole community. A faulty consensus algorithm will split the decision of the community and may even result in the duplication of the records, creating conflicting transaction history and failing to perform as a single source of truth. This results from failure of the community to arrive at a consensus. Subsequently, this will make some nodes or participants confused about the right course of action and result in malfunction. A section of the community could get conflicted and will increase the latency in internodal communication, dispute resolution, increasing the application latency and reducing the network efficiency. In other terms, it will make the objectives of the blockchain project fail. Consensus algorithms are commonly termed as proof of something. The most popular one is the first one used by Bitcoin blockchain, proof of work. Others are proof of stake, proof of authority, proof of history, proof of activity, proof of identity, proof of burn, proof of elapsed time, proof of importance, and many such. Some are also known differently as delegated proof of stake, least proof of stake. Some have uncommon names like Byzantine fault tolerance, direct acrylic graph, Tendermint, Ouroboros, and some even call themselves Grandpa. Grandpa may sound funny, but it's actually an acronym for ghost-based recursive ancestor deriving prefix agreement. Thank you. We will keep coming back with more interesting stories. I'm Ruchi Sharma. Have a great day.
क्रिप्टो की मेल डोमिनेटेड दुनिया में वुमनिया भी अपनी जगह बना रही है बॉस। ऑलरेडी आईटी वर्ल्ड में विमेन का कंट्रीब्यूशन डे एंड नाइट बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉन्कर द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। और क्यों ना करे भाई, पायलट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपना परचम लहराने के बाद अब क्रिप्टो वर्ल्ड में भी हमें बराबरी करनी है, यानी कि जगह तो बनानी ही होगी। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। हाय, मेरा नाम है यशस्वी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। और इस स्पेशल सीरीज में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस के बारे में, जिनकी अचीवमेंट्स को देखकर शायद इंडिया की पोटेंशियल क्रिप्टो क्वीन भी इंस्पायर हो जाए और क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस में अपना सिक्का जमा दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉरी। फर्स्ट पियर्स क्रिप्टो क्वीन का नाम है हेस्टर पियर्स। जैसे इंडिया का रेगुलेटर सेबी है, वैसे ही अमेरिकन रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की सेकंड टर्म कमिश्नर है मिस पियर्स। जिसे हमारे घर में चाहे कितने भी लोग कमाने वाले क्यों ना हो, पर मम्मी के अप्रूवल के बिना कभी बजट अप्रूव होता है। वैसे ही पूरे अमेरिका के स्टॉक्स और क्रिप्टो के हर छोटे बड़े प्लेयर्स को इन मम्मी के डर से रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। अरे मियाँ, तभी तो इनका निकनेम है क्रिप्टो मॉम। ऐसे ही नहीं पड़ा है। इस क्रिप्टो मॉम ने इकोनॉमिक्स में बीए किया है और येल लॉ स्कूल से पढ़ी है वकालत। और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन की ये है तुर्रम खान। इंटरेस्टिंगली, जब पूरी दुनिया अधूरे नॉलेज के साथ क्रिप्टो को लेकर के नेगेटिविटी फैला रही थी, तब मिस पियर्स ने क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर बड़ा ही सेंसिबल अप्रोच अपनाया था और कहा था कि यूएस एंड दुनिया वाले एज फार एज क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न्ड, वी कैन डू मच बेटर। जैसे यूएस अपने डॉलर से वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल करता है, वैसे ही यूएस एसईसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। 2025 तक हेस्टर पियर्स यूएस एसईसी की कमिश्नर रहेंगी। तो लेट्स सी ये क्रिप्टो मॉम क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या इंकलाब लेकर के आती हैं, क्योंकि इनके नॉर्म्स का इंडियन क्रिप्टो बिल पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ेगा। लेट्स होप कि क्रिप्टो मॉम का मूड जो है वो एकदम तरोताजा रहे, ताकि हम इंडियंस को भी अच्छा खासा फायदा हो सके। Let's move on to the next crypto queen, महबूबा। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाती हूँ। अरे आपको कहा था ना कि स्पेशल सीरीज है। जानना चाहते हैं इन फियर्स क्रिप्टो लेडीज के बारे में, तो वॉच आउट दिस स्पेस फॉर मोर। तब तक के लिए दिस इज मी यशस्वी आचार्य साइनिंग आउट। Keep watching Crypto TV and do not forget to like, subscribe and hit the bell icon. वापस यहीं आना अगर क्रिप्टो क्वींस के बारे में है जानना। अरे मनोज, ये हटाओ ना न्यूज़पेपर। अरे क्यों? मेरी बात सुनो, यू विल बी सो इम्प्रेस्ड एंड सो प्राउड ऑफ मी। चलो बताओ आपकी क्या बात है। मैंने कहा था ना कि मैं पूरी रिसर्च करके आऊंगी क्रिप्टो करेंसी पे। That's great. बहुत ही बढ़िया रिसर्च की है और मैंने ये देख लिया है कि जैसे बिटकॉइन इतना ऊपर चढ़ रहा है, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगी। बिटकॉइन? लेकिन मनोज, छोटी सी एक बात, एक प्रॉब्लम है जो मुझे तंग कर रही है। बताइए। 50 लाख के आसपास रहती है इसकी वैल्यू। इसे खरीदने के लिए तो मुझे अपनी जायदाद बेचनी पड़ेगी। हम बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो एस्पेक्ट है वो वी विल ट्राई टू डिस्कस द फंडामेंटल वैल्यू अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी, ना ही कि हम गिव एनी रिकमेंडेशन अबाउट इट। ठीक है, आपने जैसे बिटकॉइन के बारे में कहा तो यू आर अंडर अ ब्रॉडर कंसर्न की 50 लाख की एक कॉइन है, तो आपको आपकी जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है। पक्का ना? यू आर नॉट सपोज टू सेल योर फ्लैट या फिर जो भी है। बिटकॉइन आप 0.0000001 which is known as a Satoshi के वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। इतनी छोटी वैल्यू पर? इनके जो फाउंडर है सातोशी नाकामोटो, उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन किया। मिस्ट्री मैन, देखो मैंने किया ना, जो कि हम भी उनको भी ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। तो मिस्ट्री मैन तो है ही वो। और इनफैक्ट लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया था कि जहां पर बिटकॉइन को एक अच्छे वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन एज लो एज 100 रुपीज। व्हाट आर यू सेइंग? एक सेकंड,
हाँ, 500 का बिटकॉइन तो मैं ले सकती हूँ। बिल्कुल, आप ज्यादा भी खरीद सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर दिस थिंग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। 2010 मई 22 को एक बंदे का नाम लेस्ले हेंस है, उन्होंने पापा जॉन्स के 2 पिज्जा खरीदे। आपको मालूम है कितने में? कितने में? 10,000 बिटकॉइंस में। व्हाट? 10,000 बिटकॉइंस मतलब 10,000 इंटू 50 लाख, मतलब मैं तो इतने जीरोस भी नहीं गिन सकती। जीरो की गिनती में नहीं और चलते। वो उस इंसान को तो शॉक लग गया होगा बाद में। आई थिंक इससे ज्यादा स्मार्ट तो वो थे, क्रिस्टोफर कॉच। 2009 में उन्होंने द एक्सीडेंटल मिलेनियर, या द एक्सीडेंटल मिलेनियर, $26 इन्वेस्ट किए 2009 में, उसके बाद भूल गए वो, और 4 साल बाद 5,000 बिटकॉइंस की वैल्यू हो गई थी लगभग $1 मिलियन, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1,000 बेचे, एक अपार्टमेंट खरीदा, और आज भी उनके पास 4,000 बिटकॉइन है। मुझे अगर जहां तक मुझे याद है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको रोका था। और अच्छा वो पहली बार गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी थी। हमेशा अच्छा डिसीजन नहीं होता है गर्लफ्रेंड की बात सुनना। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करके देयर आर मेनी पीपल हु हैड मेड वैल्यू बिटकॉइन से लेकर, जैसे हमने एल सैल्वाडोर एक कंट्री का अपने नाम सुना है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। एल सैल्वाडोर हैज एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। सो देयर आर मेनी फ्यू करेंसीज जिसको एक दर्जा मिला है, क्योंकि बिटकॉइन इज द नंबर 1 करेंसी इन द प्लैनेट। आपने देखा, इनफैक्ट उनकी ट्रेजरी में लगभग 1300 से के करीब बिटकॉइंस भी ऑफिशियली वो होल्ड करते हैं। वाओ। मैं सोच रही हूँ ऑन द सेकंड थॉट, क्यों ना मैं भी किसी ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करूँ जिसके जो प्राइसेस बिल्कुल चांद तक जाए। मून कॉइन में इन्वेस्ट करूँ क्या? मैडम, देयर आर मेनी करेंसीज दैट विल ऑफर यू टू टेक यू टू द मून, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि आप उतरोगे कैसे? मून से जमीन पे उतरते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट आवर अदर करेंसी दैट इज नोन एज ETH, आल्सो नोन एज इथेरियम। तो वो तो ब्लॉकचेन है ना? बिल्कुल, या करेंसी है। हम तो करेंसी की बात कर रहे हैं। This is how we step in. We are here to explain the fundamentals of cryptocurrencies. So Ethereum एक प्लेटफॉर्म है, और उसका जो कॉइन जो वैल्यू है that is known as ETH. If you are getting confused, very basic fundamental principle that a coin derives value from its platform. जो भी economic activity a platform does or it considers, उसका impact जो है ना ETH पे आता है। That means उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर आता है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थेरम के बारे में बता दूं। विटालिक बुटेरिन 13 साल के थे, जो इसके फाउंडर हैं। विटालिक बुटेरिन 13 साल में तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। आई थिंक सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम। मैं तो 13 साल में मतलब हार्डली मैथ्स कर पाती थी, टीचर की डांट खाती थी। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। विटालिक बुटेरिन ने उसकी शुरुआत की थी। इनफैक्ट 2 साल के बाद 2015 में उन्होंने इथेरियम को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया। एंड सी दिस, आफ्टर 7 to 8 years देयर आर मेनी कंपनीज, बिग कंपनीज, ह्यूज कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, HSBC उसके साथ में सपोर्टेड है, और वहां पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इथेरियम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बचपन में ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो मैं सोच रही थी क्यों ना डेंटा कॉइन, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया, डेंटा कॉइन में को कंसीडर करूं क्या? आप डॉक्टर हैं? नहीं हूं नहीं, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर्स वाली है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ही आप एक कॉइन खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज डेंटल और डेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, और उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मतलब मेरी एंट्री बैन है उधर। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। आप व्हाइट बेल्ट है या ब्लैक बेल्ट है वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन आगे बढ़े। नो बेल्ट। आपने एक गाना तो सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना है, मुंबई से गई पटना, पटना से गई दिल्ली। जूही चावला तो बहुत बड़े फैन भी रह चुके हैं उसके। तो ऐसे ही ये बिनांस की कहानी है। वो गए चाइना, चाइना से उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, चाइना से गए जापान, जापान से गए US। ओके, वाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इनफैक्ट 2017 में बाइनेंस की जो शुरुआत है वो चाइना में हुई थी, और वहां से लेकर चाइना, एज यू आर अवेयर दैट की क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स में था, और उसको रेगुलेट करने की शुरुआत वो साल से हुई थी। बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर कंसर्न दे मूव टू जापान, और वहां से लेकर ही वाज ड्विंडलिंग बिटवीन जापान, हांगकांग की तरफ भी उनका रुख था। मीनवाइल US ने उनको बैन कर दिया था। और आपको बता दूं, कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अपना नाम बिनांस US कर दिया, और आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और मैं आपको एक और बात बता दूं, उनका जो करेंसी है दैट इज नोन एज BNB। नाम तो याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इजी है। मुझे अमेरिका बहुत पसंद है, और अमेरिका से मुझे याद आया बर्गर्स। यू नो आई एम अ फूडी, तो कुछ बर्गर, गार्लिक ब्रेड, मैंने सुना वूपर कॉइन है, गार्लिक कॉइन है, इनमें इन्वेस्ट करूं, कंसीडर करूं? फिर से मेरा आइडिया खारिज मत कर देना प्लीज। बिल्कुल, एक काम करते हैं, आपके लिए गार्लिक ब्रेड मंगा लेते हैं। दैट इज द ओनली वैल्यू इट कैन डिराइव फॉर यू इफ यू ऑर्डर गार्लिक ब्रेड और यू ऑप्ट फॉर सम स्टूपिड कॉइन्स। तो आप उस पे फोकस मत कीजिए, लेट्स फोकस मोर ऑन स्टेबल कॉइन। मैं आपको बता दूं कि उसका फंडामेंटल वैल्यू कहां से डिराइव करता है। सो विल टॉक अबाउट टीथर। तो टीथर इज अ क्रिप्टो करेंसी जहां पर इट्स अ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? बाकी कॉइन्स क्या
बैलेंस में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप समझो, टीथर derives value, it is associated with USDC। तो उसका मतलब ये है कि अगर समझो से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन और बिटकॉइन की वैल्यू 67,000 पे पहुंच गई है, आपकी रिसर्च के अनुसार आपको ऐसा लगता है कि वो बिटकॉइन की प्राइसेस कम होने वाली है, यू विल बुक प्रॉफिट्स इन बिटकॉइन एंड यू विल पार्क योर मनी इन टीथर। सो टीथर क्या करता है कि बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्टेबल, आई मीन सिंस इट्स अ स्टेबल करेंसी, तो उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है, क्योंकि यूएस की जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है और वहां पर उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता है। सो योर इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड, तो इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। दिस इज व्हाई उसका नाम ही है स्टेबल कॉइन। पर अमेरिका से ना मुझे यूएफओ भी याद आते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या मैं यूएफओ कॉइन में इन्वेस्ट करूं? क्या पता एलियंस खुद मेरे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आए। लेट्स नॉट गेट इनटू द जादू एक्टिविटी एंड वी विल फोकस मोर ऑन। मेरे सारे कॉइन्स आपने रिजेक्ट कर दिए। नहीं, कॉइन रिजेक्ट करने ही है, क्योंकि एकदम आपकी जो रिसर्च है वो एकदम बेकार है। मैंने रिसर्च तो अच्छी की थी। हाँ, रिसर्च अच्छी करी है आपने। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, ओनली एंड ओनली to make our viewers understand the basics and the fundamental principle behind cryptocurrencies, because cryptocurrency investments are highly volatile and it's a very volatile sector. You should be in a very sound position and you should always do your research before investing in cryptocurrencies. So Ruchi, आपका decision खुद लीजिए. You consult your financial advisor before doing any investments. So and let's focus on other aspects. What all aspects and fundamental coins are there that can be explored with us. Blockchain is the biggest innovation in recent times. It can be the biggest opportunity set for next decade or so. And it is defining the start of a new era. Things to ponder upon. Hello and welcome to all the viewers of Crypto TV. I am your crypto host Parvati Nirban, and today we are having a guest on the show of Crypto Masters who has started his journey as an engineer and later formed a company, Lapids Technology, which is primarily into blockchain development and solutions based on it. Hello and welcome to our show, Mr. Lakshman Singh. How are you? I'm good. Hi, Parvati. Thank you for having me here. So let's begin. As you started your journey as an engineer and then turned more specifically towards blockchain development and the solution based on it, firstly, I would like to ask you, how is your journey so far in the blockchain space? Well, it's been great so far. Why? Because we started early on the blockchain, right? It was 2017 and we started working on blockchain and different use cases. I would say we were fortunate enough because we got enough opportunities to work in this space. We started working on crypto exchanges, wallet development, ICO development, and then NFT marketplace development, and then DeFi. So we worked on almost, I think we have touched all the use cases in the crypto industry so far. Okay, primarily only in India or like outside India as well? So we served around 100 customers, across the globe. Okay. So I can say more than 80 countries. Oh, wonderful, wonderful. So you've touched upon all the major use cases of blockchain, right? Exactly. Great. So started with crypto exchange and then ICO development, token development, tokenomics. Nowadays we are developing DeFi and DAO, applications. So journey, obviously, it's been great. So one of the main use cases of blockchain is smart contracts. The development of smart contracts. In fact, the Ethereum platform offers variety of solution based on it, right? So as your specialty also lies in developing and auditing the smart contracts, what are the major issues or the challenges that you face on regular basis, and what are the risks involved? So, the thing is, when we write smart contract, right, the risk is we have to write it securely, right?
because we have to make sure that with the industry growing, technology is changing, right? Every day we are reading so many hacks in the smart contract. So that means we have to make the smart contract which are safe and safe from the future hacks. That is the bigger challenge and bigger issue in this. So how are you trying to achieve that? Like making the smart contract smarter? Exactly. The thing is, we have to bring in best practices to use, right? When we write the smart contract, right? We have to research more on it, right? We have to make more case studies on the hacks and then understand the, hacking patterns, what the hackers are following. Right. Based on that, we have to come up with solutions and we also have to understand all the vulnerabilities that all has happened and known to the industry, right? Okay. After researching and knowing all them, we have to write smart contracts securely and use best practices into it, so that I can say we can the securing a smart contract is not 100% guaranteed though, right? Because every day we will see new hacks and new patterns in the industry. So, but we can reduce this, right, by implementing all the the secure tools into it. Okay. So as you mentioned about the hacks, which happens at smart contract level, basically in the month of April, which I recall, the Beanstalk hack, which is a DeFi project, basically, it was robbed of $182 million in a flash loan, right? And so that entire thing that happened, basically it was writing, the flaw lies in the writing of the smart contract, or it's somewhere else? So primarily it was not in the writing. I would say the pattern was different. So the hacker, they understood, okay, let's use the flash loan, right? And then there was a voting governance in the system, right? So they basically, I would say, they hijacked that, they exploited that, and based on that, they been able to gain majority stake into the project. And the smart contract was built in such a way that someone is having a majority stake into the smart contract, into the project. They can execute the specific code. So code was to withdraw funds, and then they used that. They been able to withdraw funds to their their own wallet. Okay. So I would say the smart contract should have been audited properly, keeping in mind all the vulnerabilities and all the things. Okay. So this basically, the hacker has identified one loophole which was present in the smart contract, and then it went on exploring that, right? Or exploiting that, for that matter, right? Exactly. So how do you suggest to come out of such kind of issues? So the answer is, we need to, invest more into auditing the smart contract, right? Nowadays, we have the agencies who are performing, smart contract auditing services, but, this has to grow in the industry, right? There are two parts of it. One is secure writing, second is auditing it. So using these tools, I think we can reduce it. We can avoid it. Okay. So, how do we identify if there are flaws in the smart contract while writing it, or it is designed to execute a fraud in the system like a rug pull scam? Like, you must be aware of the figures about the rug pull scam in 2021. It was like $2.8 billion that has been pulled out, from these kind of scams, and which is basically somewhere around writing the smart contracts, right? Right. So the problems like rug pull, I think for this particular case, I would say someone who has built a smart contract will not be going for an audit service. If for the sake of that people should trust their application, let's go for an audit. They might have done with biased agency, right? And just for displaying that, okay, we have an audit. So the users can trust the platform, right? So in this case, I would say the people, the end consumer, they have to be, very careful and be more educated on it. So how to identify that? Like if a smart contract is built to actually, do a scam like that? No. What I'm saying is,
they should be educated enough to understand the audit report. So the audit reports are publicly available, right? They can at least understand that. So what that report is saying, can they believe in that report? Is this coming from a authorized or verified auditor? So they can, always cross-check these things. So like we talk about white papers, so same way the audit reports are also publicly available? Exactly. And if these reports are not publicly available, then there is an issue. The public should demand the platform, okay, make your reports available, we have to check it. Okay. So that's a very important information that you've shared, because a lot of people are not aware that there is something like auditing of smart contract happens, and then they are also not aware that they have to go through. And at the same time, I'm sure if people are not aware, they definitely do not know how to understand a smart contract. So right. Any key points, something that you would like to suggest people to actually know, so that they know that they are on the right track? Right. So, the list of vulnerabilities are available. So the investors, like, they can always, keep check on the report. They can match that with the existing, list of vulnerabilities. Second, they can verify the auditor. They can check their history, right? And also they can, instead of putting money into the platform immediately, they should at least monitor the application for a couple of days and see how the things are working, right? I think these are the things which individual can check. So one of the main challenges in blockchain is lack of privacy, which is also delaying its underlying technology adoption. But can any organization function without privacy? Like many companies that work with privacy need to have defined boundaries. Their consumer trust them with sensitive information. So if they are all getting stored at the public ledger, I don't think they will be private anymore. What do you have to say about that? You're right, Parvati. Actually, when their information, the user's information is being stored in a public ledger like a blockchain, then they are not private anymore, right? Anyone can check them. So, I think it is a warning, and it is kind of a, information for the people that when they are using any such application which ask for their sensitive information, which ask for their email, phone number, name and password, right? So they must verify it. Are they keeping it in their private storage, or are they storing that somewhere in a public ledger like blockchain? So if they are storing it in the public ledger, then they should ask for, they should immediately stop using the service either, or they should ask them, hey, stop it. And if the information or the data is being stored in their private storage, then I think they should refer to their privacy policies, because that's where they come to know what are the liabilities of organization they have towards the storing data. Okay, fine. So one of the hot topics that are going on, that is the Ethereum merge, then Terra Luna crash. I'll ask you one by one. First, Ethereum. So Ethereum merge is facing a lot of problem, as we all know, and the stocks are also down over 9% today. So what are the issues they have? Will it still delay, like the June-August testnet? Will that happen? Or what are the implications? So the thing is, upgrade is being done in several steps, right? It is not just a one-step process. There are multiple steps involved into it, right? And then I think they have around 64, Beacon chain available, and with that, I think now the developers can also start testing it, right? I believe that by the time of August, I think they will be ready with the merge, right? So the delay, I think there will not be any delay. So you think it is going to be on time? Yes. Now I think it's already being done. There are so many delay in this, and I think they have been multiple testing being done in the past. So developers are now making sure this will be the merge will be completed on the time. Right. And related to that, the same thing, because Ethereum merge is happening with the help of a fork, the forking mechanism, and the very famous Terra Luna crash.
that currently Do Kwon is trying hard to revive and rather rebirthing it all over again. There are speculations about burning the existing coin. There is also talk about coming up with entirely a new chain, and that's why I mentioned about the fork. So what are they trying to achieve? Does it look feasible in terms of starting the whole system all over again? Why am I asking? Because Ethereum is going from the upgrade 1 to 2.0, and the merge has already faced so many challenges that I cannot really discuss that. So in my understanding, what Terra is trying to do won't be really a easy ride. Not sure if Terra actually can walk all over again. That's my perspective. So I think it would be quite early to say something on that. Will they be able to completely recover from the situation they are today? Because what they are doing right now, it is clear they are hard forking from their original blockchain. They are now creating a complete new blockchain where the ticker will be different and the older one will be called as a Luna Classic. So I would say if I think you have heard also the news of Binance. They are also supporting them and with the airdropping and all. So that means the distribution will become easy, and if that happens, then there will be the more supply in the market, right? And if there will be the more supply, then I think price will go a little down in the beginning. But as soon as the people will come and start using the Luna token again in the network, then there will be a more demand for it. So that complete depends on how the people react to it, what is the supply, what is the demand into the market, and based on that price will decide its place in the market. But you still think that they can actually again setting up a new chain and then issuing the whole coins and then minting the older coins, then burning process? You think they are able to come up with everything? They are not burning the older coins. What they are doing is they will be distributing the new coins to the existing holders, right? And saying this, will they be able to achieve the older position? I think wouldn't be fair at this stage, because they are just creating a new blockchain, and this will go again through the phases and processes. The people will adopt it. Now the new Luna will have the market, will have the publicity, but the old value will not be revived, right? So that will take time. So that they can replace. I understand where are they coming from, because they don't want people to be at the losing end, and they want to revive the entire system, and that's why they are coming up with this kind of solution. But will they have the same kind of market value? I really doubt that. No. Yes. No. So that means they will be starting from a scratch. The value will be starting from a scratch now. Right. So then the proportion of the earlier coin and where it reached to new coins that they will be issuing, and then making that feasible, like, really doesn't look very practical to me. It will be a new journey for them. It will be a new journey for them. But the thing is, what they do have an advantage is they have a bigger community, right? So when with the first blockchain, they didn't have community, so they built everything from scratch. Now what they have to do is they already have a community, they already have existing holders. They will be airdropping and distributing tokens and coins, right? So the price will take time. Now they just have to deal with the price and the value of it. Okay, fine. Thank you so much. Thank you for being here on our show, and I'm looking forward to see you more in our studios so that we can have more technological discussions like this. Thank you so much. Thank you, Parvati. It's a pleasure talking to you. Thank you. Same here. Thank you. This was all from my side on today's episode. For more technical discussions, expert views, and current crypto scenario in India and globally, don't forget to watch Crypto Masters with me, Parvati Nirban. Keep watching and keep enhancing your knowledge of crypto only on Crypto TV. Bye-bye.
Hello and welcome to Crypto Stories, where your favorite storyteller, Vinita Chatterjee, is going to take you into the mind-blowing world of stories from around the world of digital currency. Well, today we are going to discuss about a story that is going to give a treat to all the dog lovers in the world. We are going to talk about Shiba Inu. So let's find out what is Shiba Inu all about. Shiba Inu, it is an Ethereum-based altcoin, and it is also considered to be an alternative to Dogecoin. In fact, the proponents of Shiba Inu tout it as Dogecoin killer. Both Shiba Inu and Dogecoins are considered as meme coins, which are cryptocurrencies. While Dogecoin was launched in December 2013, Shiba Inu was created in August 2020 by an anonymous individual or a group called Ryoshi. The price of Shiba Inu soared more than tenfold in October 2021, giving it a market capitalization of $35 billion and ranking it as the 10th most famous cryptocurrencies by this measure. Now let's find out, how did Shiba Inu come into the limelight? A tweet from Tesla founder Elon Musk on October 4, 2021 featured a picture of his new Shiba Inu puppy known as Floki, which provided the initial impetus for the meme coin's price surge. As Musk is one of the most high-profile supporters of Dogecoin and the self-proclaimed Dogefather, his cryptic tweets often result in heightened volatility in the crypto space. Now, it remains to be seen whether Shiba Inu will indeed become the Dogecoin killer that its growing community of supporters known as the SHIB Army expects. But at least in October 2021, the stunning price gains of this previously obscure altcoin made Shiba Inu the tail that wagged the Dogecoin. Now let's understand Shiba Inu in depth. The guiding tenets of the Shiba Inu ecosystem are spelled out in a woof paper, presumably a play on white paper available at the shibatoken.com website. According to this paper, Shiba Inu was developed as an answer to a simple question. What would happen if cryptocurrency project was 100% run by its own community? Its founder, Ryoshi, attributes its origins to an experiment in decentralized, spontaneous community building. This is what Ryoshi had to say. The power of collective decentralization can build something stronger than a centralized team ever could create. The SHIB Army's base of over 500,000 members embrace its founding principles, which are: the project started from zero, with zero, in the spirit of creating something out of nothing. It was not founded from an existing community or any pre-assembled team. This professed a love for all Shiba Inu dogs. As Shiba Inu is an Ethereum-based token that is created on and hosted by the Ethereum blockchain instead of its own blockchain, Ryoshi states in the paper that he chose to build the Shiba Inu ecosystem on Ethereum because it was already secure and well established, and it allowed the project to stay decentralized. The Shiba Inu ecosystem consists of the following three tokens. First is Shiba Inu or SHIB. This is the project's foundational currency, starting with a supply of 1 quadrillion, yes, which is equal to 1,000 trillions. Ryoshi locked 50% in Uniswap for liquidity purposes and then sent the other 50% to Ethereum's co-founder Vitalik Buterin for safekeeping. In May 2021, Buterin donated more than 50 trillion Shiba Inu coins, and then, which was worth $1 billion, to a COVID-19 relief fund in India, when the nation was reeling from the Delta variant of the coronavirus. Shortly thereafter, Buterin also burned or permanently removed circulation of 40% of Shiba Inu's total supply to a so-called dead wallet. The second token in the Shiba Inu ecosystem is Leash. Leash represents the other end of the ecosystem spectrum, with a total supply of 107,646 tokens as compared with trillions of Shiba Inu tokens. The third token is Bone. Now, Bone fits between the other two tokens in terms of circulation supply, with a total supply of 250 million tokens. Bone is designed to be a governance token
that will allow SHIB Army to vote on upcoming proposals. The Shiba Inu ecosystem also includes Shiba Swap. This is a DeFi platform. Shiba Swap is to provide a safe place to trade cryptocurrencies while remaining decentralized. SHIB and Leash are best purchased and sold through Shiba Swap. Shiba Inu Incubator. This incubator aims to shift the focus beyond popular art forms such as painting, photography, digital rendering, and discovers ways to honor creativity. Shiboshish. These are 10,000 Shiba Inu generated non-fungible tokens or NFTs written on the Ethereum blockchain with different traits that make Shiboshi unique and collectible. Now let's find out how you can buy a Shiba Inu token. First, create a MetaMask. Second, send Ethereum to your wallet by buying directly or transferring from exchanges like Coinbase using the ERC20 network when transferring Ethereum. Third, connect your MetaMask wallet to the Shiba Swap. Fourth, swap your Ether for SHIB, Leash or Bone tokens. Now let's find out what are the considerations we have in mind in order to buy Shiba Inu token. Investing in cryptocurrencies is any which way risky because of their massive volatility and lack of regulation. Investing in altcoin or meme coin space presents an additional challenge because of a lack of differentiation and the fact that most of their value is based on frenetic trading by their fanatical followers. Here are some of the considerations for a potential investor in Shiba Inu. Number 1 is low price. Even after its recent gains, Shiba Inu costs a fraction of a cent, so anyone can buy millions of SHIB tokens with a few $100s. Number 2, limited utility and use case. While its adherents may point out that Shiba Inu based NFTs are already available now, and its Ethereum base might enable smart contracting capabilities in the future, Shiba Inu presently has very limited utility and does not have a compelling use case yet. Number 3, skyrocketing price. Shiba Inu's market capitalization of $35 billion makes it larger than many S&P 500 companies that have been in the existence for decades and that have grown sales and profit for most of the time. Though recently there have been multifarious gains in the Shiba Inu kingdom, but these have been driven by the social media-fueled speculative frenzy as cryptocurrency enthusiasts look for the next big thing. Now let's answer the most interesting question about Shiba Inu. Why is Shiba Inu known as the Dogecoin killer? According to Shiba Inu's founder Ryoshi, it earned the nickname Dogecoin killer because the value of SHIB is primed and ready to overtake the value of Dogecoin. SHIB soared more than tenfold in October 2021, placing it in the top 10 of all cryptocurrencies, as a result of which it attracted a great deal of interest from traders and garnered considerable media attention. Tesla founder Elon Musk tweeted a picture of his new Shiba Inu puppy Floki in the first week of October, generating significant retail investor in the meme token. Crypto investors are enthused by the launch of Shiba Inu NFTs as well as unconfirmed rumors that SHIB would be listed on popular stock and crypto trading app Robinhood. At the moment, Shiba Inu has got its value based mainly on social media-fueled speculative frenzy. Well, that was an in-depth story of our meme-based altcoin Shiba Inu. For all these interesting stories, keep watching Crypto TV with yours truly, Vinita Chatterjee.
Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी, क्रिप्टो टीवी, क्रिप्टो टीवी। माइंड। હેલો, કેમ છો? મસ્ત મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી। હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી, AKA પારો દેવા। જેમ ગોલ્ડ પછી ચાંદીનું નામ આવે તેમ ડિજિટલ ગોલ્ડ એટલે બિટકોઇન પછી ડિજિટલ સિલ્વર એટલે ઇથેરિયમનું નામ આવે। આજે આપણે ઇથેરિયમ શું છે, કોણ બનાવ્યું, શોર્ટ ટાઈમમાં આટલું ફેમસ કેમ થયું, આ બધું આજે એઝ ઓલવેઝ ફન વેમાં લર્ન કરશું। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। 1991 ફિલ્મ સોદાગરમાં બોલિવૂડના બે શેર ધ લેજેન્ડ્સ રાજકુમાર અને દિલીપ કુમારે લાસ્ટ ટાઈમ સ્ક્રીન શેર કરી હતી। બોલિવૂડની જેમ ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં પણ બે શેર રાજ કરે છે। ઇમલી કા બૂટા બેરી કા પેડ, આ લિરિક્સથી સમજીએ તો ઇમલી એટલે ઇથેરિયમ અને બેરી એટલે બિટકોઇન। આજે આપણે ઇથેરિયમ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ। સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ। ઇથેરિયમ એટલે શું? ઇથેરિયમ વર્લ્ડની સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ક્રિપ્ટો કરન્સી છે, જેને ઈથર, ETH ઓર ઇથેરિયમ પણ કહેવાય છે। શું તમને ખબર છે 2015માં લોન્ચ થવાથી આજ દિવસ સુધીમાં ઇથેરિયમની પ્રાઇસ એપ્રોક્સિમેટલી 36,000% વધી છે। સ્ટોક માર્કેટમાં આપણે સ્ટોક 20થી 30% વધે તો આપણે ફોર્મમાં આવી જઈએ। જસ્ટ ઇમેજિન 36,000% નું રિટર્ન એટલે કેટલું થાય બોસ? મગજ ફરી ગયું ને? મારો પણ એમ થાય છે કે હમણાં જે ઇથેરિયમમાં ઇન્વેસ્ટ કરી લઈએ, હે ના? રૂકો જરા, વેટ કરો, પહેલા ઇથેરિયમને પૂરી રીતે સમજી લો। ઇથેરિયમ ફક્ત એક ક્રિપ્ટો કરન્સી નથી। ના 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 રે ના રે ના રે ના 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 રે ના रे ना, इथेरियम ना रहोगे तो ऐसे करोगे, ब्लॉकचेन के सारे मजे कैसे करोगे, इथेरियम है इथेरियम है। ઇથેરિયમ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ એપ્લિકેશન માટેનું ગ્લોબલ ઓપન સોર્સ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ છે। કઈ ટપ્પો ન પડ્યું? ડોન્ટ વરી, હું સિમ્પ્લિફાય કરું છું। સિમ્પલી પુટ, હિસાબ કિતાબની શેર્ડ ડિજિટલ લેજર એટલે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી। આ લેજરમાં ઈચ ન્યૂ ડેટા બ્લોકના ફોર્મમાં એડ થતો જાય છે। આવા બ્લોક્સથી બનતા ડેટા ચેનને બ્લોકચેન કહેવાય છે। ઇથેરિયમ વન ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ પ્રોગ્રામેબલ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ છે।
સિંઘમમાં અજય દેવગન કહે છે ના, जिसमें है दम वो है ફક્ત બાજીરાવ સિંઘમ. ઇથેરિયમ પ્લેટફોર્મમાં પણ બહુ જ દમ છે. આ ફક્ત ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ સ્ટોર કરવાની ડિજિટલ લેજર નથી. ઇથેરિયમનું વિઝન એક ન્યૂ ઇન્ટરનેટ ક્રિએટ કરવાનું છે, જ્યાં કોઈ ટેક જાયન્ટ કે ગવર્મેન્ટ એજન્સીને દાદાગીરી નહીં ચાલે. તમારા પ્રાઇવેટ ડેટાને સલમાનના બિગ બોસની જેમ કોઈ જોઈ ન શકે. આટલું જ નહીં, ઇથેરિયમ પર ગેમિંગ, એન્ટરટેનમેન્ટ, બ્રાઉઝિંગ, ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફાઇનાન્સ અને બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એપ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, જેને ડી એપ્સ કહેવામાં આવે છે. ઇથેરિયમ યુઝર્સ ડી એપ યુઝ કરવા માટે ફીસ ભરે છે. આ ફીસને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં ગેસ કહેવામાં આવે છે. શું તમને ખબર છે, વર્લ્ડના 93% ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફાઇનાન્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઇથેરિયમ પર કરવામાં આવે છે. શોર્ટ ટાઈમમાં ઇથેરિયમને ફેમસ થવાનું કારણ છે સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ એટલે થર્ડ પાર્ટી વગેર કમ્પ્યુટર કોડથી થતો બે પાર્ટી વચ્ચેનું અગ્રીમેન્ટ. મિયા બીવી રાજી તો ક્યાં કરેગા કાઝી. ઇથેરિયમ બ્લોકચેન પર સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સનો સૌથી મોટો ફાયદો, અહીંયા ક્રિપ્ટોગ્રાફીના કારણે ફ્રોડના જરા પણ ચાન્સ નથી. પ્લસ તમારે વચ્ચે કોઈ થર્ડ પાર્ટી ના રાખવી પડે. ઊંધિયાથી લઈને અંડર વોટર સબમરીન સુધી તમારા કંઈ પણ સેફટી ટ્રેડ કરવું હોય તો સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ હે ના. શું તમને ખબર છે, ઇથેરિયમના ક્રિએટર વર્લ્ડના વન ઓફ ધ યંગેસ્ટ ક્રિપ્ટો બિલિયનર છે. અત્યારે એમની એજ ઓનલી 27 યર્સ છે. તેમનું નામ છે વિતાલિક બુટરીન. આ રશિયામાં પેદા થયા અને કેનેડામાં મોટા થયા. એમની એક વાત પર તો તમને સલામ કરવાનું મન થશે. 2021માં વિતાલિક ભાઈએ ઇન્ડિયન કોવિડ રિલીફ ફંડને લાખો નહીં, કરોડો નહીં, ખરબો રૂપિયા ડોનેટ કર્યા હતા. $1.14 બિલિયન ટુ બી એક્ઝેક્ટ. સલામ છે બોસ. જેમ સુપરસ્ટાર એન્ડ અર થલાઈવા રજનીકાંતની રોબોટ ફિલ્મ પછી અક્ષય કુમાર સાથે રોબોટ 2.0 ફિલ્મ આવી, તેમ ઇથેરિયમ 2.0 પણ બહુ જલ્દી લોન્ચ થવાનું છે. ઇથેરિયમ 2.0 નું બીજું નામ છે સેરેનિટી. કોઈ પણ બ્લોકચેનને 3 ફેક્ટર્સ પર ઇવેલ્યુએટ કરવામાં આવે છે: સ્કેલિંગ, સિક્યોરિટી એન્ડ ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન. સ્કેલિંગ એટલે પર સેકન્ડ કેટલા મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવે છે. સિક્યોરિટી એટલે આ હેકિંગ અને ફ્રોડથી કેટલું સિક્યોર છે. અને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એટલે કે આને કોઈ એક કંપની, ગવર્મેન્ટ કે વ્યક્તિ ઓન નથી કરતું. ઇથેરિયમમાં કરન્ટલી સ્કેલિંગનો ઇશ્યુ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વિઝા પર સેકન્ડ 1700 ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરે છે. વિઝાની સ્કેલિંગ થઈ 1700 TPS, જ્યારે ઇથેરિયમ કરન્ટલી ઓનલી 15 TPS એટલે કે 15 ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર સેકન્ડ હેન્ડલ કરે છે. ફિકર નોટ, 2022માં જે ઇથેરિયમ 2.0 આવે છે ના, તે પર સેકન્ડ 15,000 ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરશે. બાબા રે, ક્યાં 15 TPS થી 15,000 TPS પર પહોંચી ગયા. ગજબ છે ના બોસ. એક વાત તો નક્કી છે, 2022માં ઇથેરિયમ પ્લેટફોર્મ તો ફૂલ સ્પીડમાં ભાગવાનું છે અને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં કંઈ એક તૂફાની કરવાનું છે. બસ આજે અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. ક્રિપ્ટો વર્લ્ડથી અપ ટુ ડેટ રાખવાની પ્રોમિસ સાથે હું પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો તમારી રજા લઉં છું. ફરી મળશું ક્રિપ્ટો વર્લ્ડના એક્સાઇટિંગ ફેક્ટ્સ સાથે. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. એન્ડ કીપ વોચિંગ ક્રિપ્ટો TV. एक कंट्री जो वोल्केनोस के लिए जानी जाती है, ब्लॉकचेन की दुनिया में धमाके कर रही है. सोचिए कैसा हो अगर एक पूरी बिटकॉइन सिटी हो जहां सारे लेन देन क्रिप्टो करेंसी में हो, जहां कागजी नोट का कोई नामो निशान ही ना हो, बल्कि सबके वर्चुअल वॉलेट में
क्रिप्टो करेंसी हो, वॉल्केनो के बेस पर बना ये शहर बिटकॉइन की शेप में हो। हाउ एक्साइटिंग! क्या हुआ, किसी सपने जैसा लग रहा है? ना ना, बहुत जल्द ये रियलिटी बनने वाला है। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सब डिटेल में बताती हूँ। एल साल्वाडोर इकलौती कंट्री है जहां बिटकॉइन लीगल टेंडर या कहीं लीगल मनी है। वहां के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने ये अनाउंस किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पर बेस्ड एक पूरी सिटी क्रिएट करना चाहते हैं। आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू विल लव इट। सोचिए, टूरिस्ट लाखों खर्चते हैं वोल्केनो देखने के लिए, लेकिन ये बिटकॉइन सिटी गल्फ ऑफ फोंसेका नाम के वोल्केनो के पास लोकेटेड होगी। इमेजिन, आप सुबह उठकर खिड़की खोलते हैं एंड यू सी अ वोल्केनो। वाओ! वैसे वोल्केनो के पास इस सिटी के पावर प्लांट को सेट करने के पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है। ये वोल्केनो इस सिटी और बिटकॉइन माइनिंग दोनों को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आप सोच रहे होंगे कि भला एल साल्वाडोर का इतना इंटरेस्ट क्यों है क्रिप्टो करेंसी में और क्यों सेटअप की जा रही है ये सिटी? तो चलिए आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं और थोड़ा एल साल्वाडोर के बारे में बताते हैं। एल साल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जो अपने वोल्केनोस के लिए फेमस है और ट्रेडिशनली शुगर एंड कॉफी एक्सपोर्टर के तौर पर जानी जाती है। जून में यहाँ एक लॉ पास किया गया जिसके मुताबिक किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के बिजनेसेस के लिए बिटकॉइन को बतौर पेमेंट एक्सेप्ट किया जाने लगा। 7 सितंबर को बिटकॉइन को लीगल मनी बना दिया गया। मतलब अब कॉफी, ग्रोसरीज, गैसोलीन और बाकी एसेंशियल्स की खरीदारी के लिए भी बिटकॉइन एक्सेप्ट किए जाने लगे। इतना ही नहीं, टैक्सेस भी बिटकॉइन में पे किए जाने लगे और बिटकॉइन सेल से की गई अर्निंग्स पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वाओ! आप जानकर हैरान होंगे कि एल साल्वाडोर में बैंक अकाउंट से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स हैं। जरा सोचिए, हाउ अमेजिंग इज दैट। इतना ही नहीं, आज की तारीख में 3 मिलियन या कहें साल्वाडोर की 46% पॉपुलेशन ने चीवो बिटकॉइन वॉलेट डाउनलोड किया है, जबकि 2017 में सिर्फ 29% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट्स थे। एल साल्वाडोर की ट्रेजरी में 1120 बिटकॉइंस है जिनकी टोटल वर्थ है $66 मिलियन। सो बेसिकली बिटकॉइन की तरफ इस कंट्री का झुकाव इसलिए है ताकि एल साल्वाडोर में फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, इनोवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े। ये तो बात हुई एल साल्वाडोर के बैकग्राउंड और बेस की। अब बिटकॉइन सिटी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये बिटकॉइन सिटी एक फुल फ्लेजेड मेट्रोपोलिस होगी जहां रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज के साथ साथ रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट और रेल सर्विस तक होगी। इस सिटी का नक्शा और बनावट भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये सिटी एक कॉइन की तरह सर्कल शेप में होगी और इसके सेंटर में एक प्लाजा होगा जो कि बिटकॉइन का ह्यूज सिंबल होगा। इतना ही नहीं, इस शहर में कोई इनकम, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स या पेरोल टैक्सेस नहीं होंगे। वाओ, दिस इज व्हाट आई कॉल अ ड्रीम सिटी। इसके अलावा $1 बिलियन वर्थ बिटकॉइन बॉन्ड इशू किए जाएंगे जो कि लिक्विड नेटवर्क पर डेवलप्ड एक टोकनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इनमें से $500 मिलियन एनर्जी कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ बिटकॉइन माइनिंग पर लगाए जाएंगे और बाकी के $500 मिलियन और ज्यादा बिटकॉइन खरीदने पर। अब जहां इतने हैवी अमाउंट की बात हो रही हो, जाहिर है वहां सिक्योरिटी और इशुएंस का मुद्दा भी सामने आएगा। इसीलिए एल साल्वाडोर में इससे रिलेटेड सिक्योरिटी लॉज बनाए जाएंगे। साथ ही इशुएंस के प्रोसेस के लिए बिटफिनिक्स सिक्योरिटीज को लाइसेंस दिया जाएगा। यानी इतना तो साफ है कि वो तमाम कंट्रीज जो एल साल्वाडोर की इस बिटकॉइन सिटी से इंप्रेस होकर एल साल्वाडोर को फॉलो करेंगी, उनके लिए एल साल्वाडोर आइडल होगी। एंड इट एक्चुअली टेक्स अ लॉ टू टेक द लीड। सबसे अलग हटकर चलना और फ्यूचर लिखना, हैट्स ऑफ टू एल साल्वाडोर। होप दिस प्लान प्रूव्स टू बी अ बिग सक्सेस। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना? तो ऐसे ही और मजेदार स्टोरीज के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। आई एम रुचि शर्मा, बाय बाय।
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Crazy Coins by Kunal. Today's coin is Matic, also known as Polygon. It is changing the way people are developing apps on the blockchain, and Polygon is the favorite platform for app and game developers on the Ethereum network. The highlight is it has gone up 6,000% last year. If Bitcoin is the Omni network, Ethereum is the layer 1 network. Ethereum made usability possible, and most of the decentralized network on the blockchain today runs on Ethereum, but it has a fundamental problem. Speed is slow and scalability. Polygon is the Superman that solved that problem by reducing the fees by 10 times. It's also 10 times faster and now can be scaled as simple as a plug. Wow. Now the question is, what will be the up and down percentage this year? It has in no time become the 11th largest coin in terms of market capitalization, just a tiny bit away from the top 10, and is being invested by the sharks. You heard me right, no other than Mark Cuban. Now the real question is, what will happen when ETH 2.0 releases, and only time will tell. Until then, stay tuned till I bring more Crazy Coins with Kunal. Hi, this is me, Yashasvi Acharya. DeFi, or Decentralized Finance, is an umbrella term representing a collection of financial products and services created and offered over the distributed ledger technology. The intermediation of financial institutions is denecessitated by these protocols with the use of cryptographic proof of transactions. These protocols also make use of advanced tools like programmed smart contracts and tokenization to design innovative financial products offered to participants of the blockchain peer-to-peer network. The DeFi ecosystem appeared with smart contract-enabled blockchain platform Ethereum going live in 2015, and today, by end of November 2021, has proliferated to more than 250 protocols with over $100 billion in total value logged in these protocols. The DeFi ecosystem is rapidly innovating and emerging with wonderful new products, which is disrupting the financial products and services marketplace. These products include stablecoins, decentralized exchanges, decentralized lending and borrowing platforms, decentralized asset management tools, decentralized autonomous organizations or DAOs and governance, insurance products, derivatives products, margin trading products, payment solutions, staking solutions, KYC and identity solutions, tokenization, yield aggregation platforms, prediction markets, infrastructure and developing tooling products, analytics services, among many such offerings. The innovation in the DeFi segment is prolific and exciting. This segment is evolving rapidly as better and better protocols are coming up with each innovative iteration and market offering in any particular segment. The blockchain projects are also evolving, and so are the applications in the form of DeFi. The returns of the DeFi instrument are quite handsome when compared to similar traditional finance products and services. The traditional financial product and service marketplace is also referred as CeFi, acronym for centralized finance. This is possible because the smart contracts and decentralized consensus reduce the counterparty risk, monitoring and arbitration cost, and also the cost of intermediation. The programmable nature of decentralized applications also provides the flexibility to order the best possible combinations of these instruments to maximize returns.
this feature is given a very interesting terms. It is called money Legos, indicating that parts can be joined together in a preferred order of precedence depending on the comfort of the user. Oracles on the decentralized ecosystem connect the real-world trigger events to smart contracts, enabling conditional execution of the same. The enables creation of derivatives, prediction markets, and a lot of other possibilities. Tokenization of the real-world assets helps granularization of high-value assets, helping address a wider investor base and also brings them into digital realm, transcending the geographical boundaries, helping cater to a larger digital global audience. Programmability of the decentralized applications in the financial realm help create bespoke products for the users, providing for many interesting innovations in this area. Currently, as the craze of DeFi grips and drives the imagination of investors, we can say we are for some very interesting times in this area. However, along with innovation suitably follows a word of caveat, the DeFi segment is not regulated at the moment. The regulatory framework moves slowly to catch up with the innovation, and it's the same which is happening in this area. Therefore, users have to be extremely careful with their research of the DeFi project before participating into it and availing its benefits. Choosing on the basis of returns only may not be a judicious approach at the moment. One must do your own research meticulously and observe the proliferation of any project closely before participating in it. One may also avail services of several audit companies who specialize in auditing and security and other features of the smart contracts published by project. If one covers the risk well, DeFi is one segment which would provide the early adopters with exciting returns. That's all for today. This is me, Yashasvi Acharya, signing off. Have a really good day. Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के इस खास शो क्रिप्टो वीकली रैप में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आइए देखते हैं क्रिप्टो की इस दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है। Yes, Bitcoin was set to post its best weekly gain since October last year, helped by easing liquidity concerns amid receding fears of fire sale of assets by troubled crypto lenders and miners. Bitcoin was set to end the week with 12 to 13% gains, its best gain in nearly 9 months. ETH, the second biggest cryptocurrency, was also set to end the week with over 16% gain, nearing the next resistance level of $1,281. तो यहाँ संदीप एक बड़ी खुशखबरी सारे जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो इंथुजियास्ट हैं उनके लिए, जिनकी नींदें उड़ी हुई थी पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है मार्केट गिरी हुई थी। अब उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम है कि वापस हम तेज़ी देख रहे हैं, मजबूती देख रहे हैं मार्केट में। और बिटकॉइन, जैसे कि आपने भी अभी हमने पढ़ा भी खबर में कि 9 महीनों के बाद, पिछले साल अक्टूबर के बाद, अब जाकर उसने वीकली गेन में 12 to 13% का जो हाइक देखा है। और इसके पीछे अगर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम की जो नेटिव करेंसी है उसने अपने एक टेस्टनेट सेपेलिया के बाद जल्दी गति पकड़ ली थी। Yes. और सफलतापूर्वक अपने मर्ज को अंजाम भी दिया था और प्रूफ ऑफ स्टेक पर स्विच कर दिया था। यस, अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर वो जा रहे हैं, जो कि आई थिंक इज द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड फॉर ऑल दी चेन्स। तो इसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो गुड न्यूज़ थी पिछले हफ्ते, उसका भी योगदान है। जैसे कि सेल्सियस ने अपना $440 मिलियन का जो लोन था वो रीपे कर दिया मेकाडाओ में। तो इस तरह की खबरों ने अब जो है मार्केट को थोड़ा सा पुश अप दिया है, जो आई थिंक हर किसी के लिए एक अच्छी खबर है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर।
सेल्सियस जो एक क्रिप्टो लेंडर है जिसने पिछले महीने लिक्विडिटी के दबाव के कारण यूजर्स विड्रॉल्स को रोक दिया था, उसने गुरुवार को सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई प्रोटोकॉल्स में एक मेकर पर लोन का पूरी तरह से भुगतान करने के बाद $440 मिलियन कोलेटरल को फिर से प्राप्त किया है। इस कदम का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे क्रिप्टो लेंडर्स के फाइनेंसेस के लिए एक बड़ी लिक्विडिटी को बढ़ावा देना है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक इस अच्छी खबर के बाद सेल्सियस के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई है, क्योंकि न्यूयॉर्क में कीफाई द्वारा मुकदमा दायर किया गया था जिसमें सेल्सियस पर क्रिप्टो मार्केट में हेरफेर और कस्टमर डिपॉजिट्स की सुरक्षा के लिए बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल स्थापित करने में फेल होने का आरोप लगाया गया था। तो रुचि, अगर बात करें कीफाई के संस्थापक की, तो कीफाई के जो संस्थापक और सीईओ जेसन स्टोन है, जिसने पार्टली सेल्सियस द्वारा एक्वायर्ड किया गया था उसको, तो उसने ट्वीट किया था कि सेल्सियस ने कर्मचारियों से झूठ बोला था और कंपनी एक्टिविटीज को हेजिंग नहीं कर रही थी और नहीं वे क्रिप्टो एसेट की कीमतों में उतार चढ़ाव से वो उससे बचाव कर रहे थे जी। तो साथ ही सेल्सियस पर यह भी आरोप लगाया गया कि स्टोन के ऑनबोर्ड पर आने से पहले कोई ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट स्ट्रेटेजी भी नहीं थी जी। तो ये सब प्रॉब्लम वो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम कीफाई के साथ हुआ। आई थिंक शायद यही वजह है कि सेल्सियस अभी काफी बुरी स्थिति में भी है। यस जी, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। द हेल्थ ऑफ सेल्सियस इज इन डाउट डिस्पाइट इट्स रीपेमेंट ऑफ लोन बिकॉज देयर आर रिपोर्ट्स दैट FTX फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड वॉकड अवे फ्रॉम सेल्सियस बिकॉज इट लैक्ड एनी वैल्यू व्हाइल बेलिंग आउट BlockFi. In this failing crypto market, very few people are coming forward to rescue failing crypto projects. Sam Bankman-Fried, founder of FTX and one of the youngest crypto billionaires in the world, has emerged as the savior of the failing crypto startups and lenders. तो यहाँ जहाँ मार्केट इतने बुरे वक्त से गुजर रही थी, बहुत से लोगों ने इन स्टार्टअप्स को रेस्क्यू करने से हाथ पीछे खींच लिया। जैसे कि बाइनेंस के CEO चैनपेंग जाओ, उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं इस तरह से ये जो डिफ़ॉल्टर स्टार्टअप्स हैं इन्हें हेल्प करने की, या फिर US सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के जो कमिश्नर हैं हेस्टर पियर्स, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। लेकिन सिर्फ इस वक्त मैं क्या कहूँगी कि सैम बैंकमैन-फ्राइड जो कि हीरो की तरह इमर्ज हुए हैं, एक सेवियर की तरह इमर्ज हुए हैं, और इसका कहीं ना कहीं वजह ये भी है क्योंकि वो उनका जो बैकग्राउंड है वो ट्रेडिंग का रहा है। एक बहुत ही अच्छा किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने जो अपने पहले $1 मिलियन जुटाए, वो किस तरह से जुटाए। उन्होंने US में $10,000 पर बिटकॉइन खरीदे और जापान में $11,000 पर उन्होंने बिटकॉइन बेचे इन द सेम डे। कुछ इस तरह से उन्होंने पैसे कमाए। एक बहुत ही कोल्ड ब्लडेड ट्रेडर वो है, और कहते हैं कि इंसाइसिव इमोशनलेस बिजनेस डिसीजंस जो वो है या फिर एक्यूमेन वो यूज़ करते हैं, और जो भी सारे ट्रबल्ड स्टार्टअप्स हैं या लेंडर्स हैं उन्हें हेल्प करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं। और अभी उन्होंने कहा कि अभी भी उनके पास कुछ चंद बिलियंस हैं जिनसे वो इस तरह के वही अभी बताने जा रहा था। जो सैम बैंकमैन-फ्राइड ने हाल ही में कहा था कि उनके पास जो ट्रबल प्रोजेक्ट जो है, जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके लिए वो उनके पास जो बिलियंस रुपीस है वो तैयार है और वो एक्विजिशन करने के लिए भी तैयार है एक्चुअली। तो बहुत ही पॉजिटिव मूव है उनकी तरफ से। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रिप्टो मार्केट के हालिया वोलेटाइल डाउनटर्न के कारण अब स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की दौड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स उन इन्वेस्टर्स को बहुत आवश्यक सॉलिडिटी प्रदान करती है जो इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, जबकि वो वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी के रिस्क से भी दूर रहते हैं। मीम क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर शिबा इनू ने शिबा इनू इकोसिस्टम को SHI नामक एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन के साथ एक्सपांड करने की योजना बनाई है, जो अन्य मूनशॉट्स या टेरा लूना में पाए जाने वाले इश्यूज से बच जाएगा। टीम 2022 में बाद में SHI लॉन्च करने की तैयारी में है। ट्रिट जो शिब मेटावर्स का अपकमिंग रिवॉर्ड टोकन है, वो शिबा कलेक्टिव कार्ड गेम से जुड़ा होगा। ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि टोकन शिबा इनू की स्टेबल कॉइन को संतुलन प्रदान करने में मदद करेगा। तो रुचि, ये जब घोषणा की गई तो उस समय डिफाई की जो दिग्गज कंपनी जिसे बोला जाता है आवे जो है, उसने कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मंजूरी के अधीन GHO नामक एक ओवर कोलेटराइज्ड स्टेबल कॉइन्स लॉन्च करने की योजना की घोषणा की थी। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव मूव है कि बहुत सी कंपनी जो है वो मेटावर्स में एंटर करने को कहते हैं कि मेटावर्स ही आगे का फ्यूचर है। और स्टेबल कॉइन्स में सिर्फ जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इसी की कंपनी की नहीं, इनफैक्ट बहुत सी कंट्रीज है जो चाहते हैं कि जैसे कि लंदन चाहती है कि वो अपना स्टेबल कॉइन लाए, क्योंकि स्टेबल कॉइन में कहीं ना कहीं लोगों को एक स्टेबिलिटी नजर आती है। लेकिन वहीं जो लूना का केस है उसको देखकर थोड़ा डरते भी हैं लोग।
चलिए देखते हैं किस तरफ जाएगा ये पूरी खबर और एक्वायरिंग स्टार्टिंग ऑफ स्टेबल कॉइन्स। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Crypto lender Voyager Digital Holdings filed for bankruptcy on Wednesday as its exposure to beleaguered hedge fund Three Arrows Capital devastated its finances. The lender filed for Chapter 11 bankruptcy in the Southern District of New York, according to a court filing. The firm's estimated assets are over $1 billion and it has more than 100,000 creditors. तो यहाँ Voyager Digital ने जो है वो फाइल कर दिया है फॉर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी, जिसमें होता ये है कि आप अपने प्लान्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं, यू वर्क एज अ फर्म, बट साथ साथ आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने क्रेडिटर्स को जो है वो पे बैक करते हैं। यहाँ Voyager Digital के पास, क्योंकि उन्होंने जो उनका हेज फंड था थ्री एरोज कैपिटल के साथ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो परेशानियों में आ गए हैं और उनके ऊपर $1 बिलियन का जो है क्रेडिट है, वो भी 1 from 100,000 क्रेडिटर्स, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख क्रेडिटर्स हैं उनके हैं। लेकिन इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो एल्मेडा रिसर्च का है, यानी एल्मेडा रिसर्च से उन्होंने $500 मिलियन जो है वो लिए हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि हम सब जानते हैं एल्मेडा रिसर्च जो है उसके फाउंडर इट इज़ फाउंडेड बाय सैम बैंकमैन-फ्राइड, और इस पूरे केस की वजह से जो एल्मेडा रिसर्च के फाइनेंसेस है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो अब लोग यही देख रहे हैं कि इससे क्या होगा, एक रिपलिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि हर कोई जो है कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे, जैसे कि हमने अभी अगली खबर में बताया था कि छोटे छोटे जो भी स्टार्टअप्स हैं वो सैम बैंकमैन-फ्राइड की तरफ ही देखते हैं कि वो उन्हें हेल्प करेंगे, फंड्स देंगे। लेकिन यहाँ अगर उनकी ही कंपनी पर इतना ज़्यादा फाइनेंस का प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर भी जो है इसका रिपलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। चैप्टर 11 की अगर बात करें तो उसे ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। चैप्टर 11 का जो मतलब है, वो डेब्टर जो होता है वो आमतौर पर अपनी फर्म का ऑपरेटिंग जारी रखने और समय के साथ क्रेडिटर्स को पे करने के लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन प्लान प्रदान करता है। तो इसी तरह से वो आगे बढ़ ऑफ करेंगे। हाँ जी। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने फॉरेन एक्सचेंज रूल्स के उल्लंघन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस कॉइन स्विच और कॉइन डिसेक्स को नोटिस भेजे हैं। एक्सचेंजेस को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के चल रहे मामले के संबंध में डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कहा गया है। नोटिस जारी करने की पुष्टि कॉइन डिसेक्स और कॉइन स्विच ने कहते हुए की कि उन्होंने ईडी को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। कॉइन डिसेक्स ने एक बयान में कहा कि उन्होंने विभाग की संतुष्टि के लिए सभी आवश्यक जानकारी शेयर की है और हमारी ओर से कोई भी कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। ऐसा लगता है कि 30% और 1% टीडीएस के बैंक टैक्सी की वजह से जो घोषणा के बाद से इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस एक ब्रेक नहीं पकड़ सकते। तो रुचि, अभी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात हम कर रहे हैं, तो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस बड़े पैमाने पर लिक्विडिटी की कमी का सामना कर रहे हैं। तो जनवरी के बाद से उसे जब देखा गया तो जनवरी के बाद से ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगभग 80% वो कम हो गया था। बिल्कुल। उसके बाद वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स, बिट और जेप पे जैसे एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम में है वो 80%, 40%, 3% और 65% की कमी देखी गई। एक्चुअली टैक्सेस लगने के बाद से हमने ये बहुत ज़्यादा गिरती हुई जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम तो हमने देखी, और जब से 1% टीडीएस भी लागू हो गया फ्रॉम 1 जुलाई तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है, या फिर कहूँ गवर्नमेंट को थोड़ी सी राहत देनी चाहिए इस तरफ, इस डायरेक्शन में थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा नरमी बरतनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। An anonymous hacker has offered to sell the stolen personal data of over 1 billion Chinese citizens for 10 Bitcoin, roughly $200,000. तो यहाँ एक हैकर है जिसने 1 बिलियन चाइनीज सिटीजन्स का जो है पर्सनल डेटा स्टोल किया और उसको आगे वो ऑफर कर रहा था फॉर 10 बिटकॉइंस फॉर $200,000। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस हैकर को एक्सेस मिल गया ऑफ चाइनीज़ शंघाई पुलिस का जो डेटाबेस है उसका, जो कि जिसमें से उसने ऑलमोस्ट 26 टेराबाइट्स का डेटा जो है वो चुराया। और आगे इस बात की पुष्टि की है बाइनेंस के सीईओ चैनपेंग जाओ ने। उन्होंने कहा कि उनके जो कंपनी की थ्रेट इंटेलिजेंस ने डिटेक्ट किया है कि कोई उनको ऑफर कर रहा है ये पूरा का पूरा डेटा, और उनका भी यही कहना है कि 1 बिलियन रेजिडेंट्स का ये डेटा है और जो कि किसी एशियन कंट्री का है, और इस डेटा में उनकी नेम, फोन नंबर्स, एड्रेसेस, हाँ, क्रिमिनल डिटेल्स, नेशनल आइडेंटिटी, सब कुछ जो है उसमें है। नहीं, बाइनेंस के सीईओ जो है चैनपेंग जाओ, इस दावे को स्वीकार तो उन्होंने किया है, तो देखना ये होगा कि भविष्य में इस तरह के हैकिंग से बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, अगर डेटा की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो भी 1 बिलियन सिटीजंस का, इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। 2 जुलाई को सोलाना बेस्ड लिक्विडिटी प्रोटोकॉल क्रेमा फाइनेंस का फायदा उठाने वाले हैकर ने अधिकांश फंड्स वापस कर दिया है, लेकिन व्हाइट हैट बाउंटी के रूप में $1.6 मिलियन रखने की अनुमति दी गई। बाउंटी 45,455 सोलाना यानी एसओएल शुरू में खोए हुए $9.6 मिलियन क्रेमा के एक जेनरस 16.7% के लायक है, जिसने प्रोटोकॉल को सेवाओं को निलंबित करने के लिए मजबूर किया। जैसे ही क्रेमा की टीम ने अपराधी की गुप्त पहचान की जांच शुरू की, उसने
घोषणा की कि वे हैकर के साथ बातचीत कर रहे थे। 6 जुलाई को हैकर ने 6064 इथर और 23,967 SOL लौटाया, जिसकी कीमत लगभग $8 मिलियन थी। तो रुचि, क्रेमा की टीम ने सौदा होने से पहले 5 जुलाई को घोषणा की थी कि उसने ऑडिटिंग के लिए एक नया कोड सबमिट किया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो एक्सप्लॉइट फिर से न हो। तो आई थिंक या तो सॉफ्टवेयर को, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस करना पड़ेगा, या फिर अब कंपनीज को भी हैकर्स के अंदाज में सोचना पड़ेगा कि कहाँ कोई लूप होल्स हो सकते हैं और किस तरह से उनके जो सिस्टम में है ना वो एंटर किया जा सकता है, क्या क्या लूप होल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह की जो हैकिंग की खबरें हैं वो खत्म नहीं होने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चिंगारी, a short video sharing platform, saw its native token plunge by over 84% amid talks of hacking. According to initial speculations, hackers dumped 30 million coins on Qcoin, which caused the price of the token to plummet. तो यहाँ जब 84% प्राइस जो गिरा चिंगारी का, जो कि चिंगारी का नेटिव टोकन है, तो ये स्पेकुलेशन की जा रही थी कि ये हैकिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि किसी हैकर ने 30 मिलियन जो है कॉइन्स वो डंप कर दिए ऑन Qcoin। लेकिन वहीं अगर चिंगारी की टीम की बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हैकिंग की वजह से नहीं हुआ, ये लैक ऑफ लिक्विडिटी की वजह से हुआ है। और जब इंटरनेशनल फाइंडिंग्स के मुताबिक किसी लार्ज टोकन होल्डर ने 2 मिलियन वर्थ जो है गाड़ी टोकन वो है बेच दिए, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इसका प्राइस गाड़ी का वो गिर गया और $0.14 पर आ गया, जिसके बाद जो मार्केट मेकर्स हैं उन्होंने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की, और Qcoin पर भी बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो लिक्विडेट हो गए, तो और ज़्यादा प्राइस गिरकर 3% पर आ गया। और फिलहाल जो सलमान खान का बैक्ड ये गाड़ी टोकन है फिलहाल $0.13 पर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में जो गैरी नेटवर्क ने जो गैरी माइनिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की थी, माइनिंग प्रोग्राम शुरू करने की जो घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि व्यूअर्स और क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म पर शामिल करना था जी। अगर इस तरह की रूमर्स होती है तो ये बहुत बड़ा टेंशन भी हो सकता है जी, क्योंकि हाँ, ये एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म भी है, और साथ ही कहीं ना कहीं अपने टोकन को भी आई थिंक उसके जरिए थोड़ी सी मजबूती लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 84% किसी कॉइन का गिर जाना तो आई थिंक क्लोज टू डेथ। तो आज के इस वीकली रैप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर एंड दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिप्टो टीवी। हैव अ ग्रेट वीकेंड। Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have $12,000 today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. अरे मनोज, ये हटाओ ना न्यूज़पेपर। अरे क्यों? मेरी बात सुनो। यू विल बी सो इम्प्रेस्ड एंड सो प्राउड ऑफ मी। चलो बताओ आपकी क्या बात है। मैंने कहा था ना कि मैं पूरी रिसर्च करके आऊंगी क्रिप्टो करेंसी पे। That's great. बहुत ही बढ़िया रिसर्च की है, और मैंने ये देख लिया है कि जैसे बिटकॉइन इतना ऊपर चढ़ रहा है, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगी। बिटकॉइन? लेकिन मनोज, छोटी सी एक बात, एक प्रॉब्लम है जो मुझे तंग कर रही है। बताइए।
50 लाख के आसपास रहती है इसकी वैल्यू। इसे खरीदने के लिए तो मुझे अपनी जायदाद बेचनी पड़ेगी। हम बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो एस्पेक्ट है वो वी विल ट्राई टू डिस्कस द फंडामेंटल वैल्यू अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी, ना ही कि हम गिव एनी रिकमेंडेशन अबाउट इट। ठीक है, आपने जैसे बिटकॉइन के बारे में कहा तो यू आर अंडर अ ब्रॉडर कंसर्न की 50 लाख की एक कॉइन है, तो आपको आपकी जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है। पक्का ना? यू आर नॉट सपोज टू सेल योर फ्लैट या फिर जो भी है। बिटकॉइन आप 0.00001 which is known as a Satoshi के वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। इतनी छोटी वैल्यू पर? इनके जो फाउंडर है सातोशी नाकामोटो, उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन किया। मिस्ट्री मैन, देखो मैंने किया ना अपनी जो कि हम भी उनको भी ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। तो मिस्ट्री मैन तो है ही वो। और इनफैक्ट लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया था कि जहां पर बिटकॉइन को एक अच्छे वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन एज लो एज 100 रुपीज। व्हाट आर यू सेइंग? एक सेकंड, 500 का बिटकॉइन तो मैं ले सकती हूँ। बिल्कुल, आप ज्यादा भी खरीद सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर दिस थिंग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। 2010 मई 22 को एक बंदे का नाम लेस्ले हेंस है, उन्होंने पापा जॉन्स के 2 पिज्जा खरीदे। आपको मालूम है कितने में? कितने में? 10,000 बिटकॉइंस में। व्हाट? 10,000 बिटकॉइंस मतलब 10,000 इंटू 50 लाख, मतलब मैं तो इतने जीरोस भी नहीं गिन सकती। जीरो की गिनती में नहीं और चलते। वो उस इंसान को तो शॉक लग गया होगा बाद में। आई थिंक इससे ज्यादा स्मार्ट तो वो थे क्रिस्टोफर कोच। 2009 में उन्होंने द एक्सीडेंटल मिलेनियर, या द एक्सीडेंटल मिलेनियर, $26 इन्वेस्ट किए 2009 में। उसके बाद भूल गए वो, और 4 साल बाद 5,000 बिटकॉइंस की वैल्यू हो गई थी लगभग $1 मिलियन, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1,000 बेचे, एक अपार्टमेंट खरीदा, और आज भी उनके पास 4,000 बिटकॉइन है। मुझे अगर जहां तक मुझे याद है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको रोका था। और अच्छा वो पहली बार गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी थी। हमेशा अच्छा डिसीजन नहीं होता है गर्लफ्रेंड की बात सुनना। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करके देयर आर मेनी पीपल हु हैड मेड वैल्यू बिटकॉइन से लेकर। जैसे हमने एल सैल्वाडोर एक कंट्री का अपने नाम सुना है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। एल सैल्वाडोर हैज एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। सो देयर आर मेनी फ्यू करेंसीज जिसको एक दर्जा मिला है, क्योंकि बिटकॉइन इज द नंबर 1 करेंसी इन द प्लैनेट। आपने देखा, इनफैक्ट उनकी ट्रेजरी में लगभग 1300 से के करीब बिटकॉइंस भी ऑफिशियली वो होल्ड करते हैं। वाओ। मैं सोच रही हूँ ऑन द सेकंड थॉट, क्यों ना मैं भी किसी ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करूँ जिसके जो प्राइसेस बिल्कुल चांद तक जाए। मून कॉइन में इन्वेस्ट करूँ क्या? मैडम, देयर आर मेनी करेंसीज दैट विल ऑफर यू टू टेक यू टू द मून, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि आप उतरोगे कैसे? मून से जमीन पे उतरते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट आवर अदर करेंसी दैट इज नोन एज ETH, आल्सो नोन एज इथेरियम। तो वो तो ब्लॉकचेन है ना? बिल्कुल, या करेंसी है। हम तो करेंसी की बात कर रहे हैं। This is how we step in. We are here to explain the fundamentals of cryptocurrencies. So Ethereum एक प्लेटफॉर्म है, और उसका जो कॉइन जो वैल्यू है that is known as ETH. If you are getting confused, very basic fundamental principle that a coin derives value from its platform. जो भी economic activity a platform does or it considers, उसका impact जो है ना ETH पे आता है। That means उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर आता है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थेरम के बारे में बता दूं। विटालिक बुटेरिन 13 साल के थे, जो इसके फाउंडर हैं। विटालिक बुटेरिन 13 साल में तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। आई थिंक सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम। मैं तो 13 साल में मतलब हार्डली मैथ्स कर पाती थी। टीचर की डांट खाती थी। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। विटालिक बुटेरिन ने उसकी शुरुआत की थी। इनफैक्ट 2 साल के बाद 2015 में उन्होंने इथेरियम को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया। एंड सी दिस, आफ्टर 7 to 8 years देयर आर मेनी कंपनीज, बिग कंपनीज, ह्यूज कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, HSBC उसके साथ में सपोर्टेड है, और वहां पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इथेरियम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बचपन में ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो मैं सोच रही थी क्यों ना डेंटा कॉइन, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया, डेंटा कॉइन में को कंसीडर करूं क्या? आप डॉक्टर हैं? नहीं हूं नहीं, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर्स वाली है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ही आप एक कॉइन खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज डेंटल और डेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, और उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मतलब मेरी एंट्री बैन है उधर। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। आप अगले जन्म में करोगे। आप व्हाइट बेल्ट है या ब्लैक बेल्ट है वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन आगे बढ़े। नो बेल्ट। आपने एक गाना तो सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना है, मुंबई से गई पटना, पटना से गई दिल्ली। जूही चावला तो बहुत बड़े फैन भी रह चुके हैं उसके। ऐसे ही ये बिनांस की कहानी है। वो गए चाइना, चाइना से उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, चाइना से गए जापान, जापान से गए US। ओके, वाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इनफैक्ट 2017 में बाइनेंस की जो शुरुआत है वो चाइना में हुई थी, और वहां से लेकर चाइना, एज यू आर अवेयर दैट कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स में था, और उसको रेगुलेट करने की शुरुआत वो साल से हुई थी। बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर कंसर्न दे मूव टू जापान, और वहां से लेकर ही वाज ड्विंडलिंग बिटवीन जापान, हांगकांग की तरफ भी उनका रुख था। मीनवाइल US ने उनको बैन कर दिया था,
और आपको बता दूं, कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अपना नाम बिनेंस यूएस कर दिया और आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज बिनेंस है। Wow, that's amazing. और मैं आपको एक और बात बता दूं, उनका जो करेंसी है दैट इज नोन एज BNB। नाम तो याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इजी है। मुझे अमेरिका बहुत पसंद है और अमेरिका से मुझे याद आया बर्गर्स। यू नो आई एम अ फूडी, तो कुछ बर्गर, गार्लिक ब्रेड, मैंने सुना वूपर कॉइन है, गार्लिक कॉइन है, इनमें इन्वेस्ट करूं, कंसिडर करूं? फिर से मेरा आइडिया खारिज मत कर देना प्लीज। बिल्कुल, एक काम करते हैं, आपके लिए गार्लिक ब्रेड मंगा लेते हैं। दैट इज द ओनली वैल्यू इट कैन डिराइव फॉर यू इफ यू ऑर्डर गार्लिक ब्रेड और यू ऑप्ट फॉर सम स्टूपिड कॉइन्स। तो आप उस पे फोकस मत कीजिए, लेट्स फोकस मोर ऑन स्टेबल कॉइन। मैं आपको बता दूं कि उसका फंडामेंटल वैल्यू कहां से डिराइव करता है। सो विल टॉक अबाउट टीथर। तो टीथर इज अ क्रिप्टो करेंसी जहां पर इट्स अ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? मतलब बाकी कॉइन्स क्या बैलेंस में नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही आप समझो। टीथर डिराइव्स वैल्यू, इट इज एसोसिएटेड विद USDC। तो उसका मतलब ये है कि अगर समझो से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन और बिटकॉइन की वैल्यू 67,000 पे पहुंच गई है, आपकी रिसर्च के अनुसार आपको ऐसा लगता है कि वो बिटकॉइन की प्राइसेस कम होने वाली है, यू विल बुक प्रॉफिट्स इन बिटकॉइन एंड यू विल पार्क योर मनी इन टीथर। सो टीथर क्या करता है कि बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्टेबल, आई मीन सिंस इट्स अ स्टेबल करेंसी, तो उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है क्योंकि यूएस की जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है और वहां पर उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता है। सो योर इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड, तो इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। दिस इज व्हाई उसका नाम ही है स्टेबल कॉइन। पर अमेरिका से ना मुझे UFO भी याद आते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या मैं UFO कॉइन में इन्वेस्ट करूं? क्या पता एलियंस खुद मेरे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आए। लेट्स नॉट गेट इनटू द जादू एक्टिविटी एंड वी विल फोकस मोर ऑन। मेरे सारे कॉइन्स आपने रिजेक्ट कर दिए। नहीं, कॉइन रिजेक्ट करने ही है क्योंकि एकदम आपकी जो रिसर्च है वो एकदम बेकार है। मैंने रिसर्च तो अच्छी की थी। हाँ, रिसर्च अच्छी करी है आपने। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, ओनली एंड ओनली to make our viewers understand the basics and the fundamental principle behind cryptocurrencies, because cryptocurrency investments are highly volatile and it's a very volatile sector. You should be in a very sound position and you should always do your research before investing in cryptocurrencies. So Ruchi, आपका डिसीजन खुद लीजिए. You consult your financial advisor before doing any investments. So and let's focus on other aspects, what all aspects and fundamental coins are there that can be explored with us. Hello and a very warm welcome to all the viewers of Crypto TV. This is Manoj Dhara. So crypto markets are in turmoil. Liquidity has dried up with the central bank's hiking rate, due to which trading activities in cryptos has fallen and so have their prices. Market participants believe that the primary reasons behind the present crash are macroeconomic factors and weak global cues that are also weighing stock markets down globally. As a result of the global market shrunk to $1.23 trillion from $3 trillion. So to discuss the reasons that are responsible for the fall in cryptocurrency markets and road ahead, we have invited two special guests. Let me introduce you to Sharat Chandra, Vice President, Research and Strategy, Earth ID. Sharat, welcome on Crypto TV. Thank you, Manoj. Thanks for having me. And our second guest, Mr. Samrat Kishore, Regional Head of Enterprise Ethereum Alliance. Samrat, welcome on Crypto TV. Thank you, Manoj, for having me again. All right, so my first question is to Sharat. Since we are discussing about the broader concern in the cryptocurrency market, we have seen the markets slowly and steadily coming down because of few reasons. Can you just explain to our viewers why this cryptocurrency market is in concern and what are the reasons behind it? If you can just begin with, sir. Sure. So if you look at the correlation between equity and the crypto markets, so the 90-day correlation between equity and Bitcoin is at an all-time high. It's as high as I think 0.4.9. Now, this is one factor. So there's a strong positive correlation how equity markets are moving and how they are responding to global macro events, beginning from the Russia-Ukraine crisis to Fed tightening the quantitative rates, right, and also hiking interest rates. So, and if you look at inflation, so we are witnessing a decade high inflation, right? 4-decade high in US,
If you look at India, we have CPI index number as high as 70-month high, right? Exactly. So inflation is also one of the biggest drivers. So what investors are doing, they are trying to move their assets away from high growth or tech stocks or from crypto to a more assets where there's some sense of stability, let's say commodities for that matter, gold, right? And the way commodity prices are also going up, it's another reason why investors are taking their assets away from risky assets like crypto to commodities. That's one more reason why investors are kind of looking for more safe haven towards commodities and gold rather than crypto. So Samrat, the first reason is money moving from the risk assets to somewhere it is safe. So what's your opinion? What's your opening remarks on this? No, definitely. I think Sharad gave, he kicked it off very well with the statistics. There is definite view that investors are wary of riskier assets. There are a lot of people whose the risk appetite, the risk capital that they used to allocate towards various parts of the portfolio, that has gone down. So I think that's one reason. And let's not just talk about retail investors. If we were to also look at institutional investors, even they are very wary of returns that they can potentially generate from, let's say, crypto markets. There's one more statistic which I was seeing when I was studying the correlation of the two markets. I think one thing which was really intriguing to see is a lot of people are now also taking deliveries of commodities, like for example, gold or silver. People don't just want to invest in futures and options; they also want to take deliveries, which mean that they see that they're probably going to lock the investment in for quite some time, and they still want to get returns on their investment. So they want to take deliveries and keep it somewhere safe. All right. So few keywords I picked from this opening remark is higher interest rate, rising inflation, and a higher correlation between the cryptocurrency market and the stock market. So moving on, there was one event which has disrupted the entire mood, or for that matter, the entire cryptocurrency market. Was under concern, was the Terra Luna episode. So Sharad, when we speak about this stablecoin Terra USD, which has lost its peg, and it has actually exposed the destability in the concept of stablecoins. So what, according to you, is your opening remarks on this event, on this black event rather, which has actually disrupted the market mood, and from there markets have never risen. So what's your opinion on this, Sharad? Right. So I think we have to take into cognizance the different types of stable coins, right? So when you look at stable coins, they're fully collateralized or fully backed stable coins, like say USDC for that matter, and algorithmic stable coins which don't have any underlying backing. So the pegging or peg to the US dollar is backed only by, or let's say driven by the algorithm, right? Now, if you look at Terra Luna, right, so there's a history behind Terra Luna. So the founder of Terra Luna, Do Kwon, was also associated with Basis Cash, a failed project, right? A failed algorithmic stablecoin project. Now, we have also seen multiple failures of algorithmic stablecoins. So there's one stablecoin called Iron, where one of the prominent Shark Tank investors, Mark Cuban, he lost his money there. So we have seen that these crypto, let's say, entrepreneurs, they're not able to get the algorithm right. So what I would like to state that algorithms, it's just a matter of time. If you get the algorithm right, we might see a very fruitful or feasible stable coin in the near future, because we are already relying on different algorithms for different purposes. We use algorithms for even video KYC, right? You do liveness checks, right? So we can't dismiss algorithms, but it's just a matter of time whether the crypto industry or crypto or tech entrepreneurs can get the algorithm right. Now, what happened in case of Terra Luna was 3 major trades led to the depegging of Terra Luna. So it started as early as May 7 when Terraform Labs, they moved close to, I think, 150 million of USD from 3-pool exchange. What happened after that? There was a second big trade where I think close to 85 million worth of USD was also withdrawn. So this led to a more vulnerable situation when it comes to pegging of USD. And then there was a massive sell-off, right? So, and again, both prices of Luna as well as USD collapsed. So that was one of the major reasons. And now when this crisis happened, it was also kind of coupled with the ongoing Russia-Ukraine crisis. Fed was already announcing interest rate hikes, right? So it was all a cumulative effect, and which snowballed into a bigger crisis of Terra Luna crash, which also led to further fall of Bitcoin prices. So few keywords. Combination of many factors. Yeah, please go ahead, Sharad. Yeah, what I'm saying, it was a combination of many factors, starting from how some of the whales manipulated the prices of Terra Luna, led to the exodus of USD from
the main pool, and again, major sell-off, and then the crisis which followed. So, Samrat, few keywords I have picked from what Sharath has explained about the entire Terra Luna episode is manipulation, multiple factors behind the fall, Russia, Ukraine, and to add to what Sharath has said, that we have seen roughly around 80,000 bitcoins being sold by this universe to just to protect what they have promised. So, what's your opinion on this? No, Manoj, I think Sharath has pretty well articulated what events led to the crash, and I totally believe. In fact, I was talking to somebody the same day when it was all happening. It was all unfolding in front of our eyes, and I said, "This looks like it is orchestrated. You know, there are people behind it, and who've got clear intentions of doing this. What is happening? So it was not an incident, for sure, as far as my understanding was, and honestly, this is all just my research and my opinions which I'm expressing here. So it's no institution is behind it. But then, so that's one. And let's also talk about a little more bit of future. Since you said, is it a collapse of stable coins? So I would definitely say it is not. It's a concept which is much more worthwhile. It is much more firepower than just one algorithmic stable coin collapsing because of some people ganging up together. So, as Sharath also pointed, there are these different kinds of, stable coins. You could look at asset-backed or even fiat-backed stable coins. There are fiat-backed, stable coins as well, where, you have cash or cash equivalents, which are backing the crypto tokens. Or I've even worked with projects where, gold is backing those crypto tokens. So their value is as fragile as gold value, and gold value will not have very wild moves like the crypto world. The cryptocurrencies, which are, so it's still a much safer bet than going into, say for example, a meme coin. You go to Shiba, you go to Dogecoin. It's much stabler than that. Much more. There's a higher degree of confidence on stable coins. I would still say that for just for the investors. I mean, but as it is true for any cryptocurrency, it could go up, down, sideways. Who knows? Totally depends on what's the market sentiment, what are the whales thinking about that particular token, and yeah, I think that's where it is. So I would say I would still not lose my trust on stablecoins. I've not changed any of my holdings after this incident. All right, no change in the holding, Sharath. That's what Samrat has mentioned. But few things which I have picked up is he has suggested that the stable coins can be backed by gold. That is what the safest thing is. So one last thing on this segment on stable coins is how can such incidents be avoided, Sharath? If you can just highlight that. Right. So I think that's where we have to look at what are the reserve assets and be transparent about those reserve assets. All right. So if you look at other stable coins which kind of depegged during the Terra Luna crisis. So I think DAI also depegged, right? And DAI also depegged, and similarly, there's one more stable coin. I'm not getting the name right, but if you look at Tether for that matter, Tether, right? Tether, US dollars, right? USDC. So Tether is fully licensed or federally licensed by the US authorities. So if you can license or let's say regulate stable coin issuers the way we regulate banks and impose the same levels of due diligence checks, right? So that they have the same kind of reserve assets, the way banks are supposed to maintain cash reserve ratio, right? So look at the reserve assets, look at the quality of reserve assets. So if you look at USDC, right, they are saying that they have the most liquid reserve assets in terms of short-term US Treasury bonds, which you can easily convert into liquid form of money. So that is one aspect. And now let's not write these stable coins off. So let me quote some of the global references where Japan has already initiated a stablecoin bill where they're looking at how they can ensure investor protection and how they can mitigate financial stability risks. If you look at Australia for that matter, so ANZ Bank has launched something called AUD or Australian dollar-backed stablecoins, right? In UK for that matter, the Chancellor, Rishi Sunak, he announced that he will include stablecoins in UK's payment regulation. So stablecoins, fully collateralized, fully backed, or fiat-backed stable coins definitely have a future in terms of promoting innovation in payments, right? Because they can ensure real-time settlement of payments, right? So stable coins do have a future. Algorithmic ones, we are not there yet. It's just a matter of time if some entrepreneur gets the algorithm right. If you get that right, that itself will lead to so many, I would say, possibilities in terms of payments, DeFi,
financial inclusion. So Japan, Samrat, Sharad mentioned about Japan, Australia and UK, and he has also recommended about fiat-backed stable coins. What's your view on that? Definitely. I mean, as I just said, the degree of confidence just goes up and down with, what is the real underlying asset which is backing that particular stable coin. I think with algorithmic stable coins, I would just say one thing. It is like the seatbelt. It is like aviation safety. There's one crash and then there's, we learn something out of that crash and then we do things better. So it's considered something like that. The whole crypto market has actually learned and evolved in that fashion, over these 10, 12 years of history. So I think this is just going to go a long way. I mean, you remember the days when, the big, what was that exchange called? Sharad, do you remember what was that first exchange called, which collapsed on Ethereum? Quadriga exchange. Mt. Gox. Mt. Gox. Mt. Gox. All right. So there was this Mt. Gox thing, which gave us a lot of learnings. How smart contracts could go wrong. So apparently that Mt. Gox ka wo kuch wahan par in log ne, they have also found out that those who have stolen. Oh yeah, I mean that's a different story altogether. Eventually in the crypto world, you get to know where the money has gone. We just don't know who the people are behind it. So it's easy to track, where it is flowing. I think, but what I wanted to say is definitely we're going to come out of this stronger. And as Sharad said, some entrepreneurs are going to figure things out. I think it is just about more public scrutiny. People just hear our name, stablecoin, and they just go behind it blindly. They don't consider it. They don't consider the types. So I think the investors need to be more educated and informed about the various types of stablecoins. What is the real stability, quote unquote, stability behind that token? That needs to be very closely looked at. Fantastic. As moving on to the other topic, we are talking about Bitcoin dominance, Sharad. So although Bitcoin's market share fell by roughly around 20% in 2021, and investors began to look at other alternative assets, such as alternative investments in cryptocurrencies such as Ethereum, Solana, and Polkadot. So BTC remains the most heavy crypto assets. So even in the midst of falling crypto markets that has seen multiple altcoins decline in the value recently, BTC dominance has increased from 41% to 47% in March itself. It's the highest level since November 2021. So will this dominance continue? If you can just highlight that, boss, because if BTC is gaining back its mojo, that means it's a positive for the entire cryptocurrency market. What's your opinion? Right. So I think BTC dominance, in my own personal opinion, will continue, and that will be the major driver of, let's say, another bull run. We might be a couple of months away from the next bull run, but BTC dominance will eventually lead us there. And why? I'll give you some other not directly or relevant factors why we have to look at BTC in terms of payment as well. If you look at, there's a concept of Lightning Network or layer 2 solution of enhancing Bitcoin payments. And let me give you one more statistic where in US, close to 10 million crypto cards are being used, and most of them are using the Lightning Network for making faster payments, especially in US. So Bitcoin, in terms of, there's a wider criticism of Bitcoin that it's not scalable enough, but layer 2 solutions like Lightning Network are making Bitcoin adoption more mainstream in terms of payments. So that will also be one of the major drivers in kind of pushing the dominance of Bitcoin forward. So Samrat, lightning speed is something which Sharad has highlighted, which is actually the key for the success. Yeah, totally agree. I think so. The first thing is it will regain dominance for sure. I think I said the same thing in the last episode as well when we were talking, which is two things. One, people moving away from relatively more riskier assets into now liquidating their riskier bets now into back into Bitcoin, and just sort of looking at it from an investor's perspective that I'm still in positive. If I entered Bitcoin at the right time, then I'm still in positive because Bitcoin has still held a very, very high level as compared to where it is coming from. As far as the the Lightning Network is concerned, I totally agree with this. It is going to push retail adoption to the next levels. A lot of companies are now also looking for ways to hold Bitcoin on their balance sheet. I think so. So it's a mix of many things which will lead to dominance of Bitcoin. You also asked me that question about whether it is
going to beat Ethereum? I remember having answered that question that not in the next 10 years. so yeah, definitely it's very different, and the utility of these two are very, very different. So I just that's how I see it. Yeah. All right. So Sharath, one follow-up question on that. What are the important tech events in the cryptocurrency universe you are tracking? If you could just highlight a few of them for our viewers, so that they can this will help them make important investment decisions. Right. I think the major one is Ethereum's movement from proof of work to proof of stake, Ethereum 2.0, and the testnet merge happened successfully. That will also lead to a wider debate about, let's say, layer 2 solutions and then what will be the role of Ethereum 2.0. So let me maybe shed more light here. So we can't, so Ethereum is going to be the default settlement layer for financial services. Fantastic. Or for the internet. That's my personal belief. And these layer 2 solutions will have their own space. They will not be able to kind of chip into Ethereum's dominance because Ethereum will be the underlying settlement layer. Now, when it comes to layer 2 solutions, let's look at, let's say Polygon for that matter. So Polygon aspires to be the building block or AWS for Web3, right? But we might see newer protocols coming up which will solve up different scalability challenges, right? So when you look at scalability, there's a concept of rollups, how you can roll up multiple transactions and then commit to the block. So there's a wider experiment going on there, innovation going on there. But Ethereum's dominance will still be there, and maybe Samrat can come in and throw more light on that. Why will that be? So what Sharath has highlighted, Samrat, is कि Ethereum is actually saying that कि यहाँ के बादशाह हम हैं. So Ethereum definitely for the DeFi world, I had said the last time as well. Ethereum was the one which gave the world smart contracts. Ethereum is the one which gave the world DeFi capabilities, right? So it's not going anywhere else. What I see it is, as Sharath also pointed out, it's going to be the global settlement layer. And so imagine it to be like, just in common terms, imagine it to be like moving more towards B2B than B2C. Right. So while individuals may not be transacting directly with the Ethereum layer, they would prefer going via the layer 2 solutions for both, transaction speed optimization as well as cost optimization. But eventually the layer 2s are also rolling up there. The layer 2s are also offering many more capabilities. I mean, Sharath brought up Polygon as well. Beautiful example of what all a layer 2 could do. And if they become the AWS of the Web3 world, look at what the token could do for the holders. So that's also something which the investors, and you said the investors need to be more aware of what's going on. So I think that's also one critical aspect which the investors should see in a token, that where is this company which has created this token, it's heading, what is the vision, what are the products that they've delivered and they are planning to deliver. So Polygon had a clear roadmap set. They created some things, and the things which they did not create, they acquired companies to deliver that, but they still delivered it, right? So that's a beautiful thing which happened in layer 2. For the Ethereum dominance, Manoj, I can definitely say it is going to be the platform of choice for definitely for DeFi and. Will you think which is somewhere around 17.5%? Will you think that it can match up to a level, or it can bring this Bitcoin to its level? So markets may so one is the tokens, the people who are holding tokens, that's one parameter, definitely a good parameter to look at. But then there are the other applications, how many applications are currently using that one platform. Sure. So Bitcoin Perfect. is not a platform with an application use, right? I mean, Ethereum is more of a platform on which applications are built, and then those applications are driving adoption. So I think that is going to be a magnifying factor for its adoption. All right. So Sharath, we are Can I moving add from one this. more point? Yeah, one more please. point to what Samrat said was, so even in these bearish times, right, if you look at number of unique wallet addresses adding per week on Ethereum, they are into thousands now, close to 30 to 40,000 unique wallet addresses which reflect Ethereum. So it will be a function of what is the developer activity which is still happening on Ethereum. That will be another major driver, how a platform would flourish or how the adoption will play out. Right. So all right. I think sorry Manoj, just one point. Yeah, please I think go the ahead. last time, the ESG concerns are going away from Ethereum network. That's also a big plus for enterprise adoption. I mentioned last time also. So it's a clear win for the Ethereum network where with the shift from proof of work to proof of stake,
it becomes more carbon neutral, it becomes more environmental friendly, and hence the companies then go ahead and start deploying it. Perfect. So Sharath, we are moving from this Ethereum 2.0 to a topic which is actually I wanted to understand about the growth of the crypto ETFs. So one of the most significant advances of the crypto ETFs is that they provide exposure to cryptocurrencies without the added cost of its ownership. So what do you think is the strategy for crypto adoption? And if you can just explain this for our viewers. I think when it comes to a major or mainstream adoption of crypto, it will happen only through institutional participation, and these crypto ETFs will be enablers of that. So the same brokerage account, you can hold your stocks, bonds, you can also invest in crypto, right? So they're simplifying or making the use of holding crypto assets much more easier to even a layman or who is not tech savvy or literate enough to hold crypto assets, right? So that is one more part, and it also gives a wider exposure of crypto assets. So you can have a fund which is which manages your crypto holdings. It's linked to a index. So that's one more area where mostly high net worth individuals or institutional players will take that route compared to holding or having custody of digital assets on your own, because it comes with an added risk, right? If you're having a custody of your assets, you may not have the right skills to protect it, right? So ETFs will also take care of, let's say, hacking of those assets, right? Make it more simpler in terms of ensuring safety and security of digital assets. Sure, Samvirat, a quick view on this. Yeah, this is an excellent way for individuals and institutions both to get into and dip their toes into the investment of cryptocurrencies. I do think there's one critical aspect which Sharath highlighted, which is also on the security related to your holdings. How do you protect what you hold, because in the crypto world it's a wild west, right? But at this time, there is also one more important aspect for the investors to look at. It is what are the currencies, what are the tokens which are comprising of one ETF. So when you're looking at investing in an ETF, you should definitely go drill down deeper. It's just like a mutual fund where people are investing money and then there are underlying stocks. Sure. So people should look deeper into ETFs as well. So Sharath, you mentioned about institutional adoption. My next question to you is, Morgan Stanley in a recent report has said that increased trading volume share of the crypto institution versus the retail volume has contributed to the high correlation between the Bitcoin and equities. And also noted that the increased involvement of institutions, which you have already highlighted, which are sensitive to the availability of capital and therefore interest rate, has contributed in part to the high correlation between Bitcoin and equities. So in short, institutions are coming towards this crypto universe. At the time, you also mentioned about gold-backed stable coins. But there was a point when cryptocurrency used to follow this hedge against inflation, and it was having a hedge against inflation tag. But now slowly and steadily, as the institutional investors are coming in, they are losing it. What's your opinion on this? So I think honestly, the narrative of crypto assets or Bitcoin being inflation hedge was flawed from the very beginning, because now it has been established that there's a very strong positive correlation between these two equities as well as Bitcoin, right? If there's a negative correlation between two set of assets, then you can treat other as a hedge against inflation, right? But since they're positively correlated, the narrative of inflation hedge doesn't hold any ground. Fantastic. What's your opinion, Samrat? So definitely the institutions which are investing money are more and more sensitive towards the returns that they're generating in the shorter and the longer term. So the various institutions which are coming in have different investment horizons, different targets for returns that they need to generate. I think they are looking at it from the point of view that this is a new avenue for their diversification, which they have successfully, a lot of companies have successfully capitalized, definitely. But at the same time, I also feel that these are companies. So, for example, hedge funds. I mean, 2/3 of the hedge funds are going to fail. There's a big news all over that there are hedge funds now mushrooming only because of such risky assets coming out and people believing in these investments. So if they if let's say if you ask them to bet on anything, they would start betting on anything. I mean, that's also one big problem, right?
You give them any risky assets which can eventually generate a return out of a bet, they will start investing there. So it's a wait and watch situation as far as I am concerned. But definitely, the ETFs have actually they are driving adoption left, right, center. So Sharad, since we're talking about institutional investors, we're talking about Mota Paisa, it calls for a better regulation landscape. So my next question to you is, the Indian government has introduced taxation on digital assets in its 2022-23 union budget. So which has led to an optimism in the industry that it is on a path of regulation and clarity. So are we really talking about regulation and clarity, or are we talking about something else? I think let's be hopeful here, and let's look at even the recent or to be announced or to be released crypto consultation paper will throw more light on regulation. Sure. Because we have taxation in place now. Now it makes sense for the government to regulate the industry rather than drive the talent outside the country, right? So regulation is the way forward, and let's hope the crypto consultation paper paves the way for regulation. So we do understand and respect of what the government has decided on this. But Samrat, my next question to you is, a lot of entrepreneurs, as Sharath is very optimistic about the taxation part. So a lot of entrepreneurs who operate from India, but have registered their offices in more favorable regulatory geographies such as Dubai, or for that matter, many other countries. You operate from Singapore, Canada, yeah. So I'm and I can say this with confidence because I'm myself on the board of two companies. One of them is in Canada and the other one is in Singapore. Both have crypto models. So it's a happy sad situation. I would say on one side it's Indian guys who are innovating, creating new products and which are meant for the global stage. But at the same time, India is losing revenue in terms of taxation, which could have come from this company. People getting paid, etc. People are getting paid in cryptocurrencies. Also, the Indian. So it's not only so the current regime has put a tax, but that tax does not really take care of operations of a company, right? It's just on if you made money on speculation, you get to pay some tax. That was anyways the case, right? You were paying. So what I really do intend to see, and what I really would be happy to see is, if a crypto company is given the kind of welcome which they're getting in, for example, places like Dubai, where they are welcoming you with open hands. You've also been there recently. You would have seen the environment, which is so friendly and welcoming for crypto world right now. I would say, very basic example is, I may still be, charging TDS. Okay, that's easy. I can get my accountant to do the TDS part. But are companies in India getting a payment gateway? Sure. The answer is no. So these things need to be sorted. All right. A lot, and so it will not only be the regulation for the crypto company. It will also be the regulation for the other companies supporting operations of the crypto company. For example, the payment gateway and the banks. So all right. So Sharath, my next question to you is, Samrat mentioned about happy and sad moments. So let's focus on this happy situation wherein you spoke about the consultation paper on crypto, which is almost ready. Will the government release it this year, or will it wait for the global consensus to come on common ground? Right. If you look at the public statements of government representatives, right, so they are saying that we will look forward to how the regulation is shaping up globally. So we've seen some development in the US where some of the senators have already rolled out a bill with respect to crypto, right? Cynthia and a couple of senators as well. So we have a precedent now. There's already a bill in the US, let's say Congress for that matter. Now, we can't actually try and imbibe all the elements of that bill. We should be having our own approach, and crypto consultation paper can be a step forward in that direction, right? And so if you look at even stable coins, so we have a precedent now. Japan has already shown how you can regulate it. Fantastic. So even in terms of stable coin, right, we have a let's say a precedent or template to follow. For regulation also, I think US has already shown some way. Now it's up to us how we can fine-tune, tweak our model and make it more relevant to our domestic circumstances and move forward with regulation. We should not be losing this opportunity of becoming or playing second fiddle to countries which are positioning themselves as the next global crypto hub, Dubai for that matter. Dubai, Singapore, UK, they are all fighting for positioning their country as
the next global crypto hub. Why should we lag behind just because we are dilly-dallying on regulation? I think we should move forward and then even also position ourselves as the next crypto hub. So, all right. So this brings us to our last segment, which is the rapid fire question. Samrat, you know the format. So let's begin with you. So my first question to you is, very quickly you have to answer in a line or so, so that we can cover all the questions. So my first question to you is, GST Council mulling 28% tax on Bitcoin and other cryptocurrencies. Will India levy GST on cryptocurrencies? Samrat? Yes, on the services of buying and selling cryptocurrency. What about you, Sharad? Happy about it. Yeah, agree with Samrat. So on services, they are, I think we might see a GST of 28%. So Sharad, will the 1% TDS on crypto to kick off from July 1st, or you have a different idea about it? Will the government roll back? I don't see the rollback happening. The government may rationalize it because community members are engaging with the government to move it to 0.01%. Samrat, your quick view on this. My view is it is going to be, it's going to take some iterations to get it right, because there's also a confusion around how do they calculate the gains. All right. So Sharad, will we see a spot Bitcoin ETFs in 2022? What's your opinion? I don't see it happening anytime soon, right? We might see a bill in the US Congress first, right? Once that is done, then definitely yes. What's your opinion, Samrat? Will it come in 2022? No. All right, that's a flat answer. All right. My last question to you, Sharath, is, will we see more stablecoin collapse like Terra Luna? If yes, if you can mention few. So a couple of them have already depegged, like for example, DAI for that matter, right? So algorithmic stable coins are prone to failures. They will depeg and they might collapse as well. But fiat-backed one or collateralized ones have a promising future. Fantastic. Your last take on this, Samrat. So definitely algorithmic stable coins are under a scanner, and they will. So even if the investors are moving out, I think that's a sign of failure. All right, that's it. Thank you so much, gentlemen, for being part of this interaction. Sharath, thank you so much. Samrat, thank you so much. You guys really spoke well about what is the future of cryptocurrencies and the way forward. We spoke really well about Bitcoin and the way forward, institutional adoption, ETFs, and what stable coins as a roadmap will look like. Thank you so much, gentlemen, for being part of this interaction and taking part in this interaction on Crypto TV. Thank you so much. Thank you. All right, that's all there is in today's interaction. This is Manoj Dara signing off. Stay tuned on Crypto TV to watch such interesting interactions. Thank you so much. आजकल जहां देखो NFTs की चर्चा है, जिसे देखो वो NFT बना रहा है या बेच खरीद रहा है। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज तो इससे करोड़ों कमा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि NFT बनाना कोई रॉकेट साइंस है, इससे कमाना बेहद मुश्किल है, टू कॉम्प्लिकेटेड या टू टेक्निकल है, तो मैं आपको बता दूं कि फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। NFT बनाने के लिए आपको थोड़ा टैलेंट, थोड़ी नॉलेज और थोड़ा सा लक चाहिए। लक इसलिए ताकि आपका आर्ट ऑडियंस के साथ क्लिक करे। तो चलिए बातों में वक्त नहीं गवाते हैं, आपको NFT बनाने का इजी वे बताते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज की NFT बनानी है, और वो कुछ भी हो सकता है। कस्टम पेंटिंग, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो गेम कलेक्टिबल, कोई मीम, जिफ, यहाँ तक कि कोई ट्वीट भी। बस जो भी हो वो रेयर हो और यूनिक हो। इससे आपकी NFT को वैल्यू मिलेगी, और हाँ, आपके पास उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, वरना कोई लीगल ट्रबल हो सकती है। स्टेप नंबर 2, एक बार आपने डिजिटल एसेट सिलेक्ट कर लिया तो उसे NFT बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस ब्लॉकचेन को अपनी NFT के लिए यूज करना चाहते हैं। इन दिनों NFT आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन है इथेरियम। बाकी पॉपुलर ऑप्शंस हैं टीजोस, Polkadot, Cosmos and Binance Smart Chain. Step number 3,
अगर आपके पास डिजिटल वॉलेट नहीं है तो फिर आपको डिजिटल वॉलेट बनाना होगा अपनी NFT क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अपनी इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की जरूरत होगी और इस वॉलेट के थ्रू आप अपने डिजिटल एसेट को एक्सेस कर पाएंगे। कॉइनबेस, वजीरएक्स, ज़ेप कुछ पॉपुलर इंडियन NFT वॉलेट्स में से हैं। मेटामास्क, मैथ वॉलेट, अल्फा वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट। ग्लोबली ये वॉलेट्स काफी यूज किए जाते हैं। आपके वॉलेट में कुछ क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। ज्यादातर NFT प्लेटफॉर्म्स ईथर एक्सेप्ट करते हैं, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की क्रिप्टो करेंसी है। अगर आपके पास कोई और क्रिप्टो करेंसी है तो उसे अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करें so that you can use it to create and sell NFTs. स्टेप नंबर 4, एक बार आपका डिजिटल वॉलेट बन गया और आपके पास क्रिप्टो करेंसी भी है तो अब आप NFT क्रिएट और सेल करने के लिए तैयार है। बस एक अच्छी डिटेल रिसर्च करके बेस्ट NFT मार्केटप्लेस सिलेक्ट करनी है आपको। वजीरएक्स, कलेक्सियन, कलामिंट, beyondlife.club जैसी कई अच्छी मार्केटप्लेसेस हैं इंडिया में, जिन पर गैस फीस भी ज्यादा नहीं है। वजीरएक्स $1 की गैस फीस पर ट्रांजैक्शन चार्ज करता है। कलेक्सियन सेल प्राइस का 5% लेता है, तो वहीं इंटरनेशनली मोस्ट पॉपुलर मार्केटप्लेस ओपनसी की गैस फीस $100 से $150 के बीच रहती है। ओपनसी के अलावा एक्सी, लार्वा लैब्स, NBA टॉप शॉट, रेरिबल ये कुछ बेस्ट मार्केटप्लेसेस में से एक हैं। लेकिन आपको अपनी NFT के हिसाब से मार्केटप्लेस चूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, गेम NFT के लिए एक्सी मार्केटप्लेस है, बास्केटबॉल फोकस्ड NFTs के लिए NBA टॉप शॉट है। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि कुछ मार्केटप्लेसेस की अपनी क्रिप्टो करेंसी है और उनके प्लेटफॉर्म पर वही यूज होती है, जैसे कि रेरिबल। NFT मार्केटप्लेस सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करना जरूरी है, ताकि आप NFT मिंट करने के लिए नेसेसरी फीस चुका पाए। स्टेप नंबर 5, अब आप अपनी NFT को अपलोड करने के लिए तैयार हैं। आपकी सिलेक्टेड NFT मार्केटप्लेस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है एज टू हाउ टू अपलोड योर NFT, और इस प्रोसेस के जरिए आप अपनी NFT फाइल, जो कि PNG, GIF, MP3 या कोई भी और फाइल टाइप हो, उसे मार्केटेबल NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनल स्टेप 6, अपनी NFT को मिंट करने के लिए फाइनल स्टेप पर आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप अपनी NFT को कैसे मोनेटाइज करेंगे। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, फिक्स्ड प्राइस। आप एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। जो भी पहला इंसान वो प्राइस देने को तैयार होगा वही आपका बायर होगा। टाइम्ड ऑक्शन। टाइम्ड ऑक्शन से ऑडियंस को एक टाइम लिमिट मिलेगी, यानी थोड़ा वक्त ये डिसाइड करने के लिए कि वो कितने पर बिड करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन, अनलिमिटेड ऑक्शन। इस तरह की ऑक्शन में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप जब चाहें अपने हिसाब से ऑक्शन को एंड कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अपनी NFT का मिनिमम प्राइस सेट करें ताकि आपको लॉस ना हो। उस पर रॉयल्टी रखें ताकि अगर आपकी NFT किसी सेकेंडरी मार्केट पर रीसेल हो तो आपको उसका फायदा मिलता रहे। NFT कैसे क्रिएट और सेल करें वो तो आप समझ गए हैं। NFT बाय करने का प्रोसेस भी बहुत इजी एंड सिमिलर है। सबसे पहले एक डिजिटल वॉलेट बनाएं, उस वॉलेट को फंड करें, बेस्ट मार्केटप्लेस चूज करें, वॉलेट को उस मार्केटप्लेस के साथ कनेक्ट करें, फिर जो भी NFT आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए बिड सबमिट कर दीजिए और अब आप अपनी पसंदीदा NFT खरीद पाएंगे। नाउ दैट यू नो ऑल अबाउट NFTs, तो देर किस बात की, कोई आर्ट क्रिएट कीजिए और उतर जाइए NFT मार्केट के मैदान में। क्या पता बिग बी की तरह आपकी NFT भी करोड़ों कमाए। क्रिप्टो से जुड़ी और कई चीजों को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मेरी यानी रुचि शर्मा की स्टोरी जरूर देखिए। बाय फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे।
શું તમે જાણો છો કે બિટકોઇન સૌથી પહેલું ક્રિપ્ટોકરન્સી છે? ઓફકોર્સ, આટલું તો તમને ખબર હશે. પણ શું તમે જાણો છો કે એક બ્રિટિશ એન્જિનિયર $280 મિલિયન કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સી ફેંકી દીધી હતી? હાય ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ રહ્યા છો ક્રિપ્ટો ટીવી અને હું લાવી છું ક્રિપ્ટોની ગલીથી શોધીને ક્રિપ્ટોની અમુક એવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો જેના વિષયમાં તમને જાણ પણ નહીં હોય, અને જાણ પણ હશે તો પણ પૂરી એવી જાણકારી નહીં હોય. અને આ શોધ કરતી વખતે એવી ઘણી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો સામે આવી છે કે તમે પણ કહેશો, વાહ હોવેલભાઈ, તમે તો કમાલ કરી નાખ્યું. દોસ્તો, આ સાચી વાત છે કે જેમ્સ હોવેલ ન્યૂપોર્ટ વેલ્સ સ્થિત બ્રિટિશ એન્જિનિયર 2013માં તેની ઓફિસની સફાઈ કરતી વખતે આકસ્મિક રીતે $280 મિલિયન કરતાં વધુ મૂલ્યના 7,500 બિટકોઇન સાથેની હાર્ડ ડ્રાઈવ ફેંકી દીધી હતી. લો, ગઈ ભેંસ પાણીમાં. અને આ ક્રિપ્ટો માઇનર દાવો કર્યો હતો કે તેને પાસે 2 સરખી હાર્ડ ડ્રાઈવ હતી અને તેને તેના બિટકોઇનને એક્સેસ કરવા માટે જરૂરી ક્રિપ્ટોગ્રાફિક પ્રાઇવેટ કી ફેંકી દીધી હતી. બોલો, કોઈ આટલું પણ લાપરવાહ હોઈ શકે? હવે આનું શું કરવું? તે ફરી એકવાર સ્થાનિક અધિકારીઓને લેન્ડફિલ સાઇટમાં ઉપકરણ શોધવા દેવા માટે સમજાવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. વિચારવું પડશે. તેને વિશ્વાસ છે કે આટલા વર્ષો પછી પણ બિટકોઇનને પુનઃપ્રાપ્તિ કરી શકશે. હવે આનું શું કહેવું? કોન્ફિડન્સ કે ઓવર કોન્ફિડન્સ? અત્યાર સુધી ન્યૂપોર્ટ સિટી કાઉન્સિલે તેને લેન્ડફિલ સાઇટ શોધવા દેવાની ઇનકાર કર્યો છે, જે જેમ્સ માને છે કે તેની હાર્ડ ડ્રાઈવ ત્યાં છે. તે કહે છે ડ્રાઈવની અંદરના પ્લેટર હજુ પણ એકબંધ હોવાની શક્યતા છે, એટલે એમના ડેટા પુનઃપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ડ્રાઈવને ફરીથી બનાવી શકે છે અથવા પ્લેટરમાંથી સીધો ડેટા વાંચી શકે છે. ભાઈ, હોવેલ્સની ઓપ્ટિમિઝમની તો હદ થઈ ગઈ. ન્યૂપોર્ટ સિટી કાઉન્સિલ મિસ્ટર હોવેલ્સની વારંવારની વિનંતીઓને નકારી કાઢી છે કે તેને કચરાના ઢગલામાંથી જોવા દો, જેમે તેના 8 વર્ષ પહેલા ફેંકેલી હાર્ડ ડ્રાઈવ હોઈ શકે છે. તો આપણા હોવેલભાઈ પાસે આનો પણ જવાબ છે. 35 વર્ષીય જેમ્સ શહેરને 25% બિટકોઇન આશરે $70.8 મિલિયન ની કિંમતના દાન કરવાની ઓફર પણ કરી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ ફાયદો થયો નથી. આ તો કમાલની ઓફર છે. મજા આવી ગઈ. ભાઈ, માનવું પડે હોવેલ્સભાઈને. શું મગજ દોડાવ્યું. પણ કાઉન્સિલના પ્રવક્તાઓ જણાવ્યું હતું કે કાઉન્સિલે મિસ્ટર હોવેલ્સને અસંખ્ય પ્રસંગોએ કહેવું છે કે અમારા લાઇસેન્સિંગ પરમિટ હેઠળ ખોદકામ શક્ય નથી અને ખોદકામમાંથી આસપાસના વિસ્તાર પર પર્યાવરણને ભારે અસર થશે. લેન્ડફિલના ખોદવાની, કચરાને સંગ્રહિત કરવાની અને ટ્રીટ કરવાનો ખર્ચ લાખો પાઉન્ડ્સમાં થઈ શકે છે. તો તે શોધવાની અથવા તે હજી પણ ડ્રાઈવની ચાલુ પરિસ્થિતિમાં હોવાની કઈ ગેરંટી નથી. મિસ્ટર હોવેલ્સ હજુ પણ કાઉન્સિલને મનાવવા માટે છેલ્લા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તે કહે છે કે તેને એક હેજ ફંડ મળ્યું છે જે ખોદકામ માટે ફંડ્સ આપવા તૈયાર છે, તેથી કાઉન્સિલને તેના માટે ચૂકવણી કરવી પડશે નહીં. તેને કહેવું, હું નિર્ણય લેનારાઓ સાથે બેસીને તેમની સમક્ષ અમે જે કરવા માંગીએ છીએ તેના માટે એક એક્શન પ્લાન રજૂ કરવાની તક ઈચ્છુક છું. મને આશા છે કે તમે તે કરી શકશો. હવે આવી મીટિંગમાં શું થાય એની તો તમે જાણ હશે જ. કાઉન્સિલ હવે શું નિર્ણય લેશે એ કહેવું મુશ્કેલ છે, પણ એ કહેવું જરૂરી છે કે સાહેબ, ઉમ્મીદ પર તો દુનિયા કાયમ છે. કમસે કમ હોવેલભાઈની તો. ફરી લઈને આવીશ મસાલેદાર ક્રિપ્ટો ફેક્ટ્સ. ત્યાં સુધી જોતા રહો ક્રિપ્ટો ટીવી, દુનિયાનું પહેલું એક્સક્લુસિવ ક્રિપ્ટો ચેનલ.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Traders Paradise. This is Crypto TV. We are also on the Crypto Wire app, and this show is bringing you wonderful traders who actually share their experiences with you just for your information and knowledge. Today we have a wonderful trader who's been in the space for almost 10 years. Mr. Palash Agarwal, please introduce yourself, buddy. Thank you so much, first of all, Traders Paradise and Crypto TV for having me on the show. So talking about myself, I had been a trader for more than a decade now. It's been more than 10 years that I'm into trading and investing, stocks, mutual funds, cryptocurrencies, and all these equities. So this is about me. I have also worked with American Express for a very short span, more than a couple of years, I guess, just to taste what exactly the corporate life is like. And also, traded a lot in Forex and equities in the Indian market. Fantastic, fantastic. And what brought you to the cryptocurrency world? Because you already have corporate exposure, equity exposure, FX exposure. So basically, I got to know about, Bitcoins and cryptocurrencies as we know it. Back in 2012, and during that time I was trading into Forex, into currencies. So when you trade into currencies, you have to read about the macroeconomics and all the the global economy, right? So during that time I got to know from one of my friend who was working on Wall Street in the US. He told me something about this magic internet money, which is Bitcoin, back in those days when it was trading around $80. Magic internet money. I like the way you put it. Yeah, absolutely. So, that is what, people used to know it as, and still, novice traders or people who don't know much about it, they definitely call it as magic internet money because they think that it is not backed by anything, and it just suddenly popped out of thin air, and it's now trading in thousands of dollars. So inclination towards it came through that when we used to trade in currencies, US dollars and the pound, these two were the most strongest currencies, which were supposed to be the most strongest currencies, but then this Bitcoin basically came into existence, and when I got to know about it, that it is trading at around $80, I was actually intrigued. That was the turning point. That there can be something which is that is where your interest all came from. कि यार ये कैसी currency $80 more than the US dollar. Absolutely. Wow. So that's how I entered into the market. Superb. I'm pretty sure you must have done some homework, understanding being an FX trader and, trading all of these, and experience, obviously having a friend who gave you exposure as well. Did you just jump into it, or was there like an analogy that it went through and got you in? Yeah, absolutely. I researched about it for almost a couple of months. And while I was researching about it, so I got to know that, it's used by drug traffickers, all these illegal trades. And then there was a website called Silk Road at that point of time, which was using it for all those bad activities and illicit activities. So, then I got a bit scared, and I thought that it's not my cup of tea. I should not be actually, trading into nobody wants to go that dirty road, huh? Yeah, absolutely. So it was, intriguing, and at the same time, it was a bit scary during those days because, whatever, I was reading on the internet was all negative and very scary at that point of time. So then I left it as it is, and then I continued my, Forex trading, gig, and I was very happy with it because, a couple of percentage here and there in a few trades in a day was more than sufficient, right? So that was the thing. FX markets are one of the most liquid markets. Yeah, absolutely. And when I got to know, after I think 3 or 4 months down the line, at that point of time, when I got to know that, it has just doubled in price from $80, it crossed $150. 80 to 150 plus.
Absolutely, 150 plus. So actually, during that time, I got to know about it during the 2012 halving of Bitcoin. So, as we know, there are halving cycles in the Bitcoin and the cryptocurrency space, right? At that point of time, the price was actually on the upside. So when I got to know that the price has just doubled in a very short span, and I thought that, I am missing something, there was something which was missing. Then I dig deep into it and finally bought it at around $200. So that was my first purchase of Bitcoin. 1 minute. You first saw it at 80. It doubled very soon. Yes. Then you restudied it. And by the time you got into it, it was already more at about $200. Absolutely. What year are we talking about? This was 2012. It's almost a decade now. You're one of the very few people that I've interviewed who've actually said who got involved in it back in that day. See, the thing is, it's not about when you entered, it's about how long you stay in the market. But, as soon as I invested, and then in 2013, that, bubble of the Silk Road scam that came up, and there was a lot of happening going on. So from $200, it went up to, I think, $1,200 plus, and then came back again. And the market suddenly crashed, and it came back again to, less than $200. So my investment that I did at that point of time. So you already saw 200 going to 1,200 and coming back to 200 all in the same year. Not in the same year, yes. 2013, sorry. 12 you entered, then 13. Yes. In 2013 this happened. So this was the thing, and I was all in at that point of time because being into a profession of trading and being into investing, you kind of get a conviction on something or you don't get a conviction on something. Correct. So correct. Always happens with the trader. And a little bit of yes. But then when you jumped into it when it was $200, yes, absolutely. And when you re-entered in 2014, what was the price? So I think 2014, late 2014, I got into it at I think around $350 and $400. I started dollar cost averaging again back into the Bitcoin. Dollar cost averaging strategies, all the equities and FX is coming back into the crypto market. That is Palash Agarwal for you guys. This is insane. But still, now, when you got in 2014, do you have any regret that said, yaar, I could have gotten at 80, yaar, I could have done? Very odd question today when we look at the price at 45, 50,000. But there must be some feel of, as a trader, right? Like that regret, that plunge, what you're doing, what you're not doing, grateful, not. Today when you look back at it. Yeah, absolutely. You're bang on, that thing. There are a lot of regrets that a trader has. But yes, you have to always see the winners, not just the losers. So, there were a lot of upside as well that, I at least made something out of it. I got into that rabbit hole at the right point of time, because if we talk about in today's date, it's very difficult to even dollar cost average and to buy a complete one Bitcoin. So it's very difficult for a common man to get hold of a complete one Bitcoin. So that's basically something which I am very happy about. Other than the regrets, yes, obviously, and of course, I sold it at some very wrong point, at some very wrong time. But I'm still very happy about it. What was the pulse then? Like, I would have taken this regretful conversation a little further. But like back in the day when you were trading it at 200, 250, even 400, even 2014 when you got in, what was the pulse then? Like today when you're at 45K, people are saying 100K. At that point in time, were you a part of a community or anywhere where there was conversations happening about it? Yes, absolutely. There were, I think, not many communities around it, but the main, community was bitcointalk.org. That's the main Bitcoin, forum where people, generally talk and discuss about the technology, about the growth. So there was a very close-knit community of tech people and crypto people, which were there because there were no other currencies other than, I think, back in those days in 2013-14, there was only Litecoin and
Ethereum was, I think, started around that time itself, around 2014, 15. So that was the time. So Ripple was also one of them, but it was not that famous. They came, but the Ripple Foundation, I guess, was founded in 2012 or 2013, I guess. Okay. So yes, there were only. So you already of had them. very little options. There wasn't much like today's world that you were, you were looking into. What is there, what is not there, etc. Yes. So if you talk about all these chat forums and chat platforms, so back in those days, WhatsApp was also not that common, and people were not using Discords or these servers were not there actually. So at that point of time, so it was more of chatting on your laptop rather than now what we see generally today. Even kids who are 13 or 14-year-olds, they are using Discord servers and Telegram channels and all that stuff. So it was not that prominent back in those days. Correct. Was there anyone who was saying it'll go 45, 50, 100,000? Yes, absolutely. I remember Max Kaiser was, he's the biggest Bitcoin bull that I've seen since I think 2011, 2012. He was into the market. Then I saw Roger Ver was one of them who was who actually then converted his thesis of a bigger block size and then forked Bitcoin into Bitcoin Cash. So he was actually initially known as the Bitcoin Jesus, but he did some things wrong, and now he's nowhere to be seen. Correct. So things of this sort definitely happen. And in fact, I remember a YouTuber. I think his name is. I don't think I know that his name is Da Vinci. So he also was one of a programmer, who was actually, telling people to buy Bitcoin when it was not even $1. So not even $1. Yes. And he was famous on YouTube at that point in time. He was not famous. He had around 200 views or 400 views on his YouTube videos. But now, yes, he is, I think, a billionaire, a crypto billionaire. Or 30 or 40 people out of those 400 if they bought Bitcoin. Wow. Yes, absolutely. And I think I was one of them. Nice. Now see, you're opening up, you're sharing some things, you're sharing here, you're sharing there. Now, you've been in the early space. You've got access to those people, you have access to those communities. What are the tools that today, if somebody wanted to get into Bitcoin or cryptocurrencies, or even exploring the world of crypto, blockchain, all of this, what would be the tools that one could look at, or what are the tools that you look at? So generally, I am mainly on TradingView website. That's where I'm mostly on, looking at the charts on the technical analysis, because as I mentioned, I had been trading equities and Forex. So I think I look at the charts, but as you say, in crypto space, the charts do lie. Because you never know, it's a very sensitive market. Based on a certain news, the market can crash or the market can, skyrocket at any given point of time, and it will not give a shit about what your TA says. Right. But yes, in the longer time frame, the charts are certainly very correct and very true. But in the shorter time frames, you can't be certain about anything. Too many spikes up and down. We Yes, had absolutely. a And if technical you- analyst who came and he said he doesn't look at the bigger coins, he looks at the smaller coins, and he just looks for trend patterns, and that's what he follows. The spikes is something that he ignores. Absolutely. One should ignore all those spikes, and trend pattern is something which generally people should follow. Also, I check a lot of on-chain metrics about Bitcoin. What's the miner status? How are the miners holding Bitcoins, or are they selling them off? So that's also one major point of concern that I keep on checking on a continuous basis. Okay. Because at this point of time, the miners community is the most important community that we need to look upon, which generally people ignore. So that's about it. This is the main thing, that I generally follow.
So you're looking at charts that give you patterns, and you look at on-chain analysis where real transactions are happening, so you can track them as to in the real world what is really happening. If there are transactions happening, if there are people moving, this, that, all of that. Absolutely. Wonderful. Plain vanilla. Look for trend, look for transactions. Absolutely. So, see. So simply put, I love it. Please continue. So the thing is, people think it's very complex, but I know a couple of my friends back in those days. They bought a couple of Bitcoins and they slept over it, and now they are very, very happy that they didn't, sold their Bitcoins. I know a couple of them who bought it, and then they were all watching the screens on a regular basis that, what's the price? Is it going up or is it going down? So fear and greed are two, emotions which actually make or break a person. Correct. And if you can control all these emotions, then certainly you can, achieve success in trading and investing. So they lost a lot of money, and the thing that we were discussing about the regret, that yes, they now regret that they have sold it at a very low price. The regret has to come, and you spoke like a real trader. You got to keep your emotions aside. You got to focus on what you're doing. Fear and greed are the two biggest factors if you're trading or investing. Love the way you put simplicity on how you analyze and what is on your screen. That's really cool. That being said, and so much of information, being an early investor, the biggest question, the Trader's Paradise question is, how many X is your investment? So, how many X is something which I generally don't see, because if you calculate from $200, I don't know, it's more than 100X on Bitcoin itself. But yes, I've sold it a couple of times at a price which I couldn't catch again, and I bought back again as well. I DCA'd. So yes, 100X is something that I've seen in Bitcoin, but yes, in some altcoins and cryptocurrencies, I've seen a minus 95% as well. Okay, wait. Hold on. Did you say you've seen 100X on Bitcoin? Yes, absolutely. So you can calculate from 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 30. 100X! Yes, absolutely. Yes. Whoa! Even if you're losing 95% on your alts, that's still just losing 95%. 100X goes beyond 1,000%. Yes, absolutely. But 100X. Yes, it's 100X. Man, the thing is, Palash Agarwal, the guy here, out of all the people I've had on the show, everybody's 9X, 10X. We even had people 25 and 30X. Round of applause, ladies and gentlemen, for this guy. Round of applause. This. Whoa! Wow! So it's all about, if you have a conviction on something and if you have a conviction long enough and strong enough to hold on to something, that's actually very challenging. That is something that you need to hold for a long period of time. See, it's not just 100X. It's not just about the money. It's about your conviction on something, on a technology, right? That is what needs to be done. Yeah, of course. It's actually very easy to say, but it's not simple or very easy to hold on to your horses if you have done a 5X or a 10X, because coming from an equity. I totally believe you, and I totally understand. Nothing is easy. Nothing is just like it's come to you on a platter and you're going to take it and you're going to make money out of it. Completely agree with you. Also, the conviction part of it that you said, that you mentioned, is very, very important. From a trader's perspective, the fear and the greed, very, very important. I totally agree with you. But 100X is something I don't want to doubt you, but like 100. So that's what I said. There are some winners, there are some losers in your bag, which actually eventually, get you onto a level, and that is what make you humble, in the long run.
you should be humble with your gains, and you should be humble with your losses as well, and learn a lot from the losses that you have. So, Being humble, being humble should be a policy. policy of life. Doesn't matter who you are, what you do. I totally agree with you on that as well. But 100x. Jumping out of joy. Wow. Yes, I'm so happy for you. I'm so happy for you. Thank you. I wish you also make 100x. Not yet into the space, but very soon, since I've got into asking questions, I think some exposure looking at you and listening to your figures should be taken. But before that, I want to ask you a question. With this kind of conviction, with this kind of returns that you've already seen over the period of years, if somebody wanted to enter the space today, do you think it is, do you believe it is a space of the future, or you look at it only as something that came with opportunity and you grabbed it? So, if I talk about long-term conviction that I have, yes, crypto is here to stay, and it's a long-term bet. You can't deny the fact. You cannot ignore the elephant in the room. It's a $2 trillion plus economy that we're talking about now. Yeah. It's a big economy, much bigger than a lot of countries in the world. So, it will not just fade away like that. It will definitely be here for a very long time. And this is, I think, going to be the future of, finance, and people should actually focus onto it and should think about it as a, good store of value in the long term. Okay. And would you as an individual, since you've been a part of it for a while, look at it as a business or building your family wealth, or have that kind of focus around it in the real world, in like real life? So I think, yes, we can actually, people are actually building, real life businesses around this industry, around the crypto industry. If you talk about the number of tokens, there are more than 10,000 tokens which are right now traded in the market. So you can just imagine coming from 3-4 tokens when you started to 10,000 tokens today. Yes, absolutely. The number of tokens also, I think, they are, 250x, or I'm sorry, it's a 2500x on the number of tokens. If you talk about that have begun. Yeah, absolutely. So, see, there are a lot of, companies who are building around the crypto space, around blockchain. In fact, now the governments are also, using blockchain technology to rectify their systems and to just build on the amazing products around blockchain. So it's definitely here to stay in real life as well. People are building different products like NFTs. These metaverses are now coming up. All these things and places. If you talk about DeFi, the decentralized finance, which has actually changed the face and the finance system, that the banking system that we used to see. Right. So I think the world is changing at a very rapid pace, and I am pretty sure the advancement that we have seen in the last 100 years is going to happen in the next 10 years. You're seeing that technology develop and evolve so fast that 100 years worth of work can actually be done in 10 years, and that's the growth that we can see. Absolutely, in the next 10 years, it can happen. This is now, what are your, so that is, so to relate it, that you're looking at crypto as blockchain, that is where your relation is coming from, and then you're looking at it from a decentralization point of view and how it will evolve real people's real lifestyle, financial institutions, governments, etc. Yes, absolutely. So Bitcoin, if you read the white paper, which generally most of the people don't do, so if you read the Bitcoin white paper, the heading says it's a peer-to-peer cash system. It's a peer-to-peer electronic cash system. So when you talk about peer-to-peer, it mentions decentralized, which means there is no third party involved between two transactions, between two people. So let's suppose if I want to transact or send money to you, I can send money directly to you without involving a third party, which is like in a bank. today's date a bank.
Yeah. Yes, absolutely. Yeah. Which is right now a bank, or maybe, if you talk about all these PayPal, Paytms, and all these phone pays or UPIs which have come up now. Payment gateways, it doesn't intermediaries. Absolutely. Eliminating all these intermediaries. We are here with a peer-to-peer electronic cash system, which is actually, giving wealth back to the people, to the common man. So this is basically something which is very revolutionary. I do agree with you, but it's for another conversation that these intermediaries, when they come into our real world, they are also securitizing certain things. The government is involved. We feel safe, etc., etc. But that's for another conversation altogether. I also want to know something more important from you. Because you have so much exposure and starting so early on and doing so many things, what is your view on the NFT space? Because there's a lot happening there. Absolutely. So NFTs and metaverse, it's something which is very intriguing and it has caught my attention of late, and not just but a lot of people who are into cryptos have actually hopped onto the NFT bandwagon, and they are actually taking a lot of time and effort creating a different kind of universe for us, which is known as metaverse now. Yes. And if you have recently heard the news that Facebook has also renamed itself Meta. So all these big corporations and if you talk about celebrities, celebrities like you can say Steve Aoki, who's a very world famous DJ, Snoop Dogg, or if you talk about Indian celebrities like Salman Khan, Amitabh Bachchan, to Kunal Kapoor, all these celebrities, they are coming into NFTs big time, and NFTs is going to be here for a very, very long time now. Just need to wait and watch how the space shapes out, because again it's all about conviction. How with your conviction, I have a question to add. So, like, people who are watching for the first time, understanding NFT, it's a little complicated. It's like, for a layman, for like me, who's not very explored to the field, says NFT is a piece of art. You go out and buy that piece of art digitally, and you own the rights to it. So this art could still be in the museum. Stamped on the blockchain. And stamped on the blockchain. Yes, exactly. But then now we are seeing NFTs with graphics. Now we are hearing Decentraland, and we are hearing things that take you into another world of reality. What's that all about, and how someone can actually step into it in reality? Like, how me as a common man can get into it? So I'll just try to explain it to very simple words. So I'm sure you are a 90s kid, or maybe an 80s kid. And all of us from that generation can actually relate to Mario and all those Contra games that we used to play, right? The video games that we used to play, right? So all those games are now, you can think of it as a part of metaverse, and these games are now actually, changing the reality. So people are now using, metaverse as a platform to perform all those in real life activities which they are performing now, and they can actually see all those events and games. To understand that correctly, now say for example, we take Mario as an example. So are you saying that using the metaverse, I can enter inside Mario and play the game? Yeah, exactly. You can play the game yourself, entering into that metaverse. So will I be the Mario? Yes, you being Mario, absolutely. So the 100x guy just talks 100x, right? Yeah, 100x. But okay, hold on. So if I enter the metaverse as Mario, I can do what I want to do, or I'm just playing the game? As in, my role of being in the metaverse is going to be playing the game, or I can do multiple things as well? Yeah, you can do multiple things. Whatever you are doing in real life, you can, if host events, you can. So, for example, if you are hosting this TV show, you can, host a show in the metaverse as well. You can actually attend events and concerts. Exactly my question. All right, exactly my question. If now you mentioned Steve Aoki, so I'm going into that direction because he's entered the NFT space. Now, if I am Steve Aoki,
I'm doing a DJ event. I'm playing music. Now, in reality, the music system is, say, here, okay? But I want to be in the metaverse and I want people to attend my event. How would this all pan out? How would this really happen? So it's all in front of you. It's in front of the system that will happen. So you will be sitting in your home, in your room, in front of your system, and you will be seeing him perform live in the metaverse. And you can also be a part of the metaverse if you create your own avatar. If you see all those PFPs which are now very common, the Bored Ape Yacht Club or the CryptoPunks, or you talk about. So that would be my avatar. Or the Cool Cats. Yes, so you can have your own avatar and you can actually. So I could be a $40,000 monkey. I could be a $40,000 monkey, or I could really be Mario, example, and would I be wearing something that takes me into the metaverse, or would it be like a computer screen? So right now it's the computer screen, but yes, there are those VR glasses which people are working on now. Maybe in future we'll very soon see all those the VR glasses with which we'll be able to join the metaverse and see those people live along with you, right? So even you will not be present over there, you will still be able to see all those people performing live in front of you. So I need more information, okay? This is like Iron Man, Jarvis, throw me my suit. But wait, so I'm wearing my AR, VR glasses, and I'm Steve Aoki. I'm actually playing music on the floor, right? There are people who are watching me play music and they can hear as well. But how do I see them having a good time in front of me? So that is what a metaverse creates. So if you talk about Decentraland or Sandbox, it's a creator's paradise. And people are actually creating or building their products onto it. So people are building games, people are building, they're creating live events, posting live shows onto it. And, I'll tell you one very fascinating fact. Recently Paris Hilton also, hosted a fashion show in Decentraland. So, these are the things which are happening live right now in front of us. So that's what we are going to witness in the next few years. If I go onto Decentraland, can I go and buy a piece of land that can then be lent out to Paris Hilton to do a fashion shows on? Absolutely. How do I do it? How do I do it? So to put it in simple words for your viewers, you can simply go to these platforms called OpenSea.io. Then there is Super Rare, Rareable, Looks Rare NFTs, and these are all the kind of platforms where one can go create their account, and all these lands are available in form of NFTs which one can purchase through. Are they too expensive? So yes, starting from I think maybe the floor price right now in Decentraland and Sandbox is around 4 Ethereum. So it's roughly around $12,000. Starting from $12,000, it goes up to millions of dollars. But how much so the minimum ticket, how much can that buy me? So I think a $15,000 investment can get you a 1-by-1 piece voxel of Sandbox is what you get. 1-by-1, that's 1 square foot. That's one footstep. No, it's not 1 square foot. So in 3D space, it's basically called a voxel. It's a 1-by-1 box that you get. You can build, whatever you want over there. You can build a house, a mansion. You can build a a stage show, hosting event. Anything can be hosted over there. Anything can be built over there. It's all built in 3D through rendering, through 3D rendering process. Yeah. The way all these cartoon characters and movies, the animated movies are made, the same way it's basically being built on the metaverse. All right, so hold on, the 100x man. The 100x man, hold on, listen to this. So if I go out and I buy a 1-by-1 box, I can actually go out there and build a house or a cafe or something, and that can be then lent out to people who are coming over there. If for any reason I reached out to Paris Hilton and asked her to do a fashion show there, I'd be paid for this.
Yes, absolutely. Man, you the 100x man, you deserve the 100x. This is insane. And I think we need to do one more talk on this. Please. Yes, but yes, okay, we'll cover that in detail. We'll cover that in detail, get more information from you. Before you go, I have more questions for you. I know we're running out of time, but I have some important questions. What is on your whiteboard? On my whiteboard, I generally keep two prominent things, that is Bitcoin and Ethereum. That's always there on my whiteboard as a long-term store of value and investment, thesis. Yeah. But if you talk about a few mid-terms, because I generally don't trade short terms because of the spikes and the news that keep on coming. So Yeah. there might be pumps and dumps in the space. But for the midterm, I feel I have Solana on my radar. I have, a few low cap gems, which you call, one is Defined Network, DFYN is the name. Okay. That's also on my whiteboard. Okay. That's a low cap gem. I think the market cap is less than, I guess around $18 million. It's less than that. Yeah. It's an AMM DEX platform on the Polygon network. Okay. So that's there on my radar. And if you talk about, mid cap, gems, Render Network is something that I'm looking forward to. Keep it coming. That's on my whiteboard, because I think it's a decentralized way of rendering your metaverse. So you definitely would want to, render your, 3D products that you're creating. Yeah. So this is going to be, I think a game changer for me. Okay. So that's on my whiteboard. And yes, I am very much, convinced with Polygon, which used to be Matic Network. So that's definitely on the top of my whiteboard. So these are, I think, a few names that I can name right now. But yes, the list Okay, these are the ones. Okay. list Ladies and gentlemen, are you hearing this? This is insane value. This guy has been in the network from 2012. But more importantly, none of this is financial advice. This is just information that the gentleman is sharing, his experience. These are not trading calls. Please don't go out and buy them. Do your financial research, do your own research, do whatever you want to do, and whichever part of the world you are in. This is not financial advice. The gentleman is just sharing his a lot of research goes into researching all these projects, and I would definitely recommend everyone to make sure that you research your own projects before investing, and only invest the amount that you can afford to lose. Definitely no one wants to lose, but yes, you should only invest the amount that you cannot afford to lose. Yeah. That's the most important thing. That is where the fear and greed comes in, and you need to control these emotions as a trader. Wow, Palash, this is so much value. This is so much information, man. Thank you so very much. It has been a tremendously valuable talk. I love the way you got deep into NFT. Shows me that you're very inclined towards this. So very soon you're going to do one more talk that just covers about NFT. But guys, listen up. He shared a lot of information. If I'll just give you a very quick recap, the gentleman comes from the trading world. He's got background history of trading, FX, equities. He's worked in corporate companies. He knows how to do his own research. He's been in the space for almost 10 years, a decade now. He's invested himself into the space. He's learned a couple of things. He got lucky, 100x. And he's now deep into NFT as well. He'll come back and he'll explain to us Decentraland and a lot of other things that are happening in this world today. Before you go, Palash, is there anything else you want to share with the audience today, buddy? I think a last word from me would be, it's not just being lucky. Luck is, I think, it's labor under correct knowledge, if you put it in simple terms. So you have to put in that labor. You have to put in that labor, and you have to have that correct knowledge and patience to, actually make your luck work. Awesome. That's so nice of you to share this, man. So nice of you to share this. Thank you so much, ladies and gentlemen. This is what we're doing on Traders Paradise, getting you real traders, real people who are doing wonderful things. Just to let you know, there's so much happening in this space.
It's just another paradise altogether, and all of this information is available on Crypto TV and also on the Crypto Wire app. So please go and download it, like and share this video, and I will see you guys next week. Until then, Palash Agarwal, salute to banta hai. All right. See you, mate. See you again very soon. Thank you so much for having me, and thank you again, Crypto TV and Traders Paradise, for having me on the show. Thank you, brother. Thank you. Adios. Hello and welcome to Crypto TV. This is Manoj Dhara. In 2022, Solana had 12 serious outages, driving the price of its native coin sold down more than 78% this year. June 1st week, the latest outage shut down the network for 4 hours and 10 minutes, which means a peak potential of 975 million transactions did not occur during that blackout. The prices of Solana native SOL has dropped roughly around 14% since the mainnet outage on June 1st week, which is roughly around $38 as of now. So to discuss this entire episode in detail, we have invited Vivek Singh from Crypto University. Vivek, welcome to the show. Thanks. So Vivek, what happened on June? Since we are discussing about Solana and its way forward, going ahead for our investors. So what happened on June 1st week, the recent Solana outage, if you can just explain this for our viewers. Okay, so there is something called durable nonce transaction. All right. So what happens in this is that you can reuse the same nonce again and again. But in case of outage, there was a small bug in this feature of Solana. Because of that bug, this entire Solana network went down. All right. None of the transactions could happen for 4.5 hours, almost 4 hours, 10 minutes. So basically, this happened because of this, there is a bug in durable nonce transaction. So अब आपने जैसे बताया कि एक durable nonce transaction की वजह से ये outage हुआ था और ये this is not for the first time this is happening, Vivek? Actually, there has been lot of outages in Solana network. This is the 8th outage. ये 8वीं बार हो चुका है. इसके पहले जितने भी outage हुए थे, there were some small bugs in Solana network. As you see, Solana is still in development phase. Still is getting improved day by day. So developers have to do a lot of more hard work is required, to make it perfect. And Solana में decentralization, there is an issue with the decentralization as well. So we will discuss this decentralization issue in details. But what steps have Solana taken to resolve this issue? If you can just highlight that. So basically, Solana has removed this feature, durable nonce transaction for now. They have disabled this feature. From now onwards, it's disabled. So they had told this feature will be enabled back once they have fixed the bug. So as of now, they are still fixing the bug, and they will re-enable the feature once the bug is fixed. All right. So since we are talking about this Solana and its way forward, so how centralized is the Solana network? If you can just highlight this, because they have claimed that this is a decentralized network, and its way forward. What do you think, according to you, can be the tipping point as far as investors are concerned? So basically, to determine any network is centralized or decentralized, there is something called Nakamoto coefficient. So Nakamoto coefficient score gives you a proper, value whether you are centralized or decentralized. In case of Solana is? The more score, the better decentralized the network. All right. So for Solana, the score is 19. It's much higher compared to, other networks like Bitcoin is 5, Ethereum is 3. So the score is quite high. And this actually, Nakamoto score determines how much decentralized the network is. So if you could just explain this for our viewers, Vivek, Nakamoto, the parameter which you have highlighted is actually very interesting, and आप हमारे viewers को थोड़ा सा इसको simplify करके बता सकते हैं, because you told that this is to measure any network is centralized or decentralized. In this case, it's a decentralized network. So how do you explain this for our viewers? थोड़ा simplify करके बताइए. So Nakamoto coefficient जो है, actually this is based on a formula of Gini coefficient. So Gini coefficient is a subset of Nakamoto's coefficient. So Gini coefficient में क्या होता है? Suppose you are having 10 nodes. So your score will be 10. So it's very simple formula. Number of nodes के base पे the formula calculation is considered.
So we consider Gini coefficient as one subset. There are multiple subsets like this. And finally, a Nakamoto coefficient score is arrived after all these calculations. All right, since we are talking about this coefficient and it is pointing more towards decentralized, we will discuss this in details. So my next question is, Vivek, how are nodes operating on the Solana? Since you have highlighted the Gini factor as well. So how does nodes operate on Solana? If you can just simplify this for our viewers. Okay. So basically, to set up a node, you need to have a validator. We call it validator in terms of Solana network. And there is a configuration requirement for that. You need a 12-core CPU, 128 GB of RAM, which is very high configuration if you look at this configuration. So this is like, it costs you thousands of dollars. That's why if you see number of nodes in Solana network is very less. It's just 1,776 nodes as of now. So since we are talking about Solana and its way forward, this is an initiative which Crypto TV is taking to explain for our viewers that what should be your investment strategy. As since this is not an investment advice, this will help you. This research will help you to understand this network or Solana better. So trades per second is something which Solana has been claiming, which is roughly around 65,000 odd. There are articles which says that Solana's trades per second is nearly over 60,000. Some say that it's 25,000. So ये actual picture क्या है विवेक? ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा आप explain करें. So basically, if you look at the websites of Solana, it says it is possible to conduct 7,10,000 transactions per second. But if you look at the Solana ecosystem, 7,000. 7,10,000. All right. transactions per second. So if you look at this, why they are claiming such a high speed? What they say is that the speed of Solana will keep on increasing as the nodes keep on increasing. So that is the future projection of speed. But if you look at the current speed on the website, if you check it, it's just 1,270 transactions per second. Fantastic. So that is the current transaction speed. So this is actually a big negative as far as the network is concerned. आप claim कुछ और कर रहे हैं और आप deliver कुछ और कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि आप 5G बेच रहे हैं, लेकिन आप speed दे रहे हैं 1G का. That is a future projection. That वो जो projection किया गया है वो future की mining के base पे किया हुआ है. All right. Current nodes, current mining के हिसाब से is just 1,260, which is not a big figure actually. If you ask me why people are participating in Solana network, it's because mostly about cost. People are participating due to cost, not due to speed actually. So since we are talking about, आपने जैसे इस एपिसोड की शुरुआत में आपने कहा कि यहाँ पर they have actually claimed that they are a decentralized network, but it is pointing towards a centralized network since there are roughly around 50% position of the entire project is with the promoters. तो ये थोड़ा सा आप उसको simplify कीजिए कि what is the claim and what is the actual status as of now? Okay, so if you look at Ethereum, like they have 80% of tokens of Ethereum is public. Right. Public is owning 80% of tokens. But if you look at Solana, 48%, according to Messari report, 48% of the tokens are still with the Solana Foundation. It's called insider token in our crypto language. Right. So basically, Solana owns this 50% of tokens, which is almost half of the complete supply. And if you look at the complete staking supply, 77% of Solana tokens are already staked, which means most of these inside tokens are staked and they are used for mining the Solana tokens. Sure. तो ये हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि जो विवेक ने अभी एक फैक्टर एक्सप्लेन किया है. सो यूजुअली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर जितना ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव माना जाता है कि चलो ठीक है, कंपनी बहुत ही स्टेबल है, यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन दैट. बट इन दिस क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स जितना कम होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में होता है वो ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है बिकॉज उतना ज़्यादा आपका कम्युनिटी बड़ा होता है. विवेक, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? See, basically, the less decentralized system it is, then less value it will have. The more decentralized it is, the more value it will have. Because if you have more communities, it is spread across different nations, different countries. So it is more decentralized, it is more powerful. Why Bitcoin is so powerful? Because Bitcoin is decentralized, it's across multiple countries. So that's why Bitcoin is most powerful. So in crypto industry, in Web3 industry, what matters is that how many communities you have, how big is the community, and how decentralized your system is. So that is very important. So how does this insider thing indicates, its centralized nature? Okay. So basically, since people are holding 48% of tokens, and if you see the basic criteria for mining Solana tokens is that you should have, you should stake some tokens, and
if people are owning, Solana Foundation is owning most of the tokens, the probability is that they will be mining most of the tokens. So they must be owning most of the validator nodes. If you see, they must be run by Solana system only. All right. So that is the probability. I mean, because validator node, running a validator node requires a lot of Sol tokens, and Sol tokens is owned by Solana insiders. तो ये इतना बड़ा जो concern है, and cryptocurrency market is also is not really performing well. तो Solana का performance भी काफी अच्छा नहीं है. We can understand that the entire cryptocurrency market is down. But what's the way forward for investors? Research material जो हम provide करते हैं उनके लिए, what are the top 3 points? What are the top 3 takeaways from this outage? So basically, the main takeaway is that Solana is still developing. They still have to fix a lot of bugs which they are encountering every outage. And if you look at other networks, they are much more decentralized. If you look at Cardano has double the number of nodes that Solana has. So they have double number of nodes actually. And if you look at Ethereum 2.0, which we are expecting, going to break the market. I mean, this is going to almost outlaw all these, systems which we have right now, layer 2 solutions. Once we have Ethereum 2.0, we are having a lot of expectations because that will be all proof of stake. So even Solana, if you see, it's not proof of stake; it's proof of history. Exactly. So since we are talking about proof of history, and we have seen recently newspaper reports have suggested that the NFT volumes on Solana network has surpassed that of Ethereum. Since we are talking about a robust network and Solana is a layer 2 solution, what is the reason there is an upsurge in the NFT volumes? Because Ethereum का network भी बहुत ही widely adopted है as far as NFTs are concerned. See, if you look at the main reason is that the cost on Solana network is very less compared to Ethereum. Suppose मैं वही transaction Ethereum में करता हूँ, तो it will cost $200. If I do the same transaction in Solana, it will cost $0.0025. So difference is huge. People are going towards Solana. Why? They are saving cost in terms of selling and buying NFTs. So Vivek, since you have highlighted that the merge which is Ethereum 2.0, अगर वो effect होता है तो वहाँ पर लेकर layer 2 solutions जो providers हैं उनका एक बहुत बड़ा concern हो जाएगा और उनका relevance भी खतरे में है. So for example, you're talking about Solana or for that matter Polygon or for that matter Cardano or any other layer 2 solution provider. So if you look at the layer 2 solutions, why they still exist? They exist because there is a problem with layer 1. All right. Because there is a problem with Ethereum. Once all these problems are solved, once Ethereum becomes a proper network, with low gas fee or high transaction speed, so in that case, why would I need some other network? Why would I go as a developer, as a programmer? Why would I go to some other network if I have Ethereum? Because every programmer, the first choice is Ethereum network because it all started with Ethereum. So most of the programmers, developer community, they are comfortable with Ethereum right now. So let's see what luck this Ethereum 2.0 brings for the entire crypto universe. So there has been many outages in Solana, like an outage that lasted for more than 17 hours in September 2021, just to take you back. So where attackers flooded the network with roughly around 4 lakh transactions per second, which the Solana network couldn't handle. The Solana is still in early development stages and we will have to wait and watch how the Solana network evolves with time. Like Bitcoin has improved for DDoS attacks. Alright, thank you so much Vivek for being part of this interaction. आपने बहुत अच्छी तरीके से explain किया कि यहाँ पर outage कितने सारे outages हुए हैं और उसका reasons क्या है और हमने हमारे viewers को ये भी बताया कि यहाँ पे लेकर कौन-कौन से steps हैं उनको follow करने चाहिए before making any investment bets. Thank you so much for being part of this interaction. Keep watching Crypto TV for more such interesting analysis. This is Manoj Dhara signing off. Thank you. हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. आज आपण ब्लॉकचेन विषयी माहिती घेणार आहोत. पण ब्लॉकचेन नेमकं आहे तरी काय? क्रिप्टोकरन्सी सध्या अगदी प्रत्येकाचे लक्ष केंद्रित करत आहे. लोकांना यामध्ये इन्व्हेस्ट सुद्धा करायचं आहे आणि यामधून भरपूर प्रॉफिट सुद्धा कमवायचं आहे. पण क्रिप्टोकरन्सीला समजण्याचा अगोदर ब्लॉकचेन नेमकं काय आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे.
तर तुम्हाला माहीत आहे का ब्लॉकचेन म्हणजे काय आहे आणि हे नेमकं कसं काम करतं? नाही, डोंट वरी, मी आहे ना. आज आपण जाणून घेणार आहोत की ब्लॉकचेन हे आहे तरी काय. हल्लीच आपण ऐकतो आहोत की सध्या बिटकॉइन खूप क्रेझीली समोर येत आहे. लोकांमध्ये बिटकॉइनला घेऊन खूप विश्वास वाटू लागला आहे, कारण बिटकॉइनची किंमत प्रत्येक दिवशी वाढत चालली आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का बिटकॉइनच्या मागे टेक्नॉलॉजी काय आहे? जर तुमचं उत्तर हो असेल तर तुम्हाला ही स्टोरी नक्कीच आवडेल, कारण बिटकॉइनचा संबंध हा ब्लॉकचेन सोबत आहे. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी हे आपल्या IT इंडस्ट्रीमध्ये त्याप्रमाणे बदल करणार आहे की ज्याप्रमाणे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरने 1 दशका अगोदर केलं होतं आणि ज्याप्रमाणे लायनक्स हे एका दशकापासून मॉडर्न ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटचा मूळ राहिला आहे, ठीक त्याचप्रमाणे ब्लॉकचेन सुद्धा येणाऱ्या काळात इन्फॉर्मेशन शेअर करण्यासाठी एक मोठं उत्तम माध्यम असणार आहे. आणि चांगली गोष्ट ही आहे की हे लोअर कॉस्ट सुद्धा असणार आणि अगदी सोप्या पद्धतीनं हे ओपन आणि प्रायव्हेट नेटवर्क्समध्ये इम्प्लिमेंट सुद्धा करता येणार. ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला घेऊन लोकांमध्ये खूप होप्स आहेत की ब्लॉकचेन हे टेक्नॉलॉजीच्या फ्युचरला पूर्णपैकी बदलणार आहे. हे बऱ्याच अंशी खरं सुद्धा आहे, कारण फक्त बोलण्याने ही गोष्ट आपल्याला कळणार नाही, तर यासाठी आपल्याला या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला संपूर्णपणे समजावं लागेल. याच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आपल्याला विचार करावा लागेल. मग कुठेतरी जाऊन आपल्याला या टेक्नॉलॉजीला समजण्यासाठी आणि त्याला उत्तम पद्धतीने इम्प्लिमेंट करण्यासाठी मदत होईल. ही गोष्ट खरी आहे की ब्लॉकचेनला घेऊन ॲक्सेप्टन्स हल्ली खूप स्लो आहे, कारण टेक्नॉलॉजी एक्सपर्टच्या नुसार हळूहळू या ॲक्सेप्टन्सला गती येणार आहे. आणि हे खरंच चांगली बातमी आहे, कारण भविष्यात ही टेक्नॉलॉजी पूर्ण जगाला बदलणार आहे. सोप्या भाषेत म्हणायचं झालं तर ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर आहे. पण आपल्याला माहीत आहे का लेजर हे काय असतं? लेजर हे एक असं बुक असतं जेथे सर्व अकाउंट्सची डिटेल्स ठेवली जाते, जेथे डेबिट आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन पोस्ट केले जातात. समजा की हे आपल्या बँक पासबुक प्रमाणेच असतं. मग आता आपण हे बोलू शकतो की ब्लॉकचेन हे डिजिटाइज, डिसेंट्रलाइज आणि पब्लिक लेजर असतं. समजा की आपल्याकडे एक ट्रान्झॅक्शन फाईल आहे जी आपल्या कॉम्प्युटर म्हणजेच लेजरमध्ये आहे. 2 गव्हर्नमेंट अकाउंटंट्स ज्यांना आपण मायनर्स बोलतो त्यांच्याकडे पण तीच फाईल त्यांच्या सिस्टीममध्ये असते, म्हणून याला डिस्ट्रीब्युटेड असं म्हणतात. जसे आपण एक ट्रान्झॅक्शन करतो, आपला कॉम्प्युटर त्या दोन्ही अकाउंट्सला इन्फॉर्म करण्यासाठी ईमेल करतो. त्यानंतर प्रत्येक अकाउंटंट लवकरात लवकर सर्वात प्रथम चेक करत असतो की तुम्ही अफोर्ड करू शकतात की नाही, आणि त्या बदलात त्यांना त्यांची सॅलरी म्हणजेच बिटकॉइन मिळू शकते की नाही. या दोघांमधून जो पण अगोदर चेक करतो आणि त्यांना अखेरीस व्हॅलिडेट करून रिप्लाय ऑल करतो, सोबत त्या ट्रान्झॅक्शनला व्हॅलिडेट करण्याच्या आपल्या लॉजिकला पण अटॅच करतो, त्यालाच म्हणतो आपण प्रूफ ऑफ वर्क. जर यामध्ये दुसऱ्या अकाउंटंटने पण अग्री केलं तर सर्व फाईल ऑफ ट्रान्झॅक्शनला अपडेट करतात. तर या पूर्ण प्रोसेस किंवा कॉन्सेप्टला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी असे म्हणतात. म्हणूनच ब्लॉकचेन एक असं इनकरप्टेबल डिजिटल लेजर ऑफ ट्रान्झॅक्शन आहे ज्याला प्रोग्राम केलं जातं व्हर्च्युअली सर्व गोष्टींना रेकॉर्ड करण्यासाठी. सर्व लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड जे ब्लॉकचेनमध्ये असतात त्यांना ब्लॉक म्हटलं जातं. म्हणूनच हे ब्लॉकचेन नेहमी कंटिन्युअसली ग्रोईंग लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड्स आहेत जे लिंक्ड आणि सिक्युअर्ड असतात. तर ही होती ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची कहाणी. आय होप आपल्याला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा कॉन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे कळलाच असणार. पुढील सेगमेंटमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे की ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला कोणी, कसं आणि कधी इन्व्हेंट केलं होतं. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टोविषयी नवीन गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो TV. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड, तुर्तास येथेच थांबते.
तुम्हाला रईस चित्रपटाचा शाहरुख खानचा फेमस डायलॉग हा माहितच असेल, हम जान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. मला वाटतंय काही लोकांनी या डायलॉगला अक्षरशः मनावर घेतलंय आणि खरंच क्रेझी आणि वियर्ड NFTs म्हणजेच नॉन फंजिबल टोकनचा अक्षरशः बिझनेस सुरू केलेला आहे. नमस्कार, मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा घेऊन आलो आपल्या समोर एक आगळी वेगळी आणि विचारांच्या पलीकडची अशी NFTची नवीन लिस्ट. आता मी तुम्हाला अशा 3 NFTs बद्दल सांगणार आहे ज्याबद्दल तुम्ही आयुष्यात कधी ऐकलं नसेल आणि विचारही केला नसेल. चला तर मग सुरू करूया. तर या टॉप 3 क्रेझी NFTच्या लिस्ट मध्ये नंबर 1 वर आहे सेल युअर सोल या नावाची NFT, म्हणजे तुमच्या आत्म्याची NFT. नाही, तुमचे कान नाही वाजत आहेत, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलात. आता NFTs वर सुद्धा आत्माने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलंय. माहित नाही कधी कोणत्या क्लिक सोबत कोणाची आत्मा NFTच्या माध्यमातून तुमच्या जवळ येईल. तुम्हाला माहित आहे की मी थोडासा ड्रामेबाज आहे, पण डोंट वरी, या आत्म्याचं NFTच्या हॉरर सोबत काहीही लेणं देणं नाहीये. हल्लीच एक 21 वर्षांच्या स्टीन बन शेक या नावाच्या डच स्टुडंटवर NFTचे क्रेज एवढं हवी झालं होतं की या भावाने पॉलिगॉनवर आपली स्वतःची सोल म्हणजेच आत्म्याचीच NFT मिंट करून टाकली आहे. एवढंच नाही, या भाईने जगातील सर्वात मोठी NFT मार्केटप्लेस ओपन सीवर आपल्या आत्म्याची NFTला लिस्ट सुद्धा करून टाकलंय. अरे काय चाललंय? अरे कोणीतरी जाऊन या डच स्टुडंटला विचारा की भाई तुझ्या 70 पिढीमध्ये सुद्धा कोणी आत्म्याला बघितलंय का? परंतु हा वेडेपणा इथेच संपत नाहीये मित्रांनो. ज्याने या डच स्टुडंटच्या आत्म्याच्या NFTला 300 युरोज म्हणजे जवळपास 25,000 रुपयांमध्ये विकत सुद्धा घेतलंय. या डच स्टुडंटची सोल ही जगातील सर्वात पहिली ह्युमन सोल म्हणजेच आत्मा आहे ज्याला NFTच्या माध्यमातून विकलं गेलंय. म्हणून या महाशयने हल्लीच झालेल्या त्याच्या मुलाखतीत आपल्या आत्म्याच्या NFTची मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे $3.5 मिलियन म्हणजेच जवळपास 27 करोड रुपये सांगितले आहे. आता यांनी आपल्या सोलच्या NFTची एवढी क्रेझी व्हॅल्युएशन काय म्हणून ठेवली आहे याचं उत्तर बहुतेक या बिचाराच्या आत्म्याला सुद्धा माहित नसेल. अजून एका आपल्या आत्म्याच्या NFT सोबत या डच स्टुडंटने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट सुद्धा अटॅच केलाय, ज्यामध्ये डिटेलमध्ये डिस्क्राईब सुद्धा केलाय की कशा प्रकारे ओनर त्याच्या आत्म्याचा वापर, त्याची रिसेल किंवा कोणत्या देवी देवताला बळी सुद्धा चढू शकतो. बाप रे बाप. जर तुम्हाला NFTचे सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट वाचायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक सुद्धा अवेलेबल आहे. चला आता बोलूयात दुसऱ्या क्रेझी NFT आणि त्यांच्या अतरंगी अशा क्रिएटर बद्दल. हे असे महाशय आहेत ज्यांना बॉडी हॉरर चित्रपटांचं मास्टर बोललं जातं. वर्ल्ड सिनेमाचे मागील 50 वर्षांचे सर्वोत्तम असणारे क्रिएटिव्ह माइंड, द फ्लाय, डेड रेंजर्स, हिस्ट्री ऑफ व्हायलन्स आणि अपकमिंग विगो मॉर्टनस्टेन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्युचरचे डायरेक्टर मिस्टर डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग, जे आजकाल आपल्या चित्रपटाला घेऊन नाही तर आपल्या रिअल लाईफ बॉडी हॉरर टाइप NFT साठी सध्या हेडलाईन्स मध्ये आहेत. यांच्या NFTचे नाव आहे इनर ब्युटी, म्हणजेच कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स. अहो किडनी स्टोनचे कलेक्शन. अनफॉर्च्युनेटली जसे नाव तशीच त्यांची NFT. डायरेक्टर साहेबांनी आपल्या किडनी स्टोन मध्ये काय नेमकी इनर ब्युटी दिसली की त्यांनी आपल्या किडनी स्टोनच्या फोटोलाच NFT बनवून टाकली आणि सुपर रेअर नावाच्या क्रिप्टो आर्ट मार्केटप्लेसवर 28 मार्च 2022 ला किडनी स्टोनच्या फोटोचीच NFT रिलीज सुद्धा करून टाकली. अहो भला किडनी स्टोनला जगाला दाखवून विकण्यासारखी का गोष्ट आहे का? पण लोक NFT बनवून विकतायत आणि असेही काही नमुने आहेत जे अशा NFTला विकत सुद्धा घेत आहेत. खरं तर क्रॉनेनबर्गने या अगोदर सप्टेंबर 2021 मध्ये द डेथ ऑफ डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग नावाची शॉर्ट फिल्मला NFT बनवून नॉन फंजिबल टोकनच्या जगात पहिल्यांदा सुरुवात केली होती. ही 1 मिनिटाची शॉर्ट फिल्म सुद्धा खूप वेळ होती, ज्यामध्ये डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग आपल्या स्वतःच्या डेड बॉडीकडे पाहतात आणि नंतर आपल्या शरीरावर चादर ओढून बाजूला झोपून जातात. आता या वेड NFTचा नेमका काय अर्थ काढायचा, कारण कोणी या NFTला $90,000 म्हणजेच अराउंड 69 लाखांमध्ये विकत घेतलं होतं. मित्रांनो, हे सुपर श्रीमंत आणि सुपर क्रिएटिव्ह लोकांचे फंडे बाबा आपल्या डोक्याच्या बाहेर आहेत. 1 मिनिटाच्या शॉर्ट फिल्म मध्ये 69 लाख रुपये उडून टाकले. माहित नाही यांच्या किडनी स्टोनची NFT कितीमध्ये विकली जाईल. ही किडनी स्टोन ऍट द एंड ऑफ द डे खरी तर आहे, परंतु आपली पुढची NFT आहे एका अशा रॉक बद्दल जे रियालिटीमध्ये अस्तित्वातच नाहीये. तरी एक क्रेझी NFT लव्हरने या व्हर्च्युअल रॉकच्या NFT साठी अक्षरशः $1.3 मिलियन म्हणजेच अराउंड 10 करोड रुपये खर्च केले आहेत. आणि या NFTचे नाव आहे क्लिप आर्ट ऑफ इथर रॉक. खरं तर ही कार्टून रॉकची JPEG इमेज जगात फक्त 100 आहेत, ज्याला 2017 मध्ये क्रिप्टोपंक्सच्या नंतर ॲज अ इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टिबल NFT लॉन्च केलं गेलं होतं.
बाईंग, कलेक्टिंग आणि सेलिंगच्या व्यतिरिक्त याची कोणतीही रिअल वर्ल्ड व्हॅल्यू नाही आहे. परंतु याला ट्रॉन ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो करन्सीचे फाउंडर जस्टिन सनने फक्त आपली कॉलर टाईट करून इम्प्रेशन झाडण्यासाठी विकत घेतलं होतं. भाई, मोठी लोक, मोठ्या वार्ता व्हर्च्युअल रॉकच्या फोटोग्राफला करोडोंमध्ये विकत घेत आहेत. वाव. आम्हाला जर साधं किचनमध्ये नवीन मार्बल बसवायचं असेल तरी 10 वेळा विचार करावा लागतो. एनिवेज, आतासाठी ही होती माझी 3 क्रेझी NFTs. अशाच प्रकारच्या अतरंगी NFTची अजून एक नवीन क्रेझी लिस्ट घेऊन मी संदीप कासालकर पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मेटावर्स और NFT मेनिया ने ग्लोबली सेलिब्रिटीज की दुनिया में तूफान मचा दिया है. एक्टर्स हो या आर्टिस्ट, मॉडल्स हो या फिर सिंगर, सभी इस रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं. ऐसे में इंडियन सिंगर्स भला कैसे पीछे रहते? कुमार सानू, सोनू निगम, कैलाश खेर से लेकर SP बालासुब्रमण्यम तक से जुड़ी NFTs सुर्खियां बटोर रही हैं. तो वहीं दिलेर मेहंदी ने सीधे मेटावर्स पर कब्जा जमा लिया है. वहां लैंड खरीदकर दिलेर जबरदस्त खलबली मचा रहे हैं. चुरा के दिल सभी का चले ये चले. जी हाँ, 90s में इनकी आवाज ने सभी को क्रेजी कर दिया था. तब शायद ही कोई रोमांटिक सॉन्ग हो जिसमें इनकी आवाज का जादू न घुला हो. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग ऑफ रोमांस कुमार सानू की, जिनकी रुमानी आवाज ने ना जाने कितने दिलों को पहले प्यार का एहसास कराया. पॉपुलर मेलोडी किंग इस बार अपनी NFT कलेक्शन के चलते सुर्खियों में है. हाल ही में उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो, अनरिलीज सॉन्ग के ऑडियो और कुछ क्लिप्स के अलावा अपने फर्स्ट ऑडिशन और ऑटोग्राफ्ड डिजिटल मेमोरेबलिया की NFT सीरीज लॉन्च की है. कुमार सानू की इस NFT कलेक्शन में उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स के साथ साथ उनके घर के अंदर की खास झलक भी दिखेगी. ये NFT एक्सक्लूसिवली फ्लेमिंगो NFT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. इसकी खास बात है, इससे होने वाली कलेक्शन का 5% NGO को डोनेट किया जाएगा. NFTs यूनिक एसेट होते हैं और इसीलिए अब ट्रिब्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं. तेलुगु, तमिल, कन्नडा, हिंदी और मलयालम फिल्म्स में 40,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज से सजाने वाले लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर SP बालासुब्रमण्यम के गुजरने के 6 महीने बाद उनके अनरिलीज सॉन्ग को बतौर NFT उनके फैंस के लिए लॉन्च किया गया. उनका यह आखिरी सॉन्ग डिजिनूर नाम की लीडिंग एंटरटेनमेंट नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस पर ऑक्शन किया गया. विश्वरूपा दारी सनम नाम की इस एल्बम को लीडिंग म्यूजिक लेबल सिम्फनी रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्ड किया गया है. इस NFT से जुड़ी खास बात है कि इसके बायर को कॉपीराइट का 51% मिलेगा. साथ ही उनके पास इस सॉन्ग को अडेप्ट और अपने मुताबिक रिप्रोड्यूस करने के राइट्स भी होंगे. तो वहीं इन सब के बीच मेटावर्स की दुनिया में धूम मचाने वाले इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के पहले पॉप स्टार दिलेर मेहंदी ने मेटावर्स में लैंड खरीदा है, जिसे उन्होंने नाम दिया है बल्ले बल्ले लैंड. सुनने में आ रहा है कि इस लैंड की एंट्री पर उनका एक जाइगैंटिक गोल्डन स्टैच्यू होगा, जिसके इर्द गिर्द बाकी पॉप स्टार और आर्टिस्ट अपने कॉन्सर्ट्स होस्ट कर पाएंगे. दिलेर इस प्लेटफॉर्म के जरिए नए टैलेंट के साथ साथ पंजाब की म्यूजिक कम्युनिटी, सूफी, पॉप म्यूजिक और बॉलीवुड को बढ़ावा देना चाहते हैं. दरअसल दिलेर ने कुछ महीनों पहले पार्टी नाइट पर एक कॉन्सर्ट किया था. अपनी इस परफॉर्मेंस को उन्होंने इतना एंजॉय किया कि उसकी मौजूदगी हमेशा बनाए रखने के लिए पार्टी नाइट के साथ मिलकर बल्ले बल्ले लैंड क्रिएट कर दिया दिलेर ने. दिलेर इतने पर ही नहीं रुके. उनके इस बल्ले बल्ले लैंड पर स्टोर्स भी होंगे जहां फैंस स्पेशल मर्चेंडाइज की NFT खरीद पाएंगे. NFT फ्रेंजी में शामिल बड़े बड़े नामों में से एक है पॉपुलर सिंगर सोनू निगम का नाम, जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में NFT सीरीज लॉन्च करने वाले पहले सेलिब्रिटी सिंगर हैं. सोनू ने इस NFT कलेक्शन को लंदन में लॉन्च किया था.
उसमें उनकी जर्नी और गानों के अलावा उनके लिखे हुए लिरिक्स और उनकी सिंगल हॉल ऑफ फेम की NFT भी शामिल है। सोनू ने न्यू एज डिजिटल एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी जेट सिंथेसिस के साथ मिलकर ये NFT कलेक्शन लॉन्च की थी। और अब बात एक ऐसे आर्टिस्ट की जिनकी प्लेबैक, पॉप और रीजनल सॉन्ग्स की फैन फॉलोइंग देश में नहीं विदेशों में भी फैली हुई है। लेकिन खास तौर पर सूफी सॉन्ग्स के मामले में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। इंडियन सूफी किंग कहे जाने वाले कैलाश खेर ने अपनी NFT कलेक्शन के लिए पॉपुलर NFT मार्केटप्लेस OpenSea को चुना। कैलाश खेर की ये NFT सूफियाना अंदाज में रंगों और संगीत के सुंदर सपने जैसी है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है ड्रीमस्केप। संगीत सरहदों का मोहताज नहीं, संगीत की भाषा ही ऐसी है जो हर किसी को जोड़ती है, हर किसी के दिलों के तार छेड़ती है। शायद यही वजह है कि एक एक कर सभी सिंगर्स अब NFT और मेटावर्स की दुनिया की तरफ रुख कर रहे हैं। कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। फिलहाल NFT और मेटावर्स भी जबरदस्त बूम पर है, ऐसे में इसका फायदा उठाना तो लाजमी है। तो कैसी लगी आपको म्यूजिक NFT पर मेरी यानी रुचि की ये स्पेशल स्टोरी? अच्छी लगी? Then do watch all my special stories. See you soon with yet another interesting story. Till then, goodbye, take care and keep watching Crypto TV. Hello friends, you're watching your favorite series, Tip of the Crypto Bug. I'm your host Vinita Chatterjee and today I'm going to lead you into the magnificent world of cryptocurrencies. But to begin with, today we are going to discuss smart contracts. How often have you seen in your life people who have committed to use something and then they have gone back on their words? Well, that is called breach of contract. But with the advent of smart contracts, we can have a technology that will never allow such a kind of breach of trust. So can smart contracts become the smart solution to your lives? Let's find out. In today's times, getting some agreed terms converted into a formal contract is not easy, and it involves cost because of legal fees or a large team of people needed to ensure the execution of the terms and conditions. However, there is a simpler alternative to all these forms of contracts, and they are known as smart contracts. Stumped? Never heard of it? Don't you worry, because I will help you with simplifying this term. So what are smart contracts? Smart contracts are digital contracts stored on a blockchain that are automatically executed when predetermined terms and conditions are met. Smart contracts are used to automate the execution of an agreement so that the participants can be immediately certain of the outcome without any intermediary involvement or time loss. Smart contracts can automate workflow, triggering the next action when the conditions are met. The term smart contract was first used by Nick Szabo, the creator of BitGold. The new contracts are called smart because they are far more functional than their inanimate paper-based ancestors. No use of artificial intelligence is implied. A smart contract is a set of promises specified in a digital form, including protocols within which the parties perform on these promises. Nick coined the term in 1994 and wrote out this paper in 1996. In 2013, Vitalik Buterin incorporated this concept in the domain of blockchains and made it possible to use blockchains in a plethora of use cases. And today, we know smart contracts as the base for decentralized applications and even decentralized autonomous organizations built on smart contracts. Now let's find out, how do smart contracts work? Smart contracts work
by following a simple protocol: if, when, then. These are the statements that are written into a code on the blockchain. A network of computers executes the action when predetermined conditions have been made and verified. These actions could include releasing funds to the appropriate parties, registering a vehicle, sending notifications, or simply issuing a ticket. The blockchain is then updated when the transaction is completed. That means the transaction cannot be changed, and only parties who have been granted permission can see the results. Within a smart contract, there can be as many stipulations as needed to satisfy the participants that the task will be completed satisfactorily. To establish the terms, participants must determine how transactions and their data are represented on the blockchain and agree on the if, when, and then rules that govern those transactions. Explore all the possible exceptions and define a framework for resolving disputes. That is when the smart contract can be programmed by a developer. Although increasingly organizations that use blockchain for business provide templates, web interfaces, and other online tools for simplifying, structuring smart contracts. Now, in today's episode, we are going to discuss the most essential benefits of smart contracts: speed, efficiency, and accuracy. Once a condition is met, the smart contract is executed immediately. Because smart contracts are digital and automated, there is no paperwork to process and no time spent reconciling errors that often result from manually filing in documents. Trust and transparency. Because there is no third party involved, and because encrypted records of transactions are shared across participants, there is no need to question whether information has been altered for personal benefit. Security. It enables processes to work in a secure manner. Blockchain transaction records are encrypted, which makes them very hard to hack. Moreover, because each record is connected to the previous one and subsequent records on a distributed ledger, hackers would have to alter the entire chain to change a single record. The encryption also makes smart contracts work as intended. As smart contracts run on networks with immutable data, the data generated by them cannot be changed or altered in any way. This way, all information is kept secure. Cost effectiveness. Smart contracts make transactions more cost effective. This is done with the removal of intermediaries from the process. By doing so, it makes the transaction faster and also removes the cost associated with it. The biggest benefit of smart contract is the automation that it offers. In simple terms, it means that there is no interruption and no third party can make changes in the agreement and the decision. This automation can go a long way as it helps organizations to automate certain aspects of their business. Smart contracts are interruption-free. This means once they start execution, they cannot be interrupted. It is trustless. The entire system is trustless. This means that there is no need to trust the parties to carry out a transaction. A transaction or a trade does not require trust as its integral part. As smart contracts run on a decentralized network, this means that the entire network is trustless. Its fast performance. The autonomous smart contracts executes way faster compared to the old-fashioned traditional approach. As all the parameters are already defined within the smart contracts, it only needs to match them before it starts executing. It is accurate and error-free. The only issue is that they need to be coded correctly so that they execute error-free. For example, if you're filing your taxes, you can make errors while doing so. However, if you use a smart contract to do so, you will have an error-free approach. Well, that was all about smart contracts and its benefits. Now we know
why smart contracts are used in all walks of our lives. Smart contracts are nothing but a smart way to live the new digital life. Keep watching your favorite series, Tip of the Cryptoberg. I'm Vinita Chatterjee signing off. Keep watching your favorite channel, Crypto TV. फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पैम, कुछ ऐसे ही शब्दों में फंस गई है एनएफटी की दुनिया, जिन्होंने अब एनएफटीज की जेन्युइनिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले एक साल में जैसे जैसे एनएफटी का ट्रेंड तेजी पकड़ रहा था, एनएफटीज बड़ी बड़ी ह्यूज कलेक्शंस कर रही थी। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि एनएफटीज एक लंबी रेस के घोड़े जैसी हैं, जो ना रुकेंगी और ना हारेंगी। लेकिन अब अचानक एनएफटीज पर कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस अब कड़ा रुख अपना रही है। दरअसल एनएफटी की सबसे बड़ी मार्केटप्लेस ओपनसी पर उनके इंटरनल कलेक्शन स्टोर फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यूजर्स को जितनी चाहे उतनी एनएफटीज मिंट करने की कन्वीनियंस थी, लेकिन इस सुविधा का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ओपनसी और उनके कई बायर्स एंड सेलर्स को। हुआ कुछ ऐसा कि इस सर्विस का गलत फायदा उठाते हुए बहुत से लोगों ने फेक एनएफटी कलेक्शंस लॉन्च की। जी हाँ, ओपनसी ने खुद ये खुलासा किया कि फ्री मिंटिंग एनएफटी टूल्स के तहत लॉन्च की गई एनएफटीज में से 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शंस और स्पैम है। ओपनसी ही नहीं, और भी कई एनएफटी मार्केटप्लेसेस हैं जो स्कैम की चपेट में आ गई हैं और कई परेशानियों से जूझ रही हैं। जैसे कि डेविएंट आर्ट ने पिछले कुछ महीनों में 80,000 फ्रॉड अलर्ट्स जारी किए हैं। इतना ही नहीं, एक और प्लेटफॉर्म लुक्सरेयर पर वॉश ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि वॉश ट्रेडिंग क्या होती है। तो कभी कभी एक ही ग्रुप के लोग आपस में एनएफटी को बाय एंड सेल करके इलीगल तरीके से उस एनएफटी की ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यू दोनों को बढ़ाते हैं। चलिए आपको एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। आप बीपल को तो जानते ही हैं, जिनकी एनएफटी एवरी डे इज द फर्स्ट 5000 डेज ने $69 मिलियन की अब तक की हाईएस्ट एनएफटी कलेक्शन की थी। उस आर्ट के बायर मेटाकोवन एक्चुअली बीपल के बिजनेस पार्टनर हैं। कुछ समझे? और ये वॉश ट्रेडिंग बड़े लेवल पर हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 2017 में 4.7 मिलियन एनएफटीज 6.1 मिलियन टाइम्स ट्रेड हुई है। और तो और टोटल ट्रेडर्स में से महज 10% ट्रेडर्स ने 90% एनएफटी ट्रांजैक्शंस की हैं और यही ग्रुप 97% एनएफटीज को कम से कम एक बार ट्रेड जरूर करते हैं। तो यानी इन एनएफटीज की वैल्यू और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक ग्रुप साथ मिलकर सांठगांठ कर रहा है। एनएफटी की दुनिया में किस कदर धोखाधड़ी जारी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कई बार $multi-million वर्थ रग पुल भी होते हैं, जहां अनोनिमस फाउंडर्स इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर छू मंतर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इवॉल्व्ड एप्स एनएफटी प्रोजेक्ट, द बिग डैडी एप क्लब और ब्लॉकवर्स के साथ। अजब गजब गड़बड़ियों से भरी पड़ी है एनएफटी की दुनिया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिस करता है ओनरशिप ऑफ कलर। इतना ही नहीं, हर बार जब आपका खरीदा हुआ कलर कोई और यूज करेगा तो आपको रॉयल्टीज मिलेंगी, ये तक वादा किया जाता है यहाँ। और अब तो एनएफटी फ्रॉड्स कोर्ट तक घसीटे जा रहे हैं। एक कनेडियन कंपनी ने सोथेबीज और आर्टिस्ट केविन मैककॉय पर $1.5 मिलियन का केस ठोका है। मई 2014 में मिंट किए गए क्वांटम नाम के आर्ट को दुनिया की पहली एनएफटी के तौर पर जाना जाता है। जून 2021 में सोथेबी की ऑक्शन नेटिवली डिजिटल में ये आर्ट $1.47 मिलियन में बिका। कनेडियन कंपनी फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर जिसने ये केस दायर किया है, उसकी माने तो वही क्वांटम के असल हकदार हैं, क्योंकि इस एनएफटी के लॉन्च के 7 साल बाद जब मैककॉय की ओनरशिप खत्म हो गई थी, तब उन्होंने इसके राइट्स सिक्योर कर लिए थे।
एक्चुअली ये सारी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि क्वांटम ओरिजिनली बिटकॉइन के कोड पर मॉडल्ड नेम कॉइन नाम के ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पर मिंट की गई थी। नेम कॉइन पर ओनरशिप को हर 250 डेज के बाद रिन्यू करना जरूरी है, वरना कोई भी इसे क्लेम कर सकता है। और मैककॉय 2014 में क्वांटम को मिंट करके 2015 में उसे रिन्यू करना भूल गए। जब 6 साल तक ये NFT रिन्यू नहीं की गई तो 6 अप्रैल 2021 को एक्सियोस ने एक आर्टिकल इशू किया जिसकी हेडलाइन थी एक्सक्लूसिव, द फर्स्ट एवर NFT फ्रॉम 2014 इज ऑन सेल फॉर $7 million प्लस। उसके 2 हफ्ते बाद फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर ने @earlyNFT नाम के ट्विटर हैंडल से इस NFT को रजिस्टर कर लिया। NFTs के साथ जुड़े इस फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में क्या क्रिप्टो मिंटर के CEO और को-फाउंडर रघुराज शेखर का कहना है और इन स्कैम से कैसे बचा जाए, आइए सुनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे, जस्ट वो एक JPEG इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे बिल्ड करके बेच दिया। ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है। दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि काफी सारे NFTs के नाम पे कि आप NFT का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको और आप इस पे अपना सीड फ्रेज डाल दे, प्राइवेट कीज दे दें और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग। तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं। तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही हैं। बट जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने NFT बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हुआ किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं। बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे हैं। सो अब लोग देखने लगे कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं। लेट्स से काफी फेमस NFT कलेक्शन है बोर्ड एप याच क्लब, तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं। बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि वेरीफाइड अकाउंट्स है या नहीं। यानी इन टोटल NFT की दुनिया फिलहाल कटघरे में खड़ी है। जब तक यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी नहीं किए जाएंगे तब तक इसमें हाथ ना ही डालें तो अच्छा है, वरना हाथ जल भी सकते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Hello and welcome to Crypto TV. This is Manoj Dhara. While 2020 will be remembered as a time of COVID-induced economic pain, it was also a year when people started thinking much more creatively about the marriage between technology and the economic value. The emergence of the vast markets for non-fungible tokens, that is NFTs, unique-based blockchain digital assets, is a transformative move for how we understand the digital transactions and store of value. In order to understand NFTs in detail, we have a very robust panel for you. So let me introduce to the guests. So first guest for today's panel is a person who doesn't need any introduction. Our first guest for today is someone who leads the blockchain practice for Asia Pacific region for the BSE listed cloud specialty companies SecureK Cloud Technology Limited. He is alumni of India's premium education institute, IIT Madras and IIM Bangalore, with over 30 years of industry experience. He is Mr. Srinivasan Mahankali. Sir,
welcome to the show and welcome to Crypto TV. Second guest on the list is an alumni of MIT Solon's Partnership Program Asia School of Business. He is an experienced technology strategy professional with 14 years of expertise across US and APAC regions. Currently, he is a partner as Master Mentor Advisor, a premium blockchain consulting firm in India focusing on the enterprise blockchain. Let me introduce you to Varun Singhi. Varun, welcome to the show. Hello. Thank you. Third guest is Mr. Samrat Kishore. Samrat is a technology strategy consultant turned entrepreneur and investor. He carries rich consulting experience from having worked with KPMG, Deloitte, and Accenture Strategy in the past and serving clients in over 20 countries. Samrat, welcome to Crypto TV. Hi Manoj, thank you so much for having me. And our fourth guest is Prasanna Lohar, Chief Innovation Officer at DCB Bank and founder of Indian Blockchain Forum. Sir, welcome to the show. Yeah, thank you, Manoj. Always pleasure to be here at Crypto TV. Welcome you all. All of our friends are here. So let's see how we can really keep it. Sure. So let's get started. So today's discussion is about NFTs, that is non-fungible tokens. We'll begin with Srini sir. What is NFT and non-fungible tokens according to you, if you can just begin with? Yeah, thank you. I think you already said, I think in a few words, what is NFT. So NFT is, unique piece of digital asset that is stored on blockchain, and a blockchain-based system. And it could be, there are different types of NFTs called, there are different types of tokens actually. I mean, I would say NFT is one type of a token. We have fungible tokens, we have semi-fungible tokens, we have non-fungible tokens. Non-fungible tokens are something which are very unique and which cannot be traded one against other unless they are denominated by another median value unit. They're having different properties which differentiate them in terms of their uniqueness, this rarity, their ability. And they're also owned by somebody, whoever has created it or whoever has bought it. So that way, I would say, that's what would define NFT. Parameters that define NFT, which are captured in the metadata. I think we can discuss all these things as we go along. So my question is to Varun. What's your opening remarks on non-fungible token? Well, I think, as Srini sir rightly mentioned, they have just got traction. If you look at last 2020 until now, you can see an astronomical growth in NFT space itself, right? And while NFT started in 2017, we see traction of lately. I think because people started realizing the value of it, right? Predominantly, NFTs right now are only in digital market and, music, artwork. But I think the real value will come when you see the enterprise usage of NFTs, right? Because we have been talking for past few years about creating NFTs. I think the real value will start when we start using NFTs in varieties of use cases, right? So that will set the tone. And that's the future I look at, how NFTs, combined with DeFi and other, protocols we have. Because NFTs in isolation, as Srini sir mentioned, is just a digital unique asset, which gives you provenance on, blockchain, right? It's a piece of code which gives you unique ownership. But with that thing, if you look at, the potential is limitless, right? So that sets the tone for this conversation today. Samrat, what's your opening remark on this? Sure, Manoj. So I think, the other panelists have covered it really well, but I want to just add to that yes, I think its real value is derived out of the economic innovation which comes along with the code. So I think the real wrapper around why it became so valuable all of a sudden is the interest it has garnered in the past 1.5 years from celebrities as well as average people like us alike. Although we didn't know that the technology existed, there were limited use cases of such technology in the past. But now with this new race of owning something on the internet in the digital world, that has led to a never-ending economic value and demand in the NFTs. So yeah, I'm really bullish on this space, and I look forward and I congratulate to all of you, for being participants in the economy. Thank you so much, Samrat. And what's your take on this, Prasanna? NFTs, that's, everyone is talking about it. That's a thing of 2021. What's your first take on it? I think NFT is a start of something big, right? In a simple terms, non-fungible tokens, what we call it as, right? The way we have seen the lot of transformation has happened in the overall last 100+ years. We typically call it as an industry revolutions, right?
part of industry revolution 4.0, wherein we'll see a lot of adoption of many more business model operation on internet. So internet is something like which is everywhere, right? So on top of internet, there are various use cases. Sure. And when you talk about blockchain, Sure. NFT comes and it gives a kind of a comfort or kind of a next level of adoption where your digital assets can be really tokenized, can be traded out there. So it's a start of something big new. So which is a non-tradable asset. So we'll discuss a lot around. Sure, that is the start for something new. My next question is to Srini sir. The best economic innovation of 2020, according to you, is NFT. And is there a utility value, meaning the value in real world to NFTs? How will the segment evolve going forward? Over to you, Srini sir. Yeah. So I think NFT is not really the economic, greatest innovation of 20. NFTs have been there for almost 4 years now. We all know about CryptoKitties. The first thing we learned in the blockchain was CryptoKitties and ERC-721 token on Ethereum, which represented unique character, right? Which was minted on the blockchain and then traded and caused a crash of the Ethereum network, etc., because of the large demand that went around with it and the craze that happened. And later on, now we have the phenomena has grown so much because of the number of facilitating factors. Sure. Like number of protocols that have come up. For example, it is Ethereum, then you have Wax, then you have Flow, then you have Tezos, when you have Binance Smart Chain. All these people are offering much easier and faster way of developing, minting NFTs and owning digital assets. And then now Polkadot is offering interoperability, speed of execution. Any Tom, Dick, and Harry can simply, just by scanning a QR code, can own an NFT through this engine framework. So that way, it has now become people have started understanding and started using it more. And then you have people like great guys like Amitabh Bachchan, who have started talking about NFT. Fantastic. If Amitabh Bachchan talks about it, it goes to the entire world and can corner. And he's spoken and definitely has minted money as well. Using it in many more ways. Yeah, so people started using it in many more ways. So that is how it is becoming more and more popular. So the innovation is coming in the way it is being used, how it is being used, and how it is being valued, and how it is being marketed, and and that way I would say. Yeah. So over to Varun, the best economic innovation of 2021 according to you. So again, NFTs as such, I think they were already existing. Right. I would say that the economic value generated by it, I think that's the game changer, right? As Srini sir mentioned rightly, and even Samrat, I think, touched upon it, that, how do you wrap it around with, utility providing benefits, right? So if you look at it, NFT today, is getting traction because I think if I look at it in a way, the ecosystem is developing, right? The ecosystem, because NFT in isolation might not do the trick, right? Because you need a supporting ecosystem. And today, if you look at it, Ethereum is taking the major, chunk of NFT related stuff happening. Without any doubt. They have a lot of mature protocols, but I see a lot of infrastructure tooling and protocols coming up, which are actually now trying to establish themselves in in NFT space. So as I said, once we see a maturity in all these protocols coming in, you will see a lot of enterprise NFT use cases coming in, and I think that will actually address some of the real pressing problems we have in today's world, right? So that's my take on it, right? So once we see the maturity coming in, and we try to address the real problems we have in today's world. So that's a word which is coming from Varun Singhi. Samrat, what's your take on that? How will the segment evolve going forward? Very quickly before we move to the third segment. Sure. I think, so Manoj, very interesting aspect that you've asked me to touch upon. So evolution is purely driven by adoption. That's what I see. It's demand driving supply and supply driving demand. So at times, what I see happening with NFTs is, two things primarily. One, on one side, it is giving rise to new business models like, artists getting paid or funded by fans and sports teams being funded by fans. I recently saw a survey. Our sports team had to take a decision and they actually opened that decision up to their fans, and the fans started
voting on that particular decision. The ones who were owning their NFTs could actually vote on that decision. So there were things like these. There are new models of engagement and revenue making which are opening up. On the other side, the cost of distribution has sort of gone down because of NFTs. So imagine now you can actually create music at home in your home studio and still have a fan base and release it to your close group. And you can be an author, you can be actually there are new breed of digital artists coming up who just create art in the metaverse. Perfect. And they start selling that art via NFTs. We'll discuss in detail more about the metaverse in details. So they don't need to go to an art gallery to sell things. They don't need to go to anybody to sell things. They can start selling online directly. So cost of distribution gone down big time. Fantastic piece of word that is coming from Samrat. What's your view, Prasanna? Can you take us through the rising popularity and adoption? Because this is as a universe is working towards it. What's your opinion on that? Yeah, so I think I agree with the Samrat, Srini and Varun. So before going into that next question, so why it is getting more popular? So I think when you talk about digital assets, and gone were those days, we were only Gango about physical assets. The new generation and the type of the way we are interacting with a lot of digital ways, digital asset is taking a lot of traction. Say example, Mona Lisa painting, right? It's a single painting, but can you not have some copies of Mona Lisa painting? And I can say, exactly, I own that painting, right? So as a digital, and similarly you talk about Yuvraj Singh's 6 sixes, right? It's a moment. I no one can forget that. Yeah, those days I have seen that some of the people, crazy people were buying those cassette CDs of India-Pakistan match, right? So imagine this is a new universe wherein we are taking ownership of those digital medias. And what Samrat said, digital artist. So with the blockchain coming into picture, it's a security which brings, right? So you cannot really say that this particular content which we have created on digital economy is owned by me or owned by somebody. So blockchain gives that security. There is huge potential around this. There is huge popularity. Visa, Budweiser, likewise, there are many Fortune 500 companies are investing into that. On a sports side, NBA's, right? NBA Top Shot is one of those marketplaces. The recent example of Staples Stadium. I will not be surprised in India for cricket, similar thing will happen. I think it's a huge game here onwards. That's a big statement, Prasanna. I mean, cricket is something which everyone would love to see that. So can you take us through the rising popularity and adoption of NFT? If you can just, you have given many examples, if you can just elaborate more on that for our viewers, because this is the show which we are bringing for our viewers to simplify NFTs and we are making them understand the importance and relevance of NFTs. You have already highlighted that people can make money. How to make money? This is what our main objective is in NFTs rather. Yeah, so NFT, I mean, there's been exponential growth in funding as well as trading of NFTs. Sure. I think NFT volumes have crossed, I think, almost $20 billion a month. And they are saying it will be about $15 trillion by 2025. That's the value of the NFT markets, right? So it's going to be exponential growth. And how do you make money? As Samrat has rightly put in, anybody now can become a creator and create something unique and could put it up in a marketplace. All right, Varun, if you can just quickly add to what's the rising popularity and adoption, so that we can understand the importance and relevance of that. Yeah, sure. I would actually touch back on Samrat's point. I think Samrat made a beautiful point on the co-creation part, right? So when your fans, right, they're not passively consuming content, but they're actually in the process of creating content, right? So that gives them empowerment, right? So they can actually now have more interest and engagement, customer engagement model, right? So that's what I call it, right? So how it helps basically to create the collaborative ownership and drive the content, right? So likewise, if I look at it today, right, you have examples like platforms like LinkedIn, right? So I think I believe that in future you might see a LinkedIn of NFTs, right? Where you have your NFTs, where all your work history is documented, right? And employers might ask for you, right? Because today, if you look at it, many people fudge their profiles or their resumes, and there's no proper mechanism to track it, right? So if I may say, LinkedIn of NFTs might be one of the use cases. Finally, again, a section which I'm bullish on is, financialization of NFTs, right? If you look at today, NFTs are not, divisible, right? If you talk about NFT fractionalization, like say, I can, split the dividends, I can split the revenues, you will see an exponential growth of, NFTs as financial assets. I think that is where the meat lies, when we talk about financial assets. Really? If I marrying NFTs. Perfect.
So very interesting thing, you know, the concept in itself is very interesting. LinkedIn NFTs, Prasanna, you also spoke about cricket. What's your view, Samrat, on this? What are you bringing in? Well, if I were to talk about what I did in the past, I sold 5 NFTs in the beginning of this year. I raised some money because India was badly hit with COVID and I wanted to donate something. So I did things out of my own pocket, as well as I thought, Lovely, super. why not I just go to OpenSea? I had a coin collection. As a kid, I used to collect coins. So I published 20 of those coins. So 5 got picked up. I had started off with $1,000, for a bid. People started bidding and they went up to 4.5. And then it got sold. So I was happy, when I really saw that money coming in. I did not sell anything in millions. So I was not as happy as people have. That day will definitely come, Samrat. Yeah, I think great. So that was in the past, and currently I'm advising a startup which is creating something which Varun just spoke about, which is partial ownership of NFT royalties. So they are catering to the everlasting demand of artists. Artists are at times they lose credit, at times they are not able to collaborate with other artists because they don't know how to split royalties. Perfect. So I'm advising these startups to create one software where they could just artists could just come and collaborate and split royalties. Even if the artists are gone, their families will keep getting it. All right, so Samrat spoke about royalties, and my next question to you, Prasanna, is, we are talking about this space and it is actually growing day by day. Yes. So why are some NFTs so expensive? Samrat also spoke about, he was unable to sell his NFT in millions, but why are this, $500, $1,000 हम समझ सकते हैं, लेकिन ये तो millions में जा रहा है. Yeah, I think you need to understand power of digital assets here, right? Exactly. Or the whole gamified around digital assets. Say example, I was talking about Mona Lisa painting, right? This is unique. Or you talk about Taj Mahal, or you talk about those moments. Typically, I call those moments as a NFT moments. All right. Say example, Crypto TV. The first video of a Crypto TV. Imagine, right, the traction, and imagine the value of that first video of Crypto TV. Ownership of that after 10 years. Fantastic. Say example, Jack Dorsey, which is the Twitter's ex-CEO, right? He has almost so many millions, right, for a first Twitter tweet. So I think that's the traction, right? People here today are a lot of gung-ho about those digital moments, right? Yuvraj Singh 6 sixes, you talk about my own, right? So I'll not be surprised there will be a marketplace of NFTs where it's called as a human NFTs, right? Human talent NFTs. It will be open for all the human beings. Everybody can be an influencer or artist, and they can claim their ownership with a blockchain technology in the backend. So I think why popularity is coming, young breed is a more gung-ho about digital assets, and they want to really show this is my own, right? So if somebody wants to really claim that particular moment, which is a Mona Lisa's painting or something like Yuvraj Singh 6, so that's a wow moment for them. So that is how I'll not be surprised this market will go very high. It was indeed a wonderful panel discussion about non-fungible tokens. Hope to see you soon. Thank you so much, everyone. हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता, और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अनसुने, अनकहे, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई डिवाइस या मशीन भी नहीं है। अब नाम में टेक्नोलॉजी है तो जरूर ये कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ही होगा, है ना? सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब एक डिजिटल लेजर है। चाहे गांव का छोटा सा बनिया हो या कोई बड़ा बिलियनर, हाउसवाइफ हो या कोई बड़ी हीरोइन, हर कोई अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट हिसाब किताब के लिए जरूर एक लेजर रखता है। पुराने बॉलीवुड फिल्म में आपने जरूर देखा होगा, डकैत बना हीरो,
काला टीका लगाकर लाला के पास अपनी माँ के गिरवी रखे हुए कंगन छुड़ाने आता है, तो वो लाला के पास सबका लेखा जोखा लिखने वाली जो लाल किताब होती है उसी को खाता बाही यानी कि लेजर कहा जाता है। इसी लेजर को डिजिटली एक मॉडर्न अवतार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम में और जानवर में अगर कोई फर्क है तो वो ये है कि हम लेजर मेंटेन करते हैं, वो नहीं। चाहे व्यापार हो या व्यवहार, बिना रिकॉर्ड के कुछ काम नहीं होता। दो लोगों ने एक दूसरे को पैसे दिए हो, जमीन बेची हो या फिर 7 जन्म की सबसे बड़ी दुश्मनी का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शादी हो, इस सब को वेरीफाई करने हम इंडिपेंडेंट और विश्वसनीय थर्ड पार्टी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस का स्टैंप और सिग्नेचर लगाने वाले के पास जाते हैं ना। लेकिन फिर भी कई बार फ्रॉड होता है। लैंड के डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर सालों कोर्ट में केस चलते रहते हैं। करप्शन, फ्रॉड और स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। कंप्यूटर और इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल है जहां कोई किसी को कभी धोखा ना दे पाए। मतलब लेजर के मामले में कलयुग के धोखाधड़ी वाले टाइम में सतयुग वाली ऑनेस्टी कैसे मिलेगी। इसी पहेली का हल सबसे पहले मिस्टर डेविड शॉम ने 1982 में ढूंढ निकाला। उन्होंने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने वाली एक सिस्टम बनाई। उसके बाद 1992 में स्टुअर्ट हेबर और स्कॉट स्टोरनेटा ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि हर ट्रांजैक्शन पर टाइम और डेट का थप्पा लग जाए, ताकि कोई तिकड़मबाज चाहकर भी रिकॉर्ड्स में अपनी धोखाधड़ी की कलाकारी ना दिखा सके। बाद में इन्हीं दोनों ने डेविड बेयर के साथ मिलकर 1992 में मर्कल ट्री का यूज करके टैम्पर प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की सिस्टम बनाई। उसके बाद हैल फिनी ने 2004 में रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क RPOW की सिस्टम बनाई। कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर टाइम के साथ साथ नए नए लोग इसमें जुड़ते गए, जैसे निक ज़ोबोनी का बिटगोल्ड और वे डाल की बी मनी। पर बोले तो ये सारे सिस्टम्स के पास डबल स्पेंडिंग के प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अब डबल स्पेंडिंग बोले तो डिजिटल कॉइन्स की कॉपी 24/7 बनती ही रहती है और उसको जितनी बार यूज करना चाहो उतनी बार कर सकते हैं। अब ज्यादा सोचिए मत, आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाते हैं। रिजर्व बैंक की जगह हर कोई अगर घर घर में 500 और 2000 के नोट छापने लग जाए तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिजिटली स्पीकिंग, इन अ वे ये कुछ इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइनली 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नाम का एक 9 पन्नों का डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने चॉम से जालसाजी से सुरक्षित करने वाला सिस्टम, स्टोरनेटा हेबर से टाइम स्टैंपिंग वाला सिस्टम, स्टोरनेटा हेबर बेयर का मर्कल ट्री वाला सिस्टम और फिनेकी RPO वाले सिस्टम को मिलाकर एक ऐसा धांसू और टनाटन सिस्टम बनाया जिससे दुनिया भर में लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानने लगे। बेसिकली जब हम लोग मिक्स वेज की सब्जी बनाते हैं तो दुनिया भर की सब्जी उसमें डालकर चटाकेदार डिश बनाते हैं ना, वैसे ही नाकामोटो ने भी सारी पुरानी सिस्टम्स को मिलाकर अपना तड़का डालकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना डाला और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने बोला चिंगा लाला। अब आप पूछेंगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही मायने में कैसे काम आती है। बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा हैक प्रूफ, फ्रॉड प्रूफ और सिक्योर सिस्टम है जिसमें ना तिकड़मबाजी चलती है ना कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट। अब किसको चाहिए कबाब में हड्डी। ब्लॉकचेन ने बोला निकालो इसे। जिस काम को पहले राजा महाराजा और उसके बाद सरकारी कर्मचारी ठप्पा लगाकर करते थे, वही काम आज क्रिप्टोग्राफी नाम के टेक्नोलॉजी से फटाफट हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सब के रिकॉर्ड रखने का खर्चा इतना बढ़ गया था कि मत पूछो। ऊपर से वो रिकॉर्ड टैम्पर प्रूफ भी नहीं था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये कॉस्ट बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड खुद ही रख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खासियत यही है कि कोई भी माई का लाल
कितना भी चाहे इसको हैक या टैम्परिंग नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इतना ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ एक्सेस है कि भैया आजकल हर कोई एफिशिएंट तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको शुरू में ही क्लियर करना चाहती हूँ कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन इस टेक्नोलॉजी से बना हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ब्लॉकचेन अगर पेड़ है तो बिटकॉइन उसका पहला फल है। दोस्तों, आपको जानकर झटका लगेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बर्थ सर्टिफिकेट में उसके पापा के नाम के आगे सातोशी नाकामोटो नहीं बल्कि स्कॉट स्टोरनेटा का नाम लिखा जाता है। जैसे इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो टेक्नो रेवोल्यूशन आया था, उससे भी बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन की वजह से आने वाला है। तो जैसे प्लेन में बैठने पर कहते हैं ना, कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तेज गति से हम सब की लाइफ बदलने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ब्लॉकचेन की ABCD? ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल क्रिप्टो टीवी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता। आज के लिए आपको कहना चाहती हूँ टाटा बाय बाय सायोनारा, क्योंकि मैं तो चली ब्लॉकचेन के प्लेन में उड़ान भरने। आप चल रहे हो क्या? चलना है तो आ जाइए मेरे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। કેમ છો? મસ્ત મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી AKA પારો. દેવા. જેમ ગોલ્ડ પછી ચાંદીનું નામ આવે તેમ ડિજિટલ ગોલ્ડ એટલે બિટકોઇન પછી ડિજિટલ સિલ્વર એટલે ઇથિરિયમનું નામ આવે. આજે આપણે ઇથિરિયમ શું છે, કોણ બનાવ્યું, શોર્ટ ટાઈમમાં આટલું ફેમસ કેમ થયું, આ બધું આજે એઝ ઓલવેઝ ફન વેમાં લર્ન કરશું. इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर. 1991 ફિલ્મ સોદાગરમાં બોલિવૂડના બે શેર ધ લેજેન્ડ્સ રાજકુમાર અને દિલીપ કુમારે લાસ્ટ ટાઈમ સ્ક્રીન શેર કરી હતી. બોલિવૂડની જેમ ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં પણ બે શેર રાજ કરે છે. ઇમલી કા બૂટા બેરી કા પેડ. આ લિરિક્સથી સમજીએ તો ઇમલી એટલે ઇથિરિયમ અને બેરી એટલે બિટકોઇન. આજે આપણે ઇથિરિયમ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ઇથિરિયમ એટલે શું? ઇથિરિયમ વર્લ્ડની સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ક્રિપ્ટોકરન્સી છે, જેને ઈથર, ETH ઓર ઇથિરિયમ પણ કહેવાય છે. શું તમને ખબર છે 2015માં લોન્ચ થવાથી આજ દિવસ સુધીમાં ઇથિરિયમની પ્રાઇસ એપ્રોક્સિમેટલી 36,000% વધી છે. સ્ટોક માર્કેટમાં આપણે સ્ટોક 20થી 30% વધે તો આપણે ફોર્મમાં આવી જઈએ. જસ્ટ ઇમેજિન 36,000%નું રિટર્ન એટલે કેટલું થાય બોસ? મગજ ફરી ગયું ને? મારો પણ. એમ થાય છે કે હમણાં જે ઇથિરિયમમાં ઇન્વેસ્ટ કરી લઈએ, હે ના? રૂકો જરા, વેટ કરો. પહેલા ઇથિરિયમને પૂરી રીતે સમજી લો. ઇથિરિયમ ફક્ત એક ક્રિપ્ટોકરન્સી નથી. ના 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 રે ના રે ના રે ના 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 રે ના રે ના. इथीरियम ना रहोगे ते ऐसे करोगे, ब्लॉकचेन के सारे मजे कैसे करोगे. इथीरियम है इथीरियम है. ઇથિરિયમ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ એપ્લિકેશન માટેનું ગ્લોબલ ઓપન સોર્સ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ છે. કઈ ટપ્પો ન પડ્યું? ડોન્ટ વરી, હું સિમ્પ્લિફાય કરું છું. સિમ્પલી પુટ, હિસાબ કિતાબની શેર ડિજિટલ લેજર એટલે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી. આ લેજરમાં ઈચ ન્યૂ ડેટા બ્લોકના ફોર્મમાં એડ થતો જાય છે. આવા બ્લોક્સથી બનતા ડેટા ચેનને બ્લોકચેન કહેવાય છે. ઇથિરિયમ વન ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ પ્રોગ્રામેબલ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ છે.
સિંઘમમાં અજય દેવગન કહે છે ના, जिसमें है दम वो है फक्त बाजीराव सिंघम. ઇથેરિયમ પ્લેટફોર્મમાં પણ બહુ જ દમ છે. આ ફક્ત ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ સ્ટોર કરવાની ડિજિટલ લેજર નથી. ઇથેરિયમનું વિઝન એક ન્યૂ ઇન્ટરનેટ ક્રિએટ કરવાનું છે, જ્યાં કોઈ ટેક જાયન્ટ કે ગવર્મેન્ટ એજન્સીને દાદાગીરી નહીં ચાલે. તમારા પ્રાઇવેટ ડેટાને સલમાનના બિગ બોસની જેમ કોઈ જોઈ ન શકે. આટલું જ નહીં, ઇથેરિયમ પર ગેમિંગ, એન્ટરટેનમેન્ટ, બ્રાઉઝિંગ, ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફાઇનાન્સ અને બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એપ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, જેને ડી એપ્સ કહેવામાં આવે છે. ઇથેરિયમ યુઝર્સ ડી એપ યુઝ કરવા માટે ફીસ ભરે છે. આ ફીસને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં ગેસ કહેવામાં આવે છે. શું તમને ખબર છે, વર્લ્ડના 93% ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફાઇનાન્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઇથેરિયમ પર કરવામાં આવે છે. શોર્ટ ટાઈમમાં ઇથેરિયમને ફેમસ થવાનું કારણ છે સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ એટલે થર્ડ પાર્ટી વગેર કમ્પ્યુટર કોડથી થતો બે પાર્ટી વચ્ચેનું અગ્રીમેન્ટ. મિયા બીવી રાજી તો ક્યાં કરેગા કાઝી. ઇથેરિયમ બ્લોકચેન પર સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સનો સૌથી મોટો ફાયદો, અહીંયા ક્રિપ્ટોગ્રાફીના કારણે ફ્રોડના જરા પણ ચાન્સ નથી. પ્લસ તમારે વચ્ચે કોઈ થર્ડ પાર્ટી ના રાખવી પડે. ઊંધિયાથી લઈને અંડર વોટર સબમરીન સુધી તમારા કંઈ પણ સેફટી ટ્રેડ કરવું હોય તો સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ હે ના. શું તમને ખબર છે, ઇથેરિયમના ક્રિએટર વર્લ્ડના વન ઓફ ધ યંગેસ્ટ ક્રિપ્ટો બિલિયનર છે. અત્યારે એમની એજ ઓનલી 27 યર્સ છે. તેમનું નામ છે વિતાલિક બુટરીન. આ રશિયામાં પેદા થયા અને કેનેડામાં મોટા થયા. એમની એક વાત પર તો તમને સલામ કરવાનું મન થશે. 2021માં વિતાલિક ભાઈએ ઇન્ડિયન કોવિડ રિલીફ ફંડને લાખો નહીં, કરોડો નહીં, ખરબો રૂપિયા ડોનેટ કર્યા હતા. $1.14 બિલિયન ટુ બી એક્ઝેક્ટ. સલામ છે બોસ. જેમ સુપરસ્ટાર એન્ડ અર થલાઈવા રજનીકાંતની રોબોટ ફિલ્મ પછી અક્ષય કુમાર સાથે રોબોટ 2.0 ફિલ્મ આવી, તેમ ઇથેરિયમ 2.0 પણ બહુ જલ્દી લોન્ચ થવાનું છે. ઇથેરિયમ 2.0 નું બીજું નામ છે સેરેનિટી. કોઈ પણ બ્લોકચેનને 3 ફેક્ટર્સ પર ઇવેલ્યુએટ કરવામાં આવે છે: સ્કેલિંગ, સિક્યોરિટી એન્ડ ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન. સ્કેલિંગ એટલે પર સેકન્ડ કેટલા મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવે છે. સિક્યોરિટી એટલે આ હેકિંગ અને ફ્રોડથી કેટલું સિક્યોર છે. અને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એટલે કે આને કોઈ એક કંપની, ગવર્મેન્ટ કે વ્યક્તિ ઓન નથી કરતું. ઇથેરિયમમાં કરન્ટલી સ્કેલિંગનો ઇશ્યુ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વિઝા પર સેકન્ડ 1700 ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરે છે. વિઝાની સ્કેલિંગ થઈ 1700 TPS, જ્યારે ઇથેરિયમ કરન્ટલી ઓનલી 15 TPS એટલે કે 15 ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર સેકન્ડ હેન્ડલ કરે છે. ફિકર નોટ, 2022માં જે ઇથેરિયમ 2.0 આવે છે ના, તે પર સેકન્ડ 15,000 ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરશે. બાબા રે, ક્યાં 15 TPS થી 15,000 TPS પર પહોંચી ગયા. ગજબ છે ના બોસ. એક વાત તો નક્કી છે, 2022માં ઇથેરિયમ પ્લેટફોર્મ તો ફૂલ સ્પીડમાં ભાગવાનું છે અને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં કંઈ એક તૂફાની કરવાનું છે. બસ આજે અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. ક્રિપ્ટો વર્લ્ડથી અપ ટુ ડેટ રાખવાની પ્રોમિસ સાથે હું પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો તમારી રજા લઉં છું. ફરી મળશું ક્રિપ્ટો વર્લ્ડના એક્સાઇટિંગ ફેક્ટ્સ સાથે. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. એન્ડ કીપ વોચિંગ ક્રિપ્ટો TV. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma and today we are going to talk about consensus algorithm. Consensus is key to the decentralized participation in the distributed ledger environment. The participants should arrive at a consensus about what is good
and should be included, and what is bad should be excluded. It is important for the entire community to function in an orderly fashion and realize the purpose of the collaboration. Without consensus, there will be chaos. Chaos would be detrimental to the sustainability of the system. In the blockchain ecosystem, a consensus algorithm is a defined programmed procedure. It is a set of rules which defines how the peer participants of the peer-to-peer network conduct themselves in the environment. These rules will help the participant decide on which of the transactions are to be accepted to be included in the immutable digital ledger and which ones are not to be. Why is a consensus algorithm needed? The peers in the network will never know each other. The problem, therefore, is how to establish trust among the participants without disclosing their identities. In order to achieve that, the activities allowed to one needs to be restricted and strictly defined. So once you know that the other participant can't really misbehave, you can participate in the network with trust and together can achieve reliability. This will help a larger participation and will in turn lend security to the entire process. The consensus algorithm has 5 objectives in the DLT environment. First of those objectives is that it wants to achieve unified agreement among participants. In centralized systems, trusting the central authority is mandatory. Here, the participants need to trust the system, and they need to do this without having to establish trust among each other. Only then this environment can achieve unified agreement. Secondly, the network participants should be motivated to achieve common alignment of all their economic incentives. This is a must to develop a self-regulating system which can be entrusted. Thirdly, the system should not allow anyone to cheat. It must prevent double spending. Fourthly, the system is supposed to be fault tolerant. So much so that if a section of the network fails to perform at any point of time, the rest of the network should be able to continue business seamlessly and keep providing consistent and reliable results. Last but not the least, the consensus algorithm must be designed in a way that ensures equality among all participants so that no one can take any unfair advantage from the system. Safety first. The algorithm are capable of generating valid results and does not entertain false attempts. It should be participatory, without any discrimination towards any participant, and should allow and incentivize participation. Egalitarian. It must treat every participant as an equal member of the whole community. A faulty consensus algorithm will split the decision of the community and may even result in the duplication of the records, creating conflicting transaction history and failing to perform as a single source of truth. This results from failure of the community to arrive at a consensus. Subsequently, this will make some nodes or participants confused about the right course of action and result in malfunction. A section of the community could get conflicted and will increase the latency in internodal communication, dispute resolution, increasing the application latency and reducing the network efficiency. In other terms, it will make the objectives of the blockchain project fail. Consensus algorithms are commonly termed as proof of something. The most popular one is the first one used by Bitcoin blockchain, proof of work. Others are proof of stake, proof of authority, proof of history, proof of activity, proof of identity, proof of burn, proof of elapsed time, proof of importance, and many such. Some are also known differently as delegated proof of stake, least proof of stake. Some have uncommon names like Byzantine fault tolerance, direct acrylic graph, Tendermint, Ouroboros, and some even call themselves Grandpa. Grandpa may sound funny, but it's actually an acronym for Ghost-Based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement. Thank you. We will keep coming back with more interesting stories. I'm Ruchi Sharma. Have a great day.
રઈસમાં શાહરૂખ ખાનનો ડાયલોગ છે ને, અંબીજાન કહેતી હતી કે કોઈ ધંધો નાનો નથી હોતો અને ધંધાથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી હોતો. મને લાગે છે અમુક લોકોએ આ ડાયલોગ દિલ ઉપર લઈ લીધું છે અને ક્રેઝી આઈડિયાઝ વાલી NFT નો ધંધો ચાલુ કરી દીધું છે. હેલો, કેમ છો? મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્વાણ AKA પારો દેવા. અને આજે આપણે વિચિત્ર, અદ્ભુત, ઉટપટાંગ અને એબ્સોલ્યુટલી વિયર્ડ અને ક્રેઝી NFTs એટલે કે એવા નોન ફંજીબલ ટોકન્સ વિશે વાત કરશું જેને સાંભળવાથી તમે હસી હસીને લોટપોટ પણ થઈ જશો અને એકવાર જરૂર વિચારશો કે બોસ, આવી ક્રેઝી NFT જો માર્કેટમાં વેચાઈ જતી હોય તો હું પણ આવી એક NFT ક્રિએટ કેમ ના કરું? સો મારી ટોપ 3 ક્રેઝી NFT લિસ્ટમાં નંબર 1 છે ડિજિટલ ટોયલેટ પેપર રોલ NFT. યસ, તમે બરાબર સાંભળ્યું. ટોયલેટ પેપર રોલની NFT માર્કેટમાં આવી ગઈ છે. એ જે ટોયલેટ પેપર જેના માટે ડ્યુરિંગ લોકડાઉન ફોરેનની લેડીઝ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરમાં WWFની ફાઇટર્સની જેમ ઝઘડી પડી હતી. એનીવેઝ, તમે આજ દિવસ સુધીમાં કેટલું કોસ્ટલી ટોયલેટ પેપર લીધું હશે? 100, 200, 500, રાઈટ? પણ હું તમને એમ કહું કે આવા લોકો પણ છે દુનિયામાં જેને $4,100ની એક ટોયલેટ પેપર રોલની NFT ખરીદી છે. તો મગજ ફરી ગયો ને? ફરી જાય યાર. કોઈ 3,15,000 રૂપિયાની ટોયલેટ પેપર રોલની NFT માં નાખતા હોય? આટલી કિંમતમાં તો સોનાના ટોયલેટ પેપર પણ બની જાય, રાઈટ? એનીવેઝ, આવી વિચિત્ર NFT USAની એક ટોયલેટ પેપર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની ચાર્મીને માર્ચ 2021માં બનાવી છે. આ ટોયલેટ પેપર રોલ NFTની ખાસ વાત એ છે કે એની ઉપર ફ્લાવર્સ એટલે કે ફૂલ બનાવવામાં આવ્યા છે. NFT એટલે કે ડિજિટલ વસ્તુ. તેમાં શું ખુશ્બુ અને શું અહેસાસ, બધું ઇમેજિન આપણે જ કરવાનું ને. ઉપરથી 3,15,000 દેવાના. આવી ડીલમાં આપણે ગુજરાતીઓ ક્યારે ના પડે. પણ છે અમુક બુરિયા જેને આવી NFT ખરીદી છે. પણ આની પાછળ એક નોબલ રીઝન પણ છે. ચાર્મિન કંપની ઈચ NFTની સેલમાંથી ફક્ત 0.1% પ્રોફિટ જ પોતાની પાસ રાખે છે અને બાકી 99.99% ઓફ પ્રોફિટ ડાયરેક્ટ રિલીફ નામની હ્યુમેનિટેરિયન ચેરિટી ઓર્ગેનાઇઝેશનને ડોનેટ કરી દે છે. એન્ડ રિઝલ્ટ તો સારું છે, પણ બોસ, ચેરિટી કરવાનું આ જરા અતરંગી રસ્તો છે, નહીં? તો આ કંઈ નથી. નેક્સ્ટ વિયર્ડ NFT નો ક્રિએટર તો કંઈ અલગ જ લેવલનો છે. આ NFT નું નામ છે સ્લોમ્સ, કાર ડેટોનેટેડ લેમ્બોર્ગિની હરિકેન NFT. આ NFT વિશે સાંભળીને તો કાર સ્ટન્ટ્સના માસ્ટર એવા ઇન્ડિયન ફિલ્મ ડાયરેક્ટર મિસ્ટર રોહિત શેટ્ટીને પણ પસીનો આવી જશે. સ્લોમ્સ નામની એક NFT આર્ટિસ્ટે ક્રિપ્ટો કલ્ચરમાં ગ્રીડ એટલે કે લાલચના અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેસ્ટ કરવા અતરંગી NFT બનાવવાનો ખુરાફાતી આઈડિયા અપનાવ્યો. તેમને $2 થી $3 લાખ એટલે કે અંદાજે 1.5 થી $2.25 કરોડ રૂપિયાની લેમ્બોર્ગિની હરિકેન કારને સેકન્ડ હેન્ડ મેં ખરીદી. પછી 100 લોકોની મદદથી તે કારને એક્સપ્લોસિવ્સ એટલે કે બારૂદ ગોલા સાથે ફિટ કરી અને અમેરિકાના એક અનડિસ્ક્લોઝ ડેઝર્ટ લોકેશનમાં 2 ફેબ્રુઆરી 2022ના દિવસે બ્લાસ્ટ કરી અને તેનું એક વિડીયો બનાવ્યો. એક્ઝેક્ટલી ક્રેઝી, રાઈટ? આ બ્લાસ્ટનો ધુવાડો એ પણ કરોડોનો હશે. તમને થશે કે આને લાખના 12,000 કર્યા, પણ નહીં. આ આર્ટિસ્ટનો આઈડિયા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ એટલે કે બ્લાસ્ટ થયેલા ભંગારમાંથી કરોડો રૂપિયા કમાવાનો છે.
સ્લોમ્સ આ બ્લાસ્ટ થયેલા લેમ્બોર્ગિનીના 999 એટલે કે 999 પીસીસની એનએફટીને તેના બ્લાસ્ટ કરેલા વિડીયો સાથે સેલ કરીને ઓવર $1 મિલિયન એટલે કે 7,65 લાખ રૂપિયા કમાશે. થયો ને અતરંગી પણ ફાયદાનો સોદો. તમે ક્યાંક આ જોઈને પોતાની નવી કાર બ્લાઝ નહીં કરતા. આવો એક્સેપ્શન દુનિયામાં એક જ થાય. આપણે કરવા જશું ને તો કાર અને પૈસા બોથ વેસ્ટ, અને પોલીસ ઉપાડીને લઈ જાય એ અલગ પ્રોબ્લેમ. સો નેવર ટ્રાય ધીસ એટ હોમ ઓર એનીવેર એલ્સ. ઓકે. થર્ડ ક્રેઝી અને વિયર્ડ એનએફટી નું નામ છે સેલ યોર સોલ એનએફટી. Yes, that's why I called it weird. Recently 21 વર્ષના સ્ટીજન વાનશેક નામના ડચ સ્ટુડન્ટને એનએફટીનો ક્રેઝ એટલો ચડ્યો કે એ ભાઈ પોલિગોન ઉપર પોતાની સોલ એટલે કે આત્માની એનએફટી મિન્ટ કરી નાખી અને વર્લ્ડના બિગેસ્ટ એનએફટી માર્કેટ પ્લેસ ઓપનસી ઉપર પોતાના સોલની એનએફટી લિસ્ટ પણ કરી દીધી. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એક બાયરે આ ભાઈની સોલને €300 એટલે કે અંદાજન 25,000 રૂપિયામાં ખરીદી પણ લીધી છે. ડચ સ્ટુડન્ટની સોલે વર્લ્ડની ફર્સ્ટ હ્યુમન સોલ છે જેને એઝ અ એનએફટી સેલ કરવામાં આવી છે. એટલે જ તો એક રિસેન્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં મિસ્ટર સ્ટીજન વાનશેકે કહ્યું કે હવે તેની સોલની માર્કેટ વેલ્યુ ક્લોઝ ટુ $3.5 મિલિયન એટલે કે 27 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા છે. હવે આ ભાઈને પોતાની સોલની આવી ક્રેઝી વેલ્યુએશન ઉપર કઈ રીતે આવ્યું એ જવાબ કોઈને પાસે નથી. એનીવેઝ, આ એનએફટી સાથે ડચ સ્ટુડન્ટે સેલ ઓફ સોલ એગ્રીમેન્ટ પણ અટેચ કર્યો છે, જેમાં ઓનર આ સોલને કઈ રીતે યુઝ કરી શકે, રીસેલ કરી શકે અથવા તો કોઈ ડેટીને સેક્રિફાઈસ એટલે કે બલિ પણ ચઢાવી શકે કે નહીં, આવી બધી ડિટેલ્સ તેમાં લખી છે. જો તમારે સેલ ઓફ સોલ્ડ એગ્રીમેન્ટની ડિટેલ વાંચવી હોય તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. કરો તમે તમારા ટાઈમ પાસ. વેલ, આજના વિયર્ડ અને ક્રેઝી એનએફટીના એપિસોડને અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. પણ એક વાત તો શ્યોર છે બોસ, સક્સેસનો પેડો ખાવા માટે દુનિયા માટે થોડું એડું બનવું પડે તો એમાં કોઈ વાંધો નહીં. એલોન મસ્કને બધા ક્રેઝી જ કહેતા હતા જ્યારે તેને ઇલેક્ટ્રિક કાર અને રીયુઝેબલ રોકેટના કોન્સેપ્ટ્સને દુનિયા સામે પહેલીવાર મૂક્યા હતા. આજે એ વર્લ્ડનો રિચેસ્ટ મેન છે. સો સ્ટે હંગ્રી એન્ડ સ્ટે લિટલ ક્રેઝી ફોર સક્સેસ. અને આ મંત્ર સાથે હું તમારી ક્રિપ્ટો હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો તમારી રજા લઉં છું. આવી વિયર્ડ, એક્સાઇટિંગ અને ક્રેઝી સ્ટોરી સાથે આપણે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. મસ્ત રહો અને જોતા રહો ક્રિપ્ટો ટીવી. क्रिप्टो की किटी पार्टी में you're most welcome. And now you must be wondering कि यशी हम सब तो यहाँ हैं पर लेडीज कहाँ हैं? अरे पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ और क्रिप्टो क्वीन से जो कि आपकी हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो इन अ बेटर वे, राइट? इंट्रोड्यूसिंग कैथरीना फरेरा. इन्होंने 2017 में ब्लॉकचेन लेडीज नाम की इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्थापित किया था, जिसका लक्ष्य दुनिया भर की क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व लेडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट में लाना और सपोर्ट करना है. दिस क्रिप्टो क्वीन वेयर्स मेनी हैट्स, बाय द वे. ये ब्लॉकचेन बिजनेस कंसल्टेंट हैं, एक्सपीरियंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, डिजिटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, टेक स्टार्टअप में मेंटोर हैं. इतना ही नहीं, एक राइटर और एक कीनोट स्पीकर भी है.
लड़की एक है, रूप अनेक है, और ये सब कुछ इन्होंने घर के चूल्हे चौके के साथ में ही अचीव किया है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे कहे कि आप लोग घर में क्या काम करती हो, तो फट से कैटरीना फरेरा का नाम उनको बता देना और एग्जाम्पल दे देना। हाँ, कोई डाउट मत रखना। ब्लॉकचेन लेडीज के थ्रू ये क्रिप्टो एंड टेक सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को एनकरेज करती हैं। इसके अलावा कैटरीना फरेरा ने न्यूरेलिया नाम का ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, व्हिच इज मोस्टली रन बाय वुमनिया। गेट इट? चलिए, क्रिप्टो स्पेस में एंट्री करने की इंस्पिरेशन तो मिल गई, ब्लॉकचेन लेडीज से दूसरी क्रिप्टो वुमेन भी मिल गई, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या लगता है? रोकड़ा, पैसा, कैश, नकद, ये कहां से लाओगे? तो फिकर नॉट, इस कैश फ्लो की समस्या का हल मैंने ढूंढ निकाला है। नेक्स्ट क्रिप्टो क्वीन जो है वो हमारे देश की है, भले ही विदेश में रहती हूँ। इनका नाम है मानसी वोरा। वैसे ये जो क्रिप्टो क्वीन है ना, वो कोमोरेबी कलेक्टिव नाम के डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की को-फाउंडर है, जिसे मई 2021 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये वर्ल्ड का पहला इन्वेस्टमेंट डाओ है जिसका कंप्लीट फोकस फीमेल और नॉन बाइनरी क्रिप्टो फाउंडर्स को फंड करना है। डाओ मींस कंप्यूटर कोड्स के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता है एक ऐसा संगठन है जिसे कोई एक बंदा या फिर बंदी नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी रन करती है। मतलब जौनपुर से लेकर के सिंगापुर तक, इंडियन हो या फिर फॉरेनर, दुनिया की किसी भी कुड़ी को अगर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की स्पेस में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में तहलका मचाने के लिए फंड्स चाहिए, तो उन्हें कोमोरेबी कलेक्टिव को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये वुमनिया का इनिशिएटिव बाय द वुमनिया एंड फॉर द वुमनिया है। इतना ही नहीं, यूएस की इस देसी छोरी ने वुमेन इन ब्लॉकचेन नाम का एक एनजीओ भी स्टार्ट किया है, जहां औरतें एक दूसरे को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में एजुकेट करते हुए इंस्पायर, कोलैबोरेट और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज भी करती हैं। बेसिकली मेल पॉपुलेटेड क्रिप्टो स्पेस की डिसीजन मेकिंग में वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ने की जबरदस्त पहल की है मानसी वोरा ने। ये थी अकॉर्डिंग टू मी 2021 की टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस की लिस्ट। वैसे तो आज के ग्लोबल माहौल में दुनिया में किसी भी देश की लेडी की जीत पूरी विमेन कम्युनिटी की जीत होती है, बट बिफोर एवरीथिंग आई एम एन इंडियन टू द कोर यार। तो अंदर से यही मन करता है कि अगली बार जब मैं आपके लिए ये सेगमेंट को प्रेजेंट करूं तो अपनी मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए, है ना? और इंडियन कुड़ीज जो हैं वो धूम मचाते हुए नजर आनी चाहिए। ओलंपिक्स तो हर 4 साल में होते हैं, राइट? और जब भी कोई इंडियन गोल्ड मेडल जीत करके आता है तो कैसे कलेजे को ठंड पड़ जाती है ना? 2021 की ये स्पेशल लिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। 2022 की वुमनियास जो हैं वो अभी मेरा इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए watch out this space for more. This is me Yashasvi Acharya signing off. Thank you for watching Crypto TV and do not forget to like, subscribe and hit the bell icon if you really want to know what's going on in the world of crypto. Ta-da! आजकल जहां देखो NFTs की चर्चा है, जिसे देखो वो NFT बना रहा है या बेच खरीद रहा है। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज तो इससे करोड़ों कमा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि NFT बनाना कोई रॉकेट साइंस है, इससे कमाना बेहद मुश्किल है, टू कॉम्प्लिकेटेड या टू टेक्निकल है, तो मैं आपको बता दूं कि फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। NFT बनाने के लिए आपको थोड़ा टैलेंट, थोड़ी नॉलेज और थोड़ा सा लक चाहिए। लक इसलिए ताकि आपका आर्ट ऑडियंस के साथ क्लिक करे। तो चलिए बातों में वक्त नहीं गवाते हैं, आपको NFT बनाने का इजी वे बताते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज की NFT बनानी है, और वो कुछ भी हो सकता है। कस्टम पेंटिंग, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो गेम कलेक्टिबल, कोई मीम, जिफ, यहाँ तक कि कोई ट्वीट भी। बस जो भी हो वो रेयर हो और यूनिक हो। इससे आपकी NFT को वैल्यू मिलेगी
और हाँ, आपके पास उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, वरना कोई लीगल ट्रबल हो सकती है। स्टेप नंबर 2, एक बार आपने डिजिटल एसेट सिलेक्ट कर लिया तो उसे NFT बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस ब्लॉकचेन को अपनी NFT के लिए यूज करना चाहते हैं। इन दिनों NFT आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन है इथेरियम। बाकी पॉपुलर ऑप्शंस हैं टीजोस, पोल्काडॉट, कॉस्मोस एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन। स्टेप नंबर 3, अगर आपके पास डिजिटल वॉलेट नहीं है तो फिर आपको डिजिटल वॉलेट बनाना होगा अपनी NFT क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अपनी इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की जरूरत होगी और इस वॉलेट के थ्रू आप अपने डिजिटल एसेट को एक्सेस कर पाएंगे। कॉइनबेस, वजीरेक्स, ज़ेप-पे कुछ पॉपुलर इंडियन NFT वॉलेट्स में से हैं मेटामास्क, मैथ वॉलेट, अल्फा वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट। ग्लोबली ये वॉलेट्स काफी यूज किए जाते हैं। आपके वॉलेट में कुछ क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। ज्यादातर NFT प्लेटफॉर्म्स ईथर एक्सेप्ट करते हैं, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की क्रिप्टो करेंसी है। अगर आपके पास कोई और क्रिप्टो करेंसी है तो उसे अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करें so that you can use it to create and sell NFTs. स्टेप नंबर 4, एक बार आपका डिजिटल वॉलेट बन गया और आपके पास क्रिप्टो करेंसी भी है तो अब आप NFT क्रिएट और सेल करने के लिए तैयार है। बस एक अच्छी डिटेल रिसर्च करके बेस्ट NFT मार्केटप्लेस सिलेक्ट करनी है आपको। वजीरेक्स, कलेक्सियन, कलामिंट, beyondlife.club जैसी कई अच्छी मार्केटप्लेसेस हैं इंडिया में, जिन पर गैस फीस भी ज्यादा नहीं है। वजीरेक्स $1 की गैस फीस पर ट्रांजैक्शन चार्ज करता है। कलेक्सियन सेल प्राइस का 5% लेता है। तो वहीं इंटरनेशनली मोस्ट पॉपुलर मार्केटप्लेस ओपनसी की गैस फीस $100 से $150 के बीच रहती है। ओपनसी के अलावा एक्सी, लार्वा लैब्स, NBA टॉप शॉट, रेरिबल ये कुछ बेस्ट मार्केटप्लेसेस में से एक हैं। लेकिन आपको अपने NFT के हिसाब से मार्केटप्लेस चूज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, गेम NFT के लिए एक्सी मार्केटप्लेस है, बास्केटबॉल फोकस्ड NFTs के लिए NBA टॉप शॉट है। तो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि कुछ मार्केटप्लेसेस की अपनी क्रिप्टो करेंसी है और उनके प्लेटफॉर्म पर वही यूज होती है, जैसे कि रेरिबल। NFT मार्केटप्लेस सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करना जरूरी है ताकि आप NFT मिंट करने के लिए नेसेसरी फीस चुका पाए। स्टेप नंबर 5, अब आप अपनी NFT को अपलोड करने के लिए तैयार हैं। आपकी सिलेक्टेड NFT मार्केटप्लेस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है एज टू हाउ टू अपलोड योर NFT और इस प्रोसेस के जरिए आप अपनी NFT फाइल, जो कि PNG, GIF, MP3 या कोई भी और फाइल टाइप हो, उसे मार्केटेबल NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनल स्टेप 6, अपनी NFT को मिंट करने के लिए फाइनल स्टेप पर आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप अपनी NFT को कैसे मोनेटाइज करेंगे। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन फिक्स्ड प्राइस। आप एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। जो भी पहला इंसान वो प्राइस देने को तैयार होगा वही आपका बायर होगा। टाइम्ड ऑक्शन। टाइम्ड ऑक्शन से ऑडियंस को एक टाइम लिमिट मिलेगी, यानी थोड़ा वक्त ये डिसाइड करने के लिए कि वो कितने पर बिड करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन अनलिमिटेड ऑक्शन। इस तरह की ऑक्शन में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप जब चाहें अपने हिसाब से ऑक्शन को एंड कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अपनी NFT का मिनिमम प्राइस सेट करें ताकि आपको लॉस ना हो। उस पर रॉयल्टी रखें ताकि अगर आपकी NFT किसी सेकेंडरी मार्केट पर रीसेल हो तो आपको उसका फायदा मिलता रहे। NFT कैसे क्रिएट और सेल करें वो तो आप समझ गए हैं। NFT बाय करने का प्रोसेस भी बहुत इजी एंड सिमिलर है। सबसे पहले एक डिजिटल वॉलेट बनाएं, उस वॉलेट को फंड करें, बेस्ट मार्केटप्लेस चूज करें, वॉलेट को उस मार्केटप्लेस के साथ कनेक्ट करें, फिर जो भी NFT आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए बिड सबमिट कर दीजिए और अब आप अपनी पसंदीदा NFT खरीद पाएंगे। नाउ दैट यू नो ऑल अबाउट NFTs, तो देर किस बात की, कोई आर्ट क्रिएट कीजिए और उतर जाइए NFT मार्केट के मैदान में। क्या पता बिग बी की तरह आपकी NFT भी करोड़ों कमाए। क्रिप्टो से जुड़ी और कई चीजों को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मेरी यानी रुचि शर्मा की स्टोरी जरूर देखिए। बाय फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिसे देखो वो एनएफटी बनाने के होड़ में लगा हुआ है। आम हो या फिर खास, एक्टर हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, सभी नए जमाने के साथ बने रहने के लिए एनएफटी क्रिएट कर पैसे कमाने के नए जरिए का फायदा उठा रहे हैं। और यही वजह है कि एनएफटी की दुनिया तेजी से बदल रही है और दुनिया भर के मौजूद लोग इसकी तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मार्च 2021 में एनएफटी स्टोर के नाम से सस्पिशियस लुकिंग डोमेन रजिस्ट्रेशंस की संख्या में लगभग 300% की बढ़त है। इस तरह से एनएफटी मार्केट प्लेस में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उसका एक्टिव क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होना चाहिए। और यही वही जगह है जो एनएफटी होल्डर्स को नए रिस्क की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि अटैकर्स किसी भी होल्डर्स के क्रिप्टो वॉलेट में मार्केट प्लेस अकाउंट के जरिए सेंध लगा सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि बेहद शातिर हैकर्स अब तक एनएफटी मार्केट प्लेस ओपनसी के डिस्कॉर्ड सर्वर में भी घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे में पलक झपकते ही एक गलती और उनके निशाने पर आना बेहद आम है। इस तरह कुछ नई तकनीक तो कुछ अभी भी पुराने फिशिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके होल्डर से उनके फंड्स ट्रांसफर कराने से लेकर क्रेडेंशियल्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए एनएफटी सिक्योरिटी रिस्क में इजाफा करने वाले उभरते खतरों के बारे में गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले है पुराने जमाने की फिशिंग स्टाइल और एनएफटी धोखाधड़ी। दोस्तों, नए जमाने के खिलाड़ी भले ही कितने ही समझदार और सतर्क क्यों ना हो, लेकिन कई बार पुराने तरीके भी उन्हें चकमा देने के लिए काफी होते हैं। हाल की बात करें तो फरवरी 2022 में स्कैमर्स ने हमले के दौरान चोरी किए गए 254 टोकन्स के साथ ओपनसी यूजर्स से सैकड़ों एनएफटी चुरा लिए थे। हैकर्स द्वारा हासिल किए गए एस्टिमेटेड वैल्यू की कीमत $1.7 मिलियन से ज्यादा आंकी गई थी, जिसे महज 3 घंटे के समय में अंजाम दिया गया था। इस दौरान ओपनसी सीईओ डेविन फिजर ने ट्वीट के जरिए बताया कि पीड़ितों को टोकन के ट्रेड के लिए एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन के नाम पर धोखा दिया गया था। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पूरी तरह से ब्लैंक था और यही वजह थी कि जिसने हैकर्स को एनएफटी ट्रांसफर करने में सक्षम बनाया था। दूसरी तरफ एक नकली एनएफटी स्टोर साइट भी मौजूद है जो सोशल मीडिया के जरिए अपने शिकार की तरफ तलाश करता है और बड़ी सफाई से धोखा देने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो वॉलेट सिक्योरिटी क्रैकिंग के बारे में। कई बार स्कैम से बचने के लिए होल्डर्स किसी भी फिशिंग स्कैम्स के झांसे में नहीं आते, लेकिन तब क्या जब कोई आपको फ्री एनएफटी दे और वो भी बतौर गिफ्ट। और यह वो छोटी सी गलती जिसे एक्सेप्ट करने के साथ कोई भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। अटैकर्स अक्सर विक्टिम को टारगेट करने के लिए मैलिशियस एनएफटी को क्रिएट कर उसे गिफ्ट्स के रूप में ऑफर किया करते हैं। जैसे ही विक्टिम थोड़े लालच में आने के साथ मैलिशियस एनएफटी को खोलते हैं, तब उसमें से ओपनसी स्टोरेज डोमेन से एक पॉपअप ट्रिगर होता है। और खास बात यह है कि यह पॉपअप विक्टिम के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से कनेक्ट होने के लिए एक कॉमन रिक्वेस्ट शो करता है, जिसके बाद खुद ब खुद विक्टिम अपने ही हाथों अपने वॉलेट कनेक्शन को ओपन कर अटैकर्स द्वारा अपने फंड से हाथ धो बैठता है। और इसे ही कहते हैं खाया पिया कुश्ती और ग्लास तोड़ा लाखों का। बात करें फेक एनएफटी सपोर्ट ऑन डिस्कॉर्ड की, तो ओपनसी के डिस्कॉर्ड सर्वर पर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हुई चालबाजी को कौन भूल सकता है। यहां अटैकर्स घात लगाए बैठे थे कि कोई सपोर्ट क्वेश्चन पूछे और जैसे ही कोई क्वेश्चन करता वो उसे सेकेंडरी फेक सपोर्ट सर्वर पर इनवाइट करते, जहां विक्टिम को अटैकर्स अपने मेटामास्क क्रिप्टो वॉलेट को क्रोम एक्सटेंशन के साथ अपने मेटामास्क ऐप को रीसिंक्रोनाइज करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हुए विक्टिम को कॉन्फ़िगरेशन एडवांस मोबाइल एक्शन चेन से लिंक करने के लिए गाइड करते हैं, जिसके बाद अटैकर्स को कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे वो क्यूआर कोड जनरेट कर पाते हैं। इस तरह से बड़ी सफाई से अटैकर क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर और इमेज का इस्तेमाल अपने खुद के मेटामास्क ऐप के साथ वॉलेट को सिंक करने के लिए करते हैं, जिसके साथ अटैकर्स विक्टिम के वॉलेट से क्रिप्टो फंड को आराम से बिना किसी मुश्किल से चुरा सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल आर्ट स्कैम्स के बारे में। डिजिटल आर्ट की चोरी के बारे में क्या कहेंगे? आप सोच रहे रहेंगे कि आखिर कैसे हो सकती है किसी के आर्ट वर्क की चोरी, और वो भी एनएफटी फॉर्म में। तो आपको बता दें कि जब कोई एनएफटी मिंट की जाती है तब क्रिएट किए गए टोकन के लिए एक यूनिक फिजिकल या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट जैसे यूआरएल के साथ लिंक्ड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई एनएफटी खरीदता है तो असल में वो यूआरएल अपने नाम करता है। बहुत से मार्केट प्लेसेस पर एनएफटीज को बेचते समय आर्टिस्ट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है।
इसका ही फायदा उठाते हुए ऑनलाइन आर्ट थीव्स बड़े आराम से किसी भी आर्ट वर्क को कॉपी पेस्ट मिंट और सेल कर पाते हैं। इस बारे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में समझाया गया है कि कई बार खरीदार इलीगल आर्ट के कॉपीज के लिए मुंह मांगी कीमत देकर फंस जाते हैं। ये स्कैम यही तक नहीं रुकता, बल्कि कई बार विक्टिम्स को ब्लैकमेलर से डिजिटल एसेट्स को खरीदने के लिए सपोर्ट किए जाने की धमकी मिला करती है। दोस्तों, बात करते हैं ट्वीट थेफ्ट के बारे में। मौजूदा NFT स्कैम्स के वाइड रेंज में इसे एग्जीक्यूट करना सबसे आसान है। एक ऑटोमेटेड NFT ट्वीट माइनिंग बॉट ऑटोमेटिकली रूप से ट्वीट्स को NFTs में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ट्वीट्स किसी काम के नहीं होते हैं, तो आपको ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट याद ही होगा, जिसे $2.9 मिलियन के बराबर बेचा गया था, जबकि अब उसे पहले से 16 गुना ज्यादा यानी $48 मिलियन से ज्यादा में बेचने के लिए फिर से ओपन रखा गया है। वही अगर कोई ट्वीट में अपना आर्टवर्क पोस्ट करता है तो उसे बड़ी ही आसानी से अटैकर्स द्वारा नाक के नीचे से चुराया जा सकता है, जैसा कि आर्टिस्ट RJ पाल्मर के साथ हुआ था। इन सभी तरह के फ्रॉड और स्कैम्स के बावजूद NFT यूनिवर्स तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ ही रिस्क भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो भी NFT इन्वेस्टमेंट्स में हिस्सा ले रहा है, उसे खुद को इन सभी तरह की धोखेबाजी से बचाने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में अप टू डेट रहना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे क्रिप्टो टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। आज आपण ब्लॉकचेन विषयी माहिती घेणार आहोत। पण ब्लॉकचेन नेमकं आहे तरी काय? क्रिप्टोकरन्सी सध्या अगदी प्रत्येकाचे लक्ष केंद्रित करत आहे। लोकांना यामध्ये इन्व्हेस्ट सुद्धा करायचं आहे आणि यामधून भरपूर प्रॉफिट सुद्धा कमवायचं आहे। पण क्रिप्टोकरन्सीला समजण्याचा अगोदर ब्लॉकचेन नेमकं काय आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे। तर तुम्हाला माहित आहे का ब्लॉकचेन म्हणजे काय आहे आणि हे नेमकं कसं काम करतं? नाही, डोंट वरी, मी आहे ना। आज आपण जाणून घेणार आहोत की ब्लॉकचेन हे आहे तरी काय। हल्लीच आपण ऐकतो आहोत की सध्या बिटकॉइन खूप क्रेझीली समोर येत आहे। लोकांमध्ये बिटकॉइनला घेऊन खूप विश्वास वाटू लागला आहे, कारण बिटकॉइनची किंमत प्रत्येक दिवशी वाढत चालली आहे। पण तुम्हाला माहित आहे का बिटकॉइनच्या मागे टेक्नॉलॉजी काय आहे? जर तुमचं उत्तर हो असेल तर तुम्हाला ही स्टोरी नक्कीच आवडेल, कारण बिटकॉइनचा संबंध हा ब्लॉकचेन सोबत आहे। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी हे आपल्या IT इंडस्ट्रीमध्ये त्याप्रमाणे बदल करणार आहे की ज्याप्रमाणे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरने 1 दशका अगोदर केलं होतं आणि ज्याप्रमाणे लायनक्स हे एका दशकापासून मॉडर्न ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंटचा मूळ राहिला आहे, ठीक त्याचप्रमाणे ब्लॉकचेन सुद्धा येणाऱ्या काळात इन्फॉर्मेशन शेअर करण्यासाठी एक मोठं उत्तम माध्यम असणार आहे। आणि चांगली गोष्ट ही आहे की हे लोअर कॉस्ट सुद्धा असणार आणि अगदी सोप्या पद्धतीने हे ओपन आणि प्रायव्हेट नेटवर्क्समध्ये इम्प्लिमेंट सुद्धा करता येणार। ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला घेऊन लोकांमध्ये खूप होप्स आहेत की ब्लॉकचेन हे टेक्नॉलॉजीच्या फ्युचरला पूर्णपैकी बदलणार आहे। हे बऱ्याच अंशी खरं सुद्धा आहे, कारण फक्त बोलण्याने ही गोष्ट आपल्याला कळणार नाही, तर यासाठी आपल्याला या ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला संपूर्णपणे समजावं लागेल। याच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आपल्याला विचार करावा लागेल। मग कुठेतरी जाऊन आपल्याला या टेक्नॉलॉजीला समजण्यासाठी आणि त्याला उत्तम पद्धतीने इम्प्लिमेंट करण्यासाठी मदत होईल। ही गोष्ट खरी आहे की ब्लॉकचेनला घेऊन एक्सेप्टन्स हल्ली खूप स्लो आहे, कारण टेक्नॉलॉजी एक्सपर्टच्या नुसार हळूहळू या एक्सेप्टन्सला गती येणार आहे आणि हे खरंच चांगली बातमी आहे, कारण भविष्यात ही टेक्नॉलॉजी पूर्ण जगाला बदलणार आहे।
सोप्या भाषेत म्हणायचं झालं तर ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर आहे. पण आपल्याला माहीत आहे का लेजर हे काय असतं? लेजर हे एक असं बुक असतं जेथे सर्व अकाउंट्सची डिटेल्स ठेवली जाते, जेथे डेबिट आणि क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन पोस्ट केले जातात. समजा की हे आपल्या बँक पासबुक प्रमाणेच असतं. मग आता आपण हे बोलू शकतो की ब्लॉकचेन हे डिजिटाइज, डिसेंट्रलाइज आणि पब्लिक लेजर असतं. समजा की आपल्याकडे एक ट्रान्झॅक्शन फाईल आहे जी आपल्या कॉम्प्युटर म्हणजेच लेजरमध्ये आहे. 2 गव्हर्नमेंट अकाउंटंट्स ज्यांना आपण मायनर्स बोलतो त्यांच्याकडे पण तीच फाईल त्यांच्या सिस्टीममध्ये असते, म्हणून याला डिस्ट्रीब्युटेड असं म्हणतात. जसे आपण एक ट्रान्झॅक्शन करतो, आपला कॉम्प्युटर त्या दोन्ही अकाउंट्सला इन्फॉर्म करण्यासाठी ईमेल करतो. त्यानंतर प्रत्येक अकाउंटंट लवकरात लवकर सर्वात प्रथम चेक करत असतो की तुम्ही अफोर्ड करू शकतात की नाही आणि त्या बदलात त्यांना त्यांची सॅलरी म्हणजेच बिटकॉइन मिळू शकते की नाही. या दोघांमधून जो पण अगोदर चेक करतो आणि त्यांना अखेरीस व्हॅलिडेट करून रिप्लाय ऑल करतो, सोबत त्या ट्रान्झॅक्शनला व्हॅलिडेट करण्याच्या आपल्या लॉजिकला पण अटॅच करतो, त्यालाच म्हणतो आपण प्रूफ ऑफ वर्क. जर यामध्ये दुसऱ्या अकाउंटंटने पण अग्री केलं तर सर्व फाईल ऑफ ट्रान्झॅक्शनला अपडेट करतात. तर या पूर्ण प्रोसेस किंवा कॉन्सेप्टला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी असे म्हणतात. म्हणूनच ब्लॉकचेन एक असं इनकरप्टेबल डिजिटल लेजर ऑफ ट्रान्झॅक्शन आहे ज्याला प्रोग्राम केलं जातं व्हर्च्युअली सर्व गोष्टींना रेकॉर्ड करण्यासाठी. सर्व लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड जे ब्लॉकचेनमध्ये असतात त्यांना ब्लॉक म्हटलं जातं. म्हणूनच हे ब्लॉकचेन नेहमी कंटिन्युअसली ग्रोईंग लिस्ट ऑफ रेकॉर्ड्स आहेत जे लिंक्ड आणि सिक्युअर्ड असतात. तर ही होती ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची कहाणी. आय होप आपल्याला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा कॉन्सेप्ट चांगल्या प्रकारे कळलाच असणार. पुढील सेगमेंटमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे की ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला कोणी, कसं आणि कधी इन्व्हेंट केलं होतं. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टोविषयी नवीन गोष्टी घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड, तुर्तास येथेच थांबते. फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पैम, कुछ ऐसे ही शब्दों में फंस गई है एनएफटी की दुनिया, जिन्होंने अब एनएफटीज की जेन्युइनिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. पिछले 1 साल में जैसे जैसे एनएफटी का ट्रेंड तेजी पकड़ रहा था, एनएफटीज बड़ी बड़ी ह्यूज कलेक्शंस कर रही थी. उसे देखकर तो यही लग रहा था कि एनएफटीज एक लंबी रेस के घोड़े जैसी हैं, जो ना रुकेंगी और ना हारेंगी. लेकिन अब अचानक एनएफटीज पर कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस अब कड़ा रुख अपना रही है.
दरअसल NFT की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस OpenSea पर उनके इंटरनल कलेक्शन स्टोर फ्रंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यूजर्स को जितनी चाहे उतनी NFTs मिंट करने की कन्वीनियंस थी, लेकिन इस सुविधा का अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है OpenSea और उनके कई बायर्स एंड सेलर्स को। हुआ कुछ ऐसा कि इस सर्विस का गलत फायदा उठाते हुए बहुत से लोगों ने फेक NFT कलेक्शंस लॉन्च की। जी हाँ, OpenSea ने खुद ये खुलासा किया कि फ्री मिंटिंग NFT टूल्स के तहत लॉन्च की गई NFTs में से 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शंस और स्पैम है। OpenSea ही नहीं, और भी कई NFT मार्केट प्लेसेस हैं जो इस स्कैम की चपेट में आ गई हैं और कई परेशानियों से जूझ रही हैं। जैसे कि DeviantArt ने पिछले कुछ महीनों में 80,000 फ्रॉड अलर्ट्स जारी किए हैं। इतना ही नहीं, एक और प्लेटफॉर्म LooksRare पर वॉश ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि वॉश ट्रेडिंग क्या होती है। तो कभी-कभी एक ही ग्रुप के लोग आपस में NFT को बाय एंड सेल करके इलीगल तरीके से उस NFT की ट्रेडिंग वॉल्यूम और वैल्यू दोनों को बढ़ाते हैं। चलिए आपको एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। आप बीपल को तो जानते ही हैं, जिनकी NFT Every Day is the First 5000 Days ने $69 मिलियन की अब तक की हाईएस्ट NFT कलेक्शन की थी। उस आर्ट के बायर मेटाकोवन एक्चुअली बीपल के बिजनेस पार्टनर हैं। कुछ समझे? और ये वॉश ट्रेडिंग बड़े लेवल पर हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 2017 में 4.7 मिलियन NFTs 6.1 मिलियन टाइम्स ट्रेड हुई है। और तो और टोटल ट्रेडर्स में से महज 10% ट्रेडर्स ने 90% NFT ट्रांजैक्शंस की हैं और यही ग्रुप 97% NFTs को कम से कम एक बार ट्रेड जरूर करते हैं। तो यानी इन NFTs की वैल्यू और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक ग्रुप साथ मिलकर सांठगांठ कर रहा है। NFT की दुनिया में किस कदर धोखाधड़ी जारी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ कई बार $multi-million वर्थ रग पुल भी होते हैं, जहां अनोनिमस फाउंडर्स इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर छूमंतर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इवॉल्व्ड एप्स NFT प्रोजेक्ट, द बिग डैडी एप क्लब और ब्लॉकवर्स के साथ। अजब गजब गड़बड़ियों से भरी पड़ी है NFT की दुनिया। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो प्रॉमिस करता है ओनरशिप ऑफ कलर। इतना ही नहीं, हर बार जब आपका खरीदा हुआ कलर कोई और यूज करेगा तो आपको रॉयल्टीज मिलेंगी, ये तक वादा किया जाता है यहाँ। और अब तो NFT फ्रॉड्स कोर्ट तक घसीटे जा रहे हैं। एक कनेडियन कंपनी ने सोथेबीज और आर्टिस्ट केविन मैककॉय पर $1.5 मिलियन का केस ठोका है। मई 2014 में मिंट किए गए क्वांटम नाम के आर्ट को दुनिया की पहली NFT के तौर पर जाना जाता है। जून 2021 में सोथेबी की ऑक्शन नेटिवली डिजिटल में ये आर्ट $1.47 मिलियन में बिका। कनेडियन कंपनी फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर जिसने ये केस दायर किया है, उसकी माने तो वही क्वांटम के असल हकदार हैं, क्योंकि इस NFT के लॉन्च के 7 साल बाद जब मैककॉय की ओनरशिप खत्म हो गई थी, तब उन्होंने इसके राइट्स सिक्योर कर लिए थे। एक्चुअली ये सारी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि क्वांटम ओरिजिनली बिटकॉइन के कोड पर मॉडल्ड नेमकॉइन नाम के ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर पर मिंट की गई थी। नेमकॉइन पर ओनरशिप को हर 250 डेज के बाद रिन्यू करना जरूरी है, वरना कोई भी इसे क्लेम कर सकता है। और मैककॉय 2014 में क्वांटम को मिंट करके 2015 में उसे रिन्यू करना भूल गए। जब 6 साल तक ये NFT रिन्यू नहीं की गई तो 6 अप्रैल 2021 को एक्सियोस ने एक आर्टिकल इशू किया जिसकी हेडलाइन थी Exclusive, the first ever NFT from 2014 is on sale for $7 million plus. उसके 2 हफ्ते बाद फ्री होल्डिंग्स के सोल मेंबर ने @earlynft नाम के ट्विटर हैंडल से इस NFT को रजिस्टर कर लिया। NFTs के साथ जुड़े इस फ्रॉड और स्कैम्स के बारे में क्या क्रिप्टो मिंटर के CEO और को-फाउंडर रघुराज शेखर का कहना है और इन स्कैम से कैसे बचा जाए, आइए सुनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो सबसे मेजर तरीके का जो फ्रॉड होता है, सो दैट इज कि किसी और का आर्ट पीस है, उसको मैंने अपने नाम पे, जस्ट वो एक JPEG इमेज है, मैंने उसको कॉपी किया और अपने नाम पे मिंट करके बेच दिया। ठीक है, सो ये सबसे एक मेजर फॉर्म ऑफ थिंग्स है। दूसरे तो बहुत तरह के हैं कि
काफी सारे NFTs के नाम पे कि आप NFT का फ्री ड्रॉप मिल रहा है आपको और आप इस पे अपना सीड फ्रेज डाल दें, प्राइवेट कीज दे दें और उससे उसके वॉलेट के पैसे ले लेते हैं लोग। तो ये सब तो चलो अभी हमारे बैंक अकाउंट सब में भी होता है कि फोन करके क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा लेते हैं, तो ये आई वुड से दैट वो सारी चीजें उसी तरीके से हो रही हैं। बट जो यहाँ पे आर्ट या कोई भी पीस ऑफ कंटेंट है जिसका मैंने NFT बनाया और वो किसी और का ओरिजिनल वर्क है और वो मैं बेच रहा हूँ उसके थ्रू, सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी हम देखें तो, और ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है। मोनालिसा की एक पेंटिंग है, अब वो मोनालिसा की एक पेंटिंग है, उसका कोई कॉपीराइट है नहीं है, और इवन कोई और भी पेंटिंग हो जिसका कॉपीराइट हुआ किसी आर्टिस्ट के पास, उसका बहुत सारी कॉपीज छोटे छोटे शहरों में 100 रुपए पे पोस्टर बिक रहे हैं, बट दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। द थिंग इज दैट वो ओरिजिनल नहीं है। अब ओरिजिनलिटी कहाँ से पता करें हम किसी चीजों की? सो इसमें अब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस अब वेरीफाइड अकाउंट्स लाने लगे हैं। सो अब लोग देखने लगे हैं कि वेरीफाइड अकाउंट से है या नहीं। लेट्स से काफी फेमस NFT कलेक्शन है बोर्ड एप याच क्लब, तो उसके मैं देखूंगा कि बहुत लोग बोर्ड एप याच क्लब के सिंपल क्लोन्स ले आकर के डाल दिए हैं एंड वो बेच भी दे रहे हैं और काफी ज्यादा अमाउंट के आइटम्स बेच दिए हैं। बट उसमें है कि यूजर को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि वो देख ले कि वेरीफाइड अकाउंट्स है या नहीं। यानी इन टोटल NFT की दुनिया फिलहाल कटघरे में खड़ी है। जब तक यहाँ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी नहीं किए जाएंगे तब तक इसमें हाथ ना ही डालें तो अच्छा है, वरना हाथ जल भी सकते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, गुड बाय, कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। जैसे गोल्ड के बाद सिल्वर की चमक और खनक सबसे फेमस है, वैसे ही क्रिप्टो के वर्ल्ड में डिजिटल बिटकॉइन के बाद डिजिटल सिल्वर यानी कि इथीरियम सबसे फेमस है। आज मैं आपको तनिक तनिक करके इथीरियम का एक ऐसा टॉनिक दूंगी कि अगर आपको कोई नींद में भी उठा करके पूछेगा ना कि भाई इथीरियम क्या है, तो आपको उसकी पूरी कुंडली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होगी। हे गाइस, मेरा नाम है यशी, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी और आज के इस एपिसोड में हम फन वे में जानेंगे कि आखिर इथीरियम क्या है, इथीरियम की डिजिटल इमली आखिर खट्टी है या मीठी, और थोड़े से समय में ही इथीरियम का पौधा पेड़ कैसे बन गया, जानना है राइट? अच्छा, 1991 की फेमस मूवी सौदागर में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स थे दिलीप कुमार साहब और राजकुमार, और वो थे जंगल के दो शेर, राइट? वैसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में भी दो शेरों का राज चलता है। बिटकॉइन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, आज हम इथीरियम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इथीरियम आखिर है क्या? इथीरियम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसे ईथर या फिर इथीरियम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन मिस यूनिवर्स है तो इथीरियम मिस वर्ल्ड है, यानी कि दोनों चीजें अपनी जगह जगह इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या आप जानते हैं 2015 में लॉन्च होने से लेकर अब तक इथीरियम की प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 36,000% का उछाल आया है। अगर स्टॉक मार्केट में हमारा पोर्टफोलियो 20 से 30% बढ़ जाता है तो हमारे पांव जमीन पर रहते ही नहीं है, राइट? एंड नाउ जस्ट इमेजिन 36,000% का रिटर्न कितना होता है बॉस। यार मैं जरा काउंट करने की कोशिश करती हूँ, दिमाग घूमा, मन में लड्डू फूटा। अब आप लोग भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ कि इथीरियम में जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए। रुको जरा, वेट करो, पहले इथीरियम को पूरी तरह समझ तो लो। इथीरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी समझने की भूल ना करना लल्ला। इथीरियम तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस का एक ग्लोबल ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, राइट? So basically, Ethereum is one of its kind programmable blockchain platform. In fact, Microsoft के executive York Rolls ने ये तक कहा है कि 2023 तक Ethereum network decentralized apps का हब बनने वाला है। वो कौन सा डायलॉग था सिंघम का, जिसमें कहते हैं अजय देवगन, जिसमें है दम वो है फक्त बाजीराव सिंघम।
अभी सही बोला ना? खैर, मूविंग ऑन टू इथेरियम प्लेटफॉर्म में भी बहुत दम है बॉस। ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की डिजिटल लेजर नहीं है। इथेरियम का विजन है एक न्यू इंटरनेट स्पेस को क्रिएट करना, जहां किसी भी टेक जायंट कंपनी या गवर्नमेंट की एजेंसीज बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। एक ऐसा इंटरनेट जहां आपका प्राइवेट डेटा, इधर आओ, 100% प्राइवेट रहेगा और ये डेटा किसी भी मोनोपोली में भी शामिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, इथेरियम पर गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ब्राउजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी क्रिएट किए जाएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी एप्स भी कहेंगे। इथेरियम यूजर्स डी ऐप यूज करने के लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि कुछ फीस चुकानी पड़ेगी। इस फीस को क्रिप्टो वर्ल्ड में गैस भी कहा जाता है। 1 सेकेंड, गैस कहा जाता है? क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के 93% डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस इथेरियम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं? कितने सारे फन फैक्ट्स बताती हूँ मैं आपको। हाँ, वैसे शॉर्ट टाइम में इथेरियम के फेमस होने का मेन रीजन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी बला का नाम है? वेल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बिना थर्ड पार्टी के सिर्फ कंप्यूटर कोड से होने वाले दो पार्टीज के बीच का अग्रीमेंट है। वो क्या कहते थे? अरे मियाँ बीबी है राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, मूविंग ऑन टू इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ क्रिप्टो करेंसी की वजह से फ्रॉड का तनिक भी चांस नहीं है, इतू सा भी चांस नहीं है। वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीमेंट सेफ भी हो गए हैं और सस्ते भी हो गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का खर्चा जो बच गया है। तो अब जलेबी से लेकर के जेट इंजन तक की ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ये सब कुछ सेफली आप कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। मूविंग ऑन टू एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको सुन करके आपको थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इथेरियम के क्रिएटर वर्ल्ड के वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनेयर हैं? अभी वो सिर्फ 27 इयर्स के हैं। हाँ, और उनका नाम है वितालिक बुत्रिन। मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। वितालिक बुत्रिन रशिया में पैदा हुए हैं और कनाडा में बड़े हुए हैं। वैसे उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिसको सुनते ही आपको उनको प्यार से सल्यूट करने का मन जरूर करेगा। 2021 में मिस्टर वितालिक बुत्रिन ने इंडियन क्रिप्टो कोविड रिलीफ में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों रुपए डोनेट किए थे। एंड टू बी प्रिसाइज, $1.14 बिलियन। मिस्टर वितालिक बुत्रिन इंडिया की ओर से थैंक यू वेरी वेरी मच। जैसे सुपरस्टार आर वेरी ओन थलाइवा रजनीकांत साहब ने रोबोट के बाद अक्षय कुमार के साथ में रोबोट 2.0 फिल्म बनाई थी, वैसे ही इथेरियम 2.0 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। इथेरियम 2.0 का दूसरा नाम है सेरेनिटी। किसी भी ब्लॉकचेन को 3 फैक्टर्स पर इवैल्यूएट किया जाता है। अभी बताती हूँ आपको किस किस पर। स्केलिंग, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग यानी कि पर सेकंड में कितने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सिक्योरिटी मींस कि ये प्लेटफॉर्म कितना हैकिंग और फ्रॉड प्रूफ है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस इस प्लेटफॉर्म को कोई एक कंपनी, गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल नहीं ओन करता है। इथेरियम में करंटली स्केलिंग का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है। एक बार फिर से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वीजा पर सेकंड में 1700 ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है, यानी वीजा की स्केलिंग हुई 1700 TPS, whereas इथेरियम करंटली सिर्फ 15 TPS यानी कि 15 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ही हैंडल करती है। आई नो द नंबर इज क्वाइट लो, पर फिकर नॉट, 2022 में जो इथेरियम 2.0 लॉन्च होने वाला है वो पर सेकंड 15,000 ट्रांजैक्शंस हैंडल करेगा। ओह माय गॉड, यानी कि कहां 15 TPS और कहां 15,000 TPS। मतलब इथेरियम 2.0 स्केलिंग में सबको धो डालेगा। इट मींस 2022 में इथेरियम प्लेटफॉर्म तो फुल स्पीड से भागने वाला है और क्रिप्टो वर्ल्ड में तूफान लेकर आने वाला है। ऐसे ही फन फैक्ट्स और जानने हैं, राइट? डू नॉट वरी, मैं हूं ना यहाँ पर। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। दिस इज मी यशस्वी साइनिंग ऑफ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ।
Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma and today we are going to talk about consensus algorithm. Consensus is key to the decentralized participation in the distributed ledger environment. The participants should arrive at a consensus about what is good and should be included and what is bad should be excluded. It is important for the entire community to function in an orderly fashion and realize the purpose of the collaboration. Without consensus, there will be chaos. Chaos would be detrimental to the sustainability of the system. In the blockchain ecosystem, a consensus algorithm is a defined programmed procedure. It is a set of rules which defines how the peer participants of the peer-to-peer network conduct themselves in the environment. These rules will help the participant decide on which of the transactions are to be accepted to be included in the immutable digital ledger and which ones are not to be. Why is a consensus algorithm needed? The peers in the network will never know each other. The problem, therefore, is how to establish trust among the participants without disclosing their identities. In order to achieve that, the activities allowed to one needs to be restricted and strictly defined. So once you know that the other participant can't really misbehave, you can participate in the network with trust and together can achieve reliability. This will help a larger participation and will in turn lend security to the entire process. The consensus algorithm has 5 objectives in the DLT environment. First of those objectives is that it wants to achieve unified agreement among participants. In centralized systems, trusting the central authority is mandatory. Here, the participants need to trust the system, and they need to do this without having to establish trust among each other. Only then this environment can achieve unified agreement. Secondly, the network participants should be motivated to achieve common alignment of all the economic incentives. This is a must to develop a self-regulating system which can be entrusted. Thirdly, the system should not allow anyone to cheat. It must prevent double spending. Fourthly, the system is supposed to be fault tolerant. So much so that if a section of the network fails to perform at any point of time, the rest of the network should be able to continue business seamlessly and keep providing consistent and reliable results. Last but not the least, the consensus algorithm must be designed in a way that ensures equality among all participants so that no one can take any unfair advantage from the system. Safety first. The algorithm are capable of generating valid results and does not entertain false attempts. It should be participatory, without any discrimination towards any participant, and should allow and incentivize participation. Egalitarian. It must treat every participant as an equal member of the whole community.
A faulty consensus algorithm will split the decision of the community and may even result in the duplication of the records, creating conflicting transaction history and failing to perform as a single source of truth. This results from failure of the community to arrive at a consensus. Subsequently, this will make some nodes or participants confused about the right course of action and result in malfunction. A section of the community could get conflicted and will increase the latency in internodal communication, dispute resolution, increasing the application latency and reducing the network efficiency. In other terms, it will make the objectives of the blockchain project fail. Consensus algorithms are commonly termed as proof of something. The most popular one is the first one used by Bitcoin blockchain, proof of work. Others are proof of stake, proof of authority, proof of history, proof of activity, proof of identity, proof of burn, proof of elapsed time, proof of importance, and many such. Some are also known differently as delegated proof of stake, least proof of stake. Some have uncommon names like Byzantine fault tolerance, direct acrylic graph, Tendermint, Ouroboros, and some even call themselves Grandpa. Grandpa may sound funny, but it's actually an acronym for ghost-based recursive ancestor deriving prefix agreement. Thank you. We will keep coming back with more interesting stories. I'm Ruchi Sharma. Have a great day. अरे मनोज ये हटाओ ना न्यूज़पेपर। अरे क्यों? मेरी बात सुनो, यू विल बी सो इम्प्रेस्ड एंड सो प्राउड ऑफ मी। चलो बताओ आपकी क्या बात है? मैंने कहा था ना कि मैं पूरी रिसर्च करके आऊंगी क्रिप्टो करेंसी पे। That's great. बहुत ही बढ़िया रिसर्च की है और मैंने ये देख लिया है कि जैसे बिटकॉइन इतना ऊपर चढ़ रहा है, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूंगी। बिटकॉइन? लेकिन मनोज, छोटी सी एक बात, एक प्रॉब्लम है जो मुझे तंग कर रही है। बताइए। 50 लाख के आसपास रहती है इसकी वैल्यू। इसे खरीदने के लिए तो मुझे अपनी जायदाद बेचनी पड़ेगी। हम बिटकॉइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा जो एस्पेक्ट है वो वी विल ट्राई टू डिस्कस द फंडामेंटल वैल्यू अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी, ना ही कि हम गिव एनी रिकमेंडेशन अबाउट इट। ठीक है, आपने जैसे बिटकॉइन के बारे में कहा तो यू आर अंडर अ ब्रॉडर कंसर्न की 50 लाख की एक कॉइन है, तो आपको आपकी जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है। पक्का ना? यू आर नॉट सपोज टू सेल योर फ्लैट या फिर जो भी है। बिटकॉइन आप 0.0000001 which is known as a Satoshi के वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। इतनी छोटी वैल्यू पर? इनके जो फाउंडर है सातोशी नाकामोटो, उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन किया। मिस्ट्री मैन, देखो मैंने किया ना, जो कि हम भी उनको भी ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। तो मिस्ट्री मैन तो है ही वो। और इनफैक्ट लेकिन उन्होंने ऐसा प्रोविजन किया था कि जहां पर बिटकॉइन को एक अच्छे वैल्यू पर भी आप खरीद सकते हैं। यू कैन स्टार्ट बाइंग बिटकॉइन एज लो एज 100 रुपीज। व्हाट आर यू सेइंग? एक सेकंड।
500 का बिटकॉइन तो मैं ले सकती हूँ। बिल्कुल, आप ज्यादा भी खरीद सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर दिस थिंग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। 2010 मई 22 को एक बंदे का नाम लेस्ले हेंस है, उन्होंने पापा जॉन्स के 2 पिज्जा खरीदे। आपको मालूम है कितने में? कितने में? 10,000 बिटकॉइंस में। व्हाट? 10,000 बिटकॉइंस मतलब 10,000 इंटू 50 लाख, मतलब मैं तो इतने जीरोस भी नहीं गिन सकती। जीरो की गिनती में नहीं और चलते। वो उस इंसान को तो शॉक लग गया होगा बाद में। आई थिंक इससे ज्यादा स्मार्ट तो वो थे, क्रिस्टोफर कॉच। 2009 में उन्होंने द एक्सीडेंटल मिलेना, या द एक्सीडेंटल मिलेनियर, $26 इन्वेस्ट किए 2009 में, उसके बाद भूल गए वो, और 4 साल बाद 5,000 बिटकॉइंस की वैल्यू हो गई थी लगभग $1 मिलियन, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1,000 बेचे, एक अपार्टमेंट खरीदा, और आज भी उनके पास 4,000 बिटकॉइन है। मुझे अगर जहां तक मुझे याद है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको रोका था। और अच्छा वो पहली बार गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनी थी, हमेशा अच्छा डिसीजन नहीं होता है गर्लफ्रेंड की बात सुनना। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्ली इन्वेस्टमेंट्स करके देयर आर मेनी पीपल हु हैड मेड वैल्यू बिटकॉइन से लेकर, जैसे हमने एल सैल्वाडोर एक कंट्री का अपने नाम सुना है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। एल सैल्वाडोर हैज एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। सो देयर आर मेनी फ्यू करेंसीज जिसको एक दर्जा मिला है, क्योंकि बिटकॉइन इज द नंबर 1 करेंसी इन द प्लैनेट। आपने देखा, इनफैक्ट उनकी ट्रेजरी में लगभग 1300 से के करीब बिटकॉइंस भी ऑफिशियली वो होल्ड करते हैं। वाओ। मैं सोच रही हूँ ऑन द सेकंड थॉट, क्यों ना मैं भी किसी ऐसी करेंसी में इन्वेस्ट करूँ जिसके जो प्राइसेस बिल्कुल चांद तक जाए। मून कॉइन में इन्वेस्ट करूँ क्या? मैडम, देयर आर मेनी करेंसीज दैट विल ऑफर यू टू टेक यू टू द मून, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि आप उतरोगे कैसे? मून से जमीन पे उतरते हैं। और लेट्स टॉक अबाउट आवर अदर करेंसी दैट इज नोन एज ETH, आल्सो नोन एज इथेरियम। तो वो तो ब्लॉकचेन है ना? बिल्कुल, या करेंसी है। हम तो करेंसी की बात कर रहे हैं। This is how we step in. We are here to explain the fundamentals of cryptocurrencies. So Ethereum एक प्लेटफॉर्म है, और उसका जो कॉइन जो वैल्यू है that is known as ETH. If you are getting confused, very basic fundamental principle that a coin derives value from its platform. जो भी economic activity a platform does or it considers, उसका impact जो है ना ETH पे आता है। That means उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर आता है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थेरम के बारे में बता दूं। विटालिक बुटेरिन 13 साल के थे, जो इसके फाउंडर हैं। विटालिक बुटेरिन 13 साल में तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। आई थिंक सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम। मैं तो 13 साल में मतलब हार्डली मैथ्स कर पाती थी, टीचर की डांट खाती थी। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। विटालिक बुटेरिन ने उसकी शुरुआत की थी। इनफैक्ट 2 साल के बाद 2015 में उन्होंने इथेरियम को एक्चुअली इंप्लीमेंट किया। एंड सी दिस, आफ्टर 7 to 8 years देयर आर मेनी कंपनीज, बिग कंपनीज, ह्यूज कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, HSBC उसके साथ में सपोर्टेड है, और वहां पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इथेरियम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बचपन में ना मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना डेंटा कॉइन, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड किया, डेंटा कॉइन में को कंसीडर करूं क्या? आप डॉक्टर हैं? नहीं हूं नहीं, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल डॉक्टर्स वाली है। अगर आप डॉक्टर हैं तो ही आप एक कॉइन खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज डेंटल और डेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, और उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मतलब मेरी एंट्री बैन है उधर। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। आप व्हाइट बेल्ट है या ब्लैक बेल्ट है वो बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन आगे बढ़े। नो बेल्ट। आपने एक गाना तो सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना है, मुंबई से गई पटना, पटना से गई दिल्ली। जूही चावला तो बहुत बड़े फैन भी रह चुके हैं उसके। तो ऐसे ही ये बिनांस की कहानी है। वो गए चाइना, चाइना से उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, चाइना से गए जापान, जापान से गए US। ओके, वाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इनफैक्ट 2017 में बाइनेंस की जो शुरुआत है वो चाइना में हुई थी, और वहां से लेकर चाइना, एज यू आर अवेयर दैट कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स में था, और उसको रेगुलेट करने की शुरुआत वो साल से हुई थी। बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर कंसर्न दे मूव टू जापान, और वहां से लेके वाज ड्विंडलिंग बिटवीन जापान, हांगकांग की तरफ भी उनका रुख था। मीनवाइल US ने उनको बैन कर दिया था। और आपको बता दूं, कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अपना नाम बिनांस US कर दिया, और आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और मैं आपको एक और बात बता दूं, उनका जो करेंसी है दैट इज नोन एज BNB। नाम तो याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा, बहुत इजी है। मुझे अमेरिका बहुत पसंद है, और अमेरिका से मुझे याद आया बर्गर्स। यू नो आई एम अ फूडी, तो कुछ बर्गर, गार्लिक ब्रेड, मैंने सुना वूपर कॉइन है, गार्लिक कॉइन है, इनमें इन्वेस्ट करूं, कंसीडर करूं? फिर से मेरा आइडिया खारिज मत कर देना प्लीज। बिल्कुल, एक काम करते हैं, आपके लिए गार्लिक ब्रेड मंगा लेते हैं। दैट इज द ओनली वैल्यू इट कैन डिराइव फॉर यू इफ यू ऑर्डर गार्लिक ब्रेड और यू ऑप्ट फॉर सम स्टूपिड कॉइन्स। तो आप उस पे फोकस मत कीजिए, लेट्स फोकस मोर ऑन स्टेबल कॉइन। मैं आपको बता दूं कि उसका फंडामेंटल वैल्यू कहां से डिराइव करता है। सो विल टॉक अबाउट टीथर। तो टीथर इज अ क्रिप्टो करेंसी जहां पर इट्स अ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? बाकी कॉइन्स क्या
बैलेंस में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आप समझो, टीथर डिराइव्स वैल्यू, इट इज एसोसिएटेड विद USDC। तो उसका मतलब ये है कि अगर समझो से फॉर एग्जांपल यू हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन और बिटकॉइन की वैल्यू 67,000 पे पहुंच गई है, आपकी रिसर्च के अनुसार आपको ऐसा लगता है कि वो बिटकॉइन की प्राइसेस कम होने वाली है, यू विल बुक प्रॉफिट्स इन बिटकॉइन एंड यू विल पार्क योर मनी इन टीथर। सो टीथर क्या करता है कि बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्टेबल, आई मीन सिंस इट्स अ स्टेबल करेंसी, तो उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है, क्योंकि यूएस की जो करेंसी है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है और वहां पर उसमें इतना मूवमेंट नहीं होता है। सो योर इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड, तो इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। दिस इज व्हाई उसका नाम ही है स्टेबल कॉइन। पर अमेरिका से ना मुझे यूएफओ भी याद आते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या मैं यूएफओ कॉइन में इन्वेस्ट करूं? क्या पता एलियंस खुद मेरे लिए बहुत सारे पैसे लेकर आए। लेट्स नॉट गेट इनटू द जादू एक्टिविटी एंड वी विल फोकस मोर ऑन। मेरे सारे कॉइन्स आपने रिजेक्ट कर दिए। नहीं, कॉइन रिजेक्ट करने ही है, क्योंकि एकदम आपकी जो रिसर्च है वो एकदम बेकार है। मैंने रिसर्च तो अच्छी की थी। हाँ, रिसर्च अच्छी करी है आपने। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, ओनली एंड ओनली to make our viewers understand the basics and the fundamental principle behind cryptocurrencies, because cryptocurrency investments are highly volatile and it's a very volatile sector. You should be in a very sound position and you should always do your research before investing in cryptocurrencies. So Ruchi, आपका decision खुद लीजिए. You consult your financial advisor before doing any investments. So and let's focus on other aspects. What all aspects and fundamental coins are there that can be explored with us. क्रिप्टो की मेल डोमिनेटेड दुनिया में वुमनिया भी अपनी जगह बना रही है बॉस। ऑलरेडी आईटी वर्ल्ड में विमेन का कंट्रीब्यूशन डे एंड नाइट बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉन्कर द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। और क्यों ना करे भाई, पायलट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपना परचम लहराने के बाद अब क्रिप्टो वर्ल्ड में भी हमें बराबरी करनी है, यानी कि जगह तो बनानी ही होगी। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। हाय, मेरा नाम है यशस्वी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। और इस स्पेशल सीरीज में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस के बारे में, जिनकी अचीवमेंट्स को देखकर शायद इंडिया की पोटेंशियल क्रिप्टो क्वीन भी इंस्पायर हो जाए और क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस में अपना सिक्का जमा दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉरी। फर्स्ट पियर्स क्रिप्टो क्वीन का नाम है हेस्टर पियर्स। जैसे इंडिया का रेगुलेटर सेबी है, वैसे ही अमेरिकन रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की सेकंड टर्म कमिश्नर है मिस पियर्स। जिसे हमारे घर में चाहे कितने भी लोग कमाने वाले क्यों ना हो, पर मम्मी के अप्रूवल के बिना कभी बजट अप्रूव होता है। वैसे ही पूरे अमेरिका के स्टॉक्स और क्रिप्टो के हर छोटे बड़े प्लेयर्स को इन मम्मी के डर से रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। अरे मियाँ, तभी तो इनका निकनेम है क्रिप्टो मॉम। ऐसे ही नहीं पड़ा है। इस क्रिप्टो मॉम ने इकोनॉमिक्स में बीए किया है और येल लॉ स्कूल से पढ़ी है वकालत।
और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन की ये है तुर्रम खान। इंटरेस्टिंगली, जब पूरी दुनिया अधूरे नॉलेज के साथ क्रिप्टो को लेकर के नेगेटिविटी फैला रही थी, तब मिस पियर्स ने क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर बड़ा ही सेंसिबल अप्रोच अपनाया था और कहा था कि यूएस एंड दुनिया वाले एज फार एज क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न्ड, वी कैन डू मच बेटर। जैसे यूएस अपने डॉलर से वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल करता है, वैसे ही यूएस SEC के रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। 2025 तक हेस्टर पियर्स यूएस SEC की कमिश्नर रहेंगी। तो लेट्स सी ये क्रिप्टो मॉम क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या इनकलाब लेकर के आती है, क्योंकि इनके नॉर्म्स का इंडियन क्रिप्टो बिल पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ेगा। लेट्स होप कि क्रिप्टो मॉम का मूड जो है वो एकदम तरोताजा रहे, ताकि हम इंडियंस को भी अच्छा खासा फायदा हो सके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रिप्टो क्वीन, महबूबा। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाती हूँ। अरे आपको कहा था ना कि स्पेशल सीरीज है। जानना चाहते हैं इन फियर्स क्रिप्टो लेडीज के बारे में, तो वॉच आउट दिस स्पेस फॉर मोर। तब तक के लिए दिस इज मी यशस्वी आचार्य साइनिंग आउट। Keep watching Crypto TV and do not forget to like, subscribe and hit the bell icon. वापस यहीं आना अगर क्रिप्टो क्वींस के बारे में है जानना। કેમ છો? મસ્ત મજામાં? વેલકમ ટુ ક્રિપ્ટો ટીવી. હું છું તમારી હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી AKA પારો. દેવા. જેમ ગોલ્ડ પછી ચાંદીનું નામ આવે તેમ ડિજિટલ ગોલ્ડ એટલે બિટકોઇન પછી ડિજિટલ સિલ્વર એટલે ઇથિરિયમનું નામ આવે. આજે આપણે ઇથિરિયમ શું છે, કોણ બનાવ્યું, શોર્ટ ટાઈમમાં આટલું ફેમસ કેમ થયું, આ બધું આજે एज ऑलवेज फन वे में लर्न करशु। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। 1991 फिल्म सौदागर में बॉलीवुड ना बे शेर ધ લેજેન્ડ્સ રાજકુમાર અને દિલીપ કુમારે લાસ્ટ ટાઈમ સ્ક્રીન શેર કરી હતી. બોલિવૂડની જેમ ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં પણ બે શેર રાજ કરે છે. ઇમલી કા બૂટા બેરી કા પેડ. આ લિરિક્સથી સમજીએ તો ઇમલી એટલે ઇથિરિયમ અને બેરી એટલે બિટકોઇન. આજે આપણે ઇથિરિયમ પર કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ઇથિરિયમ એટલે શું? ઇથિરિયમ વર્લ્ડની સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ક્રિપ્ટોકરન્સી છે, જેને ઈથર, ETH ઓર ઇથિરિયમ પણ કહેવાય છે. શું તમને ખબર છે 2015માં લોન્ચ થવાથી આજ દિવસ સુધીમાં ઇથિરિયમની પ્રાઇસ એપ્રોક્સિમેટલી 36,000% વધી છે. સ્ટોક માર્કેટમાં આપણે સ્ટોક 20 થી 30% વધે તો આપણે ફોર્મમાં આવી જઈએ. જસ્ટ ઇમેજિન 36,000% નું રિટર્ન એટલે કેટલું થાય બોસ? મગજ ફરી ગયું ને? મારો પણ એમ થાય છે કે હમણાં જે ઇથિરિયમમાં ઇન્વેસ્ટ કરી લઈએ, હે ના? રૂકો જરા, વેટ કરો. પહેલા ઇથિરિયમને પૂરી રીતે સમજી લો. ઇથિરિયમ ફક્ત એક ક્રિપ્ટોકરન્સી નથી. ના 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 રે ના રે ના રે ના 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 રે ના રે ના. इथीरियम ना रहोगे ते ऐसे करोगे, ब्लॉकचेन के सारे मजे कैसे करोगे. इथीरियम है इथीरियम है. ઇથિરિયમ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ એપ્લિકેશન માટેનું ગ્લોબલ ઓપન સોર્સ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ છે. કઈ ટપ્પો ન પડ્યું? ડોન્ટ વરી, હું સિમ્પ્લિફાય કરું છું. સિમ્પલી પુટ, હિસાબ કિતાબની શેર ડિજિટલ લેજર એટલે બ્લોકચેન ટેકનોલોજી. આ લેજરમાં ઈચ ન્યૂ ડેટા બ્લોકના ફોર્મમાં એડ થતો જાય છે. આવા બ્લોક્સથી બનતા ડેટા ચેનને બ્લોકચેન કહેવાય છે. ઇથિરિયમ વન ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ પ્રોગ્રામેબલ બ્લોકચેન પ્લેટફોર્મ છે.
સિંઘમમાં અજય દેવગન કહે છે ના, जिसमें है दम वो है ફક્ત બાજીરાવ સિંઘમ. ઇથેરિયમ પ્લેટફોર્મમાં પણ બહુ જ દમ છે. આ ફક્ત ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ સ્ટોર કરવાની ડિજિટલ લેજર નથી. ઇથેરિયમનું વિઝન એક ન્યૂ ઇન્ટરનેટ ક્રિએટ કરવાનું છે, જ્યાં કોઈ ટેક જાયન્ટ કે ગવર્મેન્ટ એજન્સીને દાદાગીરી નહીં ચાલે. તમારા પ્રાઇવેટ ડેટાને સલમાનના બિગ બોસની જેમ કોઈ જોઈ ન શકે. આટલું જ નહીં, ઇથેરિયમ પર ગેમિંગ, એન્ટરટેનમેન્ટ, બ્રાઉઝિંગ, ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફાઇનાન્સ અને બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એપ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, જેને ડી એપ્સ કહેવામાં આવે છે. ઇથેરિયમ યુઝર્સ ડી એપ યુઝ કરવા માટે ફીસ ભરે છે. આ ફીસને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં ગેસ કહેવામાં આવે છે. શું તમને ખબર છે, વર્લ્ડના 93% ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ફાઇનાન્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ઇથેરિયમ પર કરવામાં આવે છે. શોર્ટ ટાઈમમાં ઇથેરિયમને ફેમસ થવાનું કારણ છે સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ એટલે થર્ડ પાર્ટી વગેર કમ્પ્યુટર કોડથી થતો બે પાર્ટી વચ્ચેનું અગ્રીમેન્ટ. મિયા બીવી રાજી તો ક્યાં કરેગા કાઝી. ઇથેરિયમ બ્લોકચેન પર સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સનો સૌથી મોટો ફાયદો, અહીંયા ક્રિપ્ટોગ્રાફીના કારણે ફ્રોડના જરા પણ ચાન્સ નથી. પ્લસ તમારે વચ્ચે કોઈ થર્ડ પાર્ટી ના રાખવી પડે. ઊંધિયાથી લઈને અંડર વોટર સબમરીન સુધી તમારા કંઈ પણ સેફટી ટ્રેડ કરવું હોય તો સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ હે ના. શું તમને ખબર છે, ઇથેરિયમના ક્રિએટર વર્લ્ડના વન ઓફ ધ યંગેસ્ટ ક્રિપ્ટો બિલિયનર છે. અત્યારે એમની એજ ઓનલી 27 યર્સ છે. તેમનું નામ છે વિતાલિક બુટરીન. આ રશિયામાં પેદા થયા અને કેનેડામાં મોટા થયા. એમની એક વાત પર તો તમને સલામ કરવાનું મન થશે. 2021માં વિતાલિક ભાઈએ ઇન્ડિયન કોવિડ રિલીફ ફંડને લાખો નહીં, કરોડો નહીં, ખરબો રૂપિયા ડોનેટ કર્યા હતા. $1.14 બિલિયન ટુ બી એક્ઝેક્ટ. સલામ છે બોસ. જેમ સુપરસ્ટાર એન્ડ આર થલાઈવા રજનીકાંતની રોબોટ ફિલ્મ પછી અક્ષય કુમાર સાથે રોબોટ 2.0 ફિલ્મ આવી, તેમ ઇથેરિયમ 2.0 પણ બહુ જલ્દી લોન્ચ થવાનું છે. ઇથેરિયમ 2.0 નું બીજું નામ છે સેરેનિટી. કોઈ પણ બ્લોકચેનને 3 ફેક્ટર્સ પર ઇવેલ્યુએટ કરવામાં આવે છે: સ્કેલિંગ, સિક્યોરિટી એન્ડ ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન. સ્કેલિંગ એટલે પર સેકન્ડ કેટલા મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવે છે. સિક્યોરિટી એટલે આ હેકિંગ અને ફ્રોડથી કેટલું સિક્યોર છે. અને ડિસેન્ટ્રલાઇઝ એટલે કે આને કોઈ એક કંપની, ગવર્મેન્ટ કે વ્યક્તિ ઓન નથી કરતું. ઇથેરિયમમાં કરન્ટલી સ્કેલિંગનો ઇશ્યુ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વિઝા પર સેકન્ડ 1700 ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરે છે. વિઝાની સ્કેલિંગ થઈ 1700 TPS, જ્યારે ઇથેરિયમ કરન્ટલી ઓનલી 15 TPS એટલે કે 15 ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર સેકન્ડ હેન્ડલ કરે છે. ફિકર નોટ, 2022માં જે ઇથેરિયમ 2.0 આવે છે ના, તે પર સેકન્ડ 15,000 ટ્રાન્ઝેક્શન હેન્ડલ કરશે. બાબા રે, ક્યાં 15 TPS થી 15,000 TPS પર પહોંચી ગયા. ગજબ છે ના બોસ. એક વાત તો નક્કી છે, 2022માં ઇથેરિયમ પ્લેટફોર્મ તો ફૂલ સ્પીડમાં ભાગવાનું છે અને ક્રિપ્ટો વર્લ્ડમાં કંઈ એક તૂફાની કરવાનું છે. બસ આજે અહીંયા જ બ્રેક મારીએ. ક્રિપ્ટો વર્લ્ડથી અપ ટુ ડેટ રાખવાની પ્રોમિસ સાથે હું પાર્વતી નિર્માણ AKA પારો તમારી રજા લઉં છું. ફરી મળશું ક્રિપ્ટો વર્લ્ડના એક્સાઇટિંગ ફેક્ટ્સ સાથે. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. એન્ડ કીપ વોચિંગ ક્રિપ્ટો TV.
क्रिप्टो टीव्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आज आपण दुसऱ्या क्रमांकावर प्रसिद्ध असलेली क्रिप्टो करन्सी इथिरियम बद्दल जाणून घेऊया. इथिरियम म्हणजे काय? मित्रांनो, जर तुम्हाला नवीन तंत्रज्ञान जाणून घेण्यात रस असेल तर इथिरियमचे नाव तुम्ही ऐकले असालच. इथिरियम एक क्रिप्टो करन्सी आहे. गेल्या काही वर्षात त्याचे मूल्य झपाट्याने वाढले आहेत. इथिरियम हे डिसेंट्रलाइज पेमेंट नेटवर्क आहे ज्याचे स्वतःचे क्रिप्टोग्राफिक चलन म्हणजेच इथर आहे, जे आपण इंटरनेटच्या मदतीने जगात कुठेही पाठवू शकतो. इथिरियम हा प्रोग्राम ब्लॉकचेनचा एक वेगळा प्रकार आहे. हे आम्हाला आमचे स्वतःचे ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोग तयार करण्यास अनुमती देते. हे ॲप्लिकेशन इथिरियम नेटवर्कवर चालवता येतात. इथिरियम आर्किटेक्टचे 2 पैलू आहेत, क्रिप्टो करन्सी आणि इथिरियम ब्लॉकचेन. इथिरियम कोणी तयार केले? इथिरियम 2013 मध्ये विटॅलिक ब्युटेरिन नावाच्या 19 वर्षीय मुलाने तयार केले होते. तो कॅनडाचा रहिवासी असून त्याचा जन्म रशियात झाला. ब्युटेरिनला गणितात रस आहे. त्याने 2012 इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक इन इन्फॉर्मॅटिक्स मध्ये ब्रॉन्झ मेडल जिंकले होते. इथिरियम लोकांना एकमेकांशी थेट कनेक्ट होण्यास अनुमती देते आणि तेही केंद्रीय अधिकाराशिवाय. हे एकत्रितपणे कॉम्प्युटरचे नेटवर्क आहे जे एका शक्तिशाली डिसेंट्रलाइज सुपर कॉम्प्युटरमध्ये एकांतरित होतात. इथिरियमची कोडिंग भाषा सॉलिडिटी ही स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट लिहिण्यासाठी वापरले जाते, जे डॅप्स चालवणारे तर्कशास्त्र आहेत. वास्तविक जीवनात सर्व करार हा इफ्स आणि देनचा संच असतो, म्हणजे अटी आणि कृतींचा संच. उदाहरणार्थ, जर मी माझ्या घरमालकाला महिन्याच्या 1 तारखेला 40,000 रुपये दिले तर मग तो मला त्याची अपार्टमेंट वापरू देतो. इथिरियमवर स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स नेमके यासारखेच कार्य करतात. इथिरियम डेव्हलपर्स त्यांचा प्रोग्राम किंवा डॅप्स साठी कंडिशन लिहितात आणि मग इथिरियम नेटवर्क ते एक्झिक्यूट करते. त्यांना स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणतात कारण ते ॲग्रीमेंटचे सर्व पैलू जसे अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, कार्यप्रदर्शन आणि पेमेंट हाताळतात. स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट सारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण संयोजनाद्वारे इथिरियमचा उपयोग फायनान्स, वेब ब्राउझिंग, गेमिंग, ॲडव्हर्टायझिंग, आयडेंटिटी मॅनेजमेंट आणि सप्लाय चेन मॅनेजमेंटसाठी केला जातो. क्रिप्टोकरन्सी बद्दल अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी वैभवी सावंत सोबत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही मराठी. मैंने एक स्पॉन्सर्ड एड देखा था अबाउट फाइलकॉइन एंड दैट गॉट मी रियली वेरी क्यूरियस. आखिर फाइलकॉइन है क्या और इसका पर्पस क्या है ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस में? दिमाग की घंटी थोड़ी सी घूमी, राइट? हे गाइस, दिस इज मी यशस्वी आचार्य. आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी. ये है इंडिया का पहला 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल. सो व्हाट एग्जैक्टली इज फाइलकॉइन? फाइलकॉइन और इसका पर्पस क्या है ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस में? Filecoin is a decentralized peer-to-peer digital storage marketplace using blockchain technology. It's built on top of interplanetary file system. Oh, बहुत बड़ा वर्ड हो गया, right? IPFS भी कह सकते हैं आप इसको. और ये अलाउ करता है यूजर्स को to rent unused hard disk space and earn FIL tokens in return, यानी कि fill tokens in return. Now let's see how Filecoins aim to shake up the online storage space. Ooh, this is going to be used. Filecoin can offer an appealing alternative to purchasing Amazon S3 storage buckets, Dropbox space, and getting logged into the same cloud storage contracts. ये सारे words काफी familiar sound कर रहे हैं, right? With the right infrastructure, anyone can buy and sell storage on the Filecoin network while setting their own prices and marking their own contracts. Now let's see how this works. Filecoin is a decentralized storage network that lets anyone rent out storage space instead of having to trust only one company with important data. It can be split up and stored on different computers around the world. Filecoin, a cryptocurrency operated file storage network,
चलो अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ाते हैं। फाइलकॉइन कब इंट्रोड्यूस हुआ था और किसने इंट्रोड्यूस किया था? Filecoin was first introduced in 2014 when John Bennett released the white paper, which is a cryptocurrency operated file storage network. The proposal is a blockchain network similar to Bitcoin, but where nodes in the network can store data guaranteed by, यानी कि आप वापस से उसको retrieve कर सकते हैं, यानी कि फिर से store कर सकते हैं। Filecoin is developed by Protocol Labs. Filecoin is sometimes called an incentive layer on top of interplanetary file system, जिसको हम IPFS भी कहते हैं, which means users are incentivized to rent out their storage space by getting paid in FIL tokens. So can you use Filecoin to send Christmas photos to the North Pole? Well, not yet. चलो अब थोड़ी सी और पढ़ाई करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली IPFS, जिसे हम इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम कहते हैं, वो होता क्या है। So basically, IPFS is a peer-to-peer data storage and retrieval protocol that's built using a more decentralized approach. Unlike HTTP या फिर HTTPS, ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया, राइट? एक बार फिर से बताती हूँ। Unlike HTTP और HTTPS, it doesn't rely on centralized servers to store data. Individuals become storage miners with Filecoin. So basically हुआ ये था 2017 ICO में Filecoin ने रेज किए थे approximately $250 million. Filecoin Mainnet was subsequently launched in October 2020. The Filecoin infrastructure's main purpose is to provide a new way for organizations and individuals to store data around the world. ये इतना सा वर्ल्ड है हमारा, हाँ, इसी की बात कर रही हूँ मैं। So basically होता क्या है ना कि when people have free storage available, they can become storage miners who are essentially responsible for storing data on the Filecoin network. Clients pay FIL tokens both to store and retrieve data. वैसे जितना भी आपको समझ में आया होगा, तो ये तो जरूर समझ में आया होगा that is it safe to use? आया ना मन में question? So basically, retrieval miners are another class of participants. They facilitate the data retrieval process between clients and storage miners and also receive a small amount of FIL for their services. थोड़ा सा उनका भी फायदा होना चाहिए, right? Filecoin uses end-to-end encryption and storage providers don't have access to description keys. Since it's a distributed system, files are kept safe across the multiple storage locations. देखो जैसे जैसे टाइम बदलता है ना वैसे वैसे the technique of data storage and access has changed. Over the past few decades, the way that we store access data has changed completely. In business, this has changed from on-site storage, where companies have huge server rooms, to remote data storage warehouses and more diversified cloud storage across the entire world. Currently, most businesses use a combination of all of these. Similarly, consumer data storage has also changed with an increased reliance on cloud storage. अब आप ये सोच रहे होंगे what makes Filecoin potentially better than its centralized competitors? Well, it offers a peer-to-peer cloud storage solution for businesses and consumers. Because the same item, यानी कि storage, is offered by different sellers potentially at different prices. यानी कि जितना competition है उतना price change भी है. The consumer may benefit in the end. फायदा तो वैसे अगर आप कंज्यूमर है आपका ही होने वाला है. While at times you might not have enough storage for all your data. Sometimes you'll have access and you can sell it also. Well, that's the promise of Filecoin. वैसे ये तो हो गई हीरो की बात, पर कंपेटिटर्स की बात अभी बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है. Stay tuned to Crypto TV. This is me, Yashasvi Acharya, signing off. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिसे देखो वो एनएफटी बनाने के होड़ में लगा हुआ है। आम हो या फिर खास, एक्टर हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, सभी नए जमाने के साथ बने रहने के लिए एनएफटी क्रिएट कर पैसे कमाने के नए जरिए का फायदा उठा रहे हैं। और यही वजह है कि एनएफटी की दुनिया तेजी से बदल रही है और दुनिया भर के मौजूद लोग इसकी तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण मार्च 2021 में NFT स्टोर के नाम से सस्पिशियस लुकिंग डोमेन रजिस्ट्रेशंस की संख्या में लगभग 300% की बढ़त है। इस तरह से NFT मार्केटप्लेस में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उसका एक्टिव क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट होना चाहिए, और यही वही जगह है जो NFT होल्डर्स को नए रिस्क की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि अटैकर्स किसी भी होल्डर्स के क्रिप्टो वॉलेट में मार्केटप्लेस अकाउंट के जरिए सेंध लगा सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि बेहद शातिर हैकर्स अब तक NFT मार्केटप्लेस ओपनसी के डिस्कॉर्ड सर्वर में भी घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे में पलक झपकते ही एक गलती और उनके निशाने पर आना बेहद आम है। इस तरह कुछ नई तकनीक तो कुछ अभी भी पुराने फिशिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके होल्डर से उनके फंड्स ट्रांसफर कराने से लेकर क्रेडेंशियल्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए NFT सिक्योरिटी रिस्क में इजाफा करने वाले उभरते खतरों के बारे में गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले है पुराने जमाने की फिशिंग स्टाइल और NFT धोखाधड़ी। दोस्तों, नए जमाने के खिलाड़ी भले ही कितने ही समझदार और सतर्क क्यों ना हो, लेकिन कई बार पुराने तरीके भी उन्हें चकमा देने के लिए काफी होते हैं। हाल की बात करें तो फरवरी 2022 में स्कैमर्स ने हमले के दौरान चोरी किए गए 254 टोकन्स के साथ ओपनसी यूजर्स से सैकड़ों NFT चुरा लिए थे। हैकर्स द्वारा हासिल किए गए एस्टिमेटेड वैल्यू की कीमत $1.7 मिलियन से ज्यादा आंकी गई थी, जिसे महज 3 घंटे के समय में अंजाम दिया गया था। इस दौरान ओपनसी CEO डेविन फिजर ने ट्वीट के जरिए बताया कि पीड़ितों को टोकन के ट्रेड के लिए एक ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन के नाम पर धोखा दिया गया था। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पूरी तरह से ब्लैंक था, और यही वजह थी कि जिसने हैकर्स को NFT ट्रांसफर करने में सक्षम बनाया था। दूसरी तरफ एक नकली NFT स्टोर साइट भी मौजूद है जो सोशल मीडिया के जरिए अपने शिकार की तरफ तलाश करता है और बड़ी सफाई से धोखा देने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो वॉलेट सिक्योरिटी क्रैकिंग के बारे में। कई बार स्कैम से बचने के लिए होल्डर्स किसी भी फिशिंग स्कैम्स के झांसे में नहीं आते, लेकिन तब क्या जब कोई आपको फ्री NFT दे और वो भी बतौर गिफ्ट, और यह वो छोटी सी गलती जिसे एक्सेप्ट करने के साथ कोई भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। अटैकर्स अक्सर विक्टिम को टारगेट करने के लिए मैलिशियस NFT को क्रिएट कर उसे गिफ्ट्स के रूप में ऑफर किया करते हैं। जैसे ही विक्टिम थोड़े लालच में आने के साथ मैलिशियस NFT को खोलते हैं, तब उसमें से ओपनसी स्टोरेज डोमेन से एक पॉपअप ट्रिगर होता है, और खास बात यह है कि यह पॉपअप विक्टिम के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट से कनेक्ट होने के लिए एक कॉमन रिक्वेस्ट शो करता है, जिसके बाद खुद ब खुद विक्टिम अपने ही हाथों अपने वॉलेट कनेक्शन को ओपन कर अटैकर्स द्वारा अपने फंड से हाथ धो बैठता है। और इसे ही कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा लाखों का। बात करें फेक NFT सपोर्ट ऑन डिस्कॉर्ड की, तो ओपनसी के डिस्कॉर्ड सर्वर पर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हुई चालबाजी को कौन भूल सकता है। यहाँ अटैकर्स घात लगाए बैठे थे कि कोई सपोर्ट क्वेश्चन पूछे, और जैसे ही कोई क्वेश्चन करता वो उसे सेकेंडरी फेक सपोर्ट सर्वर पर इनवाइट करते, जहां विक्टिम को अटैकर्स अपने मेटामास्क क्रिप्टो वॉलेट को क्रोम एक्सटेंशन के साथ अपने मेटामास्क ऐप को रीसिंक्रोनाइज करने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हुए विक्टिम को कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस मोबाइल एक्शन चेन से लिंक करने के लिए गाइड करते हैं, जिसके बाद अटैकर्स को कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे वो QR कोड जनरेट कर पाते हैं। इस तरह से बड़ी सफाई से अटैकर QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर और इमेज का इस्तेमाल अपने खुद के मेटामास्क ऐप के साथ वॉलेट को सिंक करने के लिए करते हैं, जिसके साथ अटैकर्स विक्टिम के वॉलेट से क्रिप्टो फंड को आराम से बिना किसी मुश्किल से चुरा सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल आर्ट स्कैम्स के बारे में। डिजिटल आर्ट की चोरी के बारे में क्या कहेंगे? आप सोच रहे रहेंगे कि आखिर कैसे हो सकती है किसी के आर्ट वर्क की चोरी, और वो भी NFT फॉर्म में। तो आपको बता दे कि जब कोई NFT मिंट की जाती है तब क्रिएट किए गए टोकन के लिए एक यूनिक फिजिकल या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट जैसे URL के साथ लिंक्ड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई NFT खरीदता है तो असल में वो URL अपने नाम करता है। बहुत से मार्केट प्लेसेस पर NFTs को बेचते समय आर्टिस्ट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका ही फायदा उठाते हुए ऑनलाइन आर्ट थीव्स बड़े आराम से किसी भी आर्ट वर्क को कॉपी पेस्ट, मिंट और सेल कर पाते हैं। इस बारे में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में समझाया गया है कि कई बार खरीदार इलीगल आर्ट के कॉपीज के लिए मुंह मांगी कीमत देकर फंस जाते हैं। ये स्कैम यही तक नहीं रुकता, बल्कि कई बार विक्टिम्स को ब्लैकमेलर से डिजिटल एसेट्स को खरीदने के लिए सपोर्ट किए जाने की धमकी मिला करती है। दोस्तों, बात करते हैं ट्वीट थेफ्ट के बारे में।
मौजूदा NFT स्कैम्स के वाइड रेंज में इसे एग्जीक्यूट करना सबसे आसान है। एक ऑटोमेटेड NFT ट्वीट माइनिंग बॉट ऑटोमेटिकली रूप से ट्वीट्स को NFTs में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ट्वीट्स किसी काम के नहीं होते हैं, तो आपको ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट याद ही होगा, जिसे $2.9 मिलियन के बराबर बेचा गया था, जबकि अब उसे पहले से 16 गुना ज्यादा यानी $48 मिलियन से ज्यादा में बेचने के लिए फिर से ओपन रखा गया है। वही अगर कोई ट्वीट में अपना आर्टवर्क पोस्ट करता है तो उसे बड़ी ही आसानी से अटैकर्स द्वारा नाक के नीचे से चुराया जा सकता है, जैसा कि आर्टिस्ट RJ पाल्मर के साथ हुआ था। इन सभी तरह के फ्रॉड और स्कैम्स के बावजूद NFT यूनिवर्स तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ ही रिस्क भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो भी NFT इन्वेस्टमेंट्स में हिस्सा ले रहा है, उसे खुद को इन सभी तरह की धोखेबाजी से बचाने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में अप टू डेट रहना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे क्रिप्टो टीवी। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। Hello everyone, you're watching your favorite channel, Crypto TV. I'm Vinita Chatterjee, your host who's going to lead you into the fantastic and mind-blowing journey of digital currencies. And today we are going to discuss what is this cryptocurrency all about. So bringing to you the basics of cryptocurrency. What is cryptocurrency? Cryptocurrency is a type of a currency that is digital and decentralized. Yes, you heard me right. Cryptocurrencies can be used to buy and sell things, and their potential to store and grow value has also caught the eyes of many investors. There are thousands of cryptocurrencies available in the market today. The most popular and the original cryptocurrency is Bitcoin. Bitcoin was created in 2009. The other common cryptocurrencies include Ethereum, XRP, and Bitcoin Cash. Each of these currencies serve a different purpose. While some are used in the place of cash, the others are used for direct transactions. Cryptocurrencies are wholly digital, so there is no physical coin or bill that is connected to the crypto that you own. Owners hold cryptocurrencies in a digital wallet and buy and sell them through online exchange. Your wallet may be online or stored offline on a device which is similar to your USB drive. Decentralization is a primary tenet of all cryptocurrencies. Whereas most currencies are backed by a central bank, like for example the US dollar, which is backed by the full faith and credit of the US government, cryptocurrencies are usually maintained and valued by their users. Now let's find out how cryptocurrency transactions actually happen. Cryptocurrency transactions are recorded on a decentralized ledger. This ledger is called blockchain. Every time a cryptocurrency is bought or sold, the transaction is added to the blockchain. A blockchain is a public database of transactions which is available to all crypto holders. Anyone can join and participate on the blockchain, but data on individual transactions and the people involved with them are secured using cryptography. Cryptography, which is the basis for the term cryptocurrency. For each transaction added to the blockchain, there is a digital validation process which verifies it and prevents any kind of fraud. Now, what can we do with cryptocurrency? Let's find out. While the characteristics of cryptocurrency are both that of currency and investments, there is still a debate among experts whether cryptocurrency is clearly one or the other. As its name suggests, you can use cryptocurrency to make purchases, but your purchasing power is limited. Crypto isn't widely accepted among retailers or other businesses. But for many people, crypto is type of an alternative investment.
Just as you can buy and trade in stock markets in the public companies, you can also buy cryptocurrency with the hope that it will increase in value over time, allowing you to cash out for a profit or at a later date. Some people invest in crypto less for the belief that it will become a popular currency, but more for the belief that it is a bet on the blockchain technology which goes behind it. Cryptocurrencies do share characteristics of commodities like gold. Yes, they can be bought and sold for cash. Very similar to Forex or the foreign exchange trading, there can be significant risks involved with largely unregulated market, and your best bet is yet to get informed beforehand so that you don't invest your money that you cannot afford to lose. Only clear regulations may help us to understand how to use cryptocurrency and what its future may look like, but we aren't there yet. Well, that was all about the basics of cryptocurrency. Well, I'm super excited to get into the groove and jump into this bandwagon. Are you not? If you are, keep watching your favorite channel, Crypto TV, with me, Vinita Chatterjee. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Hello everyone, you're watching your favorite series, Tip of the Cryptoberg. I'm Vinita Chatterjee. Today we are going to discuss the real-life use cases of smart contracts. How does smart contract benefit you or me or any of our friends or family members? Let's find out in today's episode. But first, let's find out what are smart contracts. Well, in our day-to-day lives, we all need some sort of a contract to make sure that our promises are kept intact. But what if I tell you that there is a concept called smart contract? Smart contracts can be defined as a paperless digital code that offers a set of promises on predefined conditions that the two different parties have agreed to. In simple words, the parties can set a condition that can start an action or a series of actions when met. Smart contracts actually have the potential to make our world more democratic. Yes, you heard me. In fact, the whole concept of smart contract applications has unquestionably revolutionized the way we live our lives. Experts believe that smart contracts would be around long after everyone has forgotten about some of the leading crypto coins. Smart contracts use the blockchain technology to facilitate the exchange of money, property, information, or anything that people deem appropriate to initiate a smart contract for. The beauty of decentralized nature of blockchain technology is based on peer-to-peer transactions. That means that these smart contracts don't require anything in the way of a middleman. Traditionally, individuals or institutions such as banks and solicitors were required to facilitate legally binding contracts. We all know that, right? But now, let's see what change the smart contracts implement in our lives. Smart contracts allow individuals to bypass this costly and often slow middlemen and agree on the contract directly. Well, doesn't that make you feel that smart contracts are going to simplify all of our lives? It truly does. In today's episode, we are going to discuss the top 10 real-life use cases of smart contracts. Let's find out. Number 1.
Trade finance. Trade finance stands to benefit immensely from the introduction of smart contracts. Recently, Santander Innoventures said that it believes that blockchain technology will lead to more than $20 billion worth of savings per year by the year 2022. A huge amount of these savings will come from smart contracts, automating approval workflows and clearing calculations that at the present time are incredibly labor intensive. Not only will this automation help to reduce work hours, but it will also dramatically reduce errors and the time taken for these calculations to take place. Records. Our next use case of smart contracts are in keeping records. Nearly every foreseeable industry in the world will be able to use smart contracts to help improve the speed and security of its record keeping. One industry in particular that stands to benefit enormously is the healthcare industry. Currently, the world's healthcare computer systems hold hundreds of millions of patient medical records. Despite the fact that these healthcare organizations have invested huge sums of money on security, still, the current access and storage methods are far more vulnerable to cyber attacks compared to the blockchain-based technology. Blockchain technology could allow the entire databases of personal health records to be kept secure. An added bonus is that the technology also facilitates the use of private key. That means only certain individuals can gain access. Some of the other blockchain smart contract use cases include their use in issuing prescriptions, storing receipts, general stock management, storing test results, and so on. Property ownership. Smart contracts have two huge uses when it comes to the property market. First, they can be used to record property ownership. Since the use of smart contracts is faster and more cost efficient, this makes them a much better alternative to existing systems. It also means that they can be used to record the ownership of all types of property from buildings, lands, to phones and watches. Number 2, elimination of any kind of middlemen. Within the housing market, smart contracts can remove the need for expensive services such as those provided by lawyers and housing brokers. This new technology also means that for the very first time, sellers have the ability to handle transactions completely by themselves without the need of any middlemen. Mortgages. The property market also stands to benefit from cheaper, faster, and more secure smart contract-based mortgage transactions. Not only will this allow buyers to get into the property quicker, but it will also help to make the entire process a little less of a headache. Smart contract mortgages would allow both the parties to digitally agree to the sale before processing the payment. Once this is done, the contract would update the property ownership details to reflect the change of ownership. Since the process would require unique key code authorization on behalf of the original owner, it will make the whole process more secure and reduce instances of fraud. Insurance. The next sector that stands to benefit from smart contracts is the insurance sector. The insurance industry spends tens of millions of dollars each year on processing claims. Not only that, it actually loses millions of dollars to fraudulent claims as well. Aside from supporting the initial insurance policy, smart contracts could also help to improve the process of claim processing in many ways. They could allow error checks and determine payout amounts based on the set of criteria that takes into account the kind of policy that was held by the individual or the organization. Once again, reduced processing times, a dramatic reduction in errors, and cheaper costs are among the main benefits of smart contracts. In longer term, smart contracts could be used in tandem with Internet of Things enabled vehicles to allow for the pay-as-you-go insurance policies
and the immediate activation of claims after an accident. Information such as driver licenses, driving records, accident reports, and policy details could be immediately processed to facilitate speedy payouts that would benefit both the parties. Medical research. The medical research industry will benefit from similar advantages as the healthcare industry. First of all, highly sensitive data such as patients' records could be transferred between departments, research centers, after having been securely encrypted via blockchain technology. Since many of the patients participating in medical research have sensitive medical conditions that they often wish to remain private, keeping these records secure is very essential. Likewise, medical research companies have enormous amount of data which includes test results and new drug formulas that they need to keep safe. This could be secured with the use of smart contracts, should they need to divulge any of this information to a third party for any reason. Voting. Well, smart contracts can be the smart formula that can be used for elections. Allegations of fraudulent activities have occurred in many elections of the past. Despite using computer systems that in some cases cost millions of dollars, fraudsters find increasingly imaginative ways to manipulate them. Well, here comes smart contract as a smart savior. Smart contracts are a simple and cost-effective solution to this problem. They can be used to validate a voter's identity and record their vote. This information could then be used to initiate an action after all voting had ceased. Since the blocks within a blockchain are impossible to alter once they have been recorded, manipulation of this record would be very difficult. Peer-to-peer transactions. Smart contracts can be used for a whole range of peer-to-peer transactions. This reasoning is what led to the creation of the Ethereum project and other such companies. Users of all shapes and sizes could use these platforms to create and agree on smart contracts. These contracts then remain active until a set of agreed conditions are met. Once the smart contract is happy that all the conditions have been met, it then allows the remaining portion of the agreement to be fulfilled. Typically, this is the transfer of money, but this isn't always the case. So far, smart contracts have been used for everything from launching ICOs to selling goods on the internet. Various companies are also using smart contracts to secure services of development teams and other outsourced companies. The possibilities of peer-to-peer smart contracts are literally endless. Theoretically, this could replace many of the existing roles that are currently fulfilled by currency. Product development. Another exciting use of smart contracts is to keep a ledger regarding the stages of development of a product. A huge part of the appeal of smart contracts is their ability to keep information secure and to prove its origins. A company that has invested huge amounts of money into developing a project obviously doesn't wish for the information to be stolen. Generally, the only route to justice when information is stolen is a lengthy court process, something which most companies don't have time and money to go through. Now, when it comes to intellectual property such as ideas, you don't need to look as far as the never-ending patent claims between Apple and Samsung just to see how important being able to prove ownership really can be. The list of industries that could benefit from this new technology is huge, given the fact that smart contract support and secure product development. The kind of industries involved could range from a small startup to a large tech company such as Microsoft or Amazon. Stock taking. Supply chains are another area of business that can benefit from blockchain-based smart contracts. Internet of Things devices could be used throughout the supply chain to record each step a product takes. Smart contract supply chains could theoretically, virtually eliminate in-house theft as managers
would be able to trace a missing product back to the exact time and place that it went missing. On huge supply chains, such as those found in large warehouses, these smart contracts would enable managers to see real-time stock levels and the time it takes for product to move through the supply chain. Managers could use this data to adjust stock levels and develop new working practices to improve delivery times. For supply chains that operate in several different locations or companies, smart contracts could do all of the above and even initiate automating reorders and payments for order already received. Such information as contained in these contracts could also be used to help with determining up and coming busy periods and even which products to stock at different times of the year. So we see smart contracts are the most exciting thing to have come from the blockchain technology so far. Smart contracts really do have the power to take our lives out of the hands of institutions such as banks. Since we can use smart contracts to exchange something as simple as labor or more complex things such as loans, they will gain in popularity and the number of these services will grow exponentially. The technological advantages of smart contracts will help to speed up transaction times, lower costs, and even make processes much easier and stress-free. And when smart technology is present in the cars we drive, things we use, and help determine the choices that we make, the world could be a much more secure and a happy place to live. For all this interesting content from around the world of digital currencies and blockchain technology, keep watching your favorite channel, Crypto TV. Like, comment, share, and subscribe. I'm Vinita Chatterjee, signing off. नंबर 1 की पोजीशन पर थे क्रिप्टो पंक्स। उनकी कामयाबी और कमाई 7वें आसमान पर थी, लेकिन बोर्ड एप ने आते ही उनका सिंहासन हिला दिया और महज 1 साल के अंदर क्रिप्टो पंक्स पर कब्जा जमा लिया। जी हाँ, एनएफटी की दुनिया हैरत में है ये सोचकर कि जिन क्रिप्टो पंक्स की कामयाबी की मिसाल दी जाती थी, भला उस क्रिप्टो पंक ने अपने ही राइवल बोर्ड एप यॉट क्लब के आगे हथियार कैसे डाल दिए। ये तो आप जानते ही होंगे कि बोर्ड एप यॉट क्लब के युगा लैब्स ने क्रिप्टो पंक्स को अक्वायर कर लिया है, लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए सुनाते हैं आपको क्रिप्टो पंक्स की लंका में आग कैसे लगी। दरअसल क्रिप्टो पंक्स रातों रात ये जंग नहीं हारे, बल्कि धीरे धीरे उनके किले में सेंध लगी। 2017 में जब क्रिप्टो पंक्स लॉन्च हुए तब वो सबसे यूनिक और इकलौते थे। देखते देखते क्रिप्टो पंक्स का क्रेज हर किसी के सर चढ़कर बोलने लगा। जे-ज़ी, सेरेना विलियम्स और स्नूप डॉग जैसे सेलिब्रिटीज इसमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करने लगे। एक ऐसे दौर में जब हर तरफ क्रिप्टो पंक्स की चर्चा थी, तब बोर्ड एप यॉट क्लब ने एंट्री मारी। अप्रैल 2021 में लॉन्च हुए बोर्ड एप ने आते ही अपनी फैन फॉलोइंग बनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे बोर्ड एप की कामयाबी बढ़ी, इन्वेस्टर्स और एनएफटी होल्डर्स को क्रिप्टो पंक्स की खामियां चुभने लगी। दरअसल ऐसी बहुत सी चीजें थी जो बोर्ड एप की स्ट्रेंथ थी और क्रिप्टो पंक्स की सबसे बड़ी कमजोरी। जैसे कि बोर्ड एप के एनएफटी ओनर्स को एनएफटी के कॉपीराइट भी मिलते हैं, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं और डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो पंक्स के ओनर्स के पास ये फायदे नहीं थे। लेकिन अब एक्विजिशन के बाद युगा लैब्स क्रिप्टो पंक्स के एनएफटी ओनर्स को आईपी, कमर्शियल और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स देने का मन बना चुके हैं। क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप दोनों भले ही एनएफटी अवतार प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों की अप्रोच बहुत अलग है। क्रिप्टो पंक्स जहां सिर्फ डिजिटल पिक्चर एनएफटी है, वहीं बोर्ड एप एक क्लब की तरह फंक्शन करता है, जहां क्लब मेंबरशिप के साथ साथ कई बेनिफिट्स और सेलिब्रिटी अट्रैक्शन भी मिलता है।
इतना ही नहीं, लॉन्च के महज 2 महीने बाद बोर्ड एप यॉट क्लब ने 2 और फ्री NFTs लॉन्च की, द बोर्ड एप केनल क्लब और म्यूटेंट एप यॉट क्लब, जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया। इसके साथ ही NFT होल्डर्स एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। सोने पर सुहागा तो ये है कि इन एप इमेजेस को कमर्शियलाइज किया जा सकता है, यानी होल्डर्स इन्हें प्रोडक्ट मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इससे वर्चुअल बैंड्स तक क्रिएट कर सकते हैं। बोर्ड एप यॉट क्लब अपने NFT होल्डर्स को इस हद तक पैम्पर करता है कि पिछले साल न्यूयॉर्क सिटी में खास एप क्लब मेंबर्स के लिए फ्री कॉन्सर्ट रखा गया, जिसमें द स्ट्रोक्स, क्रिस रॉक और कई स्टार्स ने शिरकत की। ऐसे ही कुछ गजब के फायदे हैं जिनकी कमी की शिकायत क्रिप्टोपंक्स के NFT होल्डर्स ने ट्विटर पर की। उन्होंने लिखा कि लार्वा लैब्स अपने प्रोजेक्ट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और एप फेस्ट 2021 की तरह लार्वा लैब्स ने किसी कॉन्सर्ट या पार्टी का अरेंजमेंट नहीं किया और ना ही कोई पर्क्स दिए। लेकिन और कई बड़ी वजह थी जिसके चलते क्रिप्टोपंक्स का डाउनफॉल शुरू हुआ, जैसे कि होल्डर्स को कमर्शियलाइजेशन राइट्स और डेरिवेटिव NFT प्रोजेक्ट पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, क्रिप्टोपंक्स के सिस्टम में बग की वजह से होल्डर्स अपनी रैप्ड NFT तक बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन रैप्ड NFT को रैप्ड V1 NFT करार कर दिया गया, जो कि इलेजिटिमेट थी। खैर, बाद में लावा लैब्स के क्रिएटर ने अपने इस एक्शन को स्टूपिड कहा और V1 प्रोजेक्ट को ओपनसी मार्केट से हटा लिया गया। लावा लैब्स की इन्हीं गलतियों की वजह से उनकी इमेज एक ऐसी वेब 2 कंपनी की बन गई जो रैपिडली इवॉल्विंग वेब 3 मार्केट को समझने और उसमें अपनी पकड़ बनाने में लड़खड़ा रहे हैं। इनफैक्ट, एक न्यूज आर्टिकल में लावा लैब्स ने तो ये बात तक कबूली कि वो इस मॉडर्न डे NFT प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट को संभालने की कैपेबिलिटी और एम नहीं रखते। इसके लिए जो स्किल सेट और एक्सपर्टीज चाहिए वो उन्हें हासिल नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि युगा लैब्स इस प्रोजेक्ट के इनोवेटर हैं और इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने और इसके इर्द गिर्द कम्युनिटी बिल्ड करने में माहिर हैं। यही वजह है कि बोर्ड एप क्रिएटर्स क्रिप्टोपंक्स और मीबिट्स के IP को बेहतर तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। ऐसे में कोलैबोरेशन के बाद युगा लैब्स ने भी ये अनाउंस किया है कि वो NFT होल्डर्स को फुल कमर्शियलाइज राइट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने क्रिप्टोपंक्स और मीबिट अवतार्स को प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केटिंग और बाकी इनिशिएटिव्स के लिए यूज कर सके। युगा लैब्स ने भी ये क्लियर किया कि वो क्रिप्टोपंक्स के इन प्रोजेक्ट्स को बोर्ड एप स्टाइल मेंबरशिप क्लब में बदलना नहीं चाहते और ना ही इन रॉयल्टी फ्री कलेक्शंस पर वो रॉयल्टी लगाएंगे, बल्कि वो क्रिप्टोपंक्स और मीबिट प्रोजेक्ट्स में स्ट्रीटवेयर, इवेंट्स एंड न्यू IP के अराउंड गेमिंग जरूर शुरू करेंगे। युगा लैब्स किसी जल्दी में नहीं है, वो NFT होल्डर्स को कमर्शियल राइट्स देकर उन्हें खुद इसे बिल्ड करते देखना चाहते हैं। ये तो महज शुरुआत है। जिस तरह से डिजिटल अवतार NFTs का क्रेज परवान चढ़ रहा है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े-बड़े कोलैबोरेशंस देखने को मिलेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। तुम्हाला रईस चित्रपटाचा शाहरुख खानचा फेमस डायलॉग हा माहितच असेल, हम जान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मला वाटतंय काही लोकांनी या डायलॉगला अक्षरशः मनावर घेतलंय आणि खरंच क्रेझी आणि वियर्ड NFTs म्हणजेच नॉन फंजिबल टोकनचा अक्षरशः बिझनेस सुरू केलेला आहे। नमस्कार, मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा घेऊन आलोय आपल्या समोर एक आगळी वेगळी आणि विचारांच्या पलीकडची अशी NFTची नवीन लिस्ट। आता मी तुम्हाला अशा 3 NFTs बद्दल सांगणार आहे ज्याबद्दल तुम्ही आयुष्यात कधी ऐकलं नसेल आणि विचारही केला नसेल। चला तर मग सुरू करूया। तर या टॉप 3 क्रेझी NFTच्या लिस्ट मध्ये नंबर 1 वर आहे सेल युअर सॉल या नावाची NFT, म्हणजे तुमच्या आत्म्याची NFT। नाही तुमचे कान नाही वाजत आहेत, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलात। आता NFTs वर सुद्धा आत्माने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलंय।
माहित नाही कधी कोणत्या क्लिक सोबत कोणाची आत्मा एनएफटीच्या माध्यमातून तुमच्या जवळ येईल. तुम्हाला माहित आहे की मी थोडासा ड्रामेबाज आहे, पण डोंट वरी, या आत्म्याचं एनएफटीच्या हॉरर सोबत काहीही लेणं देणं नाहीये. हल्लीच एक 21 वर्षांच्या स्टीन बन शेख या नावाच्या डच स्टुडंटवर एनएफटीचे क्रेज एवढं हवी झालं होतं की या भावाने पॉलिगॉनवर आपली स्वतःची सोल म्हणजेच आत्म्याचीच एनएफटी मिंट करून टाकली आहे. एवढंच नाही, या बाईने जगातील सर्वात मोठी एनएफटी मार्केट प्लेस ओपन सीवर आपल्या आत्म्याची एनएफटीला लिस्ट सुद्धा करून टाकलंय. अरे काय चाललंय? अरे कोणीतरी जाऊन या डच स्टुडंटला विचारा की भाई तुझ्या 70 पिढीमध्ये सुद्धा कोणी आत्म्याला बघितलंय का? परंतु हा वेडेपणा इथेच संपत नाहीये मित्रांनो. ज्याने या डच स्टुडंटच्या आत्म्याच्या एनएफटीला 300 युरोज म्हणजे जवळपास 25,000 रुपयांमध्ये विकत सुद्धा घेतलंय. या डच स्टुडंटची सोल ही जगातील सर्वात पहिली ह्युमन सोल म्हणजेच आत्मा आहे, ज्याला एनएफटीच्या माध्यमातून विकलं गेलंय. म्हणून या महाशयने हल्लीच झालेल्या त्याच्या मुलाखतीत आपल्या आत्म्याच्या एनएफटीची मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे $3.5 मिलियन म्हणजेच जवळपास 27 करोड रुपये सांगितले आहे. आता यांनी आपल्या सोलच्या एनएफटीची एवढी क्रेझी व्हॅल्युएशन काय म्हणून ठेवली आहे याचं उत्तर बहुतेक या बिचाराच्या आत्म्याला सुद्धा माहित नसेल. अजून एका आपल्या आत्म्याच्या एनएफटी सोबत या डच स्टुडंटने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट सुद्धा अटॅच केलाय, ज्यामध्ये डिटेलमध्ये डिस्क्राईब सुद्धा केलाय की कशा प्रकारे ओनर त्याच्या आत्म्याचा वापर, त्याचे रिसेल किंवा कोणत्या देवी देवताला बळी सुद्धा चढू शकतो. बाप रे बाप. जर तुम्हाला एनएफटीचे सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट वाचायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक सुद्धा अवेलेबल आहे. चला आता बोलूयात दुसऱ्या क्रेझी एनएफटी आणि त्यांच्या अतरंगी अशा क्रिएटर बद्दल. हे असे महाशय आहेत ज्यांना बॉडी हॉरर चित्रपटांचं मास्टर बोललं जातं. वर्ल्ड सिनेमाचे मागील 50 वर्षांचे सर्वोत्तम असणारे क्रिएटिव्ह माइंड, द फ्लाय, डेड रेंजर्स, हिस्ट्री ऑफ व्हायलन्स आणि अपकमिंग विगो मॉर्टनस्टेन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्युचरचे डायरेक्टर मिस्टर डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग, जे आजकाल आपल्या चित्रपटाला घेऊन नाही तर आपल्या रिअल लाईफ बॉडी हॉरर टाइप एनएफटी साठी सध्या हेडलाईन्स मध्ये आहेत. यांच्या एनएफटीचे नाव आहे इनर ब्युटी म्हणजेच कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स. अहो किडनी स्टोनचे कलेक्शन. अनफॉर्च्युनेटली जसे नाव तशीच त्यांची एनएफटी. डायरेक्टर साहेबांनी आपल्या किडनी स्टोन मध्ये काय नेमकी इनर ब्युटी दिसली की त्याने आपल्या किडनी स्टोनच्या फोटोलाच एनएफटी बनवून टाकली आणि सुपर रेअर नावाच्या क्रिप्टो आर्ट मार्केट प्लेसवर 28 मार्च 2022 किडनी स्टोनच्या फोटोचीच एनएफटी रिलीज सुद्धा करून टाकली. अहो भला किडनी स्टोनला जगाला दाखवून विकण्यासारखी का गोष्ट आहे का? पण लोक एनएफटी बनवून विकतायत आणि असेही काही नमुने आहेत जे अशा एनएफटीला विकत सुद्धा घेत आहेत. खरं तर क्रॉनेनबर्गने या अगोदर सप्टेंबर 2021 मध्ये द डेथ ऑफ डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग नावाची शॉर्ट फिल्मला एनएफटी बनवून नॉन फंजिबल टोकनच्या जगात पहिल्यांदा सुरुवात केली होती. ही 1 मिनिटाची शॉर्ट फिल्म सुद्धा खूप वेळ होती, ज्यामध्ये डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग आपल्या स्वतःच्या डेड बॉडीकडे पाहतात आणि नंतर आपल्या शरीरावर चादर ओढून बाजूला झोपून जातात. आता या वेड एनएफटीचा नेमका काय अर्थ काढायचा, कारण कोणी या एनएफटीला $90,000 म्हणजेच अराउंड 69 लाखांमध्ये विकत घेतलं होतं. मित्रांनो, हे सुपर श्रीमंत आणि सुपर क्रिएटिव्ह लोकांचे फंड आहे बाबा, आपल्या डोक्याच्या बाहेर आहेत. 1 मिनिटाच्या शॉर्ट फिल्म मध्ये 69 लाख रुपये उडून टाकले. माहित नाही यांच्या किडनी स्टोनची एनएफटी किती मध्ये विकली जाईल. ही किडनी स्टोन ऍट द एंड ऑफ द डे खरी तर आहे, परंतु आपली पुढची एनएफटी आहे एका अशा रॉक बद्दल जे रियालिटी मध्ये अस्तित्वातच नाहीये. तरी एक क्रेझी एनएफटी लव्हरने या व्हर्च्युअल रॉकच्या एनएफटी साठी अक्षरशः $1.3 मिलियन म्हणजेच अराउंड 10 करोड रुपये खर्च केले आहेत. आणि या एनएफटीचे नाव आहे क्लिप आर्ट ऑफ इथर रॉक. खरं तर ही कार्टून रॉकची जेपॅग इमेज जगात फक्त 100 आहेत, ज्याला 2017 मध्ये क्रिप्टोपंक्सच्या नंतर ॲज अ इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टिबल एनएफटी लॉन्च केलं गेलं होतं. बाईंग, कलेक्टिंग आणि सेलिंगच्या व्यतिरिक्त याची कोणतीही रिअल वर्ल्ड व्हॅल्यू नाही आहे. परंतु याला ट्रॉन ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो करन्सीचे फाउंडर जस्टिन सनने फक्त आपली कॉलर टाईट करून इम्प्रेशन झाडण्यासाठी विकत घेतलं होतं. भाई, मोठी लोक, मोठ्या वार्ता व्हर्च्युअल रॉकच्या फोटोग्राफला करोडोंमध्ये विकत घेत आहेत. वाव. आम्हाला जर साधं किचन मध्ये नवीन मार्बल बसवायचं असेल तरी 10 वेळा विचार करावा लागतो. एनिवेज, आतासाठी ही होती माझी 3 क्रेझी एनएफटीज. अशाच प्रकारच्या अतरंगी एनएफटीची अजून एक नवीन क्रेझी लिस्ट घेऊन मी संदीप कासालकर पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही.
Hello and a very warm welcome to all the viewers of Crypto TV. This is Manoj Dhara. So gone are the days where parents used to stop children from playing computer games, stating it is a waste of time and money. Thanks to blockchain integration in the gaming ecosystem, the traditional one-way money flow has evolved into a two-way street. India claims nearly 100 million gamers, as blockchain gaming is set to change this landscape. Concepts such as play to earn have seen a significant uptick in adoption because players will be able to own and sell assets within the game for the first time. So to explain this entire episode of the gaming, game fee, as far as the fan token arena, we have invited two special guests. Let me introduce you to Mr. Siddharth Jaiswal, founder and CEO of Sports Chain, which is on my left. Siddharth, welcome on the show. Thank you, Manoj. So on my right is Mr. Vinayak Yanam, co-founder Sports Chain. Thank you, Vinayak, Manoj. welcome on the show as well. Gentlemen, welcome to Crypto TV. So my first question to you, Siddharth, is, since we are talking about Sports Chain and its way forward, what's the main important, सबसे बड़ा objective क्या है आपकी company का? If you can just highlight that. So before I highlight the objective, right, I know, Manoj, you are a sports fan, follow cricket in and out, right? So as a fan, I would like to ask 3 simple questions. मुझे आप उसके answers देना, ठीक है? As a fan, would you like to influence team decision, right? Such as playing squad क्या होना चाहिए, jersey कौन से color का होना चाहिए? Absolutely, yes. The second question is, as a fan, would you like to be a part of an exclusive club where you get an opportunity to meet Sachin Tendulkar, try and understand how to play cricket, or maybe just randomly go and meet your favorite superstar? Will you grab that opportunity? Answer is yes again. And the last element what I wanted to ask you is, as a fan, you invest your time, money, energy to watch sports, right? Right. What you get in return is entertainment. Yeah. But all financial incentives goes to the team or the sponsors at large. Exactly. Would you like to participate in the financial upside potential of that? Actually, Siddharth, मैं वही सोच रहा था कि apart from the regular salary which we do, is there any other extracurricular activities from, wherein, but the answer is yes again, which is actually a very lucrative thing for anyone. Absolutely. So this is where you just introduce gamification comes into picture, right, where we are moving from Web 2 to Web 3. Fantastic. Where we say that user is king. अगर आप कुछ spend कर रहे हो, maybe अपना time या effort है, you should be participate in the financial reward. This is where Sportchain come into picture, bringing data is king Fantastic. and user is king on the platform. Sure. So Siddharth has started with a note that ये सारी problem areas है और क्या ये sports chain का एक method है to tackle all this problem and move forward? This is the main business model. So all of us, when we started off, we were all sports fans, right? So I'm a fan of Mumbai Indians, I'm a fan of Arsenal Football Club based it's in the EPL. And what we were seeing that on the regular fan engagement platforms that you see today, it was a one-way communication. There was no way to tell that, I'm unhappy about this jersey, I'm unhappy about this particular thing. There was no way to influence all of this. So our story began as fans, and also our story began as crypto investors, where we said, is there a way to kind of put all this together? And uska jawab tha yes. Sportchain was the result of that. And this is where we wanted to make sure that Asia, as a big community of fans, not just IPL, but cricket, football, everything put together, is the biggest number in the whole world and one of the biggest paying audiences in the world. So why not bring that fan engagement, that next level fan engagement to the Asian audience? So since Vinayak has highlighted about, the main objective of Sportchain is to cater to all those individuals who are actual passive fans. And what's your way forward? Since we are talking about fan token disruption, which you have already highlighted, and बहुत जोरदार आपने opening भी दी है इसको लेकर. What's your way forward, Siddharth, as far as Sportchain? What's the main objective? So 2 simple objectives what we plan to do with Sportchain, right? Our overall mission is to get 10 million Web 2 users or diehard sports fan adopt the power of blockchain and Web 3. Fantastic. Right? That is one. Second most important thing is we want to convert passive fans into invested fans. The Western world has already adopted this concept. The fans or the sports fans are getting the benefit of this blockchain technology. Have you thought about any number? So approximately the fan token market, if you see, is around $300 million market at this point of time. That also we are saying only 56 fan tokens that have been launched across the globe. And this we are talking about the circulating supply. All right. If I include a totally diluted market supply, it would be 10x of that, right? So this is the benefit which has been reaped by Western audience. Why not the same opportunity and benefit is given to the Indian fans as well as the Asian fan? This is where Sportchain are trying to capture the Asia market at this point of time and bring out the benefit to them. So
In continuation to what Siddharth has highlighted, what are the steps your company has taken in terms of, to build the community or fan engagement, if you can just highlight that. So to start off with, we wanted to partner with teams, and the first place we actually went to was Pro Kabaddi. Okay. Now you must be thinking, why Pro Kabaddi? But the answer to the Pro Kabaddi to that is that Pro Kabaddi is actually the second most watched league in the country after IPL. That's a big number. Okay, so that's second to IPL only, and that's where we went and partnered with 4 teams, and we wanted to do this because Kabaddi is a place where you have a mix of both tier 1 fans from cities like Mumbai, but you also have fans from different other states like Haryana and then basically more northern and southern as well. Some of the teams that we partnered with include Tamil Talaivas, Dabang Delhi, which are current season's champions, etc. And what has happened because of that is that we have now put our entire focus on Kabaddi. We are partnering with these teams, and what we want to do is we want to start off with the fan engagement aspect of it. So fan engagement aspect of it is where we started off building the community. Okay, now this is a sports chain community of that specific team, explaining to them that the benefit is so and so, etc., etc. That community itself right now for just 4 teams is more than 2,000. Fantastic. Okay. So since we are talking about the sports chain and the initiative it has taken to engage fans as well, so Siddharth, can you just explain this for our viewers that Web 2 and Web 3 ये दोनों में क्या डिफरेंस है पहले सबसे पहले एंड एज अ स्पोर्ट्स चेन अगर हम उसको coupled with your initiative, what is the way forward? और उसमें as you have already highlighted that users का आपको passive users को आपको invested users में आपको convert करना है, तो ऐसे अगर पूरे scenario को अगर आप कैसा explain करेंगे, because user is always the king. Perfect. So great question, Manoj. Web 2 versus Web 3. Now people across the country is talking about this. How the dynamics of companies are moving from Web 2 to Web 3. Summary would be Web 3 is more decentralized in nature, and Web 2 is more centralized in nature. But to give you a very simple rationale behind it, Web 2 में कैसा हो रहा था कि भाई आप data generate कर रहे हो, but data is there in the centralized system. The person who is taking the most out of it is the company which is managing the platform, right? This is Web 2. And when it shifts to Web 3, what happens there is you are generating the data, you are the user, you are the king of that particular thing, right? So you will be participating in the financial or the revenue potential of whatever is being generated because of your data. Perfect. This is the classic difference between Web 2 and Web 3. So since you are taking care of the entire fan engagement and community building as well, can you just explain for our viewers that what all aspects your company considers as far as the fan engagement is concerned, and what are the benefits your fans can expect once they have subscribed, or maybe the sports chain activity is on? Correct. So few things is that we have actually started putting fans together at a single platform. Otherwise, you will see that everybody is kind of spread across 2-3 different platforms. Plus, what has happened is that those 2-3 platforms were not giving them like a unified view of what is happening. What is happening from an auction perspective of the team, what is happening in terms of the jersey perspective of the team. We have put that all together. Now, what is going to happen for people who sign up for our specific fan tokens is that we are rolling out a lot of benefits. So, early access to the fan token when it comes to the pricing will be of benefit for them. Multiple other benefits will include that now, when the season is supposed to start, some of the exclusive fans will get something that they have never experienced before. So things like going back to the auction table when they start bidding for the players. How would you like to be there with the team making those decisions, right? And also, in terms of helping figure out, how the squad will look like. The fans would like to know. And many other things like, VIP tickets that we previously didn't have because of COVID. All of that is going to come online. And this is just the tip of the iceberg. So Vinayak has already highlighted about a few aspects, what's the way forward as far as the fan engagement is concerned. But as a company perspective, Siddharth, if you can just highlight for our viewers how many projects your company is currently working on, and the tie-ups you are looking at, what's the outlook on the fan engagement as far as the business is concerned and the way forward? So one thing Vinayak has already mentioned is the fan side of story. Yeah. But when we talk about India and Asia, these sporting teams are looking at 2 different solutions, right, which they are looking at. One is directly monetizing their user base, which is their diehard fans. They are unable to do that. With the help of sports chain, we are facilitating that, right? Fantastic. Second is, because it's a blockchain technology, it's very global. So right now, it's the Kabaddi teams which you're talking about.
they are focusing on domestic fans, right? But through the concept of blockchain and fan token, the people, a Kabaddi fan in Malaysia, Singapore, will be able to be very closely associated with the team. So this is where we are changing the game completely. And when to answer your question on partnership, what we have done right now is we have done 4 team partnership with Kabaddi teams across the India map, north, south, east and west. So we have strategically covered the entire India map at this point of time because we do not want to leave any stone unturned, right? In addition, our idea is to build a sports chain community which is very focused on Asian fan base. Because if you see in terms of numbers, the overall fandom or sports fandom is around 7.5 billion people. Wow. Right? Which is the world population because people follow multiple sports as well, right? When we see that particular number from an Asia lens, it's 51%. Approximately 3.5 billion people are sports fans. And if we are able to capture at least 10 to 15% of this through Web3 technology, we are talking about huge numbers, which would be very big from a gamification element as well. 3.5 billion is roughly around 350 crores to just to cut it down. Yeah. So what is the way forward, Vinayak? Because since we are talking about a technology, it's catering to 3.5 billion. So what's the solution you are providing? Since Siddharth was telling that someone from Malaysia will be able to subscribe or maybe to use this facility. So what are the on-ramp solutions you are providing so that the big concern as far as this community is concerned is fiat to crypto and the reverse. So what is the solution you are working on, if you can just highlight that? Sure. So what you may have seen that there's a big audience, right? 3.5 billion is a big audience, but a lot of people usme say are still Web 2.0. We understand that, we know that, but these fans already have a lot of fan group, which we are directly working with them. What we want to do is when we work with the fan group, put them together and say, boss, this is how we can actually do many things by buying fan tokens. And when you work with a fan group, that influences a wider audience as well. Helps them figure out, yeah, maybe I can do this. It's not as complicated as it looks. It's all about buying a token, which is a simple process, buying a fiat currency and going from there. So that's what we want to do as step 1. And like I said, we've actually put them together in one place right now, which is a Telegram group that's easy for people to communicate and converse. So you're talking about community building, but what's the solution you are providing for this, if you can just highlight? So right now at SportsChain, what we're trying to do here is we are building a digital world for fans. You, me, all understand that blockchain technology or cryptocurrency is at a very nascent stage, specifically when we talk about Indian audience, right? Considering we see a large amount of hue and cry because of the regulation, whatever is happening at that point of time. So our mission is completely simple. We want to create a platform which is as simple as Amazon.com. The fan token would be a product where you go, sign up. You do not have to worry whether you have to open a MetaMask wallet. Everything will happen at the back end of SportsChain, right? You go, sign up, automatically a wallet would be created. And through that wallet, you can, through an on-ramp and off-ramp solution, obviously we'll be integrating because we know that we want to capture 10 million fans, and obviously crypto audience is not that big at this point of time. We're talking about Web 2 users. Web 2 users do not have a ERC20 wallet. The adoption is very low at this point of time. So on-ramp solution would be very critical, where people with the help of their Visa and MasterCard come on our platform, buy our native currency, which is SPN, and with the help of SPN, which is an in-game token or assets, you can buy any fan token or do multiple engagement on our platform. And to top it up, what we're gonna do is digital world for fan. It's not only buying tokens and converting at a higher dollar amount. This is not our objective at all. All right. What we are doing here is we are tokenizing the membership. We are saying ट्रेडिशनल मेंबरशिप में आप 3,000 रुपए देते हो, आपको डिस्काउंट मिलता है, VIP greet and meet मिलता है, but after 1 year it expired, right? And your 3,000 rupees goes to zero. But here we are bringing that particular concept on chain where we are tokenizing the membership. Fantastic. You're getting all the traditional membership, whatever you want. But over and above, because of demand and supply, the game theory dynamics, the price will go up or down. At least you will have something in return, and it's an infinite period membership, right? Because you hold an on-chain data which is completely decentralized and it can be transferred. Right now you have utilized a VIP ticket. You want your friend to utilize, just transfer that fan token to them. He will pay you back whatever the money it is or trading amount would be, and he'll be able to participate in the fan engagement activity. All right, so this is transferable, that's what you're saying. Absolutely. So, but which platform you are using, Siddha? So right now, the main or the layer 1 is Ethereum. All right. And why Ethereum we all know, because this is the one biggest platform on blockchain, a layer 1 standpoint. So this is what we are using. But unfortunately, you also know that gas fee issue is too big in Ethereum at this point of time.
So what we have done is we have connected Layer with two. Polygon. Yes. So we are entering into layer 2, wherein our platform, our tokens would be on ERC20, but our overall platform will work on Polygon. We have already received a grant from Polygon. So we are building a web app on Polygon so that a user, a tier 2 or tier 3 audience who is a very die-hard Tamil Thalaiva fan, want to buy $5 tokens, they can buy it with a very minuscule gas fee. Fantastic. This is where we want to change the game. Rather than paying $20 on Ethereum for buying $5 worth of tokens. So since we are talking about layer 1 and layer 2 solution, I just wanted to ask you, Ethereum is undergoing the merge process, and there are market participants who are expecting that once this merge is complete from proof of work to proof of stake, it's going to solve a couple of things such as the high transaction fees which you guys are facing as of now. And the other is the environmental concerns. That's a separate thing. Correct. But sports chain, is it prepared when this merge will happen? Or it's going to solve the problem? You will not require layer 2 as of now? Absolutely. So our whole idea to move on layer 2 is the only basic problem is gas fees, right? If Ethereum transition to proof of stake has been in talks for the last 2 years, we don't know when it's going to happen. But whenever it happens, we are already built on ERC20. So it's much more easy for sports chain to shift from Polygon to Ethereum, the upgraded version as well. So that doesn't stop at all. So I think it would be a win-win situation for everyone. But obviously then Polygon needs to find another solution how they're going to fight with the new proof of stake of Ethereum, because ultimately that's going to eat a large amount of pie of their business. That's a big question, which everyone is asking. Will these layer 2 chains will be obsolete? Although we are discussing about fans, let's move on. Since we are talking about this entire gaming sector, can you just explain to me, Vinayak, since cryptocurrency market, as we all are aware, that it is going through a troubled time. We have seen a lot of institutional investors selling recently, but this gaming sector has witnessed roughly around $10 billion of funds only in 2022. At a time when market is falling, this sector is witnessing a lot of inflows. What is the main objective? What is the way forward? What do you think is the main reason behind this inflows? So the main reason behind this inflows is that they believe, or the investors believe, that these play to earn concept is a win-win. Okay, it's a win because the player themselves are able to earn either in the form of NFT or tokens, and the fact is that the range of games is also quite vast, from casual to something as deep as role playing. So that's why, because of these factors, you will see a lot of inflow coming to. But this market is expected to undergo a change as well, because what happens is, for us, what we believe is that, and what we are basing our concept is that, crypto market is like you have to have an in and you have to have an out. A lot of these games that do not give you an out, in the sense that you're not able to reap benefits, financial benefits, and that's the end goal for everybody, right? Those games will slowly get weeded out. So that money is going to come in very well right now, but the utility and the out factor is going to determine which are the companies that are going to stay in the market. So you rightly mentioned, when you started this particular discussion, you mentioned about play to earn, right? Play to earn is the element which will change the gamification or the GameFi completely. To give you numbers, GameFi is around 11.5 billion market cap, the various projects on GameFi at this point of time. And on a trading volume standpoint, 2 billion of trades happens on a daily basis on these particular platforms, which is NFTs, fan tokens, so on and so forth. So here, how the game will evolve is, right now, to give you an example of Dream 11, right? Dream 11, you participate in a particular pool amount, but only 1 or 2% wins, right? Mm-hmm. But when we talk about GameFi, even on our platform, we're going to incorporate gamification for user stickiness and user rewards. You participate, you invest your time in terms of playing those games, you will be rewarded in SPN tokens or fan tokens as well. So this is where your time is money is the concept which we are bringing to reality from a sporting world standpoint by integrating gamification and GameFi element to it. Do you play games? Yes. No, I'm talking about physical games. Physical games right now, no. But I have been playing computer games. I play on Xbox for a very, very, very long time. And now I'm getting back into computer games because of the whole GameFi thing as well. So which is your favorite computer game? My favorite computer game is FIFA. So I've been playing that. Why do you think that FIFA is best? What are the features that you like in that? So two things. I can play against my friends and I can play online, and obviously I can play with my favorite team, which is Arsenal. And that's why I like it. And every year there's an upgrade to it, and that upgrade is quite nice. So which is your favorite game, Siddharth?
So I generally play some physical sports such as badminton and chess. So these are the games, and normal mobile games such as stick cricket and so on and so forth. I'm a big fan of that, so I generally play all those games as well. But as you rightly mentioned, the reason behind playing FIFA is these three things, right? Peer-to-peer, playing with your favorite team, and playing online. This is what is the cornerstone of the concept of sports chain as well, right? Exactly. That's the reason why I asked you guys this question, that are you guys playing an online game rather than pitching everyone? This is something, which I wanted to understand. So, when will your project be live? If you can just give an outlook on. So right now, what we have done is our sign-up activity is already live. So you can go to fans.sportschain.com and do sign-up and win up to 400 SPN tokens, right? This is where we have started a sign-up and we have received more than 500 sign-ups till date. But from a roadmap standpoint, July is the date where we want to launch a beta app. When I say beta app, what we will be doing there is, we'll be integrating stick cricket type of games from a gamification, and then we'll be able to launch fan tokens of our partner teams from the month of August onwards. This is where we exactly are from a technology roadmap standpoint. All right. So since we are talking about August, and what is the kind of approach your company has taken toward this project? Since August, it's like hardly 2 months are remaining. So what is the main objective behind this? Main objective behind this is, frankly, we want to prove to the global market that we can do this in Asia. If you remember in the early part of the conversation, Siddharth said 57 fan tokens were launched, not even one in Asia, or not even one from Asia. So you want to prove that yes, this is also going to work in India. We will build an India community, and the objective is to showcase that these teams that we are partnering with, उनका सिर्फ एक source of revenue नहीं है, match day tickets या sponsorship etc. Monetizing their fans, we want to prove that in India, and this will be one of the first times that will happen in the Indian Asian market, that a professional team is being able to monetize their fans at this scale. So Siddharth, since we are talking about monetization of fans going forward as well, so what are the fundraising options you have explored, and what is the way forward in terms of fundraising as far as the business is concerned? If you can just highlight that. So from a Web2 project, the fundraising is actually a little different, right? Or it generally happens from a Web2 arena standpoint as well as a Web3. So what we have done till date is, we have done token sale of our SPN, which is expected to launch in the month of July, where we will be doing our public sale by doing an IEO on various global exchanges as well. So we are currently in talks. So once that talks are fruitful, we will be launching our SPN where early users will be able to come, participate, buy it, and with the help of SPN token, they will be engaging on a platform. Fantastic. That is one part of it. So we have already closed the seed round as well as early backing round. Approximately we raised around $800,000. Couple of PRs are already there on our website. The name of investors are already out. You can definitely view that. But right now we are in an equity fundraising as well, where we plan to raise another $1.2 to $3 million. The whole idea of raising this money is twofold. One, we want to expand into Asia market by doing sporting team partnership. The money would be used there. The second most important is user acquisition, marketing. The large amount of money would be spent there because we want to have at least 5,000 to 25,000 users onboarded when we launch a particular platform. So at least we can show or have large amount of daily active users, create stickiness on the platform, and then take it forward. So user engagement and acquisition is the big question as far as the company is concerned. बहुत खर्चा भी होता है इसमें. Correct. So उसको tackle करने का क्या आपने strategy बनाया है? So there is no perfect strategy to build a community. It is to be done in multiple ways, and multiple routes are there. One of the important ways to do it is actually utilize our team partnerships. They themselves, you take any kabaddi team on an average, they have about 300 to 500,000 fans. That is one way to start doing that. So that's how you kind of build the community, introduce that all together. And then what we are also doing is we're working with a lot of fan groups, such as, Bharat Army, as you know, that's for the Indian cricket team. Multiple fan groups are there. So work with them to get their, users on board as well. And then also market this very vastly to the crypto community in India. So crypto community in India में definitely 10 में से 5 तो कोई sport के fan होंगे ही, and they will see that as a good proposition to kind of move away from traditional the investments that they've done on layer 2 application, etc. How many of them would have come across a sports related kind of a project coming through? So I believe there are 2-3 ways to do this, and we've already started inculcating these methods. So it's not a set formula,
But these three approaches are something that we've already begun and started, witnessing the results of that on our Telegram group, which is now crossed 9,000 people. Our aim was 5 to 25,000, but now 9,000 हम already हो चुके हैं. And Discord as well. So these are some three approaches that we have already started taking. All right, three approaches. Fan building, community is something which is more important going forward as well. There are a lot of projects in the crypto ecosystem are only surviving because of the community. So one last question before we let you guys go is what's the take? What's your opinion or what's your suggestion to all the fans which are watching this interaction on Crypto TV? What's your view as far as the entire sector is concerned? What's the way forward and क्या best आने वाला है उनके लिए going forward? बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए because हम खुद I am not the founder of that company I am talking from a fan perspective as well, right? We started Sports Chain because we were sports fan. We saw there are large amount of gaps. हम अपना time, energy, effort डालते हैं. We should be very closely knit with our favorite teams. We should be able to participate in their financial upside potential as well. This is where data is king concept was missing in sports world. We are bringing that data is king and user is king concept through Sports Chain, where you will be able to not only buy tokens, meet your favorite star, but play games, spend money, spend effort, spend time, and you will be able to reap financial benefits as well. So obviously this is the casual game. How are we going to change from a sporting standpoint as well? Vinayak, a quick view, last comments on that. Very simple. Guys, don't stay on the sideline or other side of the boundary. Please step in through Sports Chain and you will really understand why you should be participating in a project like this, because for a very long time fans have been on the other side of the fence. It's time to jump over on this side of the fence and really experience what it means to be a fan as an Asian fan base. So jump over on this side. That's the word coming in from Vinayak. Thank you so much, Vinayak, for being part of the show, and you gave a very broader perspective as far as fans are concerned. Thank you so much, Siddharth, for giving a broader outlook as far as the company plans and projects going forward are concerned. Thank you so much for watching this special segment on Digitally Unplugged. This is Manoj Dhara signing off. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. हाय गाइस, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. क्रिप्टो ॲसेट नेमकं काय आहेत, त्याचे किती प्रकार असतात, त्याचे फायदे काय आहेत, हे आपण मागील एपिसोडमध्ये जाणून घेतलं. तर आज आपण पाहणार आहोत क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये कोणकोणते महत्त्वाचे ॲक्टर्स आहेत. त्यात प्रथम क्रमांक आहे इन्व्हेस्टर, जे क्रिप्टो ॲसेटच्या दुनियेत सर्वात महत्त्वाचे ॲक्टर आहेत. म्हणजेच जी लोक वेगवेगळ्या क्रिप्टो ॲसेटमध्ये आपले पैसे इन्व्हेस्ट करतात.
तुम्हाला माहित आहे का, सर्वात जास्त क्रिप्टो ओनर्स हे भारतात आहेत, म्हणजेच जवळपास 10 करोड एवढे. आणि ह्यामध्ये सर्वप्रथम 24 वयोगटातील तरुण मंडळी आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ तुम्हाला कळत असेलच की तरुणाईमध्ये याचा जास्त क्रेज पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे फायनान्शियल इंटरमिजिएटरीज, म्हणजेच आर्थिक मध्यस्थी. क्रिप्टो ॲसेटच्या मार्केटमध्ये जे दुसरे मेन ॲक्टर आहेत ते आहेत ब्रोकर आणि ॲडवायझर. स्टॉक मार्केट प्रमाणेच येथे सुद्धा ब्रोकर्स आणि ॲडवायझर्स ट्रेडर्सला क्रिप्टोमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी ॲडवाइस करत असतात. तिसऱ्या क्रमांकावर जर आपण म्हटलं तर आहे ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि एक्सचेंजेस. यामध्ये ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि एक्सचेंजेसवर क्रिप्टो ॲसेटची होते जास्तीत जास्त डीलिंग. जगातील टॉप 5 एक्सचेंजेस आहेत बायनान्स, कॉइनबेस एक्सचेंज, FTX, कार्केट आणि KuCoin. आणि भारतात जर पाहिलं तर टॉप एक्सचेंजेसमध्ये कॉइनस्विच, कुबेर, वझिरेक्स इत्यादी आहेत. चौथ्या क्रमांकावर आहे वॉलेट प्रोव्हायडर्स. आपल्याला तर माहीतच आहे की क्रिप्टो करन्सी ही नेहमी वॉलेट्समध्ये स्टोअर केली जाते, मग ते हॉट वॉलेट असू दे किंवा कोल्ड वॉलेट. ग्लोबली जर पाहिलं तर भरपूर असे वॉलेट्स प्रोव्हायडर आहेत. फॉर एक्झाम्पल कॉइनबेस वॉलेट जे बिगनर्ससाठी खूप चांगलं आहे. नंतर इलेक्ट्रियम वॉलेट जे खास करून बिटकॉइनसाठी चांगलं आहे. त्यानंतर मायसिलियम जे मोबाईलसाठी चांगलं आहे. नंतर लेजर नॅनो एक्स हे ऑफलाईन क्रिप्टो वॉलेटसाठी चांगलं आहे. आणि शेवटी एक्सोडस हे डेस्कटॉपसाठी चांगलं आहे. तर आपण पुन्हा वळणार आहोत क्रिप्टो ॲसेट मार्केटच्या ॲक्टर्सकडे. तर 5व्या क्रमांकावर आहे पेमेंट आणि मर्चंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेटचे बरेच ट्रान्झॅक्शन हे व्हिसा कार्ड आणि मास्टर कार्ड सारख्या पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सच्या माध्यमातून सुद्धा करता येते. खरं तर यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट डीलिंगसाठी मर्चंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरचा सुद्धा खूप महत्त्वाचा रोल आहे. फॉर एक्झाम्पल कॉइनबेस जे शॉपिफाय आणि WooCommerce सोबत इंटिग्रेट करते. बिटपे हे वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टोकरन्सी पेमेंट गेटवे आहे आणि यावर भरपूर प्रकारचे वर्सटाईल पेमेंट ऑप्शन आहेत. यासारखंच कॉइनगेट सुद्धा खूप ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म सोबत इंटिग्रेट करत असतात. पुढे 6व्या क्रमांकावर जर म्हटलं तर आहे लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्स. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्सची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका आहे. तसेच हाय लिक्विडिटीचा अर्थ आहे प्राइस स्टेबल असणं आणि त्यात कोणत्याही प्रकाराचे चढ उतर नसणं. आता यामध्ये 5 लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्स आहेत, ज्यामध्ये लंडन UK मधून FXCM Pro, मॅस्को रशियामधून B2 ब्रोकर, सायप्रस मधून लेव्हिरेट आणि लंडन UK मधून X ओपन हब आणि भरपूर सारे आहेत. नेक्स्ट 7व्या क्रमांकावर आहे मायनर्स आणि व्हॅलिडेटर्स. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये होणारी सर्व ट्रान्झॅक्शनला मायनर किंवा व्हॅलिडेटर्स अप्रूव्ह करत असतात. मायनर्स प्रूफ ऑफ वर्क फॉलो करतात आणि व्हॅलिडेटर्स प्रूफ ऑफ स्टेकला. निश्चितच आता तुमच्या मनात प्रश्न येत असणार की क्रिप्टो ॲसेटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये कोण असतात आणि कोण कोण यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात. मग चला तर प्रश्नाची उत्तरं आम्ही आपल्याला देतो. बघा, क्रिप्टो ॲसेटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये 5 पार्टिसिपेंट असतात. फर्स्ट, युजर्स, जी लोक या लीगल एंटिटीज म्हणजेच कायदेशीर संस्थांमध्ये असतात, जे क्रिप्टो ॲसेट सोबत पिअर टू पिअर पेमेंट करत असतात किंवा गुड्स अँड सर्व्हिसेस किंवा इन्व्हेस्टमेंटचे परचेस किंवा सेल करत असतात. सेकंड, मायनर्स, ब्लॉकचेनवर होणारे सर्व ट्रान्झॅक्शनचे प्रूफ ऑफ वर्क कन्सेन्सस मेकॅनिझमच्या थ्रू मायनर्स हे व्हॅलिडेट करत असतात. यासाठी मायनर्स कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेअरचा अजून खूप जास्त प्रमाणात कॉम्प्युटिंग पॉवरसाठी वापर होत असतो. या कामाच्या बदल्यात मायनर्सला नेहमी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो ॲसेटमध्ये कॉम्पेन्सेट केलं जातं. थर्ड, क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेस. क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेसच्या माध्यमातून युजर्स आपल्या क्रिप्टो ॲसेटला फिएट करन्सीच्या बदल्यात किंवा दुसऱ्या क्रिप्टो ॲसेटच्या बदल्यात एक्सचेंज करू शकतात. या सर्व्हिसेससाठी क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेस हे फीस चार्ज सुद्धा करते.
हे एक्सचेंजेस कोणत्या ॲडमिनिस्ट्रेटर सोबत संलग्न आणि स्वतंत्र असू शकते किंवा थर्ड पार्टी प्रोव्हायडर सुद्धा असू शकते. फॉर एक्झाम्पल एक्सबिटफायनेक्स आणि कार्किड. फोर्थ, ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म. क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेसच्या ऐवजी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म सुद्धा ट्रान्झॅक्शन फॅसिलिटेट करत असतात, जे अशा मार्केट प्लेस सारखे काम करत असतात जे वेगवेगळ्या युजर्सला कनेक्ट करतात. एक्सचेंजेस सारख्या या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म क्रिप्टो ॲसेटला परचेस किंवा सेल नाही करता येत, तर फक्त त्याच्याकडे आपल्याला ट्रान्झॅक्शनला फॅसिलिटेट करत असतात. 5. वॉलेट प्रोव्हायडर्स. वॉलेट प्रोव्हायडर्स युजर्सला असे वॉलेट प्रोव्हाइड करतात जे क्रिप्टो ॲसेटची होल्डिंग, स्टोरेज आणि ट्रान्सफर्समध्ये हेल्प करतात. हे वॉलेट्स युजर्ससाठी प्रायव्हेट की होल्ड करत असतात आणि युजर्सला ब्लॉकचेन नेटवर्कवर उपस्थित पब्लिक कीच्या माध्यमातून क्रिप्टो ॲसेटमध्ये ट्रान्झॅक्ट करण्यासाठी मदत करत असतात. वॉलेट प्रोव्हायडर्स युजर्सची ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री अशा प्रमाणे मेंटेन करतात की जी रीडेबल असेल, जेणेकरून ट्रान्झॅक्शनची सिक्युरिटी राखली जाईल. वॉलेट प्रोव्हायडर सुद्धा 2 प्रकाराचे असतात, एक हार्डवेअर आणि दुसरे सॉफ्टवेअर वॉलेट प्रोव्हायडर्स. वॉलेट्सला स्टोअर करण्यासाठी सुद्धा 2 पद्धती असतात, एक ऑनलाईन म्हणजेच हॉट वॉलेट आणि दुसरे ऑफलाईन म्हणजेच कोल्ड स्टोरेज. कधी कधी एक्सचेंजेस युजर्सची क्रिप्टोग्राफिक कीला सेफगार्ड करून कस्टोडियन वॉलेट प्रोव्हायडर्सला फायदा सुद्धा पोहोचवत असते. तर मित्रांनो, क्रिप्टो ॲसेट्सच्या खास प्रोग्राममध्ये सध्या एवढंच. मला आशा आहे की क्रिप्टो ॲसेटला घेऊन तुमच्या मनातल्या प्रत्येक शंकेचं आम्ही निरसन केलं असणार. क्रिप्टो विषयीचे अशाच प्रकाराचे नवीन टॉपिक्स आम्ही आपल्या समोर घेऊन येणार आहोत. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. बाय. क्रिप्टो की किटी पार्टी में you're most welcome. And now you must be wondering कि यशी हम सब तो यहाँ हैं पर लेडीज कहाँ है? अरे पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ और क्रिप्टो क्वीन से जो कि आपकी हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो इन अ बेटर वे, राइट? इंट्रोड्यूसिंग कैथरीना फरेरा. इन्होंने 2017 में ब्लॉकचेन लेडीज नाम की इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्थापित किया था, जिसका लक्ष्य दुनिया भर की क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व लेडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट में लाना और सपोर्ट करना है. दिस क्रिप्टो क्वीन वेयर्स मेनी हैट्स, बाय द वे. ये ब्लॉकचेन बिजनेस कंसल्टेंट हैं, एक्सपीरियंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, डिजिटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, टेक स्टार्टअप में मेंटोर हैं. इतना ही नहीं, एक राइटर और एक कीनोट स्पीकर भी है. हुफ, लड़की एक है, रूप अनेक है, और ये सब कुछ इन्होंने घर के चूल्हे चौके के साथ में ही अचीव किया है. सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे कहे कि आप लोग घर में क्या काम करती हो, तो फट से कैथरीना फरेरा का नाम उनको बता देना और एग्जाम्पल दे देना. हाँ, कोई डाउट मत रखना. ब्लॉकचेन लेडीज के थ्रू ये क्रिप्टो एंड टेक सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को एनकरेज करती हैं. इसके अलावा कैथरीना फरेरा ने न्यूरेलिया नाम का ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, विच इज मोस्टली रन बाय वुमनिया. गेट इट? चलिए, क्रिप्टो स्पेस में एंट्री करने की इंस्पिरेशन तो मिल गई, ब्लॉकचेन लेडीज से दूसरी क्रिप्टो वुमेन भी मिल गई, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या लगता है? रोकड़ा, पैसा, कैश, नकद, ये कहां से लाओगे? तो फिकर नॉट, इस कैश फ्लो की समस्या का हल मैंने ढूंढ निकाला है. नेक्स्ट क्रिप्टो क्वीन जो है वो हमारे देश की है, भले ही विदेश में रहती हूँ. इनका नाम है मानसी वोरा. वैसे ये जो क्रिप्टो क्वीन है ना, वो कॉमोरेबी कलेक्टिव नाम के डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की को-फाउंडर है, जिसे मई 2021 में एस्टैब्लिश किया गया था.
ये वर्ल्ड का पहला इन्वेस्टमेंट डाओ है जिसका कंप्लीट फोकस फीमेल और नॉन बाइनरी क्रिप्टो फाउंडर्स को फंड करना है। डाओ मींस कंप्यूटर कोड्स के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता एक ऐसा संगठन है जिसे कोई एक बंदा या फिर बंदी नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी रन करती है। मतलब जौनपुर से लेकर के सिंगापुर तक, इंडियन हो या फिर फॉरेनर, दुनिया की किसी भी कुड़ी को अगर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की स्पेस में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में तहलका मचाने के लिए फंड्स चाहिए तो उन्हें कोमोरेबी कलेक्टिव को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये वुमनिया का इनिशिएटिव बाय द वुमनिया एंड फॉर द वुमनिया है। इतना ही नहीं, यूएस की इस देसी छोरी ने विमेन इन ब्लॉकचेन नाम का एक एनजीओ भी स्टार्ट किया है जहां औरतें एक दूसरे को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में एजुकेट करते हुए इंस्पायर, कोलैबोरेट और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज भी करती हैं। बेसिकली मेल पॉपुलेटेड क्रिप्टो स्पेस की डिसीजन मेकिंग में वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ने की जबरदस्त पहल की है मानसी वोरा ने। ये थी अकॉर्डिंग टू मी 2021 की टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस की लिस्ट। वैसे तो आज के ग्लोबल माहौल में दुनिया में किसी भी देश की लेडी की जीत पूरी विमेन कम्युनिटी की जीत होती है। बट बिफोर एवरीथिंग, आई एम एन इंडियन टू द कोर यार, तो अंदर से यही मन करता है कि अगली बार जब मैं आपके लिए ये सेगमेंट को प्रेजेंट करूं तो अपनी मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए, है ना? और इंडियन कुड़ीज जो हैं वो धूम मचाते हुए नजर आनी चाहिए। ओलंपिक्स तो हर 4 साल में होते हैं, राइट? बट जब भी कोई इंडियन गोल्ड मेडल जीत करके आता है तो कैसे कलेजे को ठंड पड़ जाती है ना? 2021 की ये स्पेशल लिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। 2022 की वुमनियास जो हैं वो अभी मेरा इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए वॉच आउट दिस स्पेस फॉर मोर। दिस इज मी यशस्वी आचार्य साइनिंग ऑफ। Thank you for watching Crypto TV and do not forget to like, subscribe and hit the bell icon if you really want to know what's going on in the world of crypto. Ta-da! ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यूं तो हर किसी के अलग अलग शौक, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन एक चीज है जो हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाती है, जिसमें सबका इक्वल इंटरेस्ट है, और वो है पैसा, मनी, काचिंग। आपने नोटिस किया होगा आजकल हर तरफ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के चर्चे हैं। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन किसी की भी एडवाइस पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्रिप्टो को बारीकी से स्टडी करें और फिर सोच समझकर डिसीजन लें। इसीलिए हम आए दिन आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आपकी नॉलेज उसके बारे में बढ़ाते हैं। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एसेट्स की। क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो एसेट्स क्या है? नो प्रॉब्लम। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री ने गजब की तरक्की की है। ग्लोबली करीब 300 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं। इंडिया में भी ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चंद सालों में ही इंडिया में 2 क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स हैं। अरे ये यूनिकॉर्न नहीं, मतलब क्रिप्टो की ऐसी जायंट कंपनीज जो वेंचर कैपिटलिस्ट के मुताबिक $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू रखती है। इतना ही नहीं, इंडिया में 350 क्रिप्टो स्टार्टअप्स भी हैं, जिसका साफ मतलब है कि क्रिप्टो ग्लोबली ही नहीं इंडिया में भी धूम मचा रहा है। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। Sorry, I got carried away. Okay, so we were talking about crypto assets. क्रिप्टो एसेट को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो क्रिप्टो एसेट्स वो डिजिटल एसेट्स होते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को या फिर क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं। क्रिप्टो एसेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको क्रिप्टो एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स को समझना होगा। क्रिप्टो एसेट्स 6 टाइप के होते हैं: स्टेबल कॉइन, CBDC, प्रिवेसी कॉइन्स,
गवर्नेंस टोकन्स, यूटिलिटी टोकन्स एंड नॉन फंजिबल टोकन। तो सबसे पहले बात स्टेबल कॉइन्स की। स्टेबल कॉइन्स ऐसी डिजिटल करेंसी होती है जो किसी फिएट करेंसी जैसे कि डॉलर एटसेट्रा या फिर किसी अंडरलाइंग एसेट से बैक्ड होती है, जो कि गवर्नमेंट इशूड करेंसी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, ऑयल हो सकता है या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन। मतलब स्टेबल कॉइन के प्राइस में उतनी ही फ्लक्चुएशन होगी जितनी उसकी फिएट करेंसी में या उसके अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स डिजिटल करेंसी है दैट इज बैक्ड बाय डॉलर, तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा घटेगा वैसे ही ये एक्स स्टेबल कॉइन बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट इज CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। CBDC किसी कंट्री की ऑफिशियल करेंसी या डिजिटल टोकन होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की CBDC में अब तक $10 मिलियन की पेमेंट हो चुकी है। अगला है गवर्नेंस टोकन। कभी कभी कंपनीज इनिशियल स्टेज पर फंड रेजिंग के लिए अपने फाउंडिंग मेंबर्स को ICO मतलब कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स देती है। साथ ही इन मेंबर्स को वोटिंग पावर भी मिलती है। ऐसे कॉइन्स को गवर्नेंस टोकन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स एथर $0.31 पर बेचा गया था और अब एथर की वैल्यू ऑलमोस्ट $3,128 है। सोचिए इस पर ROI यानी कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना भारी होगा। और अब बात नॉन फंजिबल टोकन्स की। नॉन फंजिबल टोकन्स कोई भी यूनिक आर्ट हो सकता है, जैसे कि कोई फोटो, पेंटिंग, ऑडियो, कोई एनिमेशन, गेम एटसेट्रा, जिसे बाय एंड सेल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ट्रांजैक्शन किसी क्रिप्टो करेंसी में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीपल ये नाम तो सुना ही होगा। बीपल ने 13 सालों में बनाई अपनी पेंटिंग्स का एक कोलाज बनाया और इस डिजिटल पिक्चर को एज अ NFT सेल किया $69 मिलियन में। चलिए, ये तो आप समझ गए कि क्रिप्टो एसेट्स क्या हैं, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? आइए वो भी जान लेते हैं। क्रिप्टो एसेट डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर अनइनक्रिप्टेड डिजिटल एसेट सच एज डिजिटल मनी से क्रिएट होती है, क्योंकि डिजिटल मनी के साथ फॉल्स ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स बनाना आसान है, क्योंकि ये इजीली रेप्लिकेबल है और इनकी हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन को ट्रैक करना मुश्किल है। वहीं क्रिप्टो एसेट की सारी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर अपडेट एंड वेरीफाई होते रहते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। इसीलिए इन डिजिटल एसेट्स को हर कोई ट्रैक कर सकता है। उम्मीद है क्रिप्टो एसेट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी क्रिप्टो एसेट मार्केट में मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है और क्रिप्टो एसेट ट्रांजैक्शन में कौन-कौन इन्वॉल्व होता है। Till then, it is me, Ruchi, signing off. Keep watching Crypto TV. नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्हीच्या खास प्रोग्राम क्रिप्टो क्राइम्स मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. मित्रांनो, म्हणतात ना, अतिलोभ हा माणसाला विनाशाकडे नेत असतो. बस याच विषयावर आधारित आजचा एपिसोड हा आम्ही खास तुमच्यासाठी आणलाय. मित्रांनो, वेगाने वाढणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या या दुनियेत आता फसवणूक करणाऱ्या चोरट्यांच्या प्रमाणात सुद्धा वाढ होताना पाहायला मिळते. या चोरट्यांनी आता भारताची आर्थिक राजधानी म्हणजेच मुंबईत सुद्धा धुमाकूळ घातलाय. काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील चारकोप परिसरात ही घटना घडली असून तब्बल 1.5 कोटी रुपयांच्या क्रिप्टो फसवणुकीसाठी आरोपी जगदीश लाडी नावाच्या एका 23 वर्षीय मॅनेजमेंट ग्रॅज्युएटला चारकोप पोलिसांनी अटक केली आहे. चारकोप पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जगदीश लाडी हा BBAचा पदवीधर असून तो 2020 मध्ये कोरोनाची महामारी सुरू झाल्यापासून ऑनलाईन ट्रेडिंग सुरू करायचा. दरम्यान आरोपी जगदीश लाडी हा लोकांना क्रिप्टो करन्सीमध्ये पैसे गुंतवण्याची ऑफर देऊन चांगले रिटर्न्स देण्याचे देखील आमिष दाखवत होता. आतापर्यंत जगदीश लाडी विरोधात 7 लोकांनी फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल केली आहे. या घोटाळ्यात अजूनही अनेकांची फसवणूक झाल्याचा संशय असल्याचे पोलिसांनी म्हटलंय. अधिक मिळालेल्या माहितीनुसार या तक्रारकर्त्यांमध्ये एक जिम ट्रेनर आहे, ज्याने आपल्या सेव्हिंग्ज मधून एकूण 1.65 लाख रुपये गमावले आहेत.
या ट्रेनरने जगदीश लाडीबद्दल 2021 मध्ये एका महिला क्लायंटकडून ऐकले होते की जिने लाडीसोबत गुंतवणूक केली होती आणि त्यावेळी त्याने इतर दोघांची ओळख देखील करून दिली होती। या दरम्यान जगदीश लाडीने ट्रेनरला दर आठवड्याला 25% रिटर्न्स देण्याचे आमिष सुद्धा दाखवले होते। ऑक्टोबर 2021 मध्ये जेव्हा ट्रेनर आणि त्याचा भाऊ चारकोप येथील एका क्लायंटच्या घरी गेला होता त्यावेळी तेथे लाडी देखील उपस्थित होता। त्याने त्याच्या फोनवर एक प्रेझेंटेशन दाखवले ज्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास किती जास्त प्रमाणात रिटर्न्स मिळतील याबद्दल सांगितले गेले होते। लाडीने असेही सांगितले होते की त्याच्याकडे 3 कोटी रुपयांचा पोर्टफोलिओ आहे आणि जर का काही प्रॉब्लेम झालाच तर गुंतवणूक केलेली संपूर्ण रक्कम ही परत करू। ट्रेनरने अखेरीस त्याच्या बोलण्यावर आणि त्याने दाखवलेल्या पोर्टफोलिओवर विश्वास ठेवला आणि सप्टेंबर ते डिसेंबर 2021 दरम्यान जवळपास 1.65 लाख रुपये गुंतवले। सुरुवातीला लाडीने ट्रेनरला थोडे रिटर्न्स देण्यास सुरुवात केली। मग काही दिवसानंतर जेव्हा रिटर्न्स येणं बंद झालं तेव्हा तो ट्रेनर आणि त्याचा भाऊ लाडीला काही रिटर्न्स बद्दल विचारण्यासाठी फोन करायचा, तेव्हा तो बोलणे टाळायचा आणि नंतर त्याने फोन उचलायचं देखील बंद केलं। मग अखेरीस कंटाळून ट्रेनर आणि त्याचा भाऊ लाडीच्या घरी गेले तेव्हा त्यांना कळले की लाडी तिथून रफूचक्कर झाला होता। त्यावेळी लाडीच्या घराजवळ इतर गुंतवणूकदार देखील आले होते जे लाडीच्या फसवणुकीला बळी पडले होते। दरम्यान त्या ठिकाणी एका महिलेशी देखील त्या ट्रेनरची ओळख झाली। त्या महिलेनं सुद्धा 10 लाख रुपये लाडीच्या फेक क्रिप्टो स्कीम मध्ये गुंतवले होते। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार लाडी हा फ्रॉड एकटाच ऑपरेट करत होता आणि इतर कोणत्याही ट्रेडिंग फर्मशी त्याचा संबंध नव्हता। जेव्हा चारकोप पोलिसांनी लाडीचा पोर्टफोलिओ तपासला तेव्हा त्यांना आढळले की लाडी हा लोकांना त्याच्या स्वतःच्या खात्यात पैसे जमा करायला सांगायचा आणि नंतर स्वतःच्याच नावाने क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करायचा। तपासकर्त्यांनी सांगितले की लाडी हा सुरुवातीला त्याच्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी म्हणून त्यांना मध्ये छोटीशी अमाऊंट सुद्धा द्यायचा। नंतर हळूहळू गुंतवणूकदारांनी जास्त रिटर्नच्या नादात आणखी पैसे गुंतवले आणि शेवटी रिटर्न्स येणं हे बंद झाल्यामुळे गुंतवणूकदार हे अखेरीस अशा फसवणुकीला बळी पडले। तुमच्या माहितीसाठी लाडीने त्याची संपूर्ण प्रसिद्धी फक्त तोंडी म्हणजेच वर्ड ऑफ माउथ केली होती। अशी बरीच लोक आहेत ज्यांच्यासोबत लाडीने फ्रॉड केलाय। यापैकी काहींनी लाडी विरोधात तक्रार दाखल केली आहे तर काहींनी नाही, कारण काही गुंतवणूकदारांना अजूनही विश्वास आहे की लाडी एकदा तुरुंगातून बाहेर पडला तर तो त्यांचे सर्व पैसे परत करेल। मित्रांनो, या स्टोरीच्या माध्यमातून आम्हाला आपल्याला हे सांगायचं आहे की जास्त रिटर्नच्या नादात आपण अशा फसवणुकीला बळी पडत असतो आणि आपल्या आयुष्याची जी सेव्हिंग्ज आहे ती गमावून बसतो। म्हणून मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात असू द्या, बघा क्रिप्टो करन्सी हे आपल्या सर्वांचेच भविष्य आहे। या माध्यमातून तुम्ही करोडो रुपये देखील कमावू शकता, पण केव्हा? जेव्हा सतर्कपणा, अभ्यास आणि मार्केट रिसर्च केला तरच। तर मित्रांनो, क्रिप्टो जगतात होणाऱ्या अशाच प्रकारच्या क्राईम व स्कॅम स्टोरीज घेऊन मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला येणार आहे। तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही। कहते हैं इंडिया में 2 ही रिलीजन है, पहला बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट, जिनके लिए लोगों की दीवानगी सोच से परे है। यही वजह है कि बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स जो भी करते हैं वो सुपर हिट हो जाता है। तभी तो ये स्पोर्ट्स स्टार्स ऑन फील्ड जलवे बिखेरने के बाद अब ऑफ फील्ड भी अपने स्टारडम का दम दिखाते नजर आ रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो वर्ल्ड की लेटेस्ट ट्रेंड यानी NFTs की, जहां सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर और झूलन गोस्वामी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इनके अलावा और कई प्लेयर्स इस लिस्ट में शामिल होने की फिराक में हैं। NFTs की इस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम है सचिन 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 जी हाँ, सचिन तेंदुलकर का। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन के भी क्या कहने। कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके सचिन लगता है NFT की दुनिया में भी नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। सचिन की इस NFT कलेक्शन में क्रिकेट से जुड़े कई गोल्डन मोमेंट्स कैद हैं, जैसे कि रिटायरमेंट टेस्ट से जुड़ी कलेक्शन, autographs of Indian team players on their maiden tour to England in 1932,
साथ ही 1983 की टीम का साइन किया गया मेमोरेबलिया भी इसकी शान बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, लेजेंडरी डोनाल्ड ब्रैडमैन के साइंड रेयर स्टैम्प्स और 1983 में इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग के बाद लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग भी इस NFT कलेक्शन की शोभा बढ़ा रहे हैं। सचिन ने खास तौर पर अपने फैंस के लिए इसमें ग्लोबल क्रिकेट से जुड़े 23 आर्टिफैक्ट्स भी जोड़े हैं। सचिन ने इस प्राइसलेस NFT को रेव स्पोर्ट्स और फैनेटिक स्पोर्ट्स के एसोसिएशन में क्लिक फ्लिक पर ऑक्शन किया है। और अब बात उस क्रिकेट स्टार की जिसने लगातार 6 छक्के लगाकर हर किसी के होश उड़ा दिए थे। जी हाँ, जब युवराज सिंह का बल्ला बोलता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे में फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर युवराज सिंह ने डिजिटल कलेक्टिबल्स NFT मार्केटप्लेस कोलेक्शन के साथ पार्टनरशिप कर अपनी कई पर्सनल और क्रिकेट मोमेंट्स को NFT के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। युवराज सिंह ने अपनी इस NFT के बारे में बताते हुए एक वीडियो में अपने फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी पहली गेंद से लेकर उनकी जर्सी टांगने के फैसले तक हमेशा उनका साथ दिया। अच्छे समय पर पीठ थपथपाई तो बुरे समय पर हौसला बढ़ाया। युवराज की जिंदगी के प्रेशियस मोमेंट से सजी इस NFT की बदौलत कोलेक्शन NFT मार्केटप्लेस अब किसी वर्चुअल म्यूजियम से कम नजर नहीं आ रही, जहां युवराज की जर्नी और प्रीमियम NFT कलेक्शन दुनिया भर के फैंस को अट्रैक्ट कर रही है। और अब बात नजफगढ़ के नवाब की। फॉर्मर इंडियन ओपनिंग बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग का नाम सुनकर आज भी कई इंटरनेशनल प्लेयर्स कांप जाते हैं। अपनी धुआंधार बैटिंग के लिए जाने जाने वाले वीरू पाजी हाल फिलहाल में NFT बैंडवैगन में शामिल हुए, जिसके लिए उन्होंने NFT प्लेटफॉर्म रेडियो को चुना। रेडियो दुनिया का पहला फर्स्ट ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्रिकेट डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म है, जो क्रिकेटर्स के अलावा इंटरनेशनल लीग से भी जुड़ी NFTs में ट्रेड करता है। सहवाग ने रेडियो के साथ अपने पार्टनरशिप में फैंस के लिए अपने फाइनेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट से जुड़ी यादों को NFT का अवतार दिया। इस लिस्ट में ऑलराउंडर स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है, जो कई खास मौकों पर अपने जबरदस्त बैटिंग अटैक से फैंस को अपना मुरीद बना चुके हैं। फैन क्रेज पर अपनी इस NFT कलेक्शन में रोहित ने 2019 ICC वर्ल्ड कप में जीते ICC गोल्डन बैट और अपनी फर्स्ट IPL हैट्रिक से जुड़े कई मेमोरेबलिया शामिल किए हैं। मेल डोमिनेटेड इस क्रिकेट स्पोर्ट में हमारी वुमनिया, वुमनिया भी शामिल है। फीमेल क्रिकेटर झूलन गोस्वामी भले ही इन दिनों अपनी बायोपिक को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन वो NFT वर्ल्ड में जोरदार सिक्सर लगाने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर के तौर पर भी काफी लाइमलाइट बटोर रही हैं। क्रिकफ्लिक्स, रेव स्पोर्ट्स और फैनेटिक स्पोर्ट्स के सहयोग से लॉन्च की गई इस NFT में गोस्वामी की जर्सी के अलावा फैंस के लिए NFT के रूप में उनके क्रिकेट खेलने के दिनों से जुड़े कई रेयर और ऑथेंटिक क्रिकेट मेमोरेबलिया भी हैं। NFT वर्ल्ड में क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों की एंट्री यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस लिस्ट में सुनील गावस्कर से लेकर जहीर खान, ऋषभ पंत, स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, AB डिविलियर्स, शाकिब अल हसन और फैफ डु प्लेसिस जैसे धुरंधरों का नाम भी शामिल है। और वक्त के साथ इस फहरिस्त में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैन क्रेज के साथ हाथ मिलाते हुए ICC क्रिकेटोस नाम से अपनी कलेक्शन लॉन्च की, जिसमें 2015 और 2019 के ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी खास चीजों के अलावा टोटल 75 की मोमेंट्स हैं, जिन्हें NFT में कन्वर्ट किया गया है। इनमें विराट कोहली, MS धोनी, केन विलियमसन, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल और कुमार संगकारा जैसे दमदार क्रिकेटर्स के साथ NFTs भी शामिल हैं। तो कैसी लगी आपको स्पोर्ट्स NFT पर हमारी स्पेशल स्टोरी? To know more such interesting facts, do watch my stories. This is Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to Crypto TV. Have a great day.
हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता और आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अनसुने, अनकहे, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई डिवाइस या मशीन भी नहीं है। अब नाम में टेक्नोलॉजी है तो जरूर ये कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ही होगा, है ना? सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब एक डिजिटल लेजर है। चाहे गांव का छोटा सा बनिया हो या कोई बड़ा बिलियनर, हाउसवाइफ हो या कोई बड़ी हीरोइन, हर कोई अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट हिसाब किताब के लिए जरूर एक लेजर रखता है। पुराने बॉलीवुड फिल्म में आपने जरूर देखा होगा, डकैत बना हीरो काला टीका लगाकर लाला के पास अपनी माँ के गिरवी रखे हुए कंगन छुड़ाने आता है, तो वो लाला के पास सबका लेखा जोखा लिखने वाली जो लाल किताब होती है उसी को खाता बाही यानी कि लेजर कहा जाता है। इसी लेजर को डिजिटली एक मॉडर्न अवतार में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम में और जानवर में अगर कोई फर्क है तो वो ये है कि हम लेजर मेंटेन करते हैं, वो नहीं। चाहे व्यापार हो या व्यवहार, बिना रिकॉर्ड के कुछ काम नहीं होता। दो लोगों ने एक दूसरे को पैसे दिए हो, जमीन बेची हो या फिर 7 जन्म की सबसे बड़ी दुश्मनी का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शादी हो, इस सब को वेरीफाई करने हम इंडिपेंडेंट और विश्वसनीय थर्ड पार्टी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस का स्टैंप और सिग्नेचर लगाने वाले के पास जाते हैं ना। लेकिन फिर भी कई बार फ्रॉड होता है। लैंड के डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर सालों कोर्ट में केस चलते रहते हैं। करप्शन, फ्रॉड और स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। कंप्यूटर और इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल है जहां कोई किसी को कभी धोखा ना दे पाए। मतलब लेजर के मामले में कलयुग के धोखाधड़ी वाले टाइम में सतयुग वाली ऑनेस्टी कैसे मिलेगी? इसी पहेली का हल सबसे पहले मिस्टर डेविड शॉम ने 1982 में ढूंढ निकाला। उन्होंने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने वाली एक सिस्टम बनाई। उसके बाद 1992 में स्टुअर्ट हेबर और स्कॉट स्टोरनेटा ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि हर ट्रांजैक्शन पर टाइम और डेट का थप्पा लग जाए, ताकि कोई तिकड़मबाज चाहकर भी रिकॉर्ड्स में अपनी धोखाधड़ी की कलाकारी ना दिखा सके। बाद में इन्हीं दोनों ने डेविड बेयर के साथ मिलकर 1992 में मर्कल ट्री का यूज करके टैम्पर प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की सिस्टम बनाई। उसके बाद हैल फिनी ने 2004 में रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क RPOW की सिस्टम बनाई। कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर टाइम के साथ साथ नए नए लोग इसमें जुड़ते गए, जैसे निक जोबोनी का बिटगोल्ड और वे डाल की बी मनी। पर बोले तो ये सारे सिस्टम्स के पास डबल स्पेंडिंग के प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अब डबल स्पेंडिंग बोले तो डिजिटल कॉइन्स की कॉपी 24/7 बनती ही रहती है और उसको जितनी बार यूज करना चाहो उतनी बार कर सकते हैं। अब ज्यादा सोचिए मत, आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाते हैं। रिजर्व बैंक की जगह हर कोई अगर घर घर में 500 और 2000 के नोट छापने लग जाए तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डिजिटली स्पीकिंग, इन अ वे ये कुछ इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम थी। फाइनली 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम नाम का एक 9 पन्नों का डॉक्यूमेंट बनाया, जिसमें उन्होंने चॉम से जालसाजी से सुरक्षित करने वाला सिस्टम, स्टोरनेटा हेबर से टाइम स्टैंपिंग वाला सिस्टम, स्टोरनेटा हेबर बेयर का मर्कल ट्री वाला सिस्टम और फिनेकी RPO वाले सिस्टम को मिलाकर एक ऐसा धांसू और टनाटन सिस्टम बनाया जिससे दुनिया भर में लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानने लगे। बेसिकली जब हम लोग मिक्स वेज की सब्जी बनाते हैं तो दुनिया भर की सब्जी उसमें डालकर चटाकेदार डिश बनाते हैं ना, वैसे ही नाकामोटो ने भी सारी पुरानी सिस्टम्स को मिलाकर अपना तड़का डालकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बना डाला
और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने बोला चिंगालाला। अब आप पूछेंगे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सही मायने में कैसे काम आती है? बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा हैक प्रूफ, फ्रॉड प्रूफ और सिक्योर सिस्टम है जिसमें ना तिकड़मबाजी चलती है ना कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट। अब किसको चाहिए कबाब में हड्डी? ब्लॉकचेन ने बोला निकालो इसे। जिस काम को पहले राजा महाराजा और उसके बाद सरकारी कर्मचारी ठप्पा लगाकर करते थे, वही काम आज क्रिप्टोग्राफी नाम के टेक्नोलॉजी से फटाफट हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सब के रिकॉर्ड रखने का खर्चा इतना बढ़ गया था कि मत पूछो। ऊपर से वो रिकॉर्ड टैम्पर प्रूफ भी नहीं था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये कॉस्ट बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड खुद ही रख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खासियत यही है कि कोई भी माइका लाल कितना भी चाहे इसको हैक या टैम्परिंग नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इतना ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ एक्सेस है कि भैया आजकल हर कोई एफिशिएंट तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको शुरू में ही क्लियर करना चाहती हूँ कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और बिटकॉइन इस टेक्नोलॉजी से बना हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट। मान लीजिए कि ब्लॉकचेन अगर पेड़ है तो बिटकॉइन उसका पहला फल है। दोस्तों, आपको जानकर झटका लगेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बर्थ सर्टिफिकेट में उसके पापा के नाम के आगे सातोशी नाकामोटो नहीं बल्कि स्कॉट स्टोरनेटा का नाम लिखा जाता है। जैसे इंटरनेट के इंट्रोडक्शन से ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो टेक्नो रेवोल्यूशन आया था, उससे भी बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन की वजह से आने वाला है। तो जैसे प्लेन में बैठने पर कहते हैं ना, कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तेज गति से हम सब की लाइफ बदलने वाली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ब्लॉकचेन की ABCD? ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल क्रिप्टो टीवी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनीता। आज के लिए आपको कहना चाहती हूँ टाटा बाय बाय सायोनारा, क्योंकि मैं तो चली ब्लॉकचेन के प्लेन में उड़ान भरने। आप चल रहे हो क्या? चलना है तो आ जाइए मेरे साथ और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is OMI. This is like OMG, and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. With only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell and mint these collectibles, whereas they also have a secure storage wallet. The highlight is Mana, Gala, Solana, Bhai Kalana, because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days. And the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is Crazy Coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, Captain America, Black Panther or Iron Man fan and you say, hey Jarvis, buy me my NFT, Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is, OpenSea is another company that allows you to trade NFTs, but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more Crazy Coins with Kunal.
तुम्हाला रईस चित्रपटाचा शाहरुख खानचा फेमस डायलॉग हा माहितच असेल, हम जान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. मला वाटतंय काही लोकांनी या डायलॉगला अक्षरशः मनावर घेतलंय आणि खरंच क्रेझी आणि वियर्ड एनएफटीज म्हणजेच नॉन फंजिबल टोकनचा अक्षरशः बिझनेस सुरू केलेला आहे. नमस्कार, मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा घेऊन आलो आपल्या समोर एक आगीवेगळी आणि विचारांच्या पलीकडची अशी एनएफटीची नवीन लिस्ट. आता मी तुम्हाला अशा 3 एनएफटीज बद्दल सांगणार आहे ज्याबद्दल तुम्ही आयुष्यात कधी ऐकलं नसेल आणि विचारही केला नसेल. चला तर मग सुरू करूया. तर या टॉप 3 क्रेझी एनएफटीच्या लिस्ट मध्ये नंबर 1 वर आहे सेल युअर सोल या नावाची एनएफटी, म्हणजे तुमच्या आत्म्याची एनएफटी. नाही, तुमचे कान नाही वाजत आहेत, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलात. आता एनएफटीज वर सुद्धा आत्माने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलंय. माहित नाही कधी कोणत्या क्लिक सोबत कोणाची आत्मा एनएफटीच्या माध्यमातून तुमच्या जवळ येईल. तुम्हाला माहित आहे की मी थोडासा ड्रामेबाज आहे, पण डोंट वरी, या आत्म्याचं एनएफटीच्या हॉरर सोबत काहीही लेणं देणं नाहीये. हल्लीच एक 21 वर्षांच्या स्टीन बन शेख या नावाच्या डच स्टुडंटवर एनएफटीचे क्रेज एवढं हवी झालं होतं की या भावाने पॉलिगॉनवर आपली स्वतःची सोल म्हणजेच आत्म्याचीच एनएफटी मिंट करून टाकली आहे. एवढंच नाही, या भाईने जगातील सर्वात मोठी एनएफटी मार्केटप्लेस ओपन सीवर आपल्या आत्म्याची एनएफटीला लिस्ट सुद्धा करून टाकलाय. अरे काय चाललंय? अरे कोणीतरी जाऊन या डच स्टुडंटला विचारा की भाई तुझ्या 70 पिढीमध्ये सुद्धा कोणी आत्म्याला बघितलंय का? परंतु हा वेडेपणा इथेच संपत नाहीये मित्रांनो. ज्याने या डच स्टुडंटच्या आत्म्याच्या एनएफटीला 300 युरोज म्हणजे जवळपास 25,000 रुपयांमध्ये विकत सुद्धा घेतलंय. या डच स्टुडंटची सोल ही जगातील सर्वात पहिली ह्युमन सोल म्हणजेच आत्मा आहे ज्याला एनएफटीच्या माध्यमातून विकलं गेलंय. म्हणून या महाशयाने हल्लीच झालेल्या त्याच्या मुलाखतीत आपल्या आत्म्याच्या एनएफटीची मार्केट व्हॅल्यू अंदाजे $3.5 मिलियन म्हणजेच जवळपास 27 करोड रुपये सांगितले आहे. आता यांनी आपल्या सोलच्या एनएफटीची एवढी क्रेझी व्हॅल्युएशन काय म्हणून ठेवली आहे याचं उत्तर बहुतेक या बिचाराच्या आत्म्याला सुद्धा माहित नसेल. अजून एका आपल्या आत्म्याच्या एनएफटी सोबत या डच स्टुडंटने सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट सुद्धा अटॅच केलाय, ज्यामध्ये डिटेलमध्ये डिस्क्राईब सुद्धा केलाय की कशा प्रकारे ओनर त्याच्या आत्म्याचा वापर, त्याची रिसेल किंवा कोणत्या देवी देवताला बळी सुद्धा चढू शकतो. बाप रे बाप. जर तुम्हाला एनएफटीचे सेल ऑफ सोल एग्रीमेंट वाचायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची लिंक सुद्धा अवेलेबल आहे. चला आता बोलूयात दुसऱ्या क्रेझी एनएफटी आणि त्यांच्या अतरंगी अशा क्रिएटर बद्दल. हे असे महाशय आहेत ज्यांना बॉडी हॉरर चित्रपटांचं मास्टर बोललं जातं. वर्ल्ड सिनेमाचे मागील 50 वर्षांचे सर्वोत्तम असणारे क्रिएटिव्ह माइंड, द फ्लाय, डेड रेंजर्स, हिस्ट्री ऑफ व्हायलन्स आणि अपकमिंग विगो मॉर्टनस्टेन स्टारर फिल्म क्राइम्स ऑफ द फ्युचरचे डायरेक्टर मिस्टर डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग, जे आजकाल आपल्या चित्रपटाला घेऊन नाही तर आपल्या रिअल लाईफ बॉडी हॉरर टाइप एनएफटी साठी सध्या हेडलाईन्स मध्ये आहेत. यांच्या एनएफटीचे नाव आहे इनर ब्युटी, म्हणजेच कलेक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स. अहो किडनी स्टोनचे कलेक्शन. अनफॉर्च्युनेटली जसे नाव तशीच त्यांची एनएफटी. डायरेक्टर साहेबांनी आपल्या किडनी स्टोन मध्ये काय नेमकी इनर ब्युटी दिसली की त्याने आपल्या किडनी स्टोनच्या फोटोलाच एनएफटी बनवून टाकली आणि सुपर रेअर नावाच्या क्रिप्टो आर्ट मार्केटप्लेसवर 28 मार्च 2022ला किडनी स्टोनच्या फोटोचीच एनएफटी रिलीज सुद्धा करून टाकली. अहो भला किडनी स्टोनला जगाला दाखवून विकण्यासारखी का गोष्ट आहे का? पण लोक एनएफटी बनवून विकतायत आणि असेही काही नमुने आहेत जे अशा एनएफटीला विकत सुद्धा घेत आहेत. खरं तर क्रॉनेनबर्गने या अगोदर सप्टेंबर 2021 मध्ये द डेथ ऑफ डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग नावाची शॉर्ट फिल्मला एनएफटी बनवून नॉन फंजिबल टोकनच्या जगात पहिल्यांदा सुरुवात केली होती. ही 1 मिनिटाची शॉर्ट फिल्म सुद्धा खूप वेळ होती, ज्यामध्ये डेव्हिड क्रॉनेनबर्ग आपल्या स्वतःच्या डेड बॉडीकडे पाहतात आणि नंतर आपल्या शरीरावर चादर ओढून बाजूला झोपून जातात. आता या वेड एनएफटीचा नेमका काय अर्थ काढायचा, कारण कोणी या एनएफटीला $90,000 म्हणजेच अराउंड 69 लाखांमध्ये विकत घेतलं होतं. मित्रांनो, हे सुपर श्रीमंत आणि सुपर क्रिएटिव्ह लोकांचे फंड आहे बाबा, आपल्या डोक्याच्या बाहेर आहेत. 1 मिनिटाच्या शॉर्ट फिल्म मध्ये 69 लाख रुपये उडून टाकले. माहित नाही यांच्या किडनी स्टोनची एनएफटी किती मध्ये विकली जाईल. ही किडनी स्टोन ऍट द एंड ऑफ द डे खरी तर आहे, परंतु आपली पुढची एनएफटी आहे एका अशा रॉक बद्दल जे रियालिटी मध्ये अस्तित्वातच नाहीये. तरी एक क्रेझी एनएफटी लव्हरने या व्हर्च्युअल रॉकच्या एनएफटी साठी अक्षरशः $1.3 मिलियन म्हणजेच अराउंड 10 करोड रुपये खर्च केलेत. आणि या एनएफटीचे नाव आहे क्लिप आर्ट ऑफ इथर रॉक. खरं तर ही कार्टून रॉकची जेपॅग इमेज जगात फक्त 100 आहेत, ज्याला 2017 मध्ये क्रिप्टोपंक्सच्या नंतर ॲज अ इथेरियम ब्लॉकचेन कलेक्टिबल एनएफटी लॉन्च केलं गेलं होतं.
बाईंग, कलेक्टिंग आणि सेलिंगच्या व्यतिरिक्त याची कोणतीही रिअल वर्ल्ड व्हॅल्यू नाही आहे. परंतु याला ट्रॉन ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो करन्सीचे फाउंडर जस्टिन सनने फक्त आपली कॉलर टाईट करून इम्प्रेशन जाणण्यासाठी विकत घेतलं होतं. भाई, मोठी लोक, मोठ्या वार्ता, व्हर्च्युअल रॉकच्या फोटोग्राफला करोडोंमध्ये विकत घेत आहेत. वाव. आम्हाला जर साधं किचनमध्ये नवीन मार्बल बसवायचं असेल तरी 10 वेळा विचार करावा लागतो. एनिवेज, आतासाठी ही होती माझी 3 क्रेझी NFTs. अशाच प्रकारच्या अतरंगी NFTची अजून एक नवीन क्रेझी लिस्ट घेऊन मी संदीप कासालकर पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो TV. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी. माइंड. आमतौर पर कहा जाता है कि उम्र के साथ तजुर्बा आता है और मिलियनेयर बनने में बाल सफेद हो जाते हैं. वेल, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के यंगेस्ट मिलियनेयर एरिक फिनमैन ने तमाम बातों को गलत साबित कर दिया है. एरिक फिनमैन ने 12 साल की उम्र में वो फैसला लिया जो 30 साल या 40 साल की उम्र में लोग नहीं ले पाते, और 18 की उम्र में एरिक ने वो मुकाम हासिल किया जिसे हासिल करने में लोगों की उम्र बीत जाती है. चलिए, अब ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट नहीं करते और आपको सुनाते हैं एरिक की कामयाबी की कहानी. 12 साल की उम्र में एरिक को उसकी दादी ने दिए $1000 और किसी आम बच्चे की तरह एरिक ने उन पैसों से ना तो स्मार्टफोन खरीदा और ना ही कोई गेमिंग कंसोल. इनफैक्ट, आप सुनकर हैरान होंगे कि एरिक ने 12 साल की उम्र में उन $1000 से बिटकॉइन खरीदा. महज 2 सालों में बिटकॉइन की कीमत $1200 तक पहुंच गई. ऐसे में एरिक के इरादों को और मजबूती मिली. तब एरिक ने बिटकॉइन से कमाए प्रॉफिट को बेचकर बोटैंगल में उन पैसों को लगाने का फैसला किया. बोटैंगल एक ऐसा वेब वेंचर है जो वीडियो ट्यूटरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है. एरिक और बोटैंगल दोनों के पोटेंशियल को परखने में इन्वेस्टर्स को ज्यादा वक्त नहीं लगा और इन्वेस्टर्स ने एरिक के सामने 2 ऑप्शंस रख दिए. या तो $1,00,000 में बोटैंगल को बेच दें या फिर 300 बिटकॉइंस में. एरिक ने क्या चुना उसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं. जी हाँ, एरिक ने एक बार फिर अपना सब कुछ बिटकॉइन पर दांव पर लगा दिया. और लगाते भी कैसे नहीं, एरिक ने अपने पेरेंट्स के साथ एक डील जो की थी कि अगर वो 18 की उम्र तक मिलियनेयर बन गए तो वो कॉलेज नहीं जाएंगे. और वही हुआ. एरिक दुनिया के यंगेस्ट मिलियनेयर बन गए. CNBC को दिए एक इंटरव्यू में एरिक ने कहा कि उसने कर दिखाया और अब उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा. एरिक ने ये तक कहा कि जिस तरह से एजुकेशन का सिस्टम स्ट्रक्चर है वो किसी को भी कॉलेज रेकमेंड नहीं करेंगे. इससे कहीं ज्यादा बेहतर है इंटरनेट जो एब्सोल्युटली फ्री है और वहाँ YouTube और विकिपीडिया के थ्रू कई गुना ज्यादा पढ़ाई की जा सकती है. नो डाउट्स, वो एरिक जो कभी कॉलेज नहीं गए, आज उनके पास 400 से ज्यादा बिटकॉइंस है और उनकी टोटल वर्थ है $5 मिलियन. अमेजिंग ना. इसी तरह की रियल लाइफ स्टोरीज कितना मोटिवेट करती है ना. रियली, काश मैं 18 साल की उम्र में वापस लौट पाती और कुछ ऐसा ही स्टेप ले पाती. Where there is will, there is a way. We will keep inspiring you with such stories. I am Ruchi Sharma. Keep watching Crypto TV. हाय गाईज, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. मागच्या भागात आपण पाहिलेलं नेमकं ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय. आज आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला इन्व्हेंट कोणी केलं.
ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सातोशी नाकामोटो यांनी सन 2009 मध्ये इन्व्हेंट केलं, कारण ते क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइनमध्ये पब्लिक ट्रान्झॅक्शन लेजर हे त्यांच्या हिशोबाने करू शकतील. तसेच हे सर्व करण्याच्या पाठी सातोशी नाकामोटो यांचे मूळ उद्देश होता की ते एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर द ब्लॉकचेन बनवणार होते, की ज्याद्वारे लोकांना त्यांच्या पैशांचे कंट्रोल करण्याची क्षमता देते, की ज्यामुळे कोणीही थर्ड पार्टी अथवा कोणतेही सरकार सुद्धा या पैशांना ऍक्सेस किंवा मॉनिटर करू शकणार नाहीत. सातोशी जे बिटकॉइनचे क्रिएटर आहेत ते अचानक 2011 ला गायब झाले आणि त्यांनी आपल्या पाठी बिटकॉइनच्या युजर्ससाठी अपडेट आणि इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सोडून गेले. अनेकांना असं वाटतं आहे की सातोशी नाकामोटो नावाचा असा कोणताच व्यक्ती नाही आहे, हे तर फक्त काल्पनिक कॅरेक्टर आहे आणि याविषयी कोणाकडेही खरी माहिती अद्याप उपलब्ध नाही आहे. बिटकॉइनसाठी ब्लॉकचेनची इन्व्हेन्शन एक अशी प्रथम डिजिटल करन्सी आहे की जी ट्रस्टेड सेंट्रल ऑथॉरिटी किंवा सेंट्रल सर्व्हर्सच्या मदतीशिवाय डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करू शकते. यासाठी ही ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी दुसऱ्या अनेक ऍप्लिकेशनसाठी इन्स्पिरेशन सुद्धा राहिली आहे. आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी का माहिती असली पाहिजे? याचे 3 मुख्य कारण आहेत की का आपल्याला ब्लॉकचेन विषयी जाणून घेतले पाहिजे. नंबर 1, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला पब्लिकली एक्झिस्ट करण्याची काहीही गरज नाही आहे. हे प्रायव्हेटली सुद्धा एक्झिस्ट करता येतं, जेथे नोड्स केवळ कोणत्या एका प्रायव्हेट नेटवर्कवर सिम्पली पॉइंट्स असतात आणि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्युटेड लेजर नुसार काम करते. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन हे खूपच प्रेशरमध्ये आहे, कारण त्यांना रेग्युलेटरी कंप्लायन्स डेमॉन्स्ट्रेट करावं लागत आहे आणि त्यामुळे खूप सारे इन्स्टिट्यूशन ब्लॉकचेनला इम्प्लिमेंटेशन करत आहेत. सिक्युअर सोल्युशन ज्याप्रमाणे कंप्लायन्स कॉस्टला काम करण्यासाठी ब्लॉकचेन एक खूप मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बनवू शकते. नंबर 2, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीची ओळख फायनान्सपेक्षाही जास्त आहे. याला कोणत्याही मल्टी स्टेप ट्रान्झॅक्शन जेथे ट्रेसेबिलिटी आणि विजिबिलिटीची गरज आहे तेथे ह्याला अप्लाय करता येऊ शकतं. सप्लाय चेन एक असं नोटेबल केस आहे जेथे ब्लॉकचेनचा वापर लेव्हरेजला मॅनेज करण्यासाठी आणि साइन कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि प्रोडक्ट प्रोव्हिनन्सला ऑडिट करण्यासाठी करता येऊ शकतं. यासोबतच याचा वापर वोटेशन प्लॅटफॉर्म मध्ये सुद्धा टायटल्स आणि डीड मॅनेजमेंटसाठी करता येऊ शकतं. जसजसे डिजिटल आणि फिजिकल वर्ल्ड्स कॉन्व्हर्ज होत आहेत तसतसे ब्लॉकचेनची प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन पण हळूहळू वाढत आहे. नंबर 3, ब्लॉकचेनची एक्सपोनेन्शियल आणि डिस्क्रिप्टिव्ह ग्रोथ तेव्हा येऊ शकते जेव्हा पब्लिक आणि प्रायव्हेट ब्लॉकचेन्स एक साथ कॉन्व्हर्ज करेल. एक सिक्युअर, ऑडिटेबल आणि व्हर्च्युअल वेव्ह मध्ये येण्यासाठी एक असा इकोसिस्टम मध्ये जेथे फर्म्स, कस्टमर्स आणि सप्लायर्स एकत्र मिळून कोलॅबरेट करू शकतात. तर आपण पाहणार आहोत ब्लॉकचेन हे किती सुरक्षित आहे. तसं पाहिलं तर इंटरनेटवर कोणतीही गोष्ट ही सुरक्षित नाही आहे, पण जर का आपण ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी विषयी म्हटलं तर इतर टेक्नॉलॉजीच्या तुलनेने खूप जास्त पटीनेही अनहॅकेबल आहे. ब्लॉकचेन मध्ये कोणताही ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी संपूर्ण नेटवर्कचा सर्व नोड्सला ऍग्री करावं लागेल, तेव्हा कुठेतरी जाऊन ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड होईल. येथे कोणतेही सिंगल एंटिटी हे सांगू शकत नाही की ट्रान्झॅक्शन झाले आहे की नाही. याला हॅक करण्यासाठी आपल्याला बँक सारखं फक्त एक सिस्टीमला हॅक न करता संपूर्ण नेटवर्क मधील सिस्टीम्सला हॅक करावं लागेल. म्हणून ह्या टेक्नॉलॉजी मध्ये हॅकिंग करणं एवढं सोपं नाही. जवळजवळ सर्व ब्लॉकचेनची कॉम्प्युटिंग रिसोर्सेस खूप जबरदस्त आहेत, कारण हे ते एक संगणक नसून नेटवर्क मध्ये अनेक संगणक जोडले गेलेले आहेत. 1990 मध्ये जेव्हा इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आपला नेटिव्ह स्टेज मध्ये होते, ईमेल तेव्हा एक सर्वात मोठं आणि प्रथम ऍप्लिकेशन होतं. पण नंतर नवीन ऍप्लिकेशन ज्याप्रमाणे वेब ब्राउझर्स आले, वेबसाइट्स तेव्हा खूप पॉप्युलर झाले. लोक त्यानंतर चॅट सॉफ्टवेअर जसे स्काइपचा खूप जास्त प्रमाणात वापर करत होते. जर आपण आता बद्दल विचार केला तर आपण आपल्या मोबाईलमध्ये देखील बरेच ऍप्लिकेशन इंटरनेटचा वापर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जेव्हा ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी नवीन आली, बिटकॉइन सुद्धा
ईमेल सारखं सर्वात प्रथम मोठं मेजर ऍप्लिकेशन होतं जे या टेक्नॉलॉजीला वापर करत होतं. दुसऱ्या क्रिप्टोकरन्सीजने या ट्रेंडला नंतर फॉलो केलं. आता ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीला सुद्धा सिक्युरिटी, ऑनलाईन वोटिंग इत्यादी सारखं बरेच ऍप्लिकेशन मध्ये वापर केले जातात. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया क्रिप्टो विषयी नवीन स्टोरीज घेऊन. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. मी वैभवी सावंत, आपली क्रिप्टो फ्रेंड. तुर्तास येथेच थांबते. धन्यवाद. मेटावर्स और एनएफटी मेनिया ने ग्लोबली सेलिब्रिटीज की दुनिया में तूफान मचा दिया है. एक्टर्स हो या आर्टिस्ट, मॉडल्स हो या फिर सिंगर, सभी इस रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं. ऐसे में इंडियन सिंगर्स भला कैसे पीछे रहते? कुमार सानू, सोनू निगम, कैलाश खेर से लेकर एसपी बालासुब्रमण्यम तक से जुड़ी एनएफटीज सुर्खियां बटोर रही हैं. तो वहीं दिलेर मेहंदी ने सीधे मेटावर्स पर कब्जा जमा लिया है. वहां लैंड खरीदकर दिलेर जबरदस्त खलबली मचा रहे हैं. चुरा के दिल सभी का चले ये चले. जी हाँ, 90s में इनकी आवाज ने सभी को क्रेजी कर दिया था. तब शायद ही कोई रोमांटिक सॉन्ग हो जिसमें इनकी आवाज का जादू न घुला हो. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग ऑफ रोमांस कुमार सानू की, जिनकी रुमानी आवाज ने ना जाने कितने दिलों को पहले प्यार का एहसास कराया. पॉपुलर मेलोडी किंग इस बार अपनी एनएफटी कलेक्शन के चलते सुर्खियों में है. हाल ही में उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो, अनरिलीज सॉन्ग के ऑडियो और कुछ क्लिप्स के अलावा अपने फर्स्ट ऑडिशन और ऑटोग्राफ्ड डिजिटल मेमोरेबलिया की एनएफटी सीरीज लॉन्च की है. कुमार सानू की इस एनएफटी कलेक्शन में उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स के साथ साथ उनके घर के अंदर की खास झलक भी दिखेगी. ये एनएफटी एक्सक्लूसिवली फ्लेमिंगो एनएफटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. इसकी खास बात है, इससे होने वाली कलेक्शन का 5% एनजीओ को डोनेट किया जाएगा. एनएफटीज यूनिक एसेट होते हैं और इसीलिए अब ट्रिब्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं. तेलुगु, तमिल, कन्नडा, हिंदी और मलयालम फिल्म्स में 40,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज से सजाने वाले लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम के गुजरने के 6 महीने बाद उनके अनरिलीज सॉन्ग को बतौर एनएफटी उनके फैंस के लिए लॉन्च किया गया. उनका यह आखिरी सॉन्ग डिजी नूर नाम की लीडिंग एंटरटेनमेंट नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस पर ऑक्शन किया गया. विश्वरूपा दारी सनम नाम की इस एल्बम को लीडिंग म्यूजिक लेबल सिम्फनी रिकॉर्ड्स के साथ रिकॉर्ड किया गया है. इस एनएफटी से जुड़ी खास बात है कि इसके बायर को कॉपीराइट का 51% मिलेगा. साथ ही उनके पास इस सॉन्ग को अडेप्ट और अपने मुताबिक रिप्रोड्यूस करने के राइट्स भी होंगे. तो वहीं इन सब के बीच मेटावर्स की दुनिया में धूम मचाने वाले इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के पहले पॉप स्टार दिलेर मेहंदी ने मेटावर्स में लैंड खरीदा है, जिसे उन्होंने नाम दिया है बल्ले बल्ले लैंड. सुनने में आ रहा है कि इस लैंड की एंट्री पर उनका एक जाइगैंटिक गोल्डन स्टैच्यू होगा, जिसके इर्द गिर्द बाकी पॉप स्टार और आर्टिस्ट अपने कॉन्सर्ट्स होस्ट कर पाएंगे. दिलेर इस प्लेटफॉर्म के जरिए नए टैलेंट के साथ साथ पंजाब की म्यूजिक कम्युनिटी, सूफी, पॉप म्यूजिक और बॉलीवुड को बढ़ावा देना चाहते हैं. दरअसल दिलेर ने कुछ महीनों पहले पार्टी नाइट पर एक कॉन्सर्ट किया था. अपनी इस परफॉर्मेंस को उन्होंने इतना एंजॉय किया कि उसकी मौजूदगी हमेशा बनाए रखने के लिए पार्टी नाइट के साथ मिलकर बल्ले बल्ले लैंड क्रिएट कर दिया दिलेर ने. दिलेर इतने पर ही नहीं रुके. उनके इस बल्ले बल्ले लैंड पर स्टोर्स भी होंगे जहां फैंस स्पेशल मर्चेंडाइज की एनएफटी खरीद पाएंगे. एनएफटी फ्रेंजी में शामिल बड़े बड़े नामों में से एक है पॉपुलर सिंगर सोनू निगम का नाम, जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एनएफटी सीरीज लॉन्च करने वाले पहले सेलिब्रिटी सिंगर हैं. सोनू ने इस एनएफटी कलेक्शन को लंदन में लॉन्च किया था. उसमें उनकी जर्नी और गानों के अलावा उनके लिखे हुए लिरिक्स और उनकी सिंगल हॉल ऑफ फेम की एनएफटी भी शामिल है.
सोनू ने न्यू एज डिजिटल एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी जेट सिंथेसिस के साथ मिलकर ये NFT कलेक्शन लॉन्च की थी। और अब बात एक ऐसे आर्टिस्ट की जिनकी प्लेबैक, पॉप और रीजनल सॉन्ग्स की फैन फॉलोइंग देश में नहीं विदेशों में भी फैली हुई है। लेकिन खास तौर पर सूफी सॉन्ग्स के मामले में उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। इंडियन सूफी किंग कहे जाने वाले कैलाश खेर ने अपनी NFT कलेक्शन के लिए पॉपुलर NFT मार्केटप्लेस OpenSea को चुना। कैलाश खेर की ये NFT सूफियाना अंदाज में रंगों और संगीत के सुंदर सपने जैसी है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है ड्रीम्सकेप। संगीत सरहदों का मोहताज नहीं, संगीत की भाषा ही ऐसी है जो हर किसी को जोड़ती है, हर किसी के दिलों के तार छेड़ती है। शायद यही वजह है कि एक एक कर सभी सिंगर्स अब NFT और मेटावर्स की दुनिया की तरफ रुख कर रहे हैं। कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। फिलहाल NFT और मेटावर्स भी जबरदस्त बूम पर है। ऐसे में इसका फायदा उठाना तो लाजमी है। तो कैसी लगी आपको म्यूजिक NFT पर मेरी यानी रुचि की ये स्पेशल स्टोरी? अच्छी लगी? Then do watch all my special stories. See you soon with yet another interesting story. Till then, goodbye, take care and keep watching Crypto TV. Hi, this is me, Yashasvi Acharya. DeFi or Decentralized Finance is an umbrella term representing a collection of financial products and services created and offered over the distributed ledger technology. The intermediation of financial institutions is denecessitated by these protocols with the use of cryptographic proof of transactions. These protocols also make use of advanced tools like programmed smart contracts and tokenization to design innovative financial products offered to participants of the blockchain peer-to-peer network. The DeFi ecosystem appeared with smart contract-enabled blockchain platform Ethereum going live in 2015. And today, by end of November 2021, has proliferated to more than 250 protocols with over $100 billion in total value logged in these protocols. The DeFi ecosystem is rapidly innovating and emerging with wonderful new products, which is disrupting the financial products and services marketplace. These products include stablecoins, decentralized exchanges, decentralized lending and borrowing platforms, decentralized asset management tools, decentralized autonomous organizations or DAOs and governance, insurance products, derivatives products, margin trading products, payment solutions, staking solutions, KYC and identity solutions, tokenization, yield aggregation platforms, prediction markets, infrastructure and developing tooling products, analytics services, among many such offerings. The innovation in the DeFi segment is prolific and exciting. This segment is evolving rapidly as better and better protocols are coming up with each innovative iteration and market offering in any particular segment. The blockchain projects are also evolving, and so are the applications in the form of DeFi. The returns of the DeFi instrument are quite handsome when compared to similar traditional finance products and services. The traditional financial product and service marketplace is also referred as CeFi, acronym for centralized finance. This is possible because the smart contracts and decentralized consensus reduce the counterparty risk, monitoring and arbitration cost, and also the cost of intermediation. The programmable nature of decentralized applications also provides the flexibility to order the best possible combinations of these instruments to maximize returns.
This feature is given a very interesting terms. It is called money Legos, indicating that parts can be joined together in a preferred order of precedence depending on the comfort of the user. Oracles on the decentralized ecosystem connect the real-world trigger events to smart contracts, enabling conditional execution of the same. This enables creation of derivatives, prediction markets, and a lot of other possibilities. Tokenization of the real-world assets helps granularization of high-value assets, helping address a wider investor base and also brings them into digital realm, transcending the geographical boundaries, helping cater to a larger digital global audience. Programmability of the decentralized applications in the financial realm help create bespoke products for the users, providing for many interesting innovations in this area. Currently, as the craze of DeFi grips and drives the imagination of investors, we can say we are for some very interesting times in this area. However, along with innovation suitably follows a word of caveat, the DeFi segment is not regulated at the moment. The regulatory framework moves slowly to catch up with the innovation, and it's the same which is happening in this area. Therefore, users have to be extremely careful with their research of the DeFi project before participating into it and availing its benefits. Choosing on the basis of returns only may not be a judicious approach at the moment. One must do your own research meticulously and observe the proliferation of any project closely before participating in it. One may also avail services of several audit companies who specialize in auditing and security and other features of the smart contracts published by project. If one covers the risk well, DeFi is one segment which would provide the early adopters with exciting returns. That's all for today. This is me, Yashasvi Acharya, signing off. Have a really good day. Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal.
Algorand, the future of finance on blockchain. Hello and welcome to Crypto TV. I am your host Parvati Nirman, and today I am going to take you on a sky ride of Algorand. Now you would think, why is it a sky ride? How a blockchain technology can be connected to a sky ride? Well, then let me tell you, Algorand is the latest technology buzz in the market as Drone Racing League DRL is going crypto. DRL has announced to launch its play-to-earn crypto game on Algorand blockchain. So there begins the ride. Together, DRL and Playground Labs will build a virtual version of the Drone Race League on Algorand. And not just that, Algorand or Algo, being the layer 1 blockchain for decentralized and traditional finance, has added direct fiat payment channels into their network by integrating with Alchemy Pay, which is ACH. Alchemy Pay is a payment solutions provider that connects fiat and crypto economies, and its global merchant network now supports Algorand's Algo token for payments in 65 countries. Even more, Marshall Island is adopting Algorand for the issue of its sovereign currency. So the Marshall Islands is the first country to adopt a national digital currency built on Algorand blockchain. Algorand's Algo token ranked 20th on the Forbes list of most influential digital assets, has the 18th highest market cap of any cryptocurrency, hovering around $11 billion as of 5th Jan 2022. So we know now how Algorand is one of the fastest growing blockchain technology today. Let's find out a little bit of the history of Algorand. Algorand was founded by Silvio Micali, a computer science professor at the Massachusetts Institute of Technology. Silvio received the 2012 Turing Award for his innovative contributions in cryptography, blockchain, and cryptocurrency protocols and electronic cash, making him a leading mind in the cryptocurrency and blockchain industry. Silvio Micali has been a professor of cryptography since 1980s. Around 2015, he started researching how to create a better blockchain technology instead of criticizing Bitcoin. Well thought. He was then approached by Nikolai Zeldovich, an MIT professor, and based on the success of testing the new blockchain technology with different simulated transactions, the Algorand company was incorporated in 2017. Algorand's white paper was co-authored in 2017 by Silvio Micali and Jing Chan, a professor at Stony Brook University. This blockchain is particularly carbon negative, as it operates on pure proof-of-stake network, which is the need of the hour as everyone is eyeing green blockchain initiatives. That's true. So well, in today's time, the Algorand protocol is chosen for its speed, scalability, security, and its ability to effectively implement the required compliance controls and the transactional finality needed for the digital currency. Just like other competitors like Solana, Cardano, Algorand intends to displace Ethereum as the primary blockchain home for decentralized apps, DeFi projects, and crypto-native games of the future, or in crypto speak, the metaverse. So what exactly is this Algorand and how does this new blockchain technology functions? Well, Algorand serves as the infrastructure layer on which we can build crypto networks, decentralized apps, and crypto tokens. It is one of the most prominent layer 1 blockchains available in the ecosystem and include fungible, non-fungible, restricted fungible, and restricted non-fungible assets. Yes, Algorand is the new gen blockchain and is bridging the decentralized and centralized world of finance. Algorand has the biggest advantage as higher transaction speed. It is officially launched in 2019 with its native crypto as Algo with a maximum supply of 10 billion Algo. Algorand maintains a block explorer which keeps an official count of its circulating supply of Algo.
Algorand also enables users to create smart contracts and tokens that can represent both new and existing assets. The code for Algorand is open source and can be cloned, copied, otherwise used in private or permissioned blockchains. As we all know, all cryptocurrencies work on consensus mechanism to approve or disapprove every user-initiated transaction on its network. Legacy cryptos like Bitcoin, Ethereum work on POW, that is, proof of work mechanism, which requires huge computing power and hence consumes a lot of electricity, while Algorand uses pure POS, which is pure proof of stake, which is less power intensive. And how is this pure POS system works? Well, it randomly selects committees from the participating algo holders to validate and approve the next block in the chain. This randomization is the result of unique cryptographic tool called VRF, which is verifiable random function. And pure refers to the users not having to lock up or bond their algos to participate in this process. So to summarize, what sets Algorand apart is its speed and advanced capabilities, as it's fast, low cost, decentralized, carbon negative, and has advanced smart contract capabilities. Algorand can process thousands of transactions per second with instant finality and with transaction fees of fraction of a penny, whereas other blockchain can be much more expensive. So that's all from my side on Algorand blockchain technology. I am Parvati Narban signing off for now. See you again very soon with more technological facts and developments. Till then, keep watching Crypto TV. हाय गाईज, क्रिप्टो टी व्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. सोलानाचे सर्वात खास फीचर्स विषयी म्हटलं तर ती आहे त्याची ट्रान्झॅक्शन स्पीड आणि कमीत कमी असणारी ट्रान्झॅक्शन फीज. मला माहीत आहे की आपल्याला वाटत असेल की मी फक्त सहजच सांगते आहे. चला तर मग सुरू करूया सोलाना आणि इथिरियमची कंपॅरेटिव्ह स्टडी आणि सोबत जाणून घेऊया काही गोष्टी. फर्स्ट, जेथे सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स 700हून अधिक आहेत, तेथे इथिरियम व्हॅलिडेटर्स 11,000हून अधिक आहेत. त्यामुळे हा पॉइंट इथिरियमला केला. सेकंड, लेटेन्सी म्हणजेच युजर रिस्पॉन्स मध्ये सोलानाची एफिशियन्सी 0.4 सेकंड्स आहे. तिथे इथिरियम युजर रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनिट्स आहे. म्हणजे हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 3, एका बाजूला सोलाना आपल्या युजर्सला 50,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंड अलाव करतात, तर दुसऱ्या बाजूला इथिरियमचे युजर्स एका सेकंडमध्ये फक्त 15 ट्रान्झॅक्शन करू शकतात. म्हणजे पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 4, आता सर्वात इंटरेस्टिंग पॉइंट, जेथे सोलानाची पर ट्रान्झॅक्शन फी फक्त $0.0015 आहे, त्यात इथिरियम आपल्या युजर्सला पर ट्रान्झॅक्शन $15 चार्ज करतात. मग पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 5, सोलानावर आतापर्यंत एकूण 15 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत, पण इथिरियमवर आतापर्यंत फक्त 1.07 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत. हा पॉइंट सुद्धा गेला सोलानाला. यावरून स्पष्टपणे सिद्ध होतं की सोलाना हा विनर आहे. सोलानाचे स्पीड विषयी याचे फाउंडर अॅनाटॉली यानकोवेन्को यांनी 17 नोव्हेंबर 2017ला व्हाईट पेपरमध्ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री नावाच्या एका टेक्निकला डिस्क्राईब केलं आहे की तुम्हाला तुमचे सोलाना टोकन डेलिगेट करावे लागतील किंवा टोकन एका व्हॅलिडेटरसह लॉक करून ठेवावे लागतील.
ज्यावर तुम्हाला रिटर्न देखील मिळेल. या टेक्निकनुसार अननोन कॉम्प्युटर जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करत नाहीत त्यांच्यामधील वेळेला ट्रॅक केलं जातं. खरं तर अॅनाटॉलीने बऱ्याच वेळापासून बिना क्लॉक वाली ब्लॉकचेन सिस्टीम्स जसे की बिटकॉइन आणि इथिरियमला स्टडी केलंय. नॉर्मली ही सिस्टीम्स लार्ज स्केल वर वर्ल्ड वाईड पर सेकंड 15 पेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन नाही करू शकत. जेव्हा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टीम ज्याप्रमाणे विजाला 65,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंडची रिक्वायरमेंट असते, आपल्याला या स्टडीमुळे अॅनाटॉलीला एक गोष्ट समजली की क्लॉक शिवाय ही सिस्टीम्स ग्लोबल पेमेंट सिस्टीम किंवा ग्लोबल सुपर कॉम्प्युटर नाही बनू शकत. जेव्हा अॅनाटॉलीने असे कॉम्प्युटर्स जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करू शकत नाहीत त्यांना एका म्युच्युअल टाइम सोबत अग्री करण्याचा जो प्लॅटफॉर्म होता त्याला अखेरीस सॉल्व करून टाकले. त्यांना माहीत होतं की त्यांची 40 वर्षाची डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम रिसर्चला ब्लॉकचेन या दुनियेमध्ये इंट्रोड्यूस करण्याची आता वेळ आली आहे. त्यामुळे परिणामी याचे क्लस्टर फक्त 10 पटीने, 100 पटीने किंवा 1000 पटीने नसून तब्बल 10,000 पटीने वाढले आहेत. सोलाना प्रोटोकॉलमध्ये POH म्हणजे प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक मेन कॉम्पोनंट आहे. POH बल्क ऑफ ट्रान्झॅक्शनची एक प्रोसेसिंग करतात. सक्सेसफुल ऑपरेशन सोबत त्यांना प्रोसेस करताना पास झालेल्या वेळेला सुद्धा रेकॉर्ड करतात आणि याप्रमाणे या ब्लॉकचेनला ट्रस्टलेस नेचर एन्शोर करतात. सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स पूर्ण नेटवर्कमध्ये आपली ओव्हरऑल होल्डिंगनुसार निवडले जातात. म्हणून ज्यांच्याकडे जेवढी जास्त होल्डिंग तेवढेच त्याचे व्हॅलिडेटर बनण्याचे चान्सेस असतात. याप्रमाणे ही स्ट्रॅटर्जी एन्शोर करत असते की जी लोक नेटवर्क होल्ड्समध्ये पूर्णपणे वेस्टेड आहे त्यांना ही पोझिशन मिळेल. जेव्हा कोणी व्हॅलिडेटर कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनला अप्रूव्ह करून ब्लॉकचेनमध्ये ॲड करतात तेव्हा त्याला ह्यासाठी रिवॉर्ड मिळत असतात. आणि जी लोक व्हॅलिडेटर नाही आहेत ती लोक पण कुणा दुसऱ्या व्हॅलिडेटरला आपल्या होल्डिंग्सला डेलिगेट करून अगदी इझिली प्रॉफिट कमवू शकते. POH प्रोसेसला मॉनिटर करण्यासाठी प्रूफ ऑफ स्टेक म्हणजेच POS कॉन्सेन्ससला यूज केलं जातं. सोलानाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पाहत रहा क्रिप्टो TV विथ युअर फेवरेट होस्ट वैभवी सावंत. Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is next level crazy. It's called Shiba Inu, also known as Sheep. It's a coin based on a dog's image. Oh, that's it. This coin inspired millions of people into it. Yeah, millions of people. Thanks to the hype created courtesy tweets of Mr. Elon Musk. Yeah, the guy who launched rockets to the moon. The highlight is one guy risked $8,000 into this coin when it launched and landed up being a billionaire. You know what's even more crazy? The founder of Ethereum is the guy who apparently promoted Sheep. Rumors say he even provided liquidity. All this made the price almost head to the moon. But then he also decided to burn 90% of his sheep holdings and give away balance 10% to charity. He took this step because he didn't want to be the locus of power. Another highlight is 20% of sheep is owned by whales. These whales are the heavy wallet holders, also where the large money bags are. So the real question is, will this a meme coin, a coin with a dog's pretty face, and a large community of investors take this to the moon without any utility? Only time will tell, and until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal.
अरे सुनिए ना, जरा पीछे से शुरू करते हैं. हाँ, महबूबा महबूबा. डोंट वरी गाइस, मेरी खिसकी नहीं है. मैं महबूबा का नाम इतनी बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारी सेकंड क्रिप्टो क्वीन का नाम है रोया महबूब. हाय गाइस, मेरा नाम है यशस्वी और इस खास सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? क्वीन ऑफ क्रिप्टोस की. और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ रोया महबूब के बारे में. इनकी अचीवमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड की विमेन के लिए एक इंस्पिरेशन है क्योंकि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करती हैं, जहां तालिबान के डर से लड़कियां ABCD पढ़ने तक स्कूल नहीं जा सकती, आवाज उठाकर बात नहीं कर सकती हैं. ऐसी देश में टेक कंपनी का CEO बनना कौन छोटी बात नहीं है, क्या समझे? रोया महबूब अफगानिस सिटाडेल सॉफ्टवेयर कंपनी की फाउंडर भी हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविस्ट भी हैं. इनकी कंपनी की 50% से भी ज्यादा कर्मचारी वैसे लेडीज हैं. अनफॉर्चुनेटली सितंबर में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को फिर से टेक ओवर कर लिया था, मिस रोया महबूब को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था. लेकिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए लड़ना नहीं छोड़ा. तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की औरतों के पास ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट का भी एक्सेस नहीं था. इसलिए मिस रोया महबूब ने अपने अफगानी एम्प्लॉयज को बिटकॉइन से सैलरी देना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, मिस महबूब डिजिटल सिटीजन फंड यानी कि DFC की प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर भी हैं. बॉस लेडी. अगर DCF की बात करें तो ये एक ऐसा NGO है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की लड़कियों और औरतों को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के बारे में एडुकेट करने के लिए काम करता है. ब्रावो मिस महबूबा, ब्रावो. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बिटकॉइन क्वीन. इनका नाम है अलकलानी एतरेलेंगे. वैसे काफी टंग ट्विस्टिंग नाम है ना? डोंट वरी, जितना टंग ट्विस्टिंग इनका नाम है उतनी सिंपल एंड स्ट्रेट इनकी मनी मेकिंग स्ट्रैटेजीज है. वैसे अलकलानी, जिनको लोग प्यार से बोत्सवाना की बिटकॉइन लेडी भी कहते हैं, ये टाटा बिरला, अंबानी, एलन मस्क की तरह कोई बड़ी प्लेयर तो नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में इनका नाम इसलिए है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस फैला रही हैं. बोत्सवाना जैसे अफ्रीका की डेवलपिंग कंट्रीज में पढ़ते पढ़ते ये लेडी अपनी फैमिली के लिए ऑनलाइन साइड इनकम कमाने के तरीके ढूंढ रही थी कि तभी इनकी नजर जो है वो बिटकॉइन के ऊपर पड़ी और इसके बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू किया. बैठे बैठे इतनी रिसर्च कर डाली कि इन्होंने अक्टूबर 2013 में बोत्सवाना का फर्स्ट बिटकॉइन मीट ऑर्गेनाइज कर डाला. बस फिर क्या था, इन्होंने अपनी कंपनी सतोशी सेंटर स्टार्ट कर दी, जिसके थ्रू वो अपनी कम्युनिटी की वुमन या और उनके हस्बैंडवा एंड एवरी अदर मर्दवा को एडुकेट करते हुए नजर आए. वो घर बैठे बैठे कैसे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर उनकी मदद करती आई. इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक ऑफ बोत्सवाना को ये भी कह दिया कि भैया बिटकॉइन को एल साल्वाडोर की तरह लीगल करेंसी एक्सेप्ट कर लो और क्रिप्टो फ्रेंडली कायदा भी अपना लो. इससे देश जो है वो फायदे में ही रहेगा, है ना? सोने पे सुहागा ये है कि बोत्सवाना की ये लेडी एक ऐसा क्रिप्टो वॉलेट डेवलप कर रही है जिससे डायरेक्टली किसी भी नॉर्मल ATM से लिंक किया जा सकता है. सो माय डियर इंडियन लेडीज, अगर ये बोत्सवाना के गांव से बैठे बैठे क्रिप्टो की दुनिया में बवाल मचा सकती हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं. और अब आप कहेंगी कि यार मोटिवेशन से क्या होता है यशी? क्रिप्टो स्पेस में वुमनिया तभी झंडा गाड़ेगी जब वो दूसरी वुमनिया से मिलेगी, राइट? लेकिन कैसे? कहाँ ढूंढे दूसरी क्रिप्टो लेडीज को? इधर आओ, आओ, मैं बताऊंगी ना दूसरे एपिसोड में. तब तक के लिए स्टे ट्यून टू क्रिप्टो टीवी. मेरा नाम है यशस्वी, साइनिंग ऑफ. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to Crazy Coins by Kunal. Today's coin is Solana. I'm gonna tell you conversations around it that go like Solana, Solana. It's like the real deal, that breakup back. I'm gonna put some rags to build it with stacks, because I know the stats and the hodlers say I'm a holder Solana till me in my soul. Damn, this is crazy. Highlight is it has gone up over 4,500%. It is the Ethereum killer.
founded by the guys who worked on Ethereum. It solves the speed problem and it's like a tornado. If Ethereum is proof of work, this is proof of history and already on the top market capitalization after Bitcoin and Ethereum. It is the favorite app for all DeFi app developers, but now has gained huge attention from NFT developers as well, which now makes it the only L1 technology that allows DeFi and NFT and blockchain integration services, that too at high speeds with minuscule cost, which is huge. However, most of the time Solana is known for having a congested network because everyone has jumped onto it. So the real question is, with saving costs and tornado speed, faster validation, no mining, will Solana be the Ethereum killer? Until then, stay tuned till I bring you more crazy coins by Kunal. आप आ गए। वैसे तो मैं कबूतरों को बुला रही थी। अच्छा हो गया आप आ गए। देखिए मेरी प्रॉपर्टी कैसी लगी? अरे ये लैंड, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने डिसेंट्रलैंड पे खरीदी है 15,000 माना में। सच में? क्या? नहीं, मैं यहाँ रह नहीं सकती, कुछ उगा भी नहीं सकती, रियल में घर भी नहीं बना सकती, लेकिन मैं यहाँ एक वर्चुअल मूवी थिएटर बना सकती हूँ या एक वर्चुअल मॉल बना सकती हूँ, और कुछ नहीं तो हायर वैल्यू पर इस लैंड को बेच सकती हूँ। नॉट अ बैड आइडिया आफ्टर ऑल, है ना? अरे अरे कंफ्यूज मत होइए, ये 21st सेंचुरी है, यानी डिजिटल का जमाना। यहाँ सब कुछ होता है वर्चुअली, और अब तो हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब सब कुछ हो रहा है ब्लॉकचेन पर। बचपन में हम क्या खेलते थे? घर घर, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स। चलिए थोड़े और बड़े हुए तो मोनोपोली खेली, जिसमें फेक करेंसी थी, टॉय हाउस, ऑफिस, फायर स्टेशन, एयरपोर्ट एटसेट्रा। लेकिन अब वर्चुअल गेमिंग के जमाने में ये सब ऑनलाइन होगा। इस वर्चुअल गेम के लिए करेंसी भी डिजिटल होगी, लेकिन उसकी वैल्यू जरूर फिएट करेंसी में होगी। दैट्स द पॉपुलैरिटी एंड पावर ऑफ डिजिटल यूनिवर्स। इन दिनों यूथ में गेमिंग का गजब का क्रेज है, ऐसा कि ब्लॉकचेन पर पूरा गेमिंग यूनिवर्स बन गया है। और आजकल सबसे ज्यादा हिट है डिसेंट्रलैंड। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना एक वर्चुअल वर्ल्ड और कम्युनिटी है, जहां यूजर्स लैंड के प्लॉट्स, आर्टवर्क्स और एनएफटीज डेवलप और ओन करते हैं। यहाँ एक बार आपने लैंड खरीद लिया, उसके बाद देयर इज लॉट्स यू कैन डू विद इट। यहाँ आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि गेम्स, एप्लीकेशंस और यहाँ तक कि डायनामिक 3D सीन्स। Why stop there? यहाँ आप लैंड रिलेटेड सर्विसेज भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टूरिज्म एटसेट्रा। डिसेंट्रलैंड की पॉपुलैरिटी का अच्छा खासा श्रेय फेसबुक को भी जाता है, क्योंकि मेटावर्स के लिए डिजिटल रियलिटी प्रोडक्ट्स डेवलप करने के इरादे से जब फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा, तो जाहिर है मेटावर्स की दुनिया में बड़ा उछाल आया, और इसका सीधा फायदा हुआ डिसेंट्रलैंड को, क्योंकि डिसेंट्रलैंड एक स्पेसिफिक टाइप का मेटावर्स है जो ब्लॉकचेन यूज करता है। यहाँ लैंड और बाकी आइटम्स एनएफटी के तौर पर खरीदी और बेची जाती है। डिसेंट्रलैंड के डेवलपर्स एस्टेबान ऑर्डानो और अरी मेलिक ने एक ऐसी वर्चुअल स्पेस क्रिएट की है जहां डिजिटल रियल एस्टेट पार्सल्स, आइटम्स और कस्टमाइज्ड एसेट्स माना में खरीदे या बेचे जा सकते हैं। डिसेंट्रलैंड की नेटिव क्रिप्टो करेंसी है माना, जिसे कई एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो या फिएट करेंसी पर लिया जा सकता है। डिसेंट्रलैंड इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। अगर आप सेकेंड लाइफ गेम खेलते हैं और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड भी करते हैं, तो आपको डिसेंट्रलैंड बेहद पसंद आएगा। 2016 में 2D के साथ इसकी शुरुआत हुई और अब 3D में ये बहुत ज्यादा हिट है। Unlike ऑनलाइन गेम्स, यहाँ प्लेयर्स के पास डायरेक्ट कंट्रोल है ओवर द रूल्स ऑफ द ऑनलाइन वर्ल्ड। इतना ही नहीं, DAO यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन टोकन होल्डर्स को इन गेम और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज में डायरेक्ट वोट करने की इजाजत भी देता है। ये
लेकिन नए प्लेयर्स जो NFTs में इंटरेस्टेड है उनके लिए काफी एंट्री बैरियर्स होंगे, जैसे कि इथीरियम गैस फीस की वजह से कई कॉस्मेटिक आइटम्स का प्राइस ऑलमोस्ट डबल है। साथ ही यहाँ लैंड प्राइसेस काफी ज्यादा हैं, जिसके लिए प्लेयर्स को $10,000 से भी ज्यादा खर्चने पड़ते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे जैसे गेमिंग का क्रेज बढ़ रहा है, गेमर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गेमिंग यूनिवर्स भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि पिछले 1 साल में डीसेंट्रलैंड की नेटिव टोकन माना में कई गुना का उछाल आया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आइए बताते हैं आपको। डिजिटल वर्ल्ड की एक कहावत है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, और डीसेंट्रलैंड तमाम ट्रेंड्स को बखूबी फॉलो करता है, जिससे इन टर्न डीसेंट्रलैंड और माना को फायदा पहुंचता है। पॉइंट नंबर 1, जैसे जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस में गिरावट आ रही है, वैसे वैसे माना जैसे ऑल्ट कॉइन्स को फायदा हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, लेट फरवरी में लॉन्च हुए ग्रे स्केल डीसेंट्रलैंड ट्रस्ट की मैनेजमेंट के अंडर फिलहाल करीब $49 मिलियन है। यानी इंसेप्शन से लेकर अब तक इसने लगभग 1000% की ग्रोथ देखी है, which is phenomenal। पॉइंट नंबर 3, डीसेंट्रलैंड की NFT वैल्यू में भी बड़ा जंप आया है, जहां किसी भी लैंड पार्सल के लिए मिनिमम 11,750 मानास चुकाने पड़ते हैं, यानी कि $37,012। पॉइंट नंबर 4, वर्चुअल इवेंट्स। पिछले कुछ महीनों में डीसेंट्रलैंड पर हुए वर्चुअल इवेंट्स के चलते हजारों नए यूजर्स इसके साथ जुड़े हैं। जाहिर है ऐसे में माना का यूज भी ज्यादा हुआ है, यानी ज्यादा बढ़ा है। डीसेंट्रलैंड के एक ऐसे ही वर्चुअल कॉन्सर्ट पे जुड़े रोहस नागपाल, जो कि एक ब्लॉकचेन कैंपेनर और प्राइम चेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं। डीसेंट्रलैंड के बारे में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं उनसे। So I am a big fan of metaverse and I started using the metaverse somewhere in 2003 when Second Life came up, and then I remember in 2006 there was a rock show by a band called Duran Duran which happened in the metaverse of Second Life. So I am a very big fan of it, and when I look at movies like Matrix, Avatar, you begin to understand, or Inception also, how cool the metaverse can be. And I think with Facebook entering into the field, Microsoft entering into the field, we can expect a lot of people to start using the metaverse. Now, inside this metaverse, there is going to be demand for buying land, making a house on top of it. Then in the house, you are going to put furniture, wallpapers, you are going to buy clothes. So it is going to create a complete virtual clone of yourself. All right. And I think it's really, really cool, but we have to also understand all the platforms will not succeed. So many parties are trying to get in. It's just going to be 1 or 2 which will succeed. So you need to be very careful which one you are going to be betting on. डीसेंट्रलैंड के क्रिएटर्स ने बहुत सोच समझ के इसे क्रिएट किया है। अपने यूजर्स और प्लेयर्स की नफ्स को बहुत अच्छे से जानते हैं ये, इसीलिए डिजिटल यूनिवर्स की फ्यूचर नीड्स और ट्रेंड्स को समझते हुए डीसेंट्रलैंड ने अपने व्हाइट पेपर में 5 यूज केसेस शामिल किए हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन। यहाँ यूजर्स एप्स और 3D सीन्स क्रिएट कर सकते हैं डीसेंट्रलैंड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मदद से, दैट प्रोवाइड्स रिचर इंटरैक्शन। Point number 2, content curation. Neighborhoods have developed in Decentraland, attracting like-minded fans and growing organic communities. Point number 3, advertising. Neighborhood में player traffic की बदौलत advertising brands space खरीद रहे हैं और billboards setup कर रहे हैं। Wow. Point number 4, digital collectibles. NFT items are collected, created and traded in the Decentraland marketplace, giving users ownership rights. Point number 5, social. Decentraland के आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितनी कम्युनिटीज हैं या फिर जितने भी ऑफलाइन ग्रुप्स हैं, उन्हें फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्टिव वे में सोशलाइज करने का प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब जिस तरह ब्लॉकचेन पर ऑनलाइन गेमिंग का यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मेटावर्स और डीसेंट्रलैंड की कामयाबी आने वाले सालों में सोच से परे होगी। अगर आप भी गेमिंग के शौकीन हैं, तो डीसेंट्रलैंड में शायद आपकी दिलचस्पी भी हो सकती है। वैसे ही वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल फ्री है, सो गो गिव इट अ ट्राई। ऐसे ही और कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।
Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. हाय गाईज, क्रिप्टो टी व्ही मराठीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. सोलानाचे सर्वात खास फीचर्स विषयी म्हटलं तर ती आहे त्याची ट्रान्झॅक्शन स्पीड आणि कमीत कमी असणारी ट्रान्झॅक्शन फीज. मला माहीत आहे की आपल्याला वाटत असेल की मी फक्त सहजच सांगते आहे. चला तर मग सुरू करूया सोलाना आणि इथिरियमची कंपॅरेटिव्ह स्टडी आणि सोबत जाणून घेऊया काही गोष्टी. फर्स्ट, जेथे सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स 700हून अधिक आहेत तेथे इथिरियम व्हॅलिडेटर्स 11,000हून अधिक आहेत. त्यामुळे हा पॉइंट इथिरियमला केला. सेकंड, लिटल सी म्हणजेच युजर रिस्पॉन्स मध्ये सोलानाची एफिशियन्सी 0.4 सेकंड्स आहे. तिथे इथिरियम युजर रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनिट्स आहे. म्हणजे हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 3, एका बाजूला सोलाना आपल्या युजर्सला 50,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंड अलाव करतात, तर दुसऱ्या बाजूला इथिरियमचे युजर्स एका सेकंडमध्ये फक्त 15 ट्रान्झॅक्शन करू शकतात. म्हणजे पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 4, आता सर्वात इंटरेस्टिंग पॉइंट जेथे सोलानाची पर ट्रान्झॅक्शन फी फक्त $0.0015 आहे, त्यात इथिरियम आपल्या युजर्सला पर ट्रान्झॅक्शन $15 चार्ज करतात. मग पुन्हा हा पॉइंट गेला सोलानाला. पॉइंट 5, सोलानावर आतापर्यंत एकूण 15 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत, पण इथिरियमवर आतापर्यंत फक्त 1.07 बिलियन्सचे ट्रान्झॅक्शन झाले आहेत. हा पॉइंट सुद्धा गेला सोलानाला. यावरून स्पष्टपणे सिद्ध होतं की सोलाना हा विनर आहे. सोलानाचे स्पीड विषयी याचे फाउंडर अॅनाटॉली यानकोवेन्को यांनी 17 नोव्हेंबर 2017ला व्हाईट पेपरमध्ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री नावाच्या एका टेक्निकला डिस्क्राईब केलं आहे की तुम्हाला तुमचे सोलाना टोकन डेलिगेट करावे लागतील किंवा टोकन एका व्हॅलिडेटरसह लॉक करून ठेवावे लागतील, ज्यावर तुम्हाला रिटर्न देखील मिळेल. या टेक्निकनुसार अननोन कॉम्प्युटर जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करत नाहीत त्यांच्यामधील वेळेला ट्रॅक केलं जातं. खरं तर अॅनाटॉलीने बऱ्याच वेळापासून बिना क्लॉकवाली ब्लॉकचेन सिस्टीम्स जसे की बिटकॉइन आणि इथिरियमला स्टडी केलंय. नॉर्मली ही सिस्टीम्स लार्ज स्केल वर वर्ल्ड वाईड पर सेकंड 15 पेक्षा जास्त ट्रान्झॅक्शन नाही करू शकत. जेव्हा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टीम ज्याप्रमाणे विजाला 65,000 ट्रान्झॅक्शन पर सेकंडची रिक्वायरमेंट असते, आपल्याला या स्टडीमुळे अॅनाटॉलीला एक गोष्ट समजली की क्लॉक शिवाय ही सिस्टीम्स ग्लोबल पेमेंट सिस्टीम किंवा ग्लोबल सुपर कॉम्प्युटर नाही बनू शकत. जेव्हा अॅनाटॉलीने असे कॉम्प्युटर्स जे एकमेकांसोबत ट्रस्ट करू शकत नाहीत त्यांना एका म्युच्युअल टाइम सोबत अग्री करण्याचा जो प्लॅटफॉर्म होता त्याला अखेरीस सॉल्व करून टाकले. त्यांना माहीत होतं की त्यांची 40 वर्षाची डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टीम रिसर्चला ब्लॉकचेन या दुनियेमध्ये इंट्रोड्यूस करण्याची आता वेळ आली आहे. त्यामुळे परिणामी याचे क्लस्टर फक्त 10 पटीने, 100 पटीने किंवा 1000 पटीने नसून तब्बल 10,000 पटीने वाढले आहे. सोलाना प्रोटोकॉलमध्ये POH म्हणजे प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक मेन कॉम्पोनंट आहे. POH बल्क ऑफ ट्रान्झॅक्शनची एक प्रोसेसिंग करतात. सक्सेसफुल ऑपरेशन सोबत त्यांना प्रोसेस करताना पास झालेल्या वेळेला सुद्धा रेकॉर्ड करतात आणि याप्रमाणे या ब्लॉकचेनला ट्रस्टलेस नेचर एन्शोर करतात.
सोलानाचे व्हॅलिडेटर्स पूर्ण नेटवर्कमध्ये आपली ओव्हरऑल होल्डिंगनुसार निवडले जातात. म्हणून ज्यांच्याकडे जेवढी जास्त होल्डिंग तेवढेच त्याचे व्हॅलिडेटर बनण्याचे चान्सेस असतात. याप्रमाणे ही स्ट्रॅटर्जी एन्श्योर करत असते की जी लोक नेटवर्क होल्ड्समध्ये पूर्णपणे वेस्टेड आहे त्यांना ही पोझिशन मिळेल. जेव्हा कोणी व्हॅलिडेटर कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनला अप्रूव्ह करून ब्लॉकचेनमध्ये ॲड करतात तेव्हा त्याला यासाठी रिवॉर्ड मिळत असतात. आणि जी लोक व्हॅलिडेटर नाही आहेत ती लोक पण कुणा दुसऱ्या व्हॅलिडेटरला आपल्या होल्डिंग्सला डेलिगेट करून अगदी इझिली प्रॉफिट कमवू शकते. POS प्रोसेसला मॉनिटर करण्यासाठी प्रूफ ऑफ स्टेक म्हणजेच POS कॉन्सेन्ससला यूज केलं जातं. सोलानाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पाहत रहा क्रिप्टो TV विथ युअर फेवरेट होस्ट वैभवी सावंत. Welcome to the world of crypto. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ देखते रहिए क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी माइंड. This is my wallet. These are my debit cards, credit cards, some cash and my travel pass. This is the key. This is the key to my house. But if I lose my wallet, I might lose the access to my home. But that's not an issue. I can get a locksmith and get my key done and re-enter my house. But there is one key which you lose access to, you might lose millions. So let's understand what are keys and what is a crypto wallet. Cryptocurrencies that exist as a digital valuables need to be stored somewhere. Interestingly, they cannot be stored but accessed with the help of a software called crypto wallets. These wallets facilitate transactions of cryptocurrencies between users. Crypto wallets are a secure way to keep digital assets. Unlike a regular wallet, crypto wallets don't actually store your cryptocurrencies. Instead, they store your private keys, the password that grants you access to your cryptocurrencies. Private keys are similar to your debit card PIN and are used to make transactions, while public keys are similar to bank account numbers and are used to receive transfers. For example, if someone who sends you cryptocurrencies is effectively assigning the coin to your wallet address, that is a public key. To utilize these coins, private keys stored in your wallet should match with a public key and entered by a sender. Once these match, the transaction is successful. If you lose your key, you lose access to your money. There are two types of wallets, hot wallet and a cold wallet. So what is a hot wallet? They are always connected to internet and can be accessed anytime. They are free to use and can hold any coin. Exchange wallets, mobile wallets, online cloud wallets and software wallets are examples of hot wallets. Well, what is a cold wallet? Without access to the internet, bitcoins can be stored in a cold wallet. While payments can be received at any time, the same cannot set for sending. They are impenetrable to cyber attacks since they are in frontline mode. Hardware wallets and offline paper wallets are examples of cold wallets. They make it possible to store your cryptocurrencies in a physical form. They are easier to transport, store, but they are more expensive. They allow only a limited variety of cryptocurrencies. KeepKey, CoinKit, Coldcard, and Ledger Nano X are some examples of hardware wallets. If you are unsure how to store your cryptocurrencies, we will show you how. Crypto wallets allow storage of virtual currencies in the following manner. Exchange or service provider wallets. As the name implies, the exchange platform is in charge of these wallets. Such wallets make trading simple and account recovery simple. Because data is stored by a third party, consumers must choose an exchange they can trust. Second is web online wallets. These wallets are stored in a cloud and can be accessed by multiple devices over the internet. Web wallets enables faster transactions and allow users to manage multiple currencies.
These are also convenient for the on-the-go trade. Being online, they are prone to hackers and viruses. In this case, a third party stores the data. Mobile and desktop wallets. No third party is involved in storing the data. The devices need to be adequately backed up and kept virus-free to safeguard funds against cyber attacks. Paper wallets. They are printed sheets of paper having private keys or QR codes. They are the safest as they cannot be hacked. They need to be protected from physical damage or loss. Hardware wallets. They are USB-like devices' private keys. They can never be hacked since the keys are stored on the device. They do not involve a third party. You will require a software wallet to interact with the device. In case of a damage to the device, coins can be accessed on a new device by using a recovery password. They are most expensive ones. They are prone to breakage or getting lost or stolen. In order to use a wallet safely, following are the steps we recommend. Set up a two-factor authentication, which consists of a password and OTP, so no one can access your account. Always access your browser address bar so that you avoid phishing. Do not share your sensitive information with anyone. Exchange apps do not ask for sensitive information. Use strong passwords. Easy to guess passwords can get leaked or are accessible by hackers. Double check recipient address. At once, the amount sent can't be retraced or recovered. Interact only with trusted wallets. This disables any phishing scams. Avoid using public Wi-Fi as it can divert your browser to another page. It enables hackers to gather your information and data. Make sure your device is secure. Constantly update security measures like firewall, antivirus software. Do not download install software you are unsure of. Keep your holdings and information private. Do not reveal your information at events, social gathering or meetups. Ensure you are the only one accessing your account. Ensure that you perform account actions like deposit, withdraw, trade, etc. Before you commit to anything, be sure you do your homework. Cryptocurrency investing is still risky, so make sure you are in good financial health before you get started. Thank you so much for watching this special edition with Manoj Dhara. Stay tuned for more such interesting updates on Crypto TV. Thank you. હેલો, કેમ છો? મજામાં? સ્વાગત કરું છું તમારા ક્રિપ્ટો ટીવી પર. હું છું તમારી ક્રિપ્ટો હોસ્ટ અને દોસ્ત પાર્વતી AKA પારો અને ફરીથી લઈને આવી છું ડીડ યુ નો ફેક્ટ્સના ન્યૂ એપિસોડ. શું તમને ખબર છે કે એક બિટકોઇનની આજની વેલ્યુ અને 2010ની વેલ્યુમાં કેટલો ડિફરન્સ છે? જવાબ સાંભળશો તો લિટરલી ચક્કર આવી જશે. 2010માં જેટલા બિટકોઇન્સથી ઓનલી 2 પિઝા લીધા હતા ને તેટલા બિટકોઇન્સથી આજે આપણે 1 સિટી પણ બાય કરી શકીએ. સાચે, આઈ એમ નોટ કિડિંગ. અરાઉન્ડ 11 years ago, મિસ્ટર લાઝલો હેનિયક્સ ભાઈ નવું ક્રિપ્ટો રમતા શીખ્યા અને 22 મે 2010માં આ ભાઈએ પૂરા 10,000 બિટકોઇન્સથી પાપા જોન્સના 2 પિઝા લીધા હતા. એ સમયે બિટકોઇનની વેલ્યુ $0.0025 હતી, એટલે આપણા 1 રૂપિયાના ઓલમોસ્ટ 5 બિટકોઇન્સ આવે. બિટકોઇન્સ એટલે એટલા સસ્તા હતા. મને પણ થાય છે કાશ આપણે ત્યારે બિટકોઇન્સ લઈ લીધા હોત તો લાઈફ સેટ થઈ જાતી યાર. એનીવેઝ, કમિંગ બેક ટુ ધ પિઝા વેલ્યુ. આજે એક બિટકોઇનની વેલ્યુ એપ્રોક્સિમેટલી 24 લાખ છે. એ ભાઈને પિઝા લેવાની શું જલ્દી હતી? આવા ઇન્ટરવ્યુમાં ઘણીવાર મિસ્ટર હેનિયક્સને પૂછવામાં આવ્યું તો એમને શું જવાબ આપ્યું ખબર છે? ભાઈએ કહીએ છે, મને થોડી ખબર હતી કે ડિકેડ પહેલા માઇન કરેલા બિટકોઇન્સની વેલ્યુ આજે ચાંદ સુધી પહોંચી જશે. હવે મને કોઈ રિગ્રેટ્સ પણ નહીં. આ સિચ્યુએશન્સમાં બેચારા બીજા બધા શું કહી શકે? હા, ક્રિપ્ટો લવર્સ અને ક્રિપ્ટો બુલ્સ ક્રિપ્ટોકરન્સીની ગ્રોથને રિફ્લેક્ટ કરવા માટે 22 મેને બિટકોઇનના પિઝા ડે તરીકે સેલિબ્રેટ કરે છે.
ક્રિપ્ટો એવોલ્યુશનના કી મોમેન્ટમાં મિસ્ટર હેન્ઝેક્સનું નામ અમર થઈ ગયું છે અને ક્રિપ્ટોકરન્સીના ઇન્વેન્ટર મિસ્ટર સાતોશી નાકામોટોની જેમ આમને પણ 11 વર્ષ પહેલા શું ખબર હતી કે એક બિટકોઇનની વેલ્યુ આજ 24 લાખ રૂપિયા થઈ જશે, જે ત્યારે તેમની વેલ્યુ $400 હતી. અને વન મોર થિંગ, પાપા જોન્સના 2 પિઝાના બદલામાં જેમને 10,000 બિટકોઇન્સ લીધા એ કોણ હતા અને એમને શું કર્યું બિટકોઇનના? તો એ મહારથીનું નામ છે મિસ્ટર જેરેમી સ્ટુડીવન્ટ. એમને પણ તરત જ 10,000 બિટકોઇન્સ ડમ્પ કરી દીધા. વાહ, હવે શું કહેવાય હા? બટ ટેકનિકલી હેલ્ધી ઇકોનોમી માટે કરન્સી જેટલી સર્ક્યુલેટ થાય તેટલું સારું. સો 10,000 બિટકોઇન્સ વન્સ અગેન સર્ક્યુલેશનમાં આવી ગયું. તો સરસ જ કહેવાય ને. આ છે ને ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત. હવે તમે સમજી શકો છો કે ડે બાય ડે લોકોમાં ક્રિપ્ટોની પોપ્યુલારિટી કેમ અને કેવી રીતે વધી રહી છે. વેલ, આજની ડીડ યુ નો એપિસોડમાં આટલું જ. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક્સાઇટિંગ ક્રિપ્ટો ફેક્ટ્સ સાથે આપણે ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી ટાટા, બાય બાય, સાયોનારા અને આવજો. એન્ડ કીપ વોચિંગ ક્રિપ્ટો ટીવી. दोस्तों ने मजाक उड़ाया, गर्लफ्रेंड ने भी रोकना चाहा, लेकिन क्रिस्टोफर ने दाव लगाया. $26 से सीधा $15 करोड़ कमाया. जी हाँ, ये है एक्सीडेंटल मिलियनेयर की अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग कहानी. एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट क्रिस्टोफर कॉच, जिसने बिना कुछ सोचे समझे 2009 में बिटकॉइन पर $26 लगाए. हालांकि $26 कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन 2009 में ये वो वक्त था जब बिटकॉइन बस लॉन्च ही हुआ था और इसकी कोई खास कीमत नहीं थी. इतना समझ लीजिए कि कोई कॉलेज स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से 100 बिटकॉइन खरीद सकता था. जाहिर है बिटकॉइन को तब कोई ट्रस्ट नहीं करता था. जब 2009 में क्रिस्टोफर ने बिटकॉइन पर $26 लगाने का मन बनाया तो उसके फ्रेंड्स ने उन्हें एक फेक कॉइन पर पैसा बर्बाद ना करने की सलाह दी. इनफैक्ट क्रिस्टोफर की गर्लफ्रेंड ने भी उन्हें किसी ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करने से रोका जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और जिसे एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं किया जा सकता. लेकिन भगवान का शुक्र है कि क्रिस्टोफर ने किसी की भी नहीं, सिर्फ अपने दिल की सुनी और ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके क्रिस्टोफर उसे अगले 4 सालों के लिए भूल गए. और फिर अचानक 2013 में जब मीडिया में बढ़ चढ़कर बिटकॉइन के चर्चे होने लगे तो क्रिस्टोफर को उनकी वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट याद आई. लेकिन फिर आगे कहानी में आया ट्विस्ट. क्रिस्टोफर अपने इनक्रिप्टेड बिटकॉइन वॉलेट का पासवर्ड भूल चुके थे. फिर क्या था, पूरा दिन अलग अलग पासवर्ड के साथ जूझने के बाद आखिरकार उन्हें पासवर्ड याद आ गया. आप सुनकर हैरान होंगे, 4 साल बाद उनकी वो इन्वेस्टमेंट कुबेर का खजाना बन गई थी. वो $26 अब 5,000 बिटकॉइन की वैल्यू रखते थे.
जिसकी कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिटकॉइन में की गई उनकी इन्वेस्टमेंट का महज 1/5 पार्ट यानी 1000 बिटकॉइंस बेचकर क्रिस्टोफर ने कमाए $886,000। वाह, मुझ पर कब होगी पैसों की ऐसी बारिश। चलो, आएगा वो दिन भी। खैर, इन पैसों से क्रिस्टोफर ने ओस्लो, नॉर्वे में एक अपार्टमेंट खरीदा। माना जाता है कि अब भी क्रिस्टोफर के पास करीब 4000 बिटकॉइंस मौजूद हैं और वो सही मौके की तलाश में है जब वो इसके एक और चंक से ह्यूमंगस प्रॉफिट कमाए। तो अब इसे क्रिस्टोफर का विजन कहें, उनकी गट फीलिंग कहें, या एक स्मार्ट बिजनेस मूव दैट मेड हिम अ मिलियनेयर, या फिर जलने वालों की तरह कहें उन्हें एक्सीडेंटल मिलियनेयर बनाया। But he invested in Bitcoin when one could buy thousands of Bitcoins for $100 or less. Hope you like the story. हम आपके लिए और कई क्रिप्टो मिलियनेयर्स की कहानियां लेकर आते रहेंगे। I'm रुचि शर्मा. Keep watching Crypto TV. Satoshi Nakamoto, the creator of Bitcoin, once said, "If you don't believe it or don't get it, I don't have the time to convince you." Looks like the same is going to be true for Indian government, as the stance that government has taken so far is very unwelcoming. And what Satoshi Nakamoto said, looks like the exchanges are following the same path but omitting the option out to convince the government further and shifting their bases to other countries. That's something to think about. Hello and welcome to the viewers of Crypto TV. I am your crypto host Parvati Nirban, and today we are having a guest on the show of Crypto Masters, who is closely connected to exchanges in India and is a founder of a crypto payment gateway company known as BitBatua. Hello and welcome to our today's episode of Crypto Master, Mr. Lakshman. How are you doing? I'm doing well. Thank you, Parvati, for having me here. So let's begin, right? Sure. As we all know, the tussle that is going on due to the regulatory issue that the crypto world is facing in India, and additionally the exchanges are having a very tough time when the market is bearish. We all know the shadow ban and the difficulty that all of us are facing. So P2P is the only solution left for us? Yes, I think primarily this is the only solution and option left for end consumers and exchanges to accept UPI and give the crypto to users. So P2P is the only option. Okay. And you know that the ease of UPI based payment transfer is not there in P2P transfer, right? Yet people are willing to do it, as currently there is no other option available. What do you have to say about that? They can actually make UPI transaction, but not to the exchange UPI. So in the P2P, what happens? The people can make UPI to the users, the UPI payment, right? Right. They can still use the UPI. Right. So because you are a payment gateway in yourself, so how do you actually explain this situation and how can we better this? No, we are not a P2P, exchange provider. We are helping businesses and individuals, getting paid in cryptocurrencies. But I'm explaining you situation, based on the regulations issues and the things coming from the government side. Right. The cryptocurrency exchanges in India, I think they are exploring P2P options to allow their users to buy cryptocurrencies. Right. So how exactly BitBatua is functioning? Like, is it the same how every other P2P transfer is happening, or is there any difference, or is there any ease of transfer in comparison to the exchanges, what they are offering with their own, wallets and with their own P2P transfers? Right. So the first difference with, in BitBatua is we are not allowing people to buy cryptocurrency.
So that means we don't have a UPI support as of now. People can use our gateway to accept payment in cryptocurrency. So it will be crypto to crypto, not fiat to crypto. Exactly. So the fiat option is not available with us. The region is saying government is not allowing, the RBI is not allowing. So what is your stance and what is your take in the same case? Are you also considering to move out or shift base in case the regulatory, doesn't come in the way which is, supporting crypto exchanges or payment gateways at the same time? So yes, until the regulators will be going out, right? We are also exploring options of setting up a base in different country. I would say Dubai. They're thinking of Dubai. So let's see. Okay. So if the regulatories are not actually supporting, so we see a lot of crypto-based company going out of India, right? That is the future. Exactly. So the clarity is not for startups like us. We want to register this platform in India, but there are no regulations how we can get the license for this crypto payment gateway. But I think we hopefully can get the same from other countries like Dubai. Okay, so as you said that P2P transfer is the only option as of now, and we are waiting for the regulatories to